Hello everyone, RBI Grade B notification is expected to be out in the first half of July month 2025, which means technically the first phase, that is phase 1 of RBI Grade B examination, will be conducted in the first half of September 2025. Keeping that in mind, we at Testbook Regulatory Bodies YouTube channel brings to you a very important session which we call it as monthly finance current affairs revision session. So today, in this particular session, we will revise all the important current affairs from the month of March 2025, which are going to help you while writing your phase 1 as well as phase 2 examination. The logic behind starting from March 2025 is, as you all know, the examination is going to happen in September. So March, April, May, June, July, August. 6 months of current affairs are really very important. Keeping that in mind, we are starting the revision session from March 2025. Once the notification is out, once we are done with March, April, May, June and July, before you go for the examination, you will get the monthly session for January as well as February as well. But these sessions, they hold less importance in comparison to March to August 2025 sessions. So let's start the discussion. But before I start, a very important information I would like to share with you all is, if you want to download the PDF of this particular session, the link is available in the description below. Just click on the link, fill in the form, share your details, and you will be able to download the PDF for the entire March finance current affairs. So let's get started without any further delay, and I'm pretty sure you're going to enjoy the discussion and you're going to use this session as to its fullest by revising all your important concepts from the month of March. Let's get started. Welcome to Super Coaching Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं फाइनेंस करंट अफेयर्स के अगले सेशन में. जैसा कि आप जानते हैं, ये सेशन लाइव कंडक्ट किया जाता है ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, एंड वी कवर ऑल द इंपॉर्टेंट फाइनेंस करंट अफेयर्स. जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ फरवरी से लेकर 2 ऑफ मार्च के फाइनेंस करंट अफेयर्स को, और हम फोकस करेंगे आरबीआई द्वारा प्रेजेंट की गई इन द रीसेंट टाइम्स नोटिफिकेशंस, आरबीआई प्रेस रिलीज, RBI circulars, even RBI bulletins and the RBI publications. उसके साथ साथ we also discuss the finance, or I would say the general banking related current affairs which are important for your phase 1 examination as well. So before I start the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine? Just give me a thumbs up. Good evening Garima. I would request everyone to quickly reply in the comment section that yes, I'm audible, visible, everything is fine, so that we can begin the discussion without any further delay. I'm just waiting. Once you reply in the comment section, I'll move forward. Thank you so much for the reply. So let's get started. Before I start the discussion, guys, if you want to download the PDF of this session, the PDF of this session is available on my Telegram channel, and the handle of Telegram channel is @Madhav. Even you can search the Telegram channel by the name Economics by Madhav, and even you can scan the code which is available on the screen. So here we go with the first news of the evening. But before I start the discussion, I have a question for you. First, let's check out the question. If you are able to answer, it's fine. Otherwise, we will be discussing this question in much detail, and then we'll come back and answer the question again. So what does the question say? The question says, what is the overall exposure limit of urban cooperative banks to housing, real estate and commercial real estate advances as suggested in the new prudential norms for the urban cooperative banks? So let's check out what is this new news all about. So firstly, I would like to start my discussion with the term that recently RBI has released the new prudential norms for urban cooperative banks, and these prudential norms need to be followed by the urban cooperative banks in the upcoming years to go, so that urban cooperative banks, they become stronger, and they become adequate to compete with the other scheduled commercial banks in the country. So let's get started. Let's try to discuss this entire part in much detail. But before I start the discussion, just pay attention and try to understand each and every point. So the point says, Reserve Bank of India has introduced
new prudential norms for urban cooperative banks to enhance their financial health. So why these prudential norms have been introduced? So these prudential norms have been introduced in order to enhance the financial health, as well as to provide greater freedom in terms of lending to the urban cooperative banks. So urban cooperative banks, they generally remain in news due to a number of reasons. So again, they are in news this time, and the reason behind this time is RBI has come up with the new prudential norms for these urban cooperative banks. The news which we are talking about, it is related to the new prudential norms, and these new prudential norms are effective from 25th of February 2025, and it has recently modified the areas related to the urban cooperative bank. So what all areas are modified? Sir, first term, small value loans related to urban cooperative banks have been modified. Exposure to real estate has been modified, and lastly, provisioning for security receipts have been modified by RBI in the recent times. Now, what all these updates are, what changes have been done, and what will be the impact of these changes in the near future to go, let's try to decode all of them. So the first point is amendment in the definition of small value loans. If someone asks me, what do you understand by the term small value loan, then my answer would be, so small value loan basically depends upon what? So small value loans basically depend upon the value of loan which has been provided, and the small value loan is different for different organizations. It is different for different authorities. Now keeping the same in mind, if I explain this point to you in much detailed manner, then what will be my answer on the same? So my answer on the same point would be, whenever we talk about small loan, you need to understand this point very carefully, that if someone asks you what is a small value loan, with respect to urban cooperative banks. So earlier, the condition was very obvious. The condition says, if the loan amount given by urban cooperative bank is up to 25 lakhs, then it will be termed as small value loan, or please pay attention, or as a certain percentage of your capital, of the capital. So here you can see urban cooperative banks, they say loan of value not more than 25 lakhs. So if the loan of value is not more than 25 lakhs, that will be termed as small value loan, or on the other side, we have a criteria. The criteria says 0.2% of what? So 0.2% of what? So 0.2% of their tier 1 capital. 0.2% of what? So 0.2% of tier 1 capital. So see, please pay attention. Small value of loan given by urban cooperative banks is defined as either up to 25 lakhs as a value of loan, or 0.2% of tier 1 capital. 0.2% of tier 1 capital. Now let's take an example. If the tier 1 capital is, let's say, 100 crores. If I just take an example, and if I say that the tier 1 capital is 100 crores, I'm talking about urban cooperative bank, and in the case of urban cooperative bank which I'm discussing right now, if I assume that the tier 1 capital is 100 crores, so what will be the 0.2%? So 0.2% will be 0.2 divided by 100, and if I remove this decimal, it comes out to be something like this. And if I try to solve this, it gives me 0.2 crore, which means 20 lakhs. Now in this case, we should go with the lower value or upper value. Please pay attention. So out of the two, you go with the upper value. Out of the two, we will choose the upper value, or we will choose the
maximum value. So what is the maximum value? 25 lakhs or 20 lakhs? Then my answer is, sir, 25 lakhs is the maximum value. So in that particular case, small value loan given by urban cooperative banks is going to be 25 lakhs. If I change my example and if I say tier 1 capital, if I say tier 1 capital is 1000 crore, if I assume that tier 1 capital for the bank is 1000 crore, in that particular case, what will be 0.2%? So in that particular case, 0.2% of tier 1 capital, which is 1000 crore, is going to be 2 crore. It's going to be 2 crore. So in that particular scenario, on one side, up to 25 lakhs, on the other side, up to 2 crores, you need to choose the maximum value. So what will be the loan given? 25 lakhs or 2 crores? Then my answer would be, sir, my answer is 1 crore. Neither 2, neither 25 lakhs. My answer will be 1 crore. Why? Because the condition says up to 25 lakhs or 0.2% of tier 1 capital up to 1 crore. So what was the maximum limit? So maximum limit is 1 crore. Either this or this. Either this or this. So this is the current urban cooperative bank norm, and on the urban cooperative banks there is a condition that out of the total advances given by these urban cooperative banks, 50% of the advances, 50% of total loan and advances should be given to what? So should be given in the category of small value loan. समझ आई ये बात? अरे बोलो यार, ये पॉइंट समझ आया? अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि स्मॉल वैल्यू लोन क्या है तो आप आंसर क्या दोगे? तो स्मॉल वैल्यू लोन का मतलब है लोन की वैल्यू कितनी हो, 25 लाख हो या उससे कम. अगर लोन की वैल्यू 25 लाख या उससे कम है वो स्मॉल वैल्यू लोन है इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, या फिर लोन की वैल्यू 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल हो, 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल हो. किसका? आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का. अब इन दोनों में से जो वैल्यू हाईएस्ट होगी वो आप चूज करोगे. अगर ये वैल्यू 25 लाख से कम है देन योर स्मॉल लोन विल बी अप टू 25 लाख. अगर ये वैल्यू 25 लाख से बड़ी, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, देन यू विल गो विद दिस. द मोमेंट वैल्यू इंक्रीजेस अबव 1 करोड़, योर लिमिट इज 1 करोड़ ओनली. यू कैन नॉट प्रोवाइड लोन ग्रेटर देन 1 करोड़. समझ आया कि सर एक तरफ 25 लाख, एक तरफ 1 करोड़, इन दोनों में क्या रिलेशन है? सर 25 लाख इज द जनरल वैल्यू. 1 करोड़ की वैल्यू कब पिक्चर में आएगी? व्हेन 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल इज अबव 1 करोड़. अगर 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल 25 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो उतनी वैल्यू का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या देंगे? लोन देंगे. अब जो किसी ने पूछा कमेंट सेक्शन 50% का मतलब, सर 50% का मतलब है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे आर रिक्वायर्ड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स they are required to provide at least 50% of their total loans and advances, 50% of their total loans and advances in the category of small value loan. तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के, अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने 30 लोन दिए तो उस 30 में से कम 15 लोन कौन सी कैटेगरी के लोन होने चाहिए? सर कम से कम 15 लोन होने चाहिए स्मॉल वैल्यू लोन कैटेगरी. ठीक है जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट. अब यहां पर एक स्टेटमेंट और आ रही है, सर बाय 31 मार्च 2026. इस पे जाना चाहूंगा, इस पॉइंट को आपको क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर रिगार्डिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. अगर हमसे कोई पूछे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए व्हाट आर द करंट कंडीशंस, सो द करंट कंडीशंस आर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शुड प्रोवाइड 50% ऑफ देयर टोटल लोन in the category of small value loan. And what is small value loan? So small value loan is the loan which is up to 25 lakhs or up to 25 lakhs or 0.2% of tier 1 capital, whichever is more, but upper limit is up to 1 crore. Upper limit is up to 1 crore. ये कहानी है अभी तक. इसमें आरबीआई ने रिसेंटली एक नॉर्म दी थी और वो रिसेंट नॉर्म जो आरबीआई ने दी वो क्या थी? सर अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई रिसेंट नॉर्म जो दिया गया था जुलाई 2024 में, उसमें ये कहा गया था कि बैंक्स जो है दे शुड अटेन द वैल्यू की जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है दे शुड प्रोवाइड 50% ऑफ देयर टोटल लोन इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल वैल्यू लोन्स. बट फिर इसे एक्सटेंड किया गया. नाउ द कंडीशन इज बाय 31 मार्च 2025 40% किसमें होना चाहिए? टोटल लोन का 40%
क्या हो, दैट शुड बी स्मॉल वैल्यू लोन, लेकिन बाय 31st March 2026 इट शुड बी व्हाट सर, इट शुड बी 50%. It should be what sir, it should be 50%. And जो definition है that has been given earlier, जो डेडलाइन थी वो कितनी थी सर, पहले की जो डेडलाइन थी वो 31st March 2024 थी, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे वर नॉट इन द पोजीशन टू अचीव इट, तो आरबीआई के पास रिक्वेस्ट गई, आरबीआई ने उस रिक्वेस्ट को मॉनिटर किया और मॉनिटर करने के बाद आरबीआई ने कहा कोई टेंशन नहीं है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अब आप पहले 40% ऑफ द टोटल लोन स्मॉल लोन कैटेगरी में दीजिए बाय 31st March 2025, लेकिन 31st March 2026 तक आपके टोटल लोन में से 50% लोन कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, दैट शुड बी इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल वैल्यू लोन. दिस इज व्हाट विच इज गोइंग ऑन, दिस इज व्हाट विच इज गोइंग ऑन. अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट चेंजेस हैव बीन डन, व्हाट रिवीजन हैज बीन डन. इफ आई टॉक अबाउट द रिवीजन, the revision has been made to the definition of small value loans. अब ये जो small value loans है इनकी definition को change किया गया. If I talk about the change in this definition, what is the new definition which has been given? The new definition says loan value should not be more than 25 lakhs or 0.4% of tier 1 capital, whichever is higher, but the ceiling is 3 crore per borrower. Whichever is higher, but the ceiling is 3 crore per borrower. So if I include the update over here, so what is the update? Updates are this 25 lakhs is still the same. That small value loan means loan up to 25 lakhs, but this has been revised. Now this has been increased to 0.4% of tier 1 capital, 0.4% of tier 1 capital, and up to 3 crore per borrower is the limit. Up to 3 crore per borrower is the limit, and you have to, urban cooperative banks have to achieve the target of 50% of total loan should be small value loan by 2026, और 40% का टारगेट है जो इन बैंक्स को अचीव करना by 31st March 2025. I guess the first news, the first update is clear to everyone. अगर पहली न्यूज, पहली अपडेट बिल्कुल क्लियर है तो एक बार यस सर टाइप कर दो so that I can move ahead. तो ध्यान दीजिएगा, all other conditions, जो भी बाकी सारी conditions थी, they are still the same, no changes has been done, and urban cooperative banks, they should periodically review the portfolio behavior and quality under the loan size category, and where necessary may consider the fixing lower ceilings. तो यहाँ पे ये कहा गया कि भैया रिव्यू करते रहिए टाइम टू टाइम, और जब आपको लगे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है चेंज कर लीजिए, सो दैट यू कैन अचीव द टारगेट्स बाय 31st March 2025, और यू कैन अचीव द टारगेट्स बाय 31st March 2026. पहली कंडीशन आई गेस क्लियर होगी. फर्स्ट कंडीशन इज रिलेटेड टू व्हाट? सो फर्स्ट कंडीशन इज रिलेटेड टू द स्मॉल वैल्यू लोन रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन जो है या जो सेकेंड रिवीजन है, सेकेंड रिवीजन इज रिलेटेड टू द हाउसिंग फाइनेंस. पहले पढ़ते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे हैव बीन गिवन मोर फ्लेक्सिबिलिटी related to the housing loan as well as real estate lendings. The overall exposure, please pay attention, current जो सिनेरियो है अभी जो है रिवीजन करने से पहले जो करंट सिनेरियो है वो क्या कहता है? The overall exposure of urban cooperative banks. तो urban cooperative banks they should provide loan to housing sector, real estate as well as commercial real estate advances, but there is a limit. So what is the limit? So the limit is 10% of the total asset. So 10% of the bank's total asset should be used to provide loan to the housing sector, real estate sector and commercial sector. और उसके साथ साथ जैसे वो कहते हैं ना कि एज रिलैक्सेशन, उसी तरह यहां पर एक रिलैक्सेशन दी गई है. वो रिलैक्सेशन कितनी कि 5% ऑफ टोटल एसेट आप और दे सकते हैं इन द कैटेगरी ऑफ हाउसिंग लोन. बट कब? when you are lending for the priority sector, when you are lending for the priority sector. I'm pretty sure आप सब जानते हैं priority sector lending क्या है. So priority sector lending has been introduced by RBI, under which RBI has asked the banks to provide certain percentage of fixed loan to the priority sector lending. For example, अगर मैं कहूँ for public sector bank this limit is 40%, for private banks limit is 40%, for foreign banks
40% of A and BC, adjusted net bank credit, should be provided loan or should be provided in the form of lending to the priority sector. I hope ये बात आपको पता है. उसके अलावा अगर हम RRBs की बात करें और हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो उसके लिए जो लिमिट है दैट इज 75% ऑफ A and BC. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वी इंक्लूड डिफरेंट सेक्टर्स सच एज वी हैव एग्रीकल्चर सेक्टर, then we have MSME sector. Along with MSME we include startups. In MSME we also include the export sector, that is the MSMEs involved in export import. Then we include weaker section, then we include housing loan, education loan, social infrastructure lending, green energy infrastructure. These all are included or these are the categories under priority sector. लेकिन इन कैटेगरीज में भी फर्दर लिमिट है. ऐसा नहीं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन चाहिए दैट विल बी गिवन ओनली इन द प्रायोरिटी सेक्टर. नो, देयर इज अ सर्टेन लिमिट एंड इफ यू वांट टू बोरो लोन अबव दैट लिमिट दैट विल बी गिवन अंडर द कमर्शियल सेक्टर. सेम गोज फॉर I would say housing loan, same goes for education loan. Education loan के केस में अगर आप एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर में लेते हैं तो उसकी लिमिट है 20 लाख. अगर 20 लाख से ज्यादा एजुकेशन लोन चाहिए दैट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल सेक्टर. सिमिलरली इन केस ऑफ होम लोन देयर इज अ लिमिट और होम लोन के केस में लिमिट क्या है सर? प्रायोरिटी सेक्टर में जो लिमिट है दैट इज अप टू 35 लाख. अगर आप घर बना रहे हैं कहां सर? अगर आप घर बना रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी मेट्रो सिटी में और अगर आप घर बना रहे हैं किसी अर्बन एरिया में तो आपको जो लोन मिलेगा वो कितना होगा या अदर देन मेट्रो सिटी कितना होगा? 25 लाख रुपए. लेकिन यहां पर एक लिमिट है. वो लिमिट क्या? द लोन लिमिट इन बोथ दीज केसेस इज सेट 45 एंड 30 लाख रिस्पेक्टिवली. यानी कि यहां पर जो आपको लोन मिलेगा कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर आप ये कहें कि यू हैव अ लैंड बट यू वांट टू मेक अ कंस्ट्रक्शन, और अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के ऊपर का जो वैल्यू है दैट इज डिसाइडेड कि मेट्रो सिटी में अगर प्रॉपर्टी वैल्यू इज 45 लाख देन यू कैन बोरो अ लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द लोन वैल्यू इज 35. और अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन इज 30 लाख देन यू कैन बोरो अप टिल 25 लाख इन द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर. अगर इससे ज्यादा वैल्यू का लोन चाहिए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कौन सी कैटेगरी में मिलेगा सर? दैट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल सेक्टर. ठीक है जी. अब वापस चलो, दोबारा सुन लो. करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो ये कहता है कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो रियल एस्टेट को या हाउसिंग सेक्टर में जो लोन प्रोवाइड करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में जो लोन देंगे. रियल एस्टेट दो तरह से दिया है. एक रियल एस्टेट है, कमर्शियल रियल एस्टेट है. रियल एस्टेट अगर मैं जनरल बात करूं तो रियल एस्टेट जनरल का मतलब ये हुआ कि मान लो एक छोटा बिल्डर है, वो एक बिल्डिंग बनाना चाहता है. फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर वी कॉल इट एज रियल एस्टेट, जहां पे वो 4 फ्लोर्स बनाएगा और 4 फ्लोर्स को बेचेगा एंड एवरीवन विल बी परचेजिंग अ सेपरेट फ्लोर एंड दे विल बी लिविंग देयर. बट कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब देयर इज अ इंडिविजुअल, देयर इज अ प्लेयर हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट टू कंस्ट्रक्ट ह्यूज बिल्डिंग्स जहां पे ऑफिसर्स को सेटअप किया जाएगा. दैट इज बेसिकली अ कमर्शियल रियल एस्टेट. तो उन सब के लिए जो टोटल लेंडिंग होगी वो कितनी होगी? 10% ऑफ द टोटल असेट वैल्यू और 5% का एडिशनल आपको रिलैक्सेशन दिया गया अगर आप लोन देते हैं. किसको? हाउसिंग लोन या हाउसिंग एडवांसेस देते हैं. किस कैटेगरी में? प्रायोरिटी सेक्टर की कैटेगरी में. अब यहां पर क्या चेंजेस किए गए वो समझ लो जरा. उन चेंजेस पे आने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना होगा. वो क्या सर? यहां पे एग्रीगेट कैपिंग भी है और वो सीलिंग क्या कहती है? इंडिविजुअल हाउसिंग लोन कितना दिया जाएगा सर? 60 लाख पर इंडिविजुअल for tier 1 urban cooperative banks और 140 lakhs per individual borrower for all the other urban cooperative banks. तो पहले तो आपको मैंने बता दिया ओवरऑल लिमिट, फिर मैंने आपको बताया पर बोरोवर लिमिट 60 lakhs एंड 140 lakhs. यहां पे टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसे कहते हैं सर? टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका डिपॉजिट अप टू 100 करोड़ है. एज डिपॉजिट इंक्रीजेस, if the deposit is 100 to 1000 crore, tier 2, deposit is 1000 to 10,000 crores, tier 3, और अगर आपका deposit is greater than 10,000 crore then it will be termed as tier 4 urban cooperative bank. ठीक है. अब पॉइंट आता है कि सर चेंजेस क्या किए जाएंगे? सर चेंजेस ये है कि aggregate exposure of urban cooperative banks to the residential mortgage यानी कि हाउसिंग लोन जो दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ
ध्यान से देखो, रेजिडेंशियल मॉर्टगेज के लिए कंडीशन क्या है कि जो आप हाउसिंग लोन दे रहे हैं किसी इंडिविजुअल को, और वो भी other than those who are eligible and other than those who are classified as priority sector, this shall not increase 25% of its total loan and advances. 25% of total loan and advances. और जो हमारा एग्रीगेट एक्सपोजर है ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, एग्रीगेट एक्सपोजर है ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का टू रियल एस्टेट सेक्टर excluding the housing loan to the individual shall not exceed 5% of the total loan and advances. Shall not exceed 5% of the total loan and advances. तो यहां पे पहला जो पॉइंट आया वो क्या कि सर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हाउसिंग लोन देंगे इंडिविजुअल्स को, वो हाउसिंग लोन कितना हो सकता है सर? दैट कुड बी 25% ऑफ टोटल, 25% ऑफ टोटल loans and advances, 25% of total loan and advances. और अगर हम बात करें रियल एस्टेट के लिए, तो रियल एस्टेट के लिए एडिशनल है हाउसिंग लोन के अलावा कितना परसेंट? 5% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस, 5% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस. तो ये रीसेंट चेंज किया गया. दूसरा चेंज जो इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की नॉर्म्स में किया गया, वो दूसरा चेंज किस पर है सर? वैल्यू पे चेंज है. टीयर 1 के लिए 60 लाख, इट्स स्टिल 60 लाख. टीयर 2 बैंक्स के लिए 140 लाख, इट्स स्टिल 140 लाख. लेकिन पहले टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सभी के लिए 140 लाख था, लेकिन अब उस 140 लाख को टीयर 3 के लिए लिमिट कर दी कितनी? 2 करोड़. टीयर 4 के लिए लिमिट कितनी है? 3 करोड़. यानी टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब जो हाउसिंग लोन किसी इंडिविजुअल को देगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 3 करोड़ हो सकता है, जो कि पहले कितना था? 1.40 करोड़. जो कि पहले कितना था? 1.40 करोड़. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? समझ आ गया? ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? समझ आ गया? अगर क्लियर है, समझ आ गया, तो एक बार यस सर टाइप कर दो सो दैट वी कैन मूव अहेड. इसको अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो आई कैन कंक्लूड इट फॉर यू. मैं कंक्लूजन दे देता हूं. इसमें जो जो चीजें आपको याद रखनी होंगी ध्यान दीजिएगा. इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? पहली चीज सर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पहले कंडीशन ये थी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हाउसिंग लोन दे रहे हैं या जो रियल एस्टेट को लोन दे रहे हैं या फिर जो कमर्शियल रियल एस्टेट में लोन दे रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी होगी सर? उसकी लिमिट है अप टू 10% ऑफ बैंक का टोटल असेट, 10% ऑफ बैंक का टोटल एसेट. और इसमें 5% एडिशनल अलाउड था इन केस ऑफ होम लोन, जो कि किसे दिया जा रहा था? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को. उसके साथ साथ टीयर 1 और टीयर 2 टू टीयर 4 जो लेंडिंग लिमिट है सर, वो है अप टू 60 लाख रुपीस पर इंडिविजुअल. और यहां जो लिमिट थी अप टू 1.40 करोड़, ये लिमिट थी. अब इसको रिवाइज किया गया. अब रिवाइज करके क्या चेंजेस किए गए ध्यान देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में साथ साथ आंसर देना. तो यहां पर अगर मुझसे कोई कहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अब चेंजेस क्या हुए सर? चेंजेस ये हुए हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए होम लोन की कैटेगरी अलग कर दी रियल एस्टेट से. और उन्होंने कहा होम लोन के लिए जो इंडिविजुअल को दिया जा रहा है उसकी लिमिट हो गई 25% ऑफ टोटल, 25% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस. और रियल एस्टेट के लिए वैल्यू कितनी है? 5% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस. और याद रखिएगा यहां पर जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर वाला है दैट इज एडिशनल. प्रायोरिटी सेक्टर इज एडिशनल, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. दैट इज एडिशनल, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा. और दूसरा जो चेंज किया गया वो क्या? रियल एस्टेट के लिए इसकी लिमिट कर दी 5%. अब अगर हम बात करें टीयर 1 सर, टीयर 1 के लिए जो पर बोरोवर लिमिट है दैट इज स्टिल अप टू 60 लाख. टीयर 2 के लिए जो लिमिट है दैट इज अप टू 1.40 करोड़. लेकिन टीयर 3 और टीयर 4 के लिए इस लिमिट को रिवाइज कर दिया. सर अगर मैं टीयर 3 की बात करूं तो टीयर 3 के केस में ये लिमिट बढ़कर कितनी हो गई सर? दिस हैज बीन इंक्रीज टू अप टू 2 करोड़ पर बोरोवर. और टीयर 4 के लिए कितनी हो गई? अप टू 3 करोड़ पर बोरोवर. उम्मीद करता हूं चीजें याद रहेंगी. डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप आंसर कर पाओगे. इफ दैट इज द सिचुएशन जस्ट गिव मी यस सर सो दैट आई कैन मूव अहेड. आई एश्योर यू कि अगर ये सेशन ध्यान से देखा तो छप जाएंगी चीजें. घर जाकर एक बार रिवाइज करोगे, चीजें एग्जामिनेशन तक याद रहेंगी अगर इस तरह से चीजों को आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे. ठीक है जी, क्लियर हो गया? आगे बढ़े. अब अगले पॉइंट पे बढ़ता है.
अगला पॉइंट थोड़ा टफ है, अगला पॉइंट थोड़ा टफ है, इट रिक्वायर्स योर पेशेंस ताकि आप इस पॉइंट को समझ सके। इस पॉइंट को समझाने से पहले, इस पॉइंट को समझाने से पहले पहले मैं आपको यह समझा देता हूं स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसपे हम बात करने वाले हैं। ध्यान देना, एक एक चीज को समझते जाना, जहां आपको लगे कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे प्लीज पॉइंट आउट कीजिएगा, रोक लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन द सेम टू यू, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपने एआरसी के बारे में जरूर सुना होगा, दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बनाई गई है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सार्फेसी एक्ट 2003, जिसका काम क्या है सर, सार्फेसी एक्ट 2003 के तहत एजेंडा था टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, एंड दैट इज द रीजन ARCs वर इंट्रोड्यूस एंड ARCs वर रिस्पॉन्सिबल टू परचेज द बैंक्स NPA एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। याद होगा, आई होप यू नो, इफ यू नो ARC जस्ट गिव मी ARC लिख दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। अब ध्यान से एक स्टोरी सुनिएगा। देयर इज एन इंडिविजुअल नेम्ड X, ठीक है, X एक इंडिविजुअल है, उस X इंडिविजुअल ने बैंक से लोन लिया, उस बैंक का नाम है SBI, और SBI से एक लैंड गिरवी रख के लोन लिया गया, और लोन की वैल्यू थी लेट्स से 10 करोड़ रुपए, लोन की वैल्यू थी लेट्स से 10 करोड़ रुपए, या लेट्स से लोन की वैल्यू है 1 CR। ये आपका क्या हो गया सर, दिस इज योर कोलेट्रल, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर कोलेट्रल, ठीक है जी, डन है ना। अब क्या हुआ कि बैंक का ये जो लोन है, ये लोन डिक्लेयर हो गया NPA। अब जैसे ये लोन NPA डिक्लेयर हुआ तो एक स्टेप तो ये बनता है कि बैंक शुड इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, तो बैंक प्रोसेस ऑफ रिकवरी इनिशिएट करे, फिर अगर जरूरत पड़े तो DRT के पास जाए, DRT के पास जाने के बाद इस एसेट को BAANK पर रजिस्टर करे, और फिर जाकर ऑक्शन हो, ऑक्शन होने के बाद रिकवरी हो, ये सारी चीजें कर सकता है बैंक। लेकिन जब बैंक ने देखा कि ये सारी चीजें करने में बैंक का काफी टाइम वेस्ट होगा, और अगर आज बैंक ये सारी चीजें करता भी है तो बैंक जो एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न, बैंक इज एक्सपेक्टिंग a return of let's say 50 लाख रुपीस, बैंक इज एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 50 लाख रुपीस। इतनी देर में बैंक के पास एक कंपनी आई, उस कंपनी का नाम था ARC, और वो SBI के पास आई और उसने SBI से कहा कि सर हम ARC हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, हमारा बिजनेस ही ये है कि हम आपसे क्या करेंगे, आपके NPA को परचेज करेंगे, हम आपके NPA को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, और उस NPA को परचेज करने के बदले में विल पे यू द अमाउंट। तो आज SBI ने कहा ठीक है सर, ये NPA है, इसकी ये कोलेट्रल है, ये लैंड बेच लो, पैसा रिकवर हो जाएगा, 50 लाख रुपए रिकवर हो रहे हैं, मैं तो कर पा रहा हूं, आप देख लो कितना पैसा दोगे। ARC ने कहा सर आप टेंशन मत लो, वी आर रेडी टू पे यू 55 लाख, वी आर रेडी टू पे यू 55 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि ARC 55 लाख रुपए कहां से देगा, तो ARC के पास प्लान्स है, ARC को पता है कि ये जो लैंड है ना, कोलेट्रल है, ये जो लैंड है, ये जो कोलेट्रल है, इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, और नियर फ्यूचर का मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर सर ये जो नियर फ्यूचर है, इस नियर फ्यूचर में इस लैंड की वैल्यू लगभग 1.5 से 2 करोड़ होगी, या ज्यादा हो गया ना, इस लैंड की वैल्यू लगभग 1 से 1.5 करोड़ होगी, और बड़े आराम से ना चाहते हुए भी जो रिकवरी है वो लगभग ऑन एन एवरेज लेट्स अज्यूम कि 90 लाख की तो हो ही जाएगी। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेशंस है, ARC क्या एक्सपेक्ट कर रहा है सर, ARC इज एक्सपेक्टिंग कि ये जो लैंड है ये मरे दर्जे पर कितने का होगा, 90 लाख रुपए का होगा। ये तो ब्रॉड एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन बेयर मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में ये जो बैंक है, ये जो लैंड है, ये लैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 लाख रुपए। बैंक ने कहा जो मर्जी करो, मुझे 55 लाख रुपए दो, अपना एंजॉय करो, ठीक। ये सारी सिचुएशन आपके सामने बन गई। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इन दिस करंट सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग सर, इन दिस करंट सिचुएशन बैंक केम इनटू द पिक्चर एंड ARC केम इनटू द पिक्चर, एंड ARC सेड दैट सर वी आर रेडी टू पे यू 55 lakhs, बट दीज 55 लाख रुपीस को हमें अरेंज करना होगा, वी नीड सम टाइम, हमें अरेंज करना होगा, वी नीड सम टाइम। तब ARC ने क्या किया, ARC ने
इस कोलेट्रल के बदले में, ये जो लैंड है, ये जो कोलेट्रल है, इस कोलेट्रल के बदले में क्या इशू किया सर? इशू किए सिक्योरिटी रिसीट्स। इशू किए क्या? सिक्योरिटी रिसीट्स। ये कहा एआरसी ने बड़े बड़े बैंक्स को, बड़े बड़े क्वालिफाइड बायर्स को, ओनली क्वालिफाइड बायर्स आर अलाउड, तो क्वालिफाइड बायर्स को इशू की गई ये सिक्योरिटी रिसीट्स। और उन्हें कहा गया कि सर ये 90 लाख रुपए का लैंड है जो कि अगले 6 महीने 8 महीने में 90 लाख रुपए का होगा, आज 55 लाख रुपए का है, मैं इसके बदले में आई एम रेडी टू इशू 55 security receipts and one security receipt is going to be equal to 1 lakh rupees, or purchase this security receipt in the near future when I'll sell this land, I'll pay you 9 lakh, I'll pay you 90 lakh against that 55 lakh rupees। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे बैंक्स ने, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे बैंक्स ने क्या किया? इन सिक्योरिटी रिसीट्स को परचेज करना शुरू कर दिया। बात समझ आई? बात समझ आई। और इस सिक्योरिटी रिसीट से जो कैश रेज हुआ वो कैश पे कर दिया एसबीआई को। एसबीआई खुश, एआरसी वेट कर रहा है, और 90 लाख रुपए का जब लैंड होगा, लैंड बेच दिया जाएगा, और उस सिक्योरिटी रिसीट से जिसने जितना जितना पैसा दिया था उतना हिस्सा 90 लाख के अकॉर्डिंग उनको दे दिया जाएगा, और उनको भी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब वो एनबीएफसीज भी हो सकती हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या कि सर ये जो आपने एक्सपेक्ट किया है, ये एक्सपेक्टेशंस है, और ये एक्सपेक्टेशंस रिस्की एक्सपेक्टेशंस है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, तो यहां पे रिस्क इन्वॉल्व है। इसीलिए आरबीआई कहता है कि सिक्योरिटी रिसीट्स कैन बी परचेज अगेंस्ट द कोलेट्रल ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली बाय द क्वालिफाइड बायर्स। ठीक है, पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear everyone? So I'll just repeat it again. What I'm trying to say is, sir, whenever a bank loan is declared as NPA, in that particular scenario, if bank do not want to waste its resources in recovering the loan, bank can sell its NPA to ARC, and ARC is ready to purchase the NPAs at a set value. But ARC is a company. ARC will be getting the funds, ARC will be receiving the funds at when they will be selling that collateral. Right now they don't possess the cash, right now they don't possess the funds. So what they do is, once they purchase the NPA, against this NPA, or I would say the collateral against this NPA, collateral against this NPA is expected to grow. It is expected to grow, and we are expecting that its price will increase from current 55 lakh market price to 90 lakh rupees. So it's better. It's better. Let's raise funds. Let's borrow funds. Let's ask investors to invest in this land today at 55 lakhs and assure them, if you are investing today at a point of 55 lakhs, we will be giving you back 90 lakhs in the near future, because we are expecting that this land will be sold out at 90 lakhs in near future. So you just have to wait for an year or so. For that particular time, you just invest amount, you just invest, I would say, the adequate amount you want to, and against that adequate amount you have invested, you will be getting the return, which is going to be 90 lakhs. And this instrument, which is issued against the collateral of the NPA, against which the funds have been raised from the qualified buyers, is known as security receipts. And against the security receipts, funds will be arranged by ARC, and ARC will be paying that fund to SBI. And all other banks who all have purchased these security receipts, they have the ownership in that collateral land. And when ARC will sell that collateral land, when ARC will receive 90 lakhs, that 90 lakhs will be distributed among the investors of security receipts. Is it clear now? Is it clear now? I have explained it in both Hindi as well as in English. But these security receipts, so they are risky instruments, and if they are risky instruments, related to this, we have a news, we have an update with Urban Cooperative Bank. So please pay attention what I'm trying to say. Now read out the news over here. The news says, according to the Master Direction on Transfer of Loan Exposure dated back in September 2021, urban cooperative banks need to provide for the valuation differential on the security receipts held against the assets transferred by them to ARCs,
held against the assets transferred by them against the asset transferred by them to the ARCs. In this regard, 5-year glide path till 2025-26 was provided. So what does this basically means? So now the same example which I have taken, now urban cooperative banks, they have transferred their NPAs to the ARCs, and against those transferred of funds done to the transfer of a loan done to the ARC, and ARC has issued these security receipts to the banks, urban cooperative bank has purchased those security receipts as well. Urban cooperative bank also wants to earn profit, so they have also purchased these security receipts. Now the urban cooperative banks, they have purchased these security receipts, but there is a criteria related to the security receipt. The first criteria is, sir, these security receipts, they are risky, as I mentioned earlier. They are risky assets, as I mentioned earlier. Therefore, as per RBI norms, certain provisioning is need to be done. I hope you all understand what is provisioning. Provisioning means the reserves we keep. In order to counter the loss in the near future. So against these security receipts, certain provisionings are maintained, and on the basis of this provisioning, we calculate net book value. So what is the net book value of these receipts? So net book value means purchase price. You have purchased the security receipts at whatever price. So I say security receipt purchase price, and from the purchase price you subtract what value? Sir, you subtract the provisioning value, and after you subtract the provisioning value, you get the net book value, and this net book value is the actual risk for the bank against these security receipts, because the bank has invested the funds in a risky instrument, that is security receipts. This is one. Second is, sir, current value of security receipts. So the current value of security receipts basically means the current value of security receipt depending upon the market price of collateral. So you were expecting, as an ARC, that the value of this collateral is going to increase. The value of this collateral, spelling is wrong, I hope you may have understood the word collateral, there was no space. So what has been happened? So current value is the value which is calculated on the basis of the market price of the land against which security receipts are issued, and net book value is the security receipts purchase price minus provisioning value. So what is this valuation differential? So the valuation differential is net book value minus current value of security receipts. So this is known as differential value. This is known as differential valuation. Just keep waiting for 2 more minutes. I'll conclude it, then it will be clear to you. Now let's read it again. As per the master direction in September 2021, RBI has asked the urban cooperative banks that they should provide valuation differential on the security receipts held against the asset transferred by them to the ARC. In this regard, 5-year time period was given. That means by 2025-26, urban cooperative banks, they need to maintain the reserves against these differential values as well in order to avoid the loss. But now in the recent update, RBI said that we are reviewing it and we are extending the timeline, and this timeline has been extended by 2 years. That means you need to achieve this by financial year 2027-28. Let's conclude this. It will be clear to you. Don't worry. So we have a cooperative bank. And in a cooperative bank, this cooperative bank has purchased security receipts in the past. This cooperative bank has purchased a security receipt in the past, and the value of this security receipt is let's say 550 crores. This is the purchase price. And why the security receipt has been purchased by
cooperative bank, because cooperative bank wants to earn profit. कोऑपरेटिव बैंक को लग रहा है कि फ्यूचर में इस सिक्योरिटी रिसीट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कोलेटरल की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्यों ना आई शुड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी रिसीट टू अर्न प्रॉफिट. बट as we know that security receipts are they have good exposure, they have good value of exposure, they have good risk value attached to them. So against this, certain provisioning is maintained, and the provisioning which is maintained is equals to 500 crores. It is equals to 500 crores. From this, what we will calculate? So we will calculate the 550 crores. So provisioning is 50 crores, and if I calculate provisioning 50 crores, so the net book value of what? So the net book value of security receipt is equals to 500 crores. I hope till this point there is no doubt. This is on day one. This is on day one. Now, after some time, we know that the security receipts, they are going to mature after 2 years. They are going to mature after 2 years. Okay. But after 6 months, security receipts are not matured. ARC is not selling the land, but you have to review the price of the collateral, you have to review the price of security receipt. So when you reviewed the price of security receipt, you came to know that the current value of security receipt is even below the purchase price, which could obviously happen because of the risk attached to it. And if it is 400 crores, and the security receipts are going to mature after 2 years, after 6 months, till the next review is done, till the time next review is done, Urban Cooperative Bank need to have a reserve, need provisioning of what value? So the provisioning of value is required, that is 500 minus 400 crores, that is net book value minus current value. As per the example, this is 500 crores, this is 400 crores. So bank has to maintain a reserve of 100 crores or a provisioning of 100 crores against these security receipts. And this 100 crore is known as what? So it is known as differential valuation. Why differential valuation? Because this valuation is calculated after differentiating or after subtracting current value from the net book value. Basically, if banks were engaged in risky stuff like avoiding provisioning by converting NPAs to SRs, have been made to provision. Not the case, that is not exactly the same case, Ashima. What I'm trying to say is, if a bank has sold out their ARCs, so they have sold out their NPAs, and against the NPAs, they have purchased security receipts from the ARCs only, and they are expecting that these security receipts will pay higher returns in the near future, and against those security receipt investment, bank has already maintained the provisioning, and if I exclude that provisioning, it will give me the net book value. But security receipt is a risk related instrument, it's a market related instrument. You were expecting that its prices will increase after 2 years, but after 6 months the prices have not increased, and after 6 months when Urban Cooperative Bank is reviewing its security receipt price, at that particular moment they need to find out the differential value, and that differential value is need to be reserved. If let's suppose bank has already reserved 50 crores, then bank is not allowed to use this 50 crore, but to maintain 100% value, that is 100 crore as per the current example, now the deadline has been shifted from 25-26 to 27-28. So 2 more years have been given to achieve this deadline or to achieve this target. Is it clear now? I hope you have a good understanding
now about the term that is security receipt, how ARCs, they use security receipts to purchase bank NPAs, and why banks, why financial institutes, why NBFCs, they purchase security receipts. They purchase security receipts with a motive of earning profit, because it is expected that security receipts are issued against the land or the collateral, and the land or the collateral against which these security receipts are issued, they are going to be valuated, or their value is going to be increased in the near future, and on that particular expectation, these security receipts, they become a great investment opportunity for the qualified buyers. Is it clear now? If it is clear, just give me yes sir, so that we can move ahead. If it is clear, just give me yes sir, so that we can move ahead. I'm pretty sure that if you have heard to this discussion pretty carefully, you must have understood the things in much detail. And if it is clear, just give me yes sir. Chalo, badhiya. So I have a question related to the same, and the question is related to the same, that what is the overall exposure limit of urban cooperative banks to housing, real estate and commercial real estate advances as stated in the new prudential norms for the urban cooperative banks. So according to the new prudential norms of the urban cooperative banks, what were the limits? What were the exposure limits? What were the exposure limits to housing, real estate and commercial estate? Sir, the overall limits were 10%. Overall limits were 10% plus 5% additional in case of priority sector lending. 5% additional in case of priority sector lending. But now the revision has been done. In the revision, housing loan will be having a limit of 25%. Real estate will be having a limit of 5% of total loan and advances plus priority sector lending. Plus priority sector lending. So I hope the point is clear. Question is clear. Answer is clear. Let's move on to the next question. The next question says, according to the RBI report, by how much percent did the All India Housing Price Index increased in the third quarter of 2024-25? So recently RBI has presented the data on housing price, or I would say All India House Price Index. So let's quickly check this news and then we'll find out the answer for the same. So Reserve Bank of India has released its quarterly, it's released on quarterly basis, has released its quarterly house price index, and the base for this house price index is 2010-11, and what is the base value? That is 100. Now this house price index is released for the third quarter 2024-25 based on the transaction level data received from the registration authorities in 10 major cities. So it is based on the transaction level data which has been received from the registration authorities. That means your tehsils, where the registration of the land is done, where the ownership of the land is transferred under the revenue department. From there, information or the data is collected. So a time series data on all India and city-wise house price index are available at the bank's database. So you can go through this portal if you want to check out, and RBI has given this kind of flow which you need to remember, which you need to understand. So if I talk about the All India, House Price Index, as you can see, the All India House Price Index is recorded. It is recorded at what values? And it is recorded around 260 points in comparison to 260 points in comparison to what, sir? Achha, that is the percentage. If I include over here on this basis, if you check out the value, for the current financial year, if you check out the value for the current quarter, it is around 310,315. So it is around this. And if I talk about the percentage, so the percentage value is this, which is around 3.1. So on the basis of this data, on the basis of this data collection which has been done by RBI, these are the things which you need to remember. All India House Price Index increased by 3.1%. It has increased by 3.1% on year-on-year basis in quarter 3, that is 2024-25,
as compared to the growth rate of 4.3% in the previous quarter, and in the previous year growth rate was 3.8%. Annual house price index growth varied across the cities. It has ranged as high as 8.1% in Kolkata. So this could be a question. Name the city which has recorded highest house price index growth, that is Kolkata, and the lowest house price index growth out of the 10 cities is with Kanpur, that is 0.1%. And on the other side, if I check out house price index increased by 0.4%, it includes Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad, Lucknow, and many other cities. Is it clear, everyone? So what all data you need to remember? So you need to remember this data, that for current quarter, increased value is 3.1% in comparison to the last quarter, which was 4.3%, in comparison to the previous year growth, that is 3.8%. Highest increase has been witnessed in Kolkata, lowest increase have been witnessed in Kanpur, but still in both the upper and lower limit, we have positive things. That means in both the cases, prices has increased, prices has not decreased, because both are positive. Last point which you need to remember is how many cities? So it includes 10 cities, and on the basis of this, what would be the answer? According to the RBI report, by how much percentage did the All India House Price Index increased in the third quarter? So it has increased by 3.1%. Last quarter, it has increased by 4.8%, and last year growth rate was 3.8%. Is it clear now? Is it clear now? I hope each and every point is clear. I hope each and every point is clear, and I will be sharing the PDF of this session on my Telegram channel itself. If you have any doubt, you can ask, please. I'm pretty sure the way we have discussed today's session, the point is clear to you. The way we have understood three important facts related to urban cooperative banks. One is small value loan. Second point is loan value or limit related to housing loan as well as real estate and commercial real estate. And lastly, the most important one, security receipts. I hope all these areas which we have discussed are crystal clear to you, and I'm pretty sure you are going to enjoy, or you are going to enjoy the discussion in the near future as well. So that will be all from my side, guys. We'll catch you in the next session. But before I conclude, you need to give me an answer in the comment section. NARCL was set up in India to counter the bad loans. What was the targeted NPA resolution expected by NARCL? So when NARCL was set up, what was the targeted NPA value which country government was looking forward that the NARCL is going to resolve those NPAs with the country? It's in lakh crores. Just review it, check it out, and give me the answer in the comment section after watching this session. So let's begin with the first news of the evening, and I assure you this is going to be really very important. So the news is related to SEBI, but via SEBI it is going to reach to RBI, which is really very helpful for us. So recently SEBI has allowed NBFCs and housing finance companies to invest in security receipts issued by ARCs. I hope you all are very well aware that when we use this word SEBI, that is Security and Exchange Board of India. So Security and Exchange Board of India is the authority which is responsible to manage, or which is responsible to regulate the capital market, and security receipt is an instrument which is valid for long term. So keeping in mind the validity of the security receipts for long term, SEBI has been involved, and SEBI has come up with this announcement where SEBI has said that now non-banking finance companies, all the non-banking finance companies as well as housing finance companies, they are allowed to invest in security receipts. I hope you all know, you all remember what are security receipts. So security receipt का मतलब है जब भी कभी ARC बैंक के NPAs को परचेज करता है और उस परचेज के बदले में at the time of making the payment, if ARC is capable, then ARC can pay in cash.
If not, then even ARC can issue the security receipts, और ये जो security receipts ARC द्वारा issue की जाती हैं, they are going to be redeemed in the near future. They are going to be redeemed in the near future. This is the entire context related to security receipt. इसका जो डिटेल है वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. तो रिसेंटली सेबी ने परमिट किया कि जितनी भी ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जिसमें हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को इंक्लूड कर लिया, दैट दे कैन इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी रिसीट्स व्हिच आर इशूड बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज, सर क्या पहले एनबीएफसीज वर नॉट अलाउड to invest in the ARCs, in the security receipts? Then my answer would be no, sir. NBFCs were allowed to invest in ARCs, but there was a condition. What was the condition? So the condition was previously only non-deposit taking NBFCs, with asset size greater than 50 crores. So all the NBFCs with asset size greater than 50 crores were permitted to make investment in the security receipts. But now the condition has been revamped, and now the new condition says whether NBFC is a deposit taking or non-deposit taking NBFC, and without any criteria related to the asset size, all the NBFCs for that matter, even the housing finance companies, they are allowed to invest in the security receipts. Now the question is, what is the benefit of this announcement? How this announcement is going to impact the overall operation of the economy, of the financial sector? Then my answer to this particular question is, so we know that very well. RBI, government and even the banks, they are trying their level best to fight against NPA, because in the latest articles we have witnessed that currently India is witnessing the lowest gross NPAs as well as net NPA rates of the country, but it is expected to increase in the upcoming financial years. So in order to fight, in order to get, I would say it is a proactive step which has been taken by SEBI as well as RBI, where these two organizations, they are trying to increase the base of investors who are going to invest in the security receipts. If we have liquidity, if we have huge investment in the security receipts, it will be easier for the ARCs to purchase the bank NPAs, and it will be easier for the banks to clean up their balance sheet. It will be easier for the banks to cope up with the problem, with the issue of NPA. So in this particular regard, this initiative has been taken, and in this particular initiative, SEBI is basically trying to promote investment in the bad loan space and also broaden the scope of participants, thereby boosting liquidity in the distressed asset market, or distressed market where the distressed assets are basically, or the investment in the distressed asset is basically done. Is it clear till this point, guys? Is it clear? Is it clear till this point? If it is clear, just give me yes, sir. If it is clear, just give me yes, sir. When we talk about NBFCs are further divided into two categories. We divide the NBFCs in two categories on the basis of their operation. One is non-deposit taking NBFCs, which do not accept deposits from the public. Rather, they only raise the funds in the form of investment, and that investment is used to perform the NBFC operations. On the other side, we have non-deposit taking NBFCs. We have deposit taking NBFCs which accept deposits from the public, but they cannot accept demand deposit, and even they can accept term deposit up to a limit of 5 years in terms of time period. So these two categories basically identify the types of NBFCs, but beyond this, NBFCs are further categorized into base layer. If you remember, we have discussed this: base layer, mid layer, upper layer and top layer. So these are again the categorization which is done for NBFCs, where we say all the deposit taking NBFCs, they fall under mid layer. But if I talk about the non-deposit taking NBFCs with asset size less than 100 crore, they are included in the base layer. So we have base layer, then we have mid, then we have upper, and on the top we have the top list or the top layer for NBFC. So these are the different criteria on the basis of which NBFCs are basically categorized. I hope, Gaurav, your question has been answered. Okay, now moving on to the next point. What does the next point say? So next point is again really very important related to this particular news. सेबी ने क्या कहा कि ठीक है सर, सेबी ने कहा कि ठीक है,
आई अलाउ कि सारी की सारी एनबीएफसी जो हैं या फिर सारे के सारे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन दी सिक्योरिटी रिसीट्स। लेकिन इस इन सिक्योरिटी रिसीट्स में इन्वेस्ट करने के बाद, इन सिक्योरिटी रिसीट्स में इन्वेस्ट करने के बाद, these NBFCs, these HFCs, they don't have the right to claim the secured asset. They don't have the right to claim the secured asset. अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये जो कहानी है, ये कहानी कहना क्या चाहती है, इसमें पॉइंट है क्या? बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर एक बैंक है B1, ठीक है, उस बैंक B1 ने लोन दिया and this loan was given to an individual I1. Against this loan, I1 has given security S1 to the bank, which we can say it's a collateral against the loan. ठीक है जी। अब हुआ क्या कि सर नियर फ्यूचर बैंक का लोन क्या हो गया? एनपीए हो गया, एंड द मोमेंट बैंक्स लोन इज डिक्लेयर्ड एज एनपीए, तो बैंक ने इस लोन को, इस एनपीए को ट्रांसफर कर दिया किसे? एआरसी को, which means bank has transferred this security title, or I would say this collateral title, to ARC, and now ARC is the owner of the security which has been I would say given in the form of collateral by the borrower. अब इस सिनेरियो में टाइम आया कि ARC should pay back to the bank, और जब पेमेंट करने की बारी आई तो ARC ने कहा कि सर what I can do is I can pay you some amount in cash and rest of the amount I can pay you in the form of security receipts. Rest of the amount I can pay you in the form of security receipts. Now who all can invest in these security receipts? Sir, the qualified buyers. Remember that. Qualified buyers, as stated by RBI, they all are eligible to invest in these security receipts, and in the list of qualified buyers, we have financial institutes, we have banks, we have NBFCs, we have insurance companies, and many more. These are the qualified buyers. Now let's suppose the loan has been given. ये जो लोन हमने कहा कि बैंक ने दिया हो, अगर मैं कहूं यहां पर कि ये लोन बैंक ने ना देकर एक NBFC ने दिया, मैं कहूं कि ये लोन बैंक ने ना देकर NBFC ने दिया, और NBFC ने जब ये लोन दिया और लोन देने के बाद लोन एनपीए डिक्लेयर हुआ और उसी लोन को ट्रांसफर किया गया एआरसी पे, एआरसी ने उस लोन को खरीदा और बदले में एआरसी ने आपको क्या दिया? सर एआरसी ने बदले में आपको दिया सिक्योरिटी रिसीट। अब 5 साल के बाद, प्लीज पे अटेंशन, आफ्टर 5 years देयर इज अ पोजीशन, आफ्टर 5 years 5 साल के बाद क्या पोजीशन है कि सर जो एआरसी है, एआरसी इज लायबल, एआरसी के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो आपके सिक्योरिटी रिसीट को क्या करे? डिस्काउंट करे, यार सिक्योरिटी रिसीट को क्या करे? रिडीम करे। अब जब रिडेम्पशन की बारी आई, 5 साल वाज द डेडलाइन, एट द टाइम ऑफ 5 years सिक्योरिटी 1 को मार्केट में सेल किया गया थ्रू ऑक्शन। तो ऑक्शन के जरिए इस सिक्योरिटी 1 को मार्केट में सेल किया गया, और मार्केट में सेल करने के बाद जो पैसा आया, द फंड्स which ARC has received, उसी फंड से ARC ने क्या कर दिया? सिक्योरिटी रिसीट्स को रिडीम कर दिया, और आई वुड से द फंड्स आर पेड टू द NBFCs अगेंस्ट द सिक्योरिटी रिसीट। अब यहां पर अगर NBFC कहे कि सर ये जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी 1, उसके बदले में मेरे पास है क्या? सिक्योरिटी रिसीट्स, और मेरे पास NBFC के पास लेट्स सपोज 50% सिक्योरिटी रिसीट्स है, let's suppose 50% security receipts है, then it is not possible that NBFC should say, NBFC यहां पिक्चर में आए और NBFC कहे कि सर ARC को कि आप ऑक्शन कीजिए, you do the auction, I already have 50% of the security receipts, and these security receipts are issued against what? So these security receipts are issued against this security, they are issued against this security। इसका मतलब इनडायरेक्टली 50% का मेरे पास इस सिक्योरिटी का ओनरशिप है। आप इसे बेचें, मार्केट में जो प्राइस कोट होगा, आई विल पे रेस्ट ऑफ द 50% एंड आई विल बिकम द ओनर ऑफ दिस सिक्योरिटी 1। बट सेबी सेज दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या? मतलब यह है, टू प्रिवेंट एनी मिसयूज ऑफ द न्यू रेगुलेशन, सेबी हैज इंप्लीमेंटेड अ सेफगार्ड इंश्योरिंग दैट डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स कैन नॉट reclaim control over the secured asset through the purchase of SRs। तो ना तो
NBFC, ना ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड नॉट इवन द डिफॉल्टर्स। मान लो ये जो इंडिविजुअल वन है जिसने लोन लिया था एनबीएफसी से, मान लो ये इंडिविजुअल वन नहीं, ये एक बैंक है। मान लो ये एक बैंक है, अब ये बैंक ने लोन लिया एनबीएफसी से और वो लोन डिक्लेयर हो गया एनपीए, और अगर बैंक इस सिक्योरिटी रिसीट को खरीद कर अपनी सिक्योरिटी के ऊपर दोबारा से अपनी ओनरशिप को क्लेम करना चाहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वंस द सिक्योरिटी रिसीट्स आर इशूड, payment against these security receipt and the sale of collateral will not be done to any of the parties related to the security receipt format. समझ आ गया पॉइंट? समझ आ गया? तो ये एक नया अपडेट है which has been done. Allowed NBFCs to which is regulated by RBI. Is this guideline allowed to? See, NBFCs को allowed था to invest in security receipts, but security receipts are the financial instruments. उन्हें अगर आप इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट करके और बिफोर मेच्योरिटी अगर आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करना चाहते हैं, दैट पर से ऑफ ट्रेड इट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेबी। तो सेबी ने कहा कि अब जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ वो एनबीएफसी नहीं होगा जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जिसके पास असेट साइज 50 करोड़ से ज्यादा है। एंड सेबी ने कहा कि मेरी तरफ से सारे के सारे एनबीएफसीज को, सारे के सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अलाउड है। आरबीआई तो पहले अलाउ कर चुका है, अब सेबी ने भी अलाउ कर दिया। नाउ दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दीज सिक्योरिटी रिसीट्स in order to earn profit at the time of sale of collateral, and this will increase the per se of ARCs to raise the funds against these security receipts. तो दोनों के लिए win-win situation create हो गई। Banks can directly participate in such auction. Yes, bank can directly participate in such auction if बैंक ने ना तो लोन दिया, बैंक ने ना ही लोन लिया। अगर बैंक का यहां कुछ लेना देना नहीं है, then bank can become the participant in terms of this particular auction. But ये जो particular auction है, ये जो particular auction की जाती है उसके और बहुत सारे norms हैं, and these norms are different for different types of collateral. It cannot be same for all the collaterals. It is different for different types of collateral. यानी कि कंपनी को लोन दिया तो उस केस में ऑक्शन या फिर आप ये कहो कि लोन रिकवरी कैसे होगा, दैट विल हैव अ डिफरेंट प्रोसेस। अगर आपने लोन दिया लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन को विच इज अ नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट पर्टिकुलर केस रिकवरी फॉर्मेट विल बी डिफरेंट। एक जगह सिक्योरिटाइजेशन हो सकता है, एक जगह सिक्योरिटाइजेशन नहीं हो सकता। कहीं जगह यू आर अलाउड टू टेक द मैनेजमेंट, यू आर अलाउड टू टेक द कंट्रोल ऑफ द organization, other case में वो possible नहीं है। So those norms will be different for different types of collateral for which this process of recovery is being initiated. So I hope doers as well as Gaurav, मैंने आप दोनों के questions के answer दे दिए। If this question, जो भी आपने questions पूछे, अगर answers clear है, just give me thumbs up in the comment section so that I can move on to the next point. अगली news या अगला point काफी important है और वो point है जहां से इस बार एग्जामिनर फॉर श्योर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ARCs they have been in news always, but in the recent times, in last 6-8 months, ARCs में काफी सारे updates, काफी सारे I would say change in the rules and regulations देखे गए हैं, जिसकी वजह से you can expect that there is a high possibility that a question can be asked on ARC. तो ARC के ऊपर दो तरह के questions बनते हैं। पहला तो आपके पास जो क्वेश्चन है फेज 2 में बन सकता है, दैट इज अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो एआरसी से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके बेसिस पर 3 या 4 क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है दैट कुड बी अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑन एआरसी। तो कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव कम अप विद अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन एआरसी, और मैंने एक तरह से आप कहो एआरसी का कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया है कि आप जब उस कंटेंट को डाउनलोड करेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, यू कैन यूज दैट एग्जैक्ट कंटेंट to write a descriptive answer on ARC. Just assume a question, write a short note on ARC, and if this question is asked, the answer is on the screen. If a question is asked in the recent time, in 2024-25, n number of regulatory changes, norms are reviewed for ARCs, write a short note on the regulatory norms reviewed for ARCs, then again the answer is on the screen. So please pay attention, you're going to enjoy this. First of all, I'll start my statement with the discussion, what is ARC? So ARC is basically एक ऐसा financial institute है
जो बैंक्स के, या मैं ये कहूं कि आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो बैंक है, एनबीएफसीज हैं, उनके द्वारा जो लोन दिया गया है, अगर वो लोन एनपीए हो जाए, देन एआरसीज दे आर अलाउड, दे हैव द पावर, they are allowed, they have the power that they can purchase those NPAs from the bank. It's like the bank has given a loan. Now the bank loan has declared, or it is now in the category of NPA. So bank can directly sell this NPA to ARC, and once this NPA is sold to ARC, then the entire process of recovery will be performed by ARC only. Why not bank? क्योंकि उसके कुछ reasons हैं. If bank itself involved in the process of recovery, what all losses bank is going to witness? The first losses, so this is not the bank's core function. बैंक का core function NPA की recovery करना नहीं है. बैंक का core function क्या है? अगर मैं कहूँ traditional core function है deposit accept करना और lending करना. If bank is involved in the recovery of loan, that is not the core operation for which bank has been set up. This, I would say, it will impact the efficiency of the bank. It will impact the efficiency of the bank, and even it will impact the focus of the bank on its core operations. So rather than focusing कि भैया आप कैसे NPAs को रिकवर करें, it's better कि आप फोकस करें अपने core operation पे और NPA का काम किसी और को सौंप दें. पहले 3 रीजन ये हो सकते हैं. अगला रीजन ये है, अगर बैंक इस NPA की रिकवरी करता भी है, it will take years to complete the recovery. For example, the recovery of NPA is done in 7 years. And if bank is selling the NPA today to ARC, let's say at 5 crores, and after 7 years, bank is expecting a return of 6.5 crores also, तो मैं कहूंगा उस केस में भी बैंक को लॉस है. क्यों लॉस है? कि भैया 6.5 करोड़ 7 साल बाद मिलेंगे. Rather than wasting your 7 years, it's better take 5 crores today from ARC and use those 5 crores in your core operation. That means उस पैसे को लोन पे दो. लोन पे दोगे तो रोज आप उस पे क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे. You will be earning the return, and this return will not only give you much bigger amount in comparison to the long term recovery, it will also help you to expand your core operation, that is lending. Last point मैं कहूंगा कि अगर बैंक NPA रिकवरी में इन्वॉल्व हुआ तो इट विल इंपैक्ट द बैंक्स रेपुटेशन एज वेल. बैंक की रेपुटेशन कैसे इंपैक्ट होगी? जब हम कभी थोड़े पुराने दिनों की बात करें, जब आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि बैंक के एजेंट रिकवरी के लिए आते थे, तो जब बैंक के एजेंट्स दे आर कमिंग फॉर रिकवरी, इट बेसिकली इंपैक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द कस्टमर रिलेटेड टू अ गिवन बैंक. तो उन सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बिना अब रिकवरी हो सकती है, बिकॉज बैंक इज सेइंग दैट भैया मैंने अपनी एनपीए बेच दी है, नाउ एआरसी इज रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. सो दिस इज द बेनिफिट फॉर द बैंक, दैट bank should not involve itself in the process of recovery, rather sell it to ARC and let the ARC do this work, because it is the core operation of ARC कि भैया बैंक के एनपीए को खरीदो और खरीद कर उसे रिकवर करने का काम करो. ARCs they help the banks to clean up their balance sheets. तो बैंक जो है वो अपनी बैलेंस शीट्स को क्लियर करते हैं. बैलेंस शीट को क्लीन करने का मतलब क्या? देखो, बैंक ने लोन दिया, द अमाउंट विच हैज बीन गिवन बाय द बैंक एज लोन, that will reflect in the bank's asset, or I would say it will reflect in the bank's asset side. फिर क्या हुआ? समय के साथ यही जो बैंक की असेट थी, स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड असेट थी, स्टैंडर्ड असेट के बाद ये बदल गई एनपीए में, और एनपीए में सब कैटेगराइजेशन हुआ, तो सब स्टैंडर्ड एसेट, फिर उसके बाद डाउटफुल एसेट, फिर फाइनली लॉस एसेट. और जब बैंक का लोन लॉस एसेट होगा, दैट इज अल्टीमेट लॉस टू द बैंक. फिर एंड ऑफ द डे बैंक क्या करेगा? सर, इस लॉस एसेट को अपनी असेट साइड से हटाएगा, और असेट साइड से हटाने के लिए बैंक विल बी यूजिंग इट्स प्रॉफिट्स, बैंक विल बी यूजिंग इट्स रिजर्व्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज राइटिंग ऑफ असेट. दिस प्रोसेस इज नोन एज राइटिंग ऑफ असेट. सो इट्स बेटर टू सेल योर एनपीए टुडे. जैसे ही आपने एनपीए बेची, तो जो आपकी असेट स्ट्रेस्ड असेट थी वो आपने बेच दी, आपने अपने बैलेंस शीट के स्ट्रेस को खत्म कर लिया, एंड देयर इज नो नीड टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द एसेट. तो ये एक अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो सकता है फॉर द बैंक्स. अगला पॉइंट आता है कि सर ये जो एआरसीज हैं, दे आर रेगुलेटेड, दे आर सुपरवाइज्ड, दे आर रजिस्टर्ड
under RBI, but they are operating under the security and they are operating under the SARFAESI Act, which stands for Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002. ARCs, they are required to resolve the, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ARCs ने जो NPA खरीदी, in general ARCs they try to complete the process of, or I would say ARC resolve the assets within maximum of 8 years of acquisition of financial asset and redeem the security receipts representing the assets. तो इसमें क्या कि सर जिस दिन आपने बैंक से एनपीए को एक्वायर कर लिया, उसके 8 साल के अंदर आपको अपना एनपीए का रिकवरी कंप्लीट करनी होगी एंड द सिक्योरिटी रिसीट्स व्हिच यू हैव इशूड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एनपीए, अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर collateral against the NPA, that should be redeemed in 8 years. ये condition important है, so just remember the term 8 years as well. ये सारे points clear हुए? If all these points are clear, just give me yes sir. If all these points are clear, just give me yes sir. I'm pretty sure भले आपने ARCs के बारे में 10 बार पढ़ा होगा, but still you have got something new in the first slide itself regarding ARC. तो अगर आपसे कोई पूछे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एआरसी, योर आंसर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एआरसी. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द एआरसी टिल नाउ. अब इंट्रोडक्शन के बाद आई विल बी मूविंग अहेड एंड नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि एआरसी का ओरिजिन हुआ कहां से. सर एआरसीज दे आर सेट अप अनडाउटेडली अंडर द सेक्शन 3 ऑफ SARFAESI एक्ट 2002, बट ये SARFAESI एक्ट से रिलेटेड काफी सारी रिकमेंडेशंस दे वर गिवन बाय नरसिम्हन कमेटी सेकंड, जो कि 1998 में बनी थी. तब उन्होंने प्रपोज किया था दैट इंडिया शुड आल्सो सेट अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑन सिमिलर लाइंस ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रिवेलेंट ग्लोबली. तो ग्लोबल लेवल पे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, तो इंडिया में भी प्रपोजल आया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाए. तो फाइनली SARFAESI एक्ट के तहत एआरसीज को बनाया गया. अब एआरसीज को हम ओनरशिप बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं. वी हैव गवर्नमेंट ओन्ड एआरसीज, वी हैव प्राइवेटली ओन्ड एआरसीज एंड इवन वी हैव PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एआरसीज. इफ आई से National Asset Reconstruction Company Limited, this is an ARC which will have more than at least 51% of its shares with the public sector banks. तो ये एक type of ARC है which has been recently introduced, और इस ARC को introduce किया गया था with a target of resolving 2 लाख करोड़ का जो एनपीए था बैंक्स पर, उसे रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया. इनिशियली टारगेट था कि जो आप स्टार्ट करेंगे रिकवरी ऑफ प्रोसेस, उसमें आप टारगेट करेंगे उन लोन्स को जिन लोन की वैल्यू आउटस्टैंडिंग कितनी है, 500 करोड़ से ज्यादा. आफ्टर दैट इट वाज चेंज टू 200 करोड़ कि भैया 500 करोड़ के सारे लोन आपने टारगेट कर लिए, अब आप टारगेट करो 200 करोड़ से ज्यादा लोन, और जो टोटल वैल्यू है दैट इज 2 लाख करोड़ रुपीस विच इज नीड टू बी रिजॉल्व्ड अंडर NARCL. अब ARC को आपने कहा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर द बैंक लोन. अब आप लोन को रिकवर करेंगे तो करेंगे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो व्हाट ARCs कैन डू सर, अकॉर्डिंग टू द SARFAESI एक्ट. SARFAESI एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था विद द सोल मोटिव ऑफ स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी. सेकेंड पॉइंट था एबोलिशन ऑफ जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट. यानी पहले क्या होता था, पुराने दिनों को याद करो, अगर बैंक का लोन एनपीए हुआ तो पहले बैंक भागा भागा जाएगा जुडिशरी के पास, जज को कहेगा कि सर प्लीज give me the legal order so that I can take the possession of the asset and I can sell that asset to recover my loan. Now there is no need to approach to the judiciary. Bank can itself directly reach to the borrower, directly take the possession of the borrower's collateral and then recovery can be initiated. लेकिन अगर कुछ issue आए तो we have लोक अदालत, we have DRT that is Debt Recovery Tribunal, and even we have DRAT that is Debt Recovery Appellate Tribunal. पहला पॉइंट है SARFAESI एक्ट का सिक्योरिटाइजेशन. तो ये कहता है कि जो लोन आपका एनपीए डिक्लेयर हो चुका है, यू कैन कन्वर्ट दैट लोन इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटी. मतलब क्या हुआ, आपने कंपनी को लोन दिया, लेट्स से इन्फोसिस को आपने 100 करोड़ का लोन दिया और आज इन्फोसिस ने आपका लोन एनपीए डिक्लेयर कर दिया, यानी इन्फोसिस ने आपको लोन वापस नहीं किया. इन दैट पर्टिकुलर केस बैंक कैन इटसेल्फ कन्वर्ट और ARC कैन कन्वर्ट दैट लोन वैल्यू into the equity value. और आई वुड से अगर 100 करोड़ का लोन है तो उसे इन्फोसिस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इक्विवेलेंट वैल्यू में ट्रांसफर किया गया, और वो सिक्योरिटीज, वो इक्विटी शेयर्स दे आर हैंडेड ओवर
to the ARCs or to the bank, whosoever is involved in the recovery by Infosys, and then bank will sell those securities in order to recover the loan. This is what is known as securitization. दूसरा point है that ARCs, they can take over the management of the company and start managing the company, and once the company is doing well, once the company is earning profit, then ARC can sell the company on profits or at a higher valuation in order to recover huge value against that NPA purchase. तो वो steps की बात कर रहा हूं. So you can acquire the financial asset, कि भैया acquire कर लो, or you can take over or change. You can change or take over the management. You can sell or you can lease the business. रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट, कि आप रीशेड्यूलिंग कर दे डेट्स की, कि भैया कोई बात नहीं, टुडे यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे, नो वरीज, वी आर रेडी टू रीस्ट्रक्चर द लोन. तो आपका लोन रीस्ट्रक्चरिंग भी किया जा सकता है कि बैंक कैन इंक्रीज द ARC कैन इंक्रीज द टाइम पीरियड सो दैट EMI वैल्यू डिक्रीजेस एंड वी कैन रिसीव द रिटर्न थ्रू द EMIs itself. Then enforcement of security interest and settlement of dues payable by the borrower. So this enforcement of security interest means you can approach to DRT or Lok Adalat if required, if there is any issue regarding the taking over the possession of the asset. ARCs जो है, they are involved in the business of asset reconstruction. That means they are selling the assets, they are selling the collateral in order to recover the loan amount, or even they can convert the NPA value into the tradable securities. As I said, या दोनों भी किया जा सकता है. तो बैंक के पास जो राइट्स थी कोलेट्रल पर, वो सारी की सारी राइट्स किसे ट्रांसफर की गई? ARC को. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, SBI ने लोन दिया इन्फोसिस को. इन्फोसिस का जो लोन था उसके बदले में इन्फोसिस ने एक सिक्योरिटी, एक लैंड गिरवी रखा, मॉर्टगेज किया. वंस the bank has sold its NPA to an ARC, then in that particular case, ARC will become the whole and sole owner of that particular loan, even the whole and sole owner or representative of that collateral as well. तो ये point last में मैंने आपके लिए लिख दिया. Last but not the least is, what are the required conditions? What are the required norms for ARCs? Please pay attention. सर, पहली जो नॉर्म है ऑन ARC, दैट इज कि अगर ARC को फंड्स की जरूरत है इन ऑर्डर टू परचेज द NPA, दे कैन इशू सिक्योरिटी रिसीट्स, एंड सिक्योरिटी रिसीट्स कैन ओनली बी परचेज्ड बाय द क्वालिफाइड बायर्स. Only and only qualified buyers are allowed to purchase security receipts issued by ARCs. ARCs जो है, they are prohibited from raising money by the way of deposit. इसका मतलब जो ARCs हैं, they cannot raise the funds from the public in the form of deposit. That is not allowed. अगला पॉइंट है कि RBI ने कहा कि जो already existing ARCs हैं, they have to increase their net owned fund to 300 करोड़, जो कि currently 100 करोड़ है, उसे आपको बढ़ाकर by 31st March 2026 कितना करना है? So you have to increase your net owned fund from 100 crores to 300 crores by 31st March 2026. Just comment in the comment section, is it a correct date? Is it the correct date or not? Fourth point बेटा मैं repeat कर देता हूं. Fourth point है enforcement of security interest. यानी कि एक तरफ मैंने कहा कि in case of SARFAESI Act, judicial involvement has been abolished. लेकिन अगर bank is not getting the possession on the asset, there is any kind of, I would say, any kind of, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो borrower है, the borrower is not allowing you to take the possession. In that particular scenario, you need the help of the executive bodies like police and all. So that help will be given to you only after you reach to the DRTs. So DRTs will sanction the rules and police will accompany the ARCs to take the possession in order to sell the asset in the near future. So that is known as enforcement of security interest. You can enforce the interest related to the security, related to the collateral. That is the point written over here. That is the point written over here. That is enforcement of security interest. अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. ARCs के ऊपर कंडीशन है कि ARCs will maintain capital adequacy ratio of 15% of RWA, जो कि बैंक्स के लिए है 9% as per RBI, but for ARCs it should be 15%. लीडरशिप पोजीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. रिसेंट में इस पे क्वेश्चन भी आया था, डिस्कशन भी हुई थी. तो ARCs में कुछ चीजें हैं. पहला,
एज लिमिट सेट की गई है, दैट इज 70 ईयर्स. 70 ईयर्स इज द एज लिमिट फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ और फॉर द होल टाइम डायरेक्टर. और जो टेन्योर है दैट इज 5 ईयर्स एट अ टाइम विद इन अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स कंटिन्यूसली. तो भैया जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है या सीईओ है ऑफ एआरसी, दे कैन सर्व एज on these positions up till an age of 70 and up to 5 years term once, and even they can get I would say reappointed for 3 continuous time. That means they can serve for maximum 15 years continuously. ये important point है, question यहाँ से बनेगा. अब आता है कि सर जो लेटेस्ट 2024-25 में रिफॉर्म्स लाई गई उनके बारे में बता दो. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू guidelines issued by RBI related to ARCs. So what are those guidelines? Please pay attention. So the guidelines are, first one, ARC must establish a board approved policy that governs the settlement of borrower dues. So ARCs, they are now asked by RBI that they should establish their board of directors approved policy. So there should be a policy which is approved by board of directors of ARCs, according to which settlement will be done. According to which settlement of the loan will be done or settlement of the NPA will be done. The policy is required to address critical aspects. So what all aspects will be addressed by this board approved policy? So the aspects will be eligibility criteria for one time settlement, that which all loans can be settled one time. One time का मतलब क्या हुआ कि भैया आप गए ARC के पास, आप बोरोवर हैं, आपने कहा कि सर मेरा लोन एनपीए में डिक्लेयर हो गया, आपने बैंक से खरीद लिया, आई एम रेडी टू रिजॉल्व इट. This is my total outstanding. Let's say my total outstanding is 1 CR. I'm ready to close this loan at 50 lakhs. So if I pay you 50 lakh and you are ready to close this loan, that will be termed as one-time settlement. So there should be eligibility criteria defined that which all loan, which all borrower, which all, I would say, lendings will be included or allowed under one-time settlement. Second point is permissible sacrifices based on exposure category. So what kind of sacrifices ARCs need to made on the basis of the exposure category, and methods in order to determine the methods which ARC should follow in order to determine the value of the collateral. कि भैया आपने कहा एनपीए आपने खरीदा बैंक से और आपने कहा बैंक की एनपीए के बदले में जो कोलेट्रल है उसकी वैल्यू 10 करोड़. कैसे, उसके लिए क्या मेथड यूज करोगे? दैट मेथड इज नीड टू बी डिफाइंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. विल कॉल इट एज बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी. नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. So for borrowers with outstanding dues more than 1 crore, अगर आपके borrower का outstanding due जो है that is more than 1 crore, then in that particular case settlement can only proceed, very important, settlement can only proceed after a thorough evaluation by an independent advisory committee. तो यहां पे क्वेश्चन ये बनेगा, what is the outstanding loan limit where recovery can initiate or settlement can be done only after the thorough evaluation done by the independent advisory committee? Then your answer should be it is 1 crore. On the other side, agar if the due is less than 1 crore, then ARCs can process the settlement based on the criteria defined by board approved policy. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट डेलिब्रेट ऑन द independent advisory committee recommendations and evaluate the alternate recovery operations. तो भैया जो आपने recommendations दी आपके independent advisory committee ने, उन recommendations को आपके board को check करना होगा और उसके basis पर आपको क्या लेना होगा, डिसीजन लेना होगा. सेटलमेंट इन्वॉल्विंग borrowers, अगर आपके borrowers जो हैं they are willful defaulter like विजय माल्या और नीरव मोदी, or any kind of fraud is done, in that particular case it will be included under the category of 1 crore more. अगर आपका outstanding 1 करोड़ से ज्यादा, you need independent advisory committee to thoroughly evaluate the entire loan. Same process will be followed if the loan is under the category of willful default or
any kind of fraud is done irrespective of the value. फिर चाहे लोन 1 करोड़ का हो, 1 करोड़ से ज्यादा का हो, 1 करोड़ से कम का हो, I don't care. But if it is a willful default or if it is a fraud case, then in that particular case advisory or independent advisory committee involvement is witnessed. अब जाने से पहले एक होमवर्क आपको देना चाहूंगा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ आई वुड से maximum 200 words. Write a short note on independent advisory committee of ARCs. Is it clear? Note down this homework, guys. Write a short note on independent advisory committee of ARC. Word limit is 200 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया. 200 is also going to be really very tough. So I can just make it 100 words. Word limit कितनी है? 100 words. In 100 words, you need to answer the question that is advisory committee, independent advisory committee of ARC. क्या क्या बताना है? ये independent advisory committee क्या है? इसका composition क्या होगा? And what are the functions performed by independent advisory committee? That means how the independent advisory committee is going to thoroughly evaluate the loan before settlement can be done. Is it fine, guys? Is it fine? Can I expect your answers in the comment section itself? After this session, आराम से independent advisory committee को पढ़िएगा. 3-4 जगह से गूगल करके पढ़िए. And after reading from 3-4 sources, then come up with your final answer. And that should be, I would suggest you, that should be a drafted answer, that should be written by you. It should not be a copy paste answer. तो आप अपने तरफ से लिखिएगा so that I can get to know how well you are writing or how well you can express yourself while writing a descriptive answer. कोई फर्क नहीं पड़ता. YouTube पर अगर आप अपने answers को share कर रहे हैं, trust me, no one else is going to read your answer. Only I will be reading it. But I want you to publish it. I want you to share that answer in the YouTube comment section itself. क्योंकि इससे क्या होगा? When we will be sharing the answers on a public platform, then you will get a chance to read the answers of your peers as well, where you can understand where you are standing and how well your peers are writing the answers. तो इससे competition भी समझ आएगा. You'll get to know about the competition, and even you will get to know how more, or I would say you will get to know what should be your strategy to work really very hard, or how you should work hard, in what direction you should work in order to improve your descriptive writing. ठीक है जी, समझ आ गया. So I expect Mukund, Aarti, Yashu, Afshin, Shivam and doers that you will be writing the answer and you will be sharing the answer in the comment section itself. चलिए अगले point पे बढ़ते हैं. Moving on to the second news. Second news is related to a question: who has been appointed as the Executive Director of Reserve Bank of India effective from 3rd of March 2025. So recently RBI has appointed a new Executive Director. Can you please name the new Executive Director? For your information, guys, these all are the names of Executive Directors of RBI only. They are the Executive Directors of RBI, but you need to name the recently appointed Executive Director of RBI. Any idea? Any idea? No? No? Chalo, I'll discuss this with you. So remember that the Reserve Bank of India has recently appointed Dr. Ajit Ratnakar Joshi as its new Executive Director effective from 3rd of March 2025, where he will oversee the Department of Statistics and Information Management and Financial Stability Department. इसकी वजह से important हो गया. So Executive Director who is going to oversee the Department of Statistics and Information Management as well as the Financial Stability Department. Previously, he held the position of Principal Advisor. He held the position of Principal Advisor in the same department, that is Department of Statistics and Information Management. थोड़ी सी history पे बात कर लेते हैं. Sir, he has more than 30 years of experience. He has worked in lot of fields of stats, information technology, cyber risk management. He has served as a faculty member at the Institute for Development and Research in Banking Technology in Hyderabad, which is under, I would say, it is the institute which is responsible, or the institute which has developed UPI, or IFTAS was developed by the same institute. So he was the faculty member over there. He holds a certification as an associate from the Indian Institute of Banking and Finance. तो उनके पास कुछ certificates भी हैं. So just remember Dr. Ajit
Ratnagar Joshi is appointed as the new Executive Director of RBI. So this would be your answer. The correct answer or the correct answer to this question is C option. I hope एक एक point जो हमने discuss किया that is crystal clear. मजा आया होगा एक एक point जितनी detail में जाकर हमने discuss किया. I hope it is crystal clear to you, and I am pretty sure that you will be downloading the PDF, and this PDF is going to help you a lot to write a good answer for your question. That is, write a short note on ARCs. Second question could be write a short note on or discuss the latest regulatory guidelines, regulatory reviews or norms or guidelines which are reviewed by RBI for ARC. So all these things can be easily answered with the help of this. Let's begin the discussion with the first news. So the first news is really very important. It is important with respect to your phase 1 as well as phase 2 examination. तो news क्या है वहां से start करते हैं. We begin the discussion from the beginning itself. The news says, please pay attention, Digital Payment Awareness Week 2025. So we know that very well that in the past India has performed really very well in the digital payment segment, and India has become the world's largest nation in terms of number of digital transactions. और अगर मैं इसमें ऐड करूं तो वर्ल्ड में जो ट्रांजेक्शंस हो रही हैं उसका 40%, I mean total digital transactions in the world, out of the total digital transactions, 40% digital transactions are conducted in India itself. On the second rank, obviously, we have China, but our number of digital transactions or digital payments is 3 times the number of digital payments done in China itself. Now, in the same context, if I begin my discussion, so recently, Governor of RBI, I hope you all know that the newly appointed Governor of RBI, this 26th Governor of RBI, the name is Sanjay Malhotra ji. So Sanjay Malhotra ji has inaugurated with what? So he has inaugurated 5th. This is very important. He has inaugurated the 5th Digital Payment Awareness Week. So this is not the first time that RBI is celebrating this particular week. This week is being celebrated for the 5th time. So RBI Governor has recently announced, or I would say recently inaugurated what? So he has recently inaugurated the 5th Digital Awareness Week. So if I talk about this Digital Awareness Week, or I would say Digital Payment Awareness Week, ये एक तरह से initiative लिया गया by RBI in order to make the public aware regarding the benefits of using digital payments. कैसा digital payment क्यों safe है, क्यों आपको use करना चाहिए, क्यों आपको follow करना चाहिए for n number of benefits. और उसके साथ साथ Digital Payment Awareness Week will help to create the awareness about the safe usage of the digital payment products. पहली चीज तो ये, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि डिजिटल पेमेंट्स को आज भी इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न्स, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल पेमेंट्स की निटिग्रिटीज को अभी भी उतनी डिटेल में नहीं पता, जिसकी वजह से स्कैम्स, फ्रॉड्स ऑन डे टू डे बेसिस रिपोर्ट किए जा रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू टारगेट बोथ द सेगमेंट्स, वन हु आर अफ्रेड that we should not use digital payments because they are not safe, and secondly those who are using digital payments without knowing the safety measures they need to take. Both the class of public, both the section of public is going to be targeted under this particular celebration. So during this week, not only RBI, along with RBI we have the payment banks, we have small finance banks, we have scheduled commercial banks, NBFCs, and many other stakeholders. They are going to join this campaign. They are going to become the part of this multimedia campaign in order to make Digital Payment Awareness Week a successful event where the public should get the adequate awareness they need. Now the question is, so what kind of question can be asked in the examination? अगर मैं examination point of view से कहूँ, this is very important. This time RBI has launched 5th Digital Payment Awareness Week. Direct question can be asked from this particular point itself. Moving to the next slide, जहां पर 2 questions और बनने की उम्मीद है from the same news. The next is, sir, Digital Payment Awareness Week जो है इसे ऑब्जर्व किया जाएगा from which date? Sir, it will be observed from 10th to 16th of March, यानी कि कल से ये वीक स्टार्ट किया गया. From 10th to 16th of March, this week is going to be celebrated. This week is going to be observed. And if I talk about this mission, sir, इस मिशन के तहत हर पेमेंट, what is the mission, or I would say
Digital Payment Awareness Week is implemented under a mission. And what is that mission? So mission is Har Payment Digital. Har Payment Digital is the mission of Digital Payment Awareness Week. And what is the theme for the current year? So the theme for the current year is India Pays Digitally. Again, phase 1 respective say, it is really very important. Phase 1 respective say, this data is really very important. This is also relevant. Direct question can be asked in the phase 1 examination. ये जो थीम है दैट इज इंडिया पेज डिजिटली, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है द ट्रांसफॉर्मेटिव सिनेरियो ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वेयर इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स द डिजिटल currency, towards the digital payments, and in order to boost that particular segment of the economy, this is one of the initiative. अब यहाँ पर एक important point आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या, अगर मान लेते हैं कि फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए and the question can be for sure, what are the initiatives taken by RBI? What are the initiatives taken by RBI to promote digital payments in the country? So if this question is asked that what are the initiatives taken by RBI to promote digital payments in the country, under this particular question you can for sure include Digital Payment Awareness Week. You can for sure include the index, that is Digital Payment Index. You can even include Financial Inclusion Index. Then you can take up a number of other initiatives which have been taken by RBI. तो यहां पे समझना यह है कि जब आरबीआई में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव्स पे पूछा जाए तो इनिशिएटिव्स को मेंशन करने के साथ साथ ये जो इंडिसेस हैं या फिर ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं जो आरबीआई द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेम सेगमेंट, उस पर्टिकुलर इवेंट को मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो शायद लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने एक और बात की थी, दैट इज Digital Literacy Week, if you remember. So that is again one of the initiative taken by RBI in order to promote digital payments in the country. इसके तहत एक active competition का भी कॉल किया गया where you can come up with हर payment digital short video, even you can come up with हर payment digital comic strip contest. तो उसके लिए RBI ने this announcement has been done, and under this it has been very clearly mentioned that the prizes will be given for each contest. It is just to include more and more public का जो involvement है वो बढ़ाए, और अगर public का involvement बढ़ता then only this kind of initiative, this kind of event can be commented, can be termed as a successful event. Is it clear everyone? Is it clear? तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, कौन सा एडिशन है? सर दिस इज द 5th एडिशन। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे पूछा जा सकता है दैट इज द डेट्स 10th to 16th of March. Mission Har Payment Digital. Most important is theme, that is India Pays Digitally. This is not the only part. You also remember Digital Literacy Week जिसके बारे में हमने बात की थी, फरवरी में इसे सेलिब्रेट किया गया. Then we have Digital Payment Index, we have Financial Inclusion Index, we have many other indices which are presented by RBI जिसकी मदद से RBI पब्लिक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि what is the status of digital payments in the country. Is it clear everyone? I hope if a question is asked in phase 1 or phase 2, you will be in a position to answer the questions related to the given topic. Moving on to the second news. ये जो second news है, it may sound कि सर क्या ये RBI point of view से important है या नहीं, तो मेरा आंसर है बिल्कुल important है। उसका रीजन क्या? देखो, हर न्यूज की जो importance है that is related to the current scenario of the economy. So if I talk about the current scenario of the economy, in the recent budget, none other than Finance Minister of India, we all know her name, that is Nirmala Sitharaman ji. She has announced that India's insurance sector will witness a boom in terms of investment. Why we are expecting that India's insurance sector will witness a boom in the near future? So the investment boom is going to be witnessed because in the insurance sector, FDI limits have been revised. Earlier, the FDI limits for insurance sector was 74%. Now it has been increased to 100%. The announcement has been made in the budget. We are waiting for the final approvals, but yes, announcement has been made that yes, in India, foreign direct investment in the insurance sector will be 100%. अब अगर insurance sector में FDI 100% होगा तो undoubtedly this will attract more of the foreign investors to invest in the country. And if we are expecting
increase in investment in the insurance sector of the country. That means insurance sector is something which is in limelight these days. If it is in limelight these days, then related to insurance sector, अगर कोई भी news, कोई भी report present होती है, then we have to go with that particular report for sure. I hope आपको समझ आया होगा what is the reason, on what context I have shortlisted this particular news. Otherwise ये जो news है ये first hand पे banking exams के लिए ज़्यादा important है. But why it is important this time for RBI? Because of the latest announcement which has been done in the budget. अब इसको आगे बढ़ते हैं. What is the news? So there is a UK based company. एक UK based company with its headquarters in London, that is Brand Finance, and Brand Finance is basically a company which comes up with the ranking, which comes up with the brand valuation of different organizations, especially the financial organizations. तो जो हमारी financial institutes हैं, financial organizations हैं all over the globe, उनके valuation को चेक किया जाता है, उन्हें वैल्यूएट किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूएशन द रैंकिंग हैज बीन गिवन. रैंकिंग इज गिवन बाय ब्रांड फाइनेंस ऑन रेगुलर बेसिस. अब उसी कॉन्टेक्स्ट पे, उसी लाइंस पे रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है एंड द रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय ब्रांड फाइनेंस, और ब्रांड फाइनेंस हैज रिपोर्टेड द टॉप 100 इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ द कंट्री. Brand Finance has reported top in 100 insurance companies of the country, of the world, sorry. And in this particular ranking, जो सबसे important point है, which I expect that it can be asked in the examination and even it can be used while writing a good descriptive answer, is the report highlights that the top 100 insurance brands of the world, top 100 insurance brands of the world, they have witnessed a 9% increase in the brand value in 2025. देखो एक तरफ we have war situation, on the other side we have tax war situation which is going on, and keeping in mind the current situation, whether it is geopolitical tension or it is related to the tariff war which is going on, I'll say which is going on with US and the entire world. So one party is US and the other party is the entire world. इन सारे structures में, इन सारी situations में, इन सारे formats पर भी अगर ये point है कि आपकी जो companies है, their value is increasing, that means yes, it is one of the potential sector of the economy. तो insurance sector is one of the potential sector of the economy, और अगर ये एक potential sector of the economy है तो उस वजह से ये न्यूज और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रिसेंटली जो टॉप 100 इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट प्रोवाइड की गई है बाय ब्रांड फाइनेंस, दिस लिस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट ऑल फैक्टर्स? सो दिस लिस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज better underwriting performance, that how well the company is performing. Second point is higher investment income. Higher investment income means the investors, they are investing in a company and their return on investment is high. मतलब आज अगर मैंने 10 लाख रुपए एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किए तो फॉर श्योर उस पे जो रिटर्न है दैट इज हाई इन कंपैरिजन टू द अदर इन्वेस्टमेंट वेन्यूज व्हिच आई हैव फॉर मी. द नेक्स्ट पॉइंट इज राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स. So the interest rates are increasing, and due to the increase in interest rate, our dependency, our demand for the insurance companies increase. And the last point is improved profitability. So these are some of the factors which have led to the increase in valuation of the insurance companies. तो जो आपकी top 100 insurance brands of the world, they have witnessed 9% increase in their brand value in 2025 because of better performance, higher investment income, rising interest rate in the market and improved profitability. ये जो ब्रांड फाइनेंस ने रिपोर्ट दी है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस रिपोर्ट हैज बीन गिवन. इट्स एन एनुअल रिपोर्ट. इट इज प्रेजेंटेड ऑन एनुअल बेसिस बाय द ब्रांड फाइनेंस, लंदन यूके बेस्ड कंपनी, एंड द रैंकिंग इज डन इन टू फॉर्म्स. दो तरह की रैंकिंग दी गई है. फर्स्ट रैंकिंग इज ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनीज and second is the strongest insurance brands. So we have most valuable insurance brands on one side, and on the other side we have the ranking of the strongest insurance brands of the world. अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं क्या इसमें कोई इंडिया की कंपनी इंक्लूडेड है? ऑब्वियसली गाइस, इंडियन कंपनी इज इंक्लूडेड, एंड दैट इज द रीजन आई एम फोकसिंग मच ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज, बिकॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो कीपिंग दैट इन माइंड, let's
quickly jump. So after this first point जहां से question बनेगा 9% growth in the total brand value of the world's top 100 insurance brand, the next point is important, that on the basis of ranking, that is strongest brand. If I talk about the strongest brand and if I talk about the strongest insurance brands in the world, top 5 brands include one of the Indian brand, and that is LIC. So LIC is the third strongest insurance brand in the world with a score 88.0. But on the other side, we have Poland-based company with the first rank, China Life Insurance on the second rank, but most importantly, we need to remember Life Insurance Corporation of India is on the third rank in terms of strongest insurance brands in the world. Moving on to the next point. What does the next point say? What does the next point say? Moving on to the next point, guys, please pay attention. अगला जो point है, that is on the basis of brand valuation. If I talk about the insurance brand ranking on the basis of their market valuation, on the first rank we have Chinese company on the first rank, on second we have German company, and on the third we have France. If you can remember top 3, it's up to you. If you cannot, leave it. If you can remember top 3 over here, it's up to you. If you cannot, leave it. लेकिन चाहकर भी ना चाहकर भी आप इसे नहीं भूल सकते कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जो इंश्योरेंस 100 रैंकिंग दी गई है, which has included the top 100 insurance brands of the world. In that particular ranking, Indian life insurance company is on the third rank in terms of strongest insurance brands. Is it clear, everyone? समझ आ गया यहां तक? इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली रिलेटेड टू LIC, बिकॉज व्हाट आई एक्सपेक्ट इज ऐसी जो न्यूज आती है ना, ऐसी न्यूज को RBI जनरली इंक्लूड इन द फेज 2 एग्जामिनेशन, और उसमें इंक्लूड करता है RBI विद द हेल्प ऑफ और इन दी पैराग्राफ फॉर्म. तो आपने देखा होगा कि RBI comes up with a paragraph and then RBI asks 3 or 4 questions on the same paragraph, and obviously I'm not talking about the reading comprehension. ऐसा नहीं है कि उस पैराग्राफ में उन क्वेश्चंस के आंसर है. नो, द पैराग्राफ इज जस्ट गिवन एज अ रेफरेंस पॉइंट कि हम किस रेफरेंस पॉइंट में आपके साथ अगले 4 या 3 या 2 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. तो अगर RBI ने एक रेफरेंस पॉइंट दिया related to brand finance insurance 100, और उस reference point के basis पर if RBI wants to target the current situation, the current status of LIC, then you need to see this. Life Insurance Corporation of India, which is headquartered in Mumbai, Maharashtra, has been ranked third among the world's strongest insurance brand, achieving brand strength index score of 88 out of 100, which is a good score. In terms of overall brand value, so in terms of overall what? Sir, in terms of overall brand value, LIC is on what position? Sir, LIC is on the 12th position. So these 2 ranks are really very important. Third with respect to the strength, that is strongest brand, and 12th with respect to the valuation, we have none other than government owned and India's largest life insurance company. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अगला पॉइंट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू LIC which can be asked in the examination indirectly or directly. The first point is LIC's net profit has increased by 16%. LIC का जो net profit है, it has increased by 16% in the latest financial year, और जो employee compensation है और welfare expenses है, they have been dropped. तो LIC has dropped its employee compensation and welfare expense by 30%, due to which LIC has recorded a profit of 16%, which is important. Market capitalization of leading insurance brand has increased, driven by rising demand for the insurance sector. तो ये जो brand valuation increase हुई है LIC की, that is all because of increase in demand on the insurance sector, on the insurance services. इसके अलावा और क्या points हैं जो आपको याद रखने हैं? सर, इसके अलावा आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है. वो क्या? गवर्नमेंट ओन्ड एक और इंश्योरेंस कंपनी है, एंड दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस हैज बीन रैंक्ड 76th on the list of most valuable insurance brands
मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स इन द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में रेफर किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया will witness 100% insurance sector FDI. That means if a foreign company wants to invest in India and they want to invest in the insurance companies, then they can invest for sure. They can invest for sure, and now the investment limit has been increased to what value? So the investment limit has been increased to 100% value. लेकिन यहाँ पर एक catch है, एक important point है which I would like to discuss with you. Before that, sir, under the new tax regime, Parmeshwar has asked a question, guys. Let's read out his question. Sir, under the new tax regime, payment of insurance premium is not allowable under Section 80C nor Mediclaim. Okay, then how insurance companies get business if there is no tax benefit? परमेश्वर, आप शायद थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कि जो आपका नया टैक्स रिजीम है उस पे गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट भी दे रही है अप टिल 12 लाख रुपीज ऑफ इनकम। लेकिन अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें जहां पे सेक्शन 80C या सेक्शन 80D के तहत आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पर बेनिफिट्स मिलते थे, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जो आपकी आई वुड से दी वैल्यू ऑफ इनकम थी जहां पर टैक्स चार्ज नहीं होता था या फिर जीरो टैक्स चार्ज होता था, दैट इज वे लो इन कंपैरिजन टू 12 लाख। तो आपने या तो 12 लाख इनकम बढ़ा दी या फिर दूसरी तरफ आपने क्या किया कि जो टैक्स चार्ज कर रही है इनकम उस नॉन टैक्सेबल इनकम को 5 लाख रखा और उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे दिया और उन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का रिबेट लेने के बाद देन द टैक्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड, बट ऑन द अदर साइड रादर देन गिविंग यू एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर बेनिफिट दे आर गिविंग यू अ ह्यूज बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल इनकम। तो सरकार ने दोनों में से कुछ एक करना था, तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट हैज डन विद दिस। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज the point Parmeshwar has highlighted to us. Parmeshwar is saying कि सर अगर आपने 12 लाख वाला फंडा इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद आपने टैक्स बेनिफिट्स देने बंद कर दिए तो आपको नहीं लगता कि इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस स्लो डाउन होगा? आई डोंट थिंक दैट, क्योंकि वो जो 12 लाख वाला बेनिफिट है दैट इज वे हाई इन कंपैरिजन टू द अर्लियर बेनिफिट जहां पे हमें ये रिबेट्स, ये बेनिफिट्स दिए जाते थे। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो इंडिविजुअल हैविंग इनकम अराउंड 12 lakh will be going with the new tax regime, but the individual having income more than 12 lakhs will be going with the older regime only, because tax benefit older regime पे आज भी ज्यादा रहेंगे for the individuals who are earning income more than 15-20 lakhs as per the calculations which have been done. Is it clear? Is it clear everyone? Shall I move ahead? Point समझ आ गया, सारी न्यूज समझ आ गई। हाँ, एक पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था कि सर यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या कि ये जो इंक्रीज एफडीआई लिमिट है ना, ये अप्लाई होगी ओनली टू दोज कंपनीज दैट री इन्वेस्ट एंटायर प्रीमियम कलेक्टेड विद इन इंडिया। तो इसमें ये कहा गया कि सर अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी है एंड यू आर रिसीविंग प्रीमियम फ्रॉम द यू आर रिसीविंग प्रीमियम फ्रॉम द इंडिविजुअल हु इज एंजॉइंग द सर्विसेज, बट जो प्रीमियम आप रिसीव करेंगे दैट प्रीमियम इज नीड टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया इटसेल्फ। That premium is need to be invested in India itself, but that is the only condition. लेकिन अब हम कह सकते हैं कि yes, in India, insurance sector will witness 100% FDI, which has been announced by the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji in the current budget itself. Is it clear, Parmeshwar? I hope your doubt has been answered. Do reply in the comment section. Moving on to the next news. देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यूज है, Why this news is important? अब इस न्यूज को इंक्लूड करने के पीछे का लॉजिक कुछ और है। इस न्यूज को इंक्लूड करने का लॉजिक है ये मिसिंग मिडल। हैव यू हर्ड दिस टर्म? हैव यू हर्ड दिस टर्म? हमने बहुत बार सुना है एम्पावर विमेन, विमेन एम्पावरिंग। वी हैव लिसन्ड दैट वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन द कंट्री, लेकिन वी ऑलवेज टॉक अबाउट वन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि यार मिडिल मैन के बारे में कौन सोच रहा है? बहुत सारी ऐसी, हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड हैं आपकी कंट्री में विच आर एलिजिबल, विच आर कैपेबल टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट वेलफेयर फंड्स, बट दे आर नॉट रिसीविंग इट। तो उन्हें क्या नाम दिया गया? सो दे हैव बीन नेम्ड एज मिसिंग मिडिल। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता तो मैं इसी पॉइंट पे
सीधा जंप करूंगा। ये जो टर्म है मिसिंग मिडिल, ये मिसिंग मिडिल टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिसिंग मिडिल टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नीति आयोग। सो अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, जो रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में, मिसिंग मिडिल रेफर्स टू द 40 करोड़ इंडियंस, it refers to the 40 crore Indians who earn too much to qualify, for government health schemes but too little to afford private health insurance। समझ आया ये पॉइंट? समझ आया ये पॉइंट? ये बहुत ब्यूटीफुली नीति आयोग ने एक्सप्लेन किया है। नीति आयोग सेज कि सर who we call the missing middle, so missing middle वो पॉपुलेशन है आपकी कंट्री की, मिसिंग मिडिल वो पॉपुलेशन है आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन ज्यादा कमा रही है। अगर हम उनके इनकम की बात करें, देयर इनकम इज मोर देन द बेंचमार्क, जो बेंचमार्क गवर्नमेंट ने सेट किया कि अगर आपकी इनकम इतनी या उससे कम होगी देन वी विल प्रोवाइड यू विद द गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल वी हैव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो उस पॉपुलेशन की इनकम उस गवर्नमेंट स्कीम को एंजॉय करने का जो बेंचमार्क है उससे तो ज्यादा है, लेकिन उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज को क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए, एंड दैट पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज मिसिंग मिडिल। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मिसिंग मिडिल, देन द आंसर इज नीति आयोग हैज स्टेटेड और एक्सप्लेन्ड द टर्म मिसिंग मिडिल व्हिच इंक्लूड अराउंड 40 करोड़ इंडियंस हु अर्न मोर due to which they are not eligible for the government schemes but they earn not much so that they can afford the private benefits of different services. Is it clear? कुछ नया सीखने को मिला। आई होप दिस टर्म वॉज नॉट एवर हर्ड फ्रॉम योर साइड। आपने कभी इसे सुना नहीं होगा, आज शायद पहली बार आपने सुना होगा व्हाट इज मिसिंग मिडिल। तो यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसी वजह से ये मिसिंग मिडिल टर्म की वजह से ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये न्यूज क्या कहती है? नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसे पहले हम मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहते थे, इट हैज इंट्रोड्यूस राइस। What is this RISE? So RISE is basically a health insurance plan to address the healthcare needs of the India's missing middle, और ये जो इंश्योरेंस फैसिलिटी या आप कहें कि इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस बेनिफिट या इंश्योरेंस प्लान जो इंट्रोड्यूस किया गया है बाय मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, इट अलाइंस with the IRDAI, that is the regulator of insurance sector, which stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India's vision of insurance for all 2047. So एक और क्वेश्चन यहां पे बनेगा, sir, India is going to be a developed nation by which year? Answer is 2047. So India is going to become high earning or high income country by which year? Then the answer is again 2047. So India will witness insurance for all. That means Indian population, 100% Indian population will be covered under the insurance services by which year? So the answer is again 2047. तो ये 2047 is really very important year to remember. अगर आपको याद हो recently एक report आई थी that India will become a high or India will fall in the category of high income country by 2047, and it has been reported that India's GDP will increase approximately around $35 trillion by 2047, and then India will be termed as developed nation. उसके साथ साथ एक और important point है. What is that important point? The important point is India will witness 100% insurance service coverage to its citizens by 2047. यानी हर एक इंडिया का सिटीजन जो होगा that will be covered under different insurance services by which year? Then my answer to this particular question is 2047. ठीक है, अगला पॉइंट यहां पे कुछ बेनिफिट्स है स्कीम के, आई हैव जस्ट मेंशन इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ लेना ताकि ये टर्म राइज याद रहे, बट डू नॉट रिमेंबर इट। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर दैट this slide is important. Only 2 slides are important from this particular news. Now, moving on to the most important question, or I would say the favorite question of the examiner, and the favorite question of the examiner is in every examination, that is GDP growth estimates. So, if I talk about the latest GDP growth estimates, ICRA, which is one of the leading credit rating agency of the nation, I hope you all know that. What is a credit rating agency? Credit rating agency is basically a financial institute. It is basically
If I talk about journey of mine, just wait. I will be answering your question in the end. I hope it's fine with you. I will be answering. I will be taking your doubt in the end. Don't worry. Coming back to the point. So the point is ICRA is one of the leading credit rating agency of the country. What do you understand by the word credit rating agency? See, credit rating agency is a financial institute which is responsible to rate, the company, which is responsible to rate the entity. Not only entity means individual, firm, company. So I'm talking about CRA, credit rating agencies. They rate entities, they rate nations, or you can say they rate countries as well as they rate instruments. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी इंस्ट्रूमेंट में भी इक्विटी शेयर, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो बिफोर इन्वेस्टिंग in these instruments, country or company, you must check the credit rating provided or credit rating for the respective entity, and this credit rating is basically given in a grading system. Grading system का मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद हो, स्कूल में आपको A grade, B grade, O grade मिलता था, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल on similar grounds, companies are rated in India, and in India we have ICRA, which is one of the leading credit rating agency of the country. We have CRISIL, again one of the important credit rating agency of the country, and they rate the companies in this manner. AAA means the company or the country is doing really very well. You must invest in this particular company or instrument to earn good profits. As we move down, risk increases. As we move down, risk increases, and if we enter into this ranking, for example, D ranking basically means the company has been declared as default. So this is what we call it as credit rating. So ICRA is one of the important credit rating agency, and it has released its GDP estimates for the financial year 2026. Now, if I talk about this particular news, so the report has been presented by ICRA, and in this particular report, ICRA has estimated that Indian economy will grow at a rate of 6.5% in financial year 2025-26, where our economic survey says that Indian economy will grow in a range of 6.3 to 6.8%. This is according to the India's economic survey. Compared to the current financial year, so for the current financial year, according to ICRA, Indian economy is going to grow by 6.3%. Most important point is India's GDP is projected to grow at an average, this is very important, at an average of 6.7% from 2025 to 2031. So that three rates are important for you. पहला important rate है कि current financial year 2024-25 GDP growth rate कितना रहेगा? 6.3%. Upcoming financial year के लिए कितना projected है? So that is 6.5%. And what is the average growth rate projected for next 5 years from 2025 to 2031? That is 6.7%. So these are the rates which have been announced by ICRA, and remember, these rates are really very important and direct question will be asked in the examination. अब question को थोड़ा change करते हैं. The question says, let's go in a different manner. अगर आपके पास descriptive question आ जाए that India's GDP growth estimates are increasing and we are witnessing promising projections for the upcoming decade. According to you, what are the reasons? Are you getting my point? Question is बड़ा very simple कि इंडिया का जो GDP growth rate है वो काफी promising है for the next 10 years. According to you, what are the reasons due to which we say or we expect that India's GDP is going to grow at this rate? Then you must include few points. The first point which you must include is, so recently government has announced the tax benefits, and if government has announced the tax benefits, undoubtedly this will result in increase in consumption, and increase in consumption will result in increase in GDP, increase in output. This is the first thing which you need to include in your answer. Second thing which you need to include in your answer is, so that is the government infrastructure plans, government infrastructure development plans. If you have witnessed in the past 5 years, government has invested immensely in the infrastructure sector. If you talk about National Infrastructure Investment Plan, you talk about n number of other
initiatives which have been taken, so that infrastructure development is going to push the economy to new heights, and that will result in increase in GDP. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से how you can say that GDP can increase? Any idea guys? Any idea? किसी ने कभी सोचा? आपको एक statement बताता हूँ. Once a question was asked, or once a statement was presented in front of US president, and the statement says US is developed, therefore US is having good roads. I repeat, US is developed, therefore US is having good roads, or US is having a good road network. When this statement was presented in front of the president of US, he said, no, you're going in the wrong direction. US is developed. US is developed due to the developed roads. समझ आई ये बात कि आज US developed nation है. US is a developed nation because of the road network, because of the transportation network, because of the communication network. तो इसका मतलब ये है कि US डेवलप्ड नेशन है, इसलिए उसका रोड नेटवर्क स्ट्रांग है? नहीं सर, उसका रोड नेटवर्क स्ट्रांग था, जिसकी वजह से यूएस क्या हुआ? डेवलप हुआ. एंड कीपिंग द सेम आई, Indian investors, Indian government, Indian economy is trying its level best to boost the infrastructure sector so that our GDP can increase. The next point is, sir, the next point which can be a reason for GDP growth, the next reason will be tax benefit, government infrastructure development plan, increased government expenditure on manufacturing sector in terms of schemes, in terms of funds, in terms of credit facility to the manufacturing sectors. This is boosting the production sector of the nation. The best example is production incentive scheme. So these are three major areas which you need to target if this question is asked to you, that why we are expecting huge GDP growth estimates for the upcoming 10 years. Now coming back to the point, ICRA has mentioned in its report, the report has said that yes, India is going to experience good GDP growth rate because of increase in capital expenditure. What is capital expenditure? The expenditure done by the government on infrastructure, or I would say the expenditure done by the government which will impact government's asset as well as liability. So if government is making an expenditure on infrastructure, government is trying to increase its asset value. So capital expenditure is not solely but majorly invested on development of infrastructure. So capital expenditure deployment by Government of India and state government will play a vital role in supporting the India's GDP growth for financial year 2025-26. The report has highlighted that 17% increase. It has highlighted that 17% increase in Government of India's effective capital expenditure. This is very important. 17% increase in the Government of India's effective capital expenditure in financial year 2025-26 budget estimate, and increase in allocation towards the 50 years interest-free capital expenditure loan to the state government will become one of the major reasons to boost India's infrastructure sector. Got it, guys? Clear? So I hope this point is absolutely clear to you. There is no problem. So these were some of the important discussions which had to be done in this particular session. In the next session, we will be discussing, I have already framed 3 news for the next session. So in the next session, we will be discussing 2 important notifications of RBI and one of the important circular issued by SEBI, which is going to help you a lot in your upcoming examination. Last but not the least, a quick revision for which I have included the last slide. The last slide has been included just to remember you. In the previous session, we discussed RBI has appointed new executive director. Do remember his name, Dr. Ajit Ratnagar Joshi. This is again a potential question for your upcoming examination. Got it, guys? So I hope all the points are clear. Okay, you all are replying related to the GDP growth estimates of the country. Let me discuss some more points then. So first is why India is witnessing high GDP growth rate, that is tax benefits, which will increase your disposable income, that will increase your consumption, demand and output. Next point which is important is government
expenditure or government schemes targeting the manufacturing sector, because India is an economy which jumped directly from agrarian economy to service economy. We have missed the development of manufacturing sector, so government is trying its level best to develop the manufacturing sector. Along with this, we can include a very important factor, that is demographic dividend, which means India's mean age is pretty young. It is around 29. So if India has a young population, India has a huge population in the working age group, this will support India's economic activity. It will boost India's economic activity. That will increase the nation's GDP. On the other side, sir, export sector development, which have been done in the past, dependency of foreign nations, which has increased on India with respect to goods as well as services, is another factor, and the most important factor is infrastructure development in the country. These are some of the most important factors which you need to include. If a question is asked in 10 marker format, these are the 5 points which you need to mention, and if you can articulate these 5 points pretty well along with data and facts related to all these 5 points, then you will be in a position to score pretty well in the examination itself. Guys, I need a suggestion from you all, and the suggestion is, should I start a series? Should I include one more initiative in this session, that on regular basis I will be coming up with one of the expected descriptive question from the current affairs along with the structure of that answer, and even I'll provide you the sample answer for the same. I hope you are going to enjoy that. I hope you will use or you will need that particular initiative. If you want that, you can please let me know in the comment section. I will be including that as well from my next session onwards. So मैं बता दूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगली क्लास से लास्ट में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा जो कि आरबीआई के या किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज के डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन फाइनेंस करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा. फिर उस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट आंसर, विल डिस्कस दैट. And after few days, when you have practiced, when you have typed the answer for that, I will be giving you the sample answer as well. तो इससे होगा क्या कि अगर हम हर वीक 3 descriptive questions related to current affairs discuss कर रहे हैं, then before your examination you will have roughly around 80 to 90 questions from finance current affairs itself, which can be asked in a descriptive format. And if you have their sample answers as well, I'm pretty sure you will be in a position to answer the questions in the examination as well. Okay, so from next class onwards, we will be taking up this initiative as well. So important, जहां से हम start करेंगे, we will be talking about FDI. तो एक FDI की news है, that is not related to India, rather it is related to Dubai. लेकिन उसको हम इंडिया से कैसे रिलेट करेंगे, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर इंडिया की स्टेट वाइज एफडीआई का क्या स्ट्रक्चर है, इंडिया के सेक्टर वाइज एफडीआई का क्या स्ट्रक्चर है, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ग्लोबल लेवल पर एफडीआई का क्या स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू कैन सी दिस इज हाउ वी कवर द एंटायर न्यूज इन वन डिस्कशन इटसेल्फ. तो अगली बार अगर आपके पास न्यूज में या एग्जामिनेशन में एफडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आई एम प्रीटी श्योर वो क्वेश्चन आप यहां से आंसर कर पाएंगे. उसके बाद हम एक डिस्क्रिप्टिव आंसर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सेम, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने ब्रांड फाइनेंस ने जो लिस्ट दी थी, ब्रांड फाइनेंस ने जो टॉप 100 इंश्योरेंस लिस्ट दी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन, उस लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक कंटिन्यूएशन है न्यूज की, वो न्यूज डिस्कस करेंगे. देन वी विल बी मूविंग अहेड एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेबी हैज कम अप विद न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू द IPO, that is इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके लिए सेबी ने कुछ नए नॉर्म्स को जनरेट किया, कुछ नए नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया. तो आइए जरा बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. तो न्यूज क्या है वहां से समझते हैं. सो न्यूज इज वेरी सिंपल. न्यूज ये कहती है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर ऑफ दुबई, और आई वुड से इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन दुबई. तो क्वेश्चन ये है, न्यूज ये है कि इंडिया इमर्जेस एज द टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू दुबई. तो ये हमारे पास न्यूज है. पहले इस न्यूज को डिस्कस करते हैं, फिर एफडीआई का पूरा जो स्टोरी है रिलेटेड टू इंडिया वो डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे डिस्कस करेंगे. प्लीज पे अटेंशन. सो आई विल स्टार्ट बाय डिस्कशन विद द फर्स्ट पॉइंट. इंडिया
has emerged the top source country for the foreign direct investment into Dubai. ये UAE के लिए नहीं है, I'm talking about only and only one city of UAE, that is Dubai. तो दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डेटा ने ये डेटा प्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया हैज इमर्ज द टॉप सोर्स कंट्री फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू दुबई। और इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दुबई में, इट हैज इंक्रीज्ड 5 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। यानी 2023 में जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया द्वारा किया गया, इस बार 2024 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया द्वारा 5 टाइम्स की गई है, विच इज वेरी मच क्लियर दैट इंडिया इज ईगरली इन्वेस्टिंग इन दुबई। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इन्वेस्टमेंट इज डन इन द रियल एस्टेट एज वेल एज द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है बाय द इंडियंस। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सर ये इन्वेस्टमेंट 5 गुना इंक्रीज हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें टॉप 5 इन्वेस्टर्स की, तो दुबई के जो टॉप 5 इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्वियसली ऑन द फर्स्ट वी हैव इंडिया, देन वी हैव यूएस, फ्रांस, यूके एज वेल एज स्विट्जरलैंड। यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि सर इस बार दुबई ने अट्रैक्ट किया है $14.24 बिलियन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विच इज 33% हाई विद कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। एक तरफ हम कह रहे हैं कि सर जो एफडीआई है, that is slowing down in the economy. On one side we are saying that FDI is slowing down in the economy, but on the other side if you see, Dubai has recorded 33.3% increase, 33.3% increase in the foreign direct investment. तो दुबई में जो foreign direct investment है, that has been recorded around $14 billion. अगला पॉइंट जो यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या सर, अभी तक का सिंस 2020 अगर हम बात करें तो ये दुबई में रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट एनुअल एफडीआई है, जिसमें मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है दैट हैज बीन डन इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सर ये डेटा हमें याद रखना? नहीं, आई हैव जस्ट इंक्लूडेड दिस डेटा बिकॉज आई हैव टारगेट और आई वाज थिंकिंग अबाउट डिस्कसिंग द टर्म दैट इज ग्रीन फील्ड एफडीआई। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ग्रीन फील्ड एफडीआई, तो आप आंसर क्या देंगे? Sir, FDI is classified into 2 categories on the basis of investment. एक को हम नाम देते हैं, we call it as greenfield FDI, और दूसरी को हम नाम देते हैं brownfield FDI। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, जब भी कभी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट करके जीरो से इन्वेस्टमेंट या जीरो से कंपनी सेटअप करे, जीरो से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट सेटअप करे, दैट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, BMW इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया और BMW ने इंडिया में आकर इन्वेस्ट किया, पहले लैंड खरीदा, उस लैंड पे अपना असेंबली यूनिट सेटअप किया, असेंबली यूनिट सेटअप होने के बाद फिर इंडिया में आकर उन्होंने क्या किए, कुछ कमर्शियल लैंड्स खरीदे, कमर्शियल एरियाज खरीदे, जहां पे BMW ने अपने क्या सेटअप किए, सेलिंग यूनिट्स, यानी कि अपने शोरूम सेटअप किए। जैसे अगर मैं अभी बात करूं टेस्ला की, तो टेस्ला अभी रिसेंटली न्यूज में था जहां पे ये पता लगा कि टेस्ला इज लीजिंग आउट लैंड, टेस्ला इज लीजिंग आउट द बिल्डिंग्स, जहां पे टेस्ला अपना क्या बनाएगा सर, टेस्ला इज गोइंग टू सेट अप इट्स सेलिंग यूनिट। तो यहां इसे कहते हैं ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जहां पर पहले इन्वेस्ट होगा, लैंड खरीदा जाएगा, कंस्ट्रक्शन होगी और फिर कहीं जाकर जो ऑपरेशंस है दैट विल बी इनिशिएटेड। दूसरा पॉइंट आता है ब्राउनफील्ड एफडीआई, आंसर है सुजुकी। सर, सुजुकी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडिया की चलती कंपनी में इन्वेस्ट किया, दैट इज मारुति, और इन दोनों ने फिर मिलकर एक कंपनी बना ली, दैट इज मारुति सुजुकी। सो व्हेन अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन इंडिया एंड दे इन्वेस्ट in already existing company, we call it as brownfield FDI, and if they invest from zero ground, or I would say they invest and they set up the company from zero level, we call it as greenfield FDI। अब एक पॉइंट आपके दिमाग में होगा कि सर जब कोई कंपनी इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, we call it as ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के थ्रू हो रही है, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ग्रीनफील्ड, बट इट कैन बी टर्म्ड एज ब्राउनफील्ड और इट कैन बी टर्म्ड एज एफपीआई। तो यहां पे डिफरेंस क्या होगा सर, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई में क्या डिफरेंस है? इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन 10%, अगर आप 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में, दैट विल बी टर्म्ड एज एफडीआई। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10% से कम है इन अ कंपनी, देन इट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन?
इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द फैक्ट सेज एज पर द फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड एफडीआई मार्केट डेटा, अकॉर्डिंग टू द Financial Times Limited FDI market data, Dubai has been ranked world's #1 destination for greenfield projects. So अगर आपसे कोई पूछेगा name the destination, name the top destination or world's #1 destination for the greenfield FDI project, then your answer would be, sir, the answer is Dubai, and it is not the first time. For the fourth consecutive year, Dubai has been termed as or designated as world's #1 destination for the greenfield project. You need to remember this. Is it clear everyone? I hope the point is clear till this part. ये तो थी हमारी न्यूज जो कि हमारे सामने आई। अब इस न्यूज से मेरे दिमाग में जो जो चीजें आई आई वुड लव टू डिस्कस विद यू। जैसे मैंने ये न्यूज देखी मुझे समझ आया कि एफडीआई रिलेटेड न्यूज है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि इंडिया भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉर द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो दुबई भी ऑन सेम ग्राउंड था। दैट इज द रीजन आई हैव इंक्लूडेड दिस न्यूज। अब इतनी न्यूज के बाद अब मेरे दिमाग में आया कि सर इंडिया में एफडीआई का क्या स्टेटस है, वो जरूर मुझे डिस्कस करना चाहिए। इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन सी कंट्री से की गई? आई शुड शेयर दैट विद यू। इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई पिछले फाइनेंशियल ईयर में कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस की गई या कौन स्टेट में रिकॉर्ड की गई? आई शुड डिस्कस दैट। और इंडिया के कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई हुआ? तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने आज इस सेशन के डिस्कशन में लेकर आया हूं। तो अगला पॉइंट क्या आएगा सर? अगला पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें इंडिया और इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम एफडीआई की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, the government of India FDI equity inflow into the country has decreased about 3.5%. तो पिछले साल के मुकाबले इंडिया में जो इस साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया गया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इट हैज बीन रिड्यूस्ड। और अगर मैं कहूं तो पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में आज तक का सबसे लोएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज देखा गया। दैट इज $44.42 बिलियन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा एफडीआई का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट की जाए इन ऑर्डर टू टेक ओवर द इक्विटी, दैट मींस इन ऑर्डर टू टेक ओवर द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, इन ऑर्डर टू टेक ओवर द एक्चुअल ओनरशिप ऑफ द कंपनी, वी कॉल इट एज इक्विटी इनफ्लो। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सर इंडिया में 2023-24 में, इंडिया में 2023-24 में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री से हुआ? सो दैट इज सिंगापुर, सेकंड इज मॉरिशस, थर्ड इज यूएस, फोर्थ इज नीदरलैंड्स, फिफ्थ इज जापान एंड सिक्स्थ इज यूएई। तो जहां इंडिया दुबई का लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, वहीं यूएई इज द 6th लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन द कंट्री। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। मूविंग अहेड, अगला पॉइंट क्या है? So Singapore has been the largest source of FDI for India since 2018-19. तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था दैट वाज इन 2022, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021-22। और उस समय जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो कितनी वैल्यू का था? सो दैट वैल्यू वाज $84.83 बिलियन। एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज की अगर हम बात करें तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज अनडाउटेडली डिक्रीज हुआ है फ्रॉम द मेजर कंट्रीज, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि जापान, नीदरलैंड्स, जिन कंट्रीज से हमने रिकॉर्ड किया इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द पास्ट। बोलो ये पॉइंट समझ आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो पहला पॉइंट क्या कि सर अगर हम इंडिया के एफडीआई की बात करें तो इंडिया में 2023-24 में जो इक्विटी इनफ्लो था एफडीआई का दैट वाज $44.42 बिलियन। इंडिया हैज रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम सिंगापुर नॉट ओनली इन 2023-24 बट अगर मैं देखूं सिंस 2018-19 तो अगर हम देखें तो लार्जेस्ट जो इन्वेस्टर है इंडिया में, जो लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है दैट इज सिंगापुर, सेकंड इज मॉरिशस और यूएई का रैंक है 6th। यूएई के बारे में क्यों बार बार बात कर रहा हूं? क्योंकि वी हैव इनिशिएटेड दिस डिस्कशन फ्रॉम दुबई इटसेल्फ। अगला पॉइंट यहां पे क्या आता है सर? अगला पॉइंट यहां पे ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया को आज तक जो लार्जेस्ट या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ
FDI विटनेस किया गया। सर इंडिया हैज विटनेस द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ FDI इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और कितनी वैल्यू थी सर? दैट वाज $84.83 बिलियन। ये वो कंट्रीज हैं जहां से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, और अगर मैं बात करूं ये वो कंट्रीज हैं जहां से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ इन द पास्ट। सो जस्ट रिमेंबर द नेम्स। Now, if I move on to the next point and I say कि 2023-24 में in financial year 2023-24 which state has recorded highest FDI in India? तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो FDI रिकॉर्ड किया गया in which state? So it has been recorded from महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा FDI सबसे ज्यादा FDI रिकॉर्ड किया गया। On the second rank we have Gujarat. So we have recorded second highest FDI in Gujarat and third highest FDI in Karnataka. So these are the top 3 states. If I say Gujarat has done really very well in financial year 2023-24 because before this financial year Gujarat was behind Karnataka and Delhi, but now Gujarat has surpassed Karnataka and Delhi and it has become the second largest foreign direct investment receiving nation, foreign direct investment receiving state in the country. तो ये 4 नाम इंपॉर्टेंट हो गए, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, दिल्ली. Directly you can use this data while writing a good descriptive answer and even you can expect a direct question on the same. Last but not the least is this is the data related to the states. Last part is related to the sectors. अगर हम sectors की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर बार रिकॉर्ड किया जाता था दैट इज सर्विस सेक्टर. अगर मैं पिछले 5 साल का एवरेज लूं तो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज रिकॉर्डेड इन सर्विस सेक्टर. लेकिन इस साल की बात करें 2023-24 तो सबसे ज्यादा या हाईएस्ट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सेकंड इन सर्विस सेक्टर, थर्ड अगेन सरप्राइजिंगली दैट इज कंस्ट्रक्शन, फोर्थ इज ट्रेडिंग, फिफ्थ इज पावर और जो आपका थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर था किसी जमाने में दैट इज टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन इस लिस्ट से ही क्या हो गया? बाहर हो गया. टेलीकम्युनिकेशन इस लिस्ट से ही क्या हो गया? बाहर हो गया. इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? तो अगली बार अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2023-24 आई एम प्रीटी श्योर आप आंसर कर पाएंगे. दुबई रिलेटेड ये न्यूज थी, उस न्यूज को मैंने इस तरह से एग्जैजरेट किया ताकि अब एफडीआई रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाएंगे. अब आप कहेंगे कि सर अभी तक आपने जो बात की है दैट इज ओनली रिलेटेड टू 2023-24, व्हाट अबाउट 2024-25? तो हैव अ डेटा फॉर दैट एज वेल. रिसेंटली एक न्यूज थी, दिसंबर 2024 में ये न्यूज दी गई थी कि इंडिया हैज रिसीव्ड टिल डेट $1 ट्रिलियन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंस 2000. तो 2000 से लेकर आज तक 2024 तक इंडिया में $1 ट्रिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया गया है, विच इज आई वुड से अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन विच हैज बीन अचीव्ड बाय इंडिया. उसके साथ साथ अगर हम देखें इस बार 2024-25 is showing a good signs in terms of foreign direct investment क्योंकि 26% का इंक्रीज देखा गया इन द फर्स्ट हाफ. तो जो आपका फर्स्ट हाफ था दैट इज फ्रॉम 1st April 2024 to 30th of September 2024 it has been recorded 26% increase in the foreign direct investment and we have recorded a total foreign direct investment inflow of $42.1 billion. तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में we are witnessing as per the data we are witnessing positive or growing FDI rates or FDI data in comparison to the previous financial year. अब इस न्यूज के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन पे जंप करने से पहले अगर आपने इंडिया के बारे में समझ लिया तो क्यों ना ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है वो भी देख ले. तो अगर हम ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई. And if I talk about that particular report is, so that report was presented by UN Trade and Development. And according to that particular report, on global level, foreign direct investment has slowed down by 2%. That means वहां पर ग्रोथ की बजाय कॉन्ट्रैक्शन है. डेवलप्ड इकोनॉमीज में it has witnessed 9% positive. Europe is witnessing a negative
That means there is a contraction in terms of foreign direct investment in Europe, in North America, even in developing economies, in Africa, in Latin America, Asia, हर एक एरिया में सिवाय डेवलप्ड इकोनॉमीज के कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं हटा दूं तो 2023 में ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास क्या देखा गया, नेगेटिव या कॉन्ट्रैक्शन देखा गया इन टर्म्स ऑफ एफडीआई. तो रिमेंबर दैट global FDI has fell down 2% to 1.3 trillion in 2023 as per the latest report which has been presented by UNCTAD. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? Yes, it's absolutely correct, Parmeshwar, because the point is, whenever we talk about stock market, it is basically based on your valuation. It is basically based on the company's valuation, and the valuation depends on revenue as well as turnover and many other factors which can change very abruptly. Now, I have a question for you on the basis of this particular news. Let's see who all can identify that what could be the correct answer for the same. So if I say, the question which can be asked, discuss the factors that are driving India's FDI growth. So we have witnessed that since 2000, India has recorded $1 trillion of foreign direct investment, and even after COVID, foreign direct investment has witnessed a great jump in the country. Keeping that in mind, examiner can ask you a question, discuss the factors that are driving India's FDI growth. अगर ये question आपके सामने आता, what should be your answer? See, if you are writing down the structure, what you should do is, first you should think of introduction, then you should think of the main body, and then you think of the conclusion. I'll not take much time of yours. I'll just jump to the next news, but before that, you must set the stage. And if you are setting the stage where they are saying what are the factors that are driving India's foreign direct investment growth, which means in the question itself, they are saying that India's foreign direct investment is growing. So you should start with the data that the current status of foreign direct investment in India is so and so. It has grown by it has reached to a mark of $1 trillion since 2000, and we have witnessed a positive growth in 2024-25 as well. This should be mentioned in the first paragraph. That is the introduction. In the second paragraph, that is your main body. In the main body, you must discuss the initiatives, the government policies, the government reforms which have been taken up in order to boost the foreign direct investment in the country, and then you conclude with the impact. Then you conclude with the impact of these initiatives. You must be worried and you must be thinking कि sir इससे answer कैसे होगा? Don't worry, I have the answer for you. So I have the structure. Structure says you must set the stage whenever there is a question in this manner, जिसमें question ही positive है. Question itself is lighting on the fact that yes, India's FDI is growing. Then you come up with a statement with a fact that yes, sir, India has reached $1 trillion in foreign direct investment inflow since 2000, and it is further supported by 26% rise in the FDI to $42.1 billion in the first half of the financial year, that is 2024-25. Now, coming to the second, that is the main body. In the main body, you talk about the factors which have influenced, which have boosted the foreign direct investment in the country. So the factors are, first one, bilateral investment treaty with UAE and other countries which have been done by India. Then we have a production linked incentive scheme, Make in India initiative, foreign investment facilitation portal, PM Gati Shakti policy reforms, and FDI liberalizations. These are the initiatives, these are the reform changes which have been done by the government, which has directly as well as indirectly boosted the foreign direct investment in the country. I hope you are getting my point. Guys, I hope you are getting my point. First, set the stage, supporting the question itself. Then in the main body, answer the question. And the question was, what are the factors? So these are the factors which are supporting. So policy reforms, I have included tax reform that has been done related to the corporate tax as well as individual tax, which will undoubtedly boost the foreign direct investment in the country. After discussing the factors, now you need to conclude this answer. So in the conclusion, you must give the results. You must discuss
the results of these initiatives. So the result of these initiatives is India is doing really very well under World Competitive Index. India is doing well. Do share the rank of India in the latest indices. So World Competitive Index, Global Innovation Index, do share India's rank that India has become the third global, or I would say India is ranked third for the greenfield projects as per the World Investment Report, and India has witnessed an improvement in the business environment according to the ease of doing business report presented by World Bank. And these are the reasons, or I would say this is the positive impact of the factors which have been, or the initiatives which have been taken by the government, and due to these initiatives these results have been recorded, and due to these results India is witnessing huge FDI growth. India is witnessing huge FDI growth. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? So this is how you need to write an answer for this particular question, and it is one of the most appropriate question which can be asked in your examination. If it is clear, if you like the discussion, just give me yes sir, so that we can move ahead. So this is how I expect from you all that you should cover a particular news whenever you are studying on your own. The news was just related to Dubai. Most of you must be thinking that this is one of the useless news with respect to RBI Grade B exam. So I made it important because India was on the first rank. That is the reason it is important. Secondly, while covering this particular news, I made it important by including India and FDI. While discussing this, I discussed few facts related to the FDI structure in India. Then we discussed the FDI received by the states, or the states with highest FDI received in the past year, and even we have discussed the sector-wise investment which has been done in different sectors. Is it clear, guys? Is it clear? And even in the end, I have concluded that for 2023-24, I have discussed, or I have shared the actual data. We are still waiting for the actual data for 2024-25, but still we can come up with the first half yearly data which I have shared with you. Okay. This is your descriptive question, and this is the structure you must follow in order to answer this kind of descriptive question. Now, let's jump on to the next news of the day. The next news talks about, so recently, India's life insurance company related, we have come up with a claim settlement report. So what is this claim settlement report? Please pay attention, guys. Let's suppose you visited an life insurance company, and individual A has purchased a life insurance policy from company B, and this life insurance policy says that company B will be paying your family or the nominee at the time of death. And suppose A dies today. The moment A dies, then the family as well as the nominee, they will inform the company that yes, sir, under this insurance policy, राहुल ने या राम ने आपके पास इंश्योरेंस कराया था, और इंश्योरेंस के बदले में अब क्लेम देने का टाइम आ चुका है, आप प्लीज क्लेम दीजिए. सो कंपनी बी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सेटल दिस क्लेम. Company B will be responsible to settle this claim, and this process is known as claim settlement. This process is known as claim settlement. From this particular discussion, we have one more point, and that one more point is, so that is known as claim settlement ratio. Now the question is, so what do you understand by the word claim settlement ratio? When this question is asked, claim settlement ratio, so claim settlement ratio can be calculated in different ways. For example, number of insurance policies sold upon number of claims given. So number of insurance policies sold by the company upon with respect to the number of claims paid. This can be termed as what? So this can be termed as claim settlement ratio. So these are the number of insurance policies against which we have received the death of the nominee, or we have received the death of the insured, and against those number of insurance policies how many claims have been given. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने 100 इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस किए, और उस 100 इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस में
100 इंडिविजुअल्स की डेथ हुई, लेकिन उसमें से केवल 80 इंश्योरेंसेस को ही सेटल किया गया, 20 आर स्टिल, 20 आर स्टिल पेंडिंग. सो व्हाट विल बी द रेशियो? सर रेशियो इज गोइंग टू बी 80%. दैट मींस आउट ऑफ 100 claim request, out of 100 claim demand generated, only 80% have been achieved. Got it, guys? Now, notably, claim settlement ratio for the individual death claims within 30 days. So this is claim settlement ratio within 30 days by the India's private insurance companies stood at a percentage of 99% for the financial year 2024. For the financial year 2024, but along with that, sir, IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India, has released claim settlement ratio in the latest stats, that is known as Handbook on Indian Insurance Statistics 2023-24. So what is important for you? First thing which is important for you is Handbook on Indian Insurance Statistics 2023-24 has been presented by whom? Obviously, sir, the regulator of insurance company, that is IRDAI. And which data is the most important data under this particular report? So the most important data is claim settlement ratio. The most important data is claim settlement ratio. India's largest life insurance company is LIC. Government's largest life insurance company is again LIC. And if I talk about in terms of LIC, so LIC is on the first rank. LIC is on the first rank in terms of number of claims settled. So if someone asks you, name the company which has settled down the highest number of claims related to the life insurance, then your answer should be LIC, which is the largest insurance company of the country. होगी भी क्यों नहीं? क्योंकि अगर इंडिया की सबसे ज्यादा बड़ी largest insurance company है, तो most of the insurance facilities are provided to the public under this insurance company itself, and obviously it is responsible to make the claims. So related to that, I have given you the information. You can just read the name Axis Max Life Insurance. Just read the name LIC, that is important. And lastly, just read out the names of the companies which has provided 100% claim settlement ratio. But मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूज में से ये क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लेम सेटलमेंट रेशियो? और चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन 5 for claim settlement ratio. Then your answer should be, so claim settlement ratio, it is an important metric that shows the trustworthiness of an insurance company. It is expressed in terms of percentage of total claims settled by the company in shortest possible window of 30 days. That means the percentage of total claims settled by the company in the shortest possible window of 30 days. Whenever we talk about insurance, in case of insurance, we have three parties involved. We have three parties involved. One we call it as insured, other one we call it as insurer, and the third one we call it as insurer. Other one we call it as insured party. So the one who is doing the insurance, that is the insurance company, is known as insurer, and that is the reason this point is written again and again. Is it clear? So life insurance is the type of insurance in which insurance is done related to death. That means claim will be paid at the time of death. Beside this, all other insurances which are related to your assets like bike insurance, car insurance, house insurance, for that matter health insurance, they all are included under the category of non-life insurances. Is it clear? Okay. Now, moving on to the next and the most important news of the evening, please pay attention. So, SEBI regulatory framework for SME has come up with the new norms related to the initial public offering. I have few questions before I start the discussion of this particular news. My first question is, when we say small and medium enterprises, and if a company, a small and medium enterprises wants to issue its IPOs, do these IPOs will be issued, or the registration of these companies will be done on Bombay Stock Exchange, on National Stock Exchange, or do we have some separate stock exchanges for small and medium enterprises? Any idea, guys? Any idea? Do we have separate stock exchange for
Small and medium enterprises, your answer should be yes or no. You have to find it out. You have to find it out. First question. Second question for you all is number of stock exchanges in India. Number of stock exchanges in India. You need to share the answers with me. You need to share the answers of these two questions with me in the comment section once I'll complete the discussion, once I'll complete the session. Remember one thing, sir, SEBI has recently notified that small and medium enterprises, if they want to go public means if the company wants to issue the shares openly to the public, that will be allowed only after the approval is given by SEBI. But before you reach to SEBI to seek the approval, there are certain conditions introduced. The first condition is profitability requirement, and also there is a second condition related to the promoters shareholding, or I would say how much shares can be offloaded by the promoters before they sell or before they issue or before they go public. So before I discuss this news, I believe this is one of the most important news of this particular week. It is one of the most important news of this particular week. I want you all to first check this out. Do we have separate stock exchanges for small and medium enterprises? What are the number of stock exchanges in the country? Lastly, you need to go through with one more important topic, that what are the current conditions? What are the current conditions or rules and regulations set by SEBI for small and medium enterprises so that they can go public? So don't worry, I will be discussing this news. I will be continuing this news in the next session. There's nothing to worry, but I want you to do some homework, because this is something which is going to be asked for sure in RBI examination as well as in SEBI examination in the upcoming year itself. Now, as you asked me that, sir, please include the questions based on the previous session. So I have come up with the revision part as well. So let's quickly revise the questions which we have discussed, or revise the news which we have discussed in the previous session. So I have the first question on the same. If you all are ready and you want me to start with the discussion, just give me yes, sir. If you were not present in the previous session, nothing to worry. Just try to answer the question. If you can, it's okay. Otherwise, you will be able to answer the questions from next class onwards, which is going to be on Saturday, same time, 5:15 p.m. If you want me to start with the revision part, if you want me to start discussing the questions based on the previous session, just give me yes, sir, quickly, so that we can begin the discussion without any further delay. So here we go with the first question. The first question is now on your screen. The question says, what are the dates for the Digital Payment Awareness Week 2025, which has been announced by the Governor of RBI, Sanjay Malhotra ji, recently? So what are the dates for the Digital Payment Awareness Week? Is it March 1st to 7th, 5th to 12th, 10th to 16th, 15th to 21, 20th to 27th? What will be your answer? So the answer to this particular question is, so the dates are 10th to 16th of March. I give you an overview. So this has been the 5th Digital Payment Awareness Week, which has been announced by RBI's Governor. It will be celebrated from 10th to 16th of March 2025, and the theme is India Pays Digitally. What is the theme? So the theme is India Pays Digitally. Moving on to the next question. According to the Insurance 100 2025 report, which company emerged as the world's third strongest insurance brand? So please name the world's third strongest insurance brand as per the latest ranking which has been announced by Brand Finance. So as per the latest ranking announced by Brand Finance, life insurance company is the third. Life insurance company is the third strongest insurance brand in the world as per the Brand Finance report, as we have discussed in the previous session. The most strongest brand is Poland-based company, that is PZU. And if I talk about the most valued brand is China-based or Chinese brand, that is Ping An, is the most valued. It is most valued brand, and this is the strongest brand.
I hope it's clear. Moving on to the next news. So the next news says recently Niva Bupa Health Insurance Company, which was earlier known as Max Bupa Health Insurance Company Limited, has introduced Dash, a health insurance plan to address the healthcare needs of India's missing middle. So I hope you remember missing middle. 40% of India's population is included. 40 crore population of India is included under the category of missing middle, and in order to address the needs of the missing middle, Niva Bupa Insurance Company has launched, or it has come up with a health insurance plan. And what is the name of this health insurance plan? So the name of this health insurance plan is RISE. Absolutely correct. Nayak Suman Parmeshwar, you have given the correct answer. Moving on to the last question, second last question, I believe. Who has been appointed as the Executive Director of Reserve Bank of India on 3rd of March 2025? Out of the following, who has been appointed as the Executive Director of Reserve Bank of India? What will be your answer? So the new appointment of the Reserve Bank of India's Executive Director was done recently, and the answer to this particular question is Ajit Ratnagar Joshi. Nayak ji has again given the correct answer. Bahut badhiya. Moving on to the last question. So according to the ICRA's latest projections, what is the expected GDP growth rate for India's financial year 2025-26? For 2024-25, we are expecting that Indian economy will grow at a rate of 6.3%, but for financial year 2025-26, Indian economy is going to grow at what rate? Sir, Indian economy is going to grow at a rate of what percent? Sir, it is going to grow at a rate of 6.5%. So my answer to this particular question is B option. I hope each and every point is clear. चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने देखिए, आज तक हमने बहुत बार n number of times we have heard about domestic systematically important banks. Domestic systematically important banks are declared by RBI, and these are the banks which are too big to fail. And in the current financial year, we have HDFC, we have ICICI, and along with that we have SBI. These are the three domestic systematically important banks of the country. Similar grounds पे, similar agenda के साथ IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India, also comes up with the list of domestic systematically important insurance companies which are too big to fail, or I would say they are too big or too important to fail. They have been identified as domestic systematically important insurers for the financial year 2024-25. So you have the options and you have to give me the answer. चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज आखिरकार आई कहां से. ध्यान से सुनिएगा. रिसेंटली IRDAI, अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है ये? सर, इट इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन द सेम मैनर एज RBI is the regulator of banking sector. RBI is responsible to provide license to the banking sector. In a similar manner, for the insurance sector, we have IRDAI, which holds its headquarters in Hyderabad, Telangana. 129th meeting of the authority was conducted on 12th of March 2025. तो 12 मार्च 2025 को IRDAI का 129th मीटिंग कंडक्ट की गई, और इस 129th मीटिंग में 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई फॉर अस. और जितनी भी अनाउंसमेंट हुई हो, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, बट 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं हमारे लिए मींस फॉर द एस्पिरेंट, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. अगर मैं उन 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की बात करूं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दैट इज रिगार्डिंग द री इंश्योरेंस. See, we all know that what is a reinsurance company. So reinsurance company उस insurance company को कहा जाता है which is responsible to provide insurance services, to the insurance companies. जो insurance companies को insurance की service दे, उसे हम क्या कहते हैं? We call it as reinsurance company. तो recently एक private company को IRDAI ने has given the license to operate. Recently, a private company has received the license from IRDAI to operate as what? Sir, to operate as a reinsurance company. This is the first and the most important announcement.
Second announcement which has been done under this entire discussion or under this meeting was that is related to domestic systematically important insurers, and third important announcement is related to insurance for all. अगर आपको याद हो तो where we all know that government of India is targeting to achieve the target that India will be a developed nation by 2047 and India will have the criteria that is insurance for all, मतलब पूरी की पूरी population will be covered under the insurance facility. So ये तीन major announcements हैं जो हमें इस news से related cover करनी है. So I'll discuss all these three news one by one. So the first and the most important news is, sir, Insurance Regulatory and Development Authority of India has approved the license. Approved the license for what? Sir, for value ethics. For value ethics in Reinsurance Limited, Bengaluru, marking the entry of the first private sector reinsurer in India. तो reinsurer का मतलब क्या होता है? सर, reinsurer वो insurance company है जिसे R2 category में, this is the category which we use, R2 category में license provide किया जाता है, and the reinsurance company, it basically act as an insurance company for the insurance companies. यानी कि ये हुआ जैसा हम कहते हैं RBI is bankers bank, यानी जब बैंक को फंड्स की जरूरत है, then banks they can approach to RBI in order to borrow the funds. Similarly, जो आपकी कंट्री में इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, they have given or they have sold out n number of insurance policies. They are exposed to, I would say, immense exposure. So if they want to reduce their exposure, if they want to decrease the risk, they can get themselves insured from the insurance company, and the insurance company which insures the insurance companies is known as reinsurance company. So recently एक प्राइवेट कंपनी को पहली बार लाइसेंस दिया गया to operate as a reinsurance company, and this license has been given under the category which is known as R2 category for reinsurers, जो signify करेगा that company is authorized to conduct the reinsurance business exclusively. Reinsurance business exclusively. Now you must be wondering, क्या sir India में we do have any other reinsurance company which is pre-existing? Yes sir, in India we have only one. The only domestic reinsurer company which is operating in the country is known as GIC Reinsurance, that is General Insurance Corporation of India, जो कि एक government owned company है which hold its headquarter in Mumbai, Maharashtra, and it is in the business since 1972. और सबसे important चीज, this company is designated as reinsurance company since 2001. So after liberalization since 2001, GIC was designated as the national reinsurer. It was designated as the national reinsurer. अब बात करते हैं उस कंपनी की जिस कंपनी को हाल ही में IRDAI ने लाइसेंस दिया कि आप ऑपरेट करेंगे एज अ री इंश्योरेंस कंपनी. तो उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द कंपनी इज वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस, विच इज प्रमोटेड बाय ओबेन वेंचर्स लिमिटेड, which is led by Kamesh Goyal. If you remember, Kamesh Goyal is related to a insurance company. If you can recall, give me the answer in the comment section. As well as it includes Mauritius-based FAL Corporation associated with Prem Watsa. He is the CEO of Canada-based Fairfax Financial Holding Limited. तो ये दो नाम important हैं. These two names are important. They remain in news. इसीलिए मैंने दोनों नामों को आपके लिए highlight कर दिया just for your information. But what you have to remember the name of this particular company, and this company currently possesses a paid up capital, the investment of 210 crores. Got it, guys? Is it clear till this point? Okay, I will be taking your doubts as well, Aditya, as well as journey of mine. I'll take your doubts. Don't worry. Give me some time. Let me complete a particular news. Then I will be taking your doubts as well. थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा. Go digit is absolutely correct. Kamesh Goyal is related to co digit. That is absolutely correct. तो पहली न्यूज, हमारा जो पहला अनाउंसमेंट है under this meeting, that is related to what? So under this meeting, the first and the most important announcement is IRDAI has granted private reinsurance company a license to operate as a reinsurance company in the country, and the name is Value Ethics. What is the second news? So the second news is recently IRDAI has identified 3 companies. Undoubtedly, one is the largest owned life insurance company of the country.
the government owned life insurance company of the country, world's third strongest insurance brand, world's third strongest insurance brand. The name is Life Insurance Corporation of India is included in this list. Second, we have New India. Assurance Company, and the third we have none other than the insurance company, that is General Insurance Corporation of India. So these three companies, they have been designated. They have been designated as what? So they have been designated as domestic systematically important insurers. Remember that कि ये जो term है DSII, it is designated. ये जो term है, this designation is given to a company on the basis of size of the company, market importance, as well as domestic and global interconnectedness and the importance of the company. If this company goes in stress, then this will impact the entire economy of the country. So all those companies which can impact the globe, which can impact the national economy, those insurance companies are generally included under the category of domestic systematically important banks. And right now we have LIC, GIC, and we have New India Assurance. We have New India Assurance Company. These are the three companies which have been designated as domestic systematically important insurers. Before I move to the question, please pay attention on the screen, guys. Please pay attention on the screen. This is going to be really very beneficial. Acha. Sir, is there any minimum paid up capital for the reinsurance company? The minimum paid up capital for the reinsurance company, if we talk about, that is not pre-decided, but there are certain norms which are being fixed depending upon the era of your operation. So right now, this pre-limited, or I would say the pre-requirement of paid up capital is not being fixed. Moving to the next point, if someone asks me, sir, domestic systematically important insurers are those companies which are too big or too important to fail. These are those companies, if they go into risk, if they witness any kind of stress, this is going to impact the entire economy of the country, and on this basis, these companies are shortlisted. So whenever we talk about DSIIs, so these insurance companies, they raise the level of corporate governance. That means they come up with a better corporate governance in their companies, which will become a kind of example, for the other insurance companies कि भैया आप भी इसे follow करो. Second point is, it identify all the relevant risk and promote a sound risk management framework and culture. So this is very important that the domestic systematically insurance company should raise its level of कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वो आइडेंटिफाई करे सभी रेलेवेंट रिस्क को और उस रिस्क को मिटिगेट करे, मैनेज करे, विच विल बिकम एन एग्जांपल फॉर द अदर्स. अगर हम बात करें DSIIs की, लाइक domestic systematically important banks, they are also asked to perform, they are also asked to maintain enhanced regulatory supervision. अगर आपको याद हो, जब भी कभी हम CAR, CCB, capital adequacy ratio, capital conservation buffer या leverage ratio की बात करते हैं, so these all ratios, they are at a higher level, or they are asked to be maintained at a higher level by the domestic systematically important banks, so that they remain strong, they remain existing in order to avoid any kind of impact on the Indian economy. तीसरी जो न्यूज है, थर्ड जो न्यूज है हमारी इस पर्टिकुलर मीटिंग से, दैट इज रिलेटेड टू बीमा सुगम. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस बीमा सुगम? बीमा सुगम के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था इन लास्ट ईयर, और उसके बाद in last 6 months there have been n number of updates related to Bima Sugam. Actually Bima Sugam क्या है? So Bima Sugam is basically a digital platform which is being developed by IRDAI, और इस digital platform पे all the insurance companies, they will come, they will register themselves, and they will be selling out their insurance policies directly to the customer. And if the insurance policy is sold out directly to the customer, it will decrease the intermediary expenses, and if the intermediary expenses decreases, then the public or the customer will be able to purchase these insurance policies at a lower premium value. So that is what is known as Bima Sugam. But there are two options. One option is you can purchase directly. You can purchase the insurance policy directly, but if you need any kind of assistance, then you can also opt for the intermediary which will help you to purchase the insurance policy. So recently इस particular meeting में
रिसेंटली इस पर्टिकुलर मीटिंग में देयर हैज बीन एन अनाउंसमेंट ये थी कि सर बीमा सुगम जो कि एक फाउंडेशनल सुगम कंप्लायंसेस एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस आर लुक्ड आफ्टर बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, जो कि एक एंटिटी है which has been formed by the insurers, to set up insurance electronic marketplace, the digital public infrastructure which is going to be set up under IRDAI regulations 2004. अगर हमसे कोई पूछे क्या है ये बीमा सुगम, तो मैं आंसर क्या दूंगा सर? बीमा सुगम एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस है फॉर इंश्योरेंस which will allow the customers to buy, renew, claim and settle disputes related to various insurance products, चाहे वो life insurance है, health insurance है, general insurance है. So it will be a kind of electronic marketplace, जैसे मियंत्रा है, जैसे फ्लिपकार्ट है, जहां पर जाकर आप दुनिया भर की चीजें खरीद सकते हैं. बिल्कुल एक नया मार्केट प्लेस सेटअप किया गया है जहां पर जाकर यू कैन परचेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज, वेदर इट इज लाइफ, वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज जनरल इंश्योरेंस, विच इज अवेलेबल बाय डिफरेंट sellers, by different companies. If someone asks me what is the role of BSIF, so Bima Sugam India Federation का role है that it is the entity which is responsible for building and operating this digital platform. So who is going to build and operate Bima Sugam? So Bima Sugam is going to be built and operate by the Bima Sugam India Federation. Second point, what is the purpose? ये Bima Sugam क्यों लाया गया? सर बीमा सुगम को लाया गया किस पर्पस से? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सर, टू मेक द इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन सीमलेस, eliminate the need for intermediaries, agents, reduce paperwork and improve the overall experience for the customers. अगर हम बात करें what is the status? Sir, the status is foundational structure or the foundational actions have been taken. Now the platform is ready for the industry participants. Once the industry participants will enter in, that means once the insurance companies, they will come in and they will register themselves, then the marketplace will be open for the public and you will be able to purchase. Now the way you all are mentioning, I also have the same doubt कि सर ये जो बीमा सुगम है, when it was launched, sir, it was launched under a term that is Bima Trinity plan. So what is this Bima Trinity plan? So Bima Trinity plan is basically an initiative taken by the Indian government as well as IRDAI to promote the insurance sector of the country as well as to achieve the target. And what is the target? So the target is insurance for all by 2047. Insurance for all by 2047. और ये जो बीमा ट्रिनिटी है, 3 announcements were made. First announcement was बीमा सुगम, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, डिजिटल मार्केटप्लेस. Second is Bima Vistar. Now the question is, so what is this Bima Vistar? Bima Vistar का मतलब है, अगर आप, if you talk about yourself, you purchase car insurance, then you purchase house insurance, you purchase health insurance, you purchase life insurance. Rather than purchasing different insurances, that too from different insurance companies, and there is a liability of paying the premium on different occasions all along the year, it's better to switch to a single composite insurance policy. So this is what Bima Vistar is, a composite insurance product that will provide coverage of range of needs, where you will have life insurance, accidental insurance, property insurance, health insurance, and this product is designed to offer comprehensive protection under a single policy. Which will undoubtedly reduce the complexity of managing the different insurance plans, complexity of paying the premiums differently for different insurance policies. It's better that you purchase a single policy and include all your requirements under the single insurance policy. और उसी single insurance policy में आपकी बाइक, आपकी कार, आपकी हेल्थ, आपका फोन, आपका घर, आपकी लाइफ, सब कुछ इंश्योर किया जाएगा, which will be an easy and seamless initiative taken by the IRDAI. Third point is Bima Vahak. Trinity है ना, Trinity means 3. So in the Trinity, first one was Bima Sugam, second one is Bima Vistar, third one is Bima Vahak. What is this Bima Vahak? So this is the third component of Bima Trinity, जिसका नाम है Bima Vahak, which is specifically designed. क्यों डिजाइन किया गया? Sir, to empower women in rural and semi-urban areas. ये है क्या? Sir, ये women centric initiative है जो aim कर रहा है to increase insurance penetration by involving women
by involving women as local distributor of insurance products. So इसमें कोशिश ये की जा रही है कि सर हम इंश्योरेंस सर्विसेज का पेनिट्रेशन बढ़ाएं, और जो पेनिट्रेशन बढ़े दैट शुड बी विद द हेल्प ऑफ वुमेन. तो यहां पर लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बीमा वाहक सेटअप किया जाएगा, which will not only provide greater access to the insurance but also promote financial inclusion and gender equality in this sector. तो बीमा वाहक से होगा क्या कि सर जो लोकल लेवल पर women they will come together, ग्रुप्स बनाए जाएंगे women के, and these women groups they will be responsible to reach to the interiors of rural as well as semi-urban areas, ताकि एक तो इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन हो, और women will explain the benefits of insurance facilities to the women, जिससे कहीं ना कहीं जो opting of insurance policy है that will increase. Opting of insurance policy will increase. समझ आई बात? पहला पॉइंट क्या था? So the first point was related to the license. Second point was related to domestic systematically important insurers. Third point was related to Bima Sugam. And the last point in this particular insurance meeting was related to state insurance plan. I hope you all are very aware कि IRDAI ने एक स्टेट इंश्योरेंस प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी मदद से IRDAI is trying to achieve insurance for all by 2047. क्या है सर ये जो IRDAI का न्यू इनिशिएटिव, इट इज बेसिकली टू इंश्योर सिटीजंस कि वो एक्सेस कर सकें अपने एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कवरेज को. फोकस एरिया क्या है सर? एक्सेसिबल बनाना इंश्योरेंस को, अफोर्डेबल बनाना, इनोवेशन के जरिए न्यू एंड इनोवेटिव पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना. स्टेट लेवल प्लान पे IRDAI इज वर्किंग ऑन क्रिएटिंग स्टेट लेवल प्लान सिमिलर टू स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, जिसकी मदद से एड्रेस किया जाएगा कि हर स्टेट की क्या नीड है और उस नीड के हिसाब से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. देन अगेन लाइक लीड बैंक स्कीम वी विल बी इंप्लीमेंटिंग लीड इंश्योरेंस सिस्टम. बीमा वाहक को डेवलप किया जाएगा एंड कॉल टू एक्शन विच मींस इंक्लूड एज मच पॉपुलेशन एज यू कैन in order to achieve the targets related to the insurance sector. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. तो न्यूज बड़ी छोटी थी. न्यूज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको IRDAI की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे यू विल गेट 4 पेजेस PDF, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर 4 पेजेस की PDF होगी ऑन दिस मीटिंग. लेकिन उसी PDF में से जो इंपॉर्टेंट पार्ट था आई हैव इंक्लूडेड इट इन माय डिस्कशन एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट up till the depth required for your examination. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Domestic systematically important insurers are perceived as insurers that are too big or too important to fail. Dash were identified as domestic systematically important insurers. Sir, LIC is identified? Yes, sir. GIC is identified? Yes, sir. And we have the last one, that is New India Assurance Company Limited. So इसका मतलब what will be my answer? So my answer would be B option, क्योंकि these are the 3 companies which have been termed as domestic important insurance, domestic systematically important insurers of country. Is it clear? Is it clear, guys? Have you all enjoyed the discussion? If you all have enjoyed the detailed discussion of this particular news, just give me yes, sir. देखो बहुत बार I get the messages कि सर हर न्यूज को इतनी डिटेल में पढ़ना जरूरी है. माय आंसर इज नो. हर न्यूज को डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक न्यूज से रिलेटेड जब अलग अलग एस्पेक्ट्स को आप टच करते हैं, इट्स नॉट कि आप एक न्यूज को डिटेल में पढ़ रहे हैं. इसका मतलब यह है कि उस न्यूज से रेलिवेंट कंटेंट को भी आप कवर कर रहे हैं. दिस रेलिवेंट कंटेंट कवरेज विल हेल्प यू टू राइट अ गुड डिस्क्रिप्टिव आंसर. इट विल हेल्प यू टू आंसर मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन योर फाइनेंस पेपर 3 in phase 2 as well as in the phase 1 examination, that is general awareness section. Clear, guys? Shall I move ahead? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. The next question I have for you all is, the next question is, on the International Women's Day, which organization has launched Asmita scheme? What is this Asmita scheme? Sir, it is a collateral free digital loan designed exclusively for women-led micro, small and medium enterprises in India. देखो, we all know that MSME is one of the most important sector of Indian economy in terms of its GDP contribution as well as in terms of its export contribution. And keeping in mind GDP as well as export contribution, MSME sector is one of the most important sector. और जैसा कि इस बार के बजट में भी बताया गया कि MSME
क्रेडिट डिमांड, एमएसएमई सेक्टर की जो क्रेडिट डिमांड है, इट इज वे हाई देन द क्रेडिट सप्लाई, यानी कि जो एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है उससे बहुत ज्यादा डिमांड है एमएसएमई सेक्टर की रिलेटेड टू दी credit requirements, and that is the reason a number of initiatives have been taken over the period of time by different organizations. तो अब हमारा जो क्वेश्चन है कि सर ये जो अस्मिता स्कीम है ये किस बैंक ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की? लेट्स फाइंड आउट द आंसर. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has introduced Asmita, a digital loan with no collateral that is the only loan available to women led MSMEs. यानी कि अगर कोई माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस है which is led by women, then this MSME is eligible. This MSME is eligible to approach State Bank of India. और वो भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है. You can reach to the State Bank of India's website and you can opt for Asmita, that is a digital loan which will be provided without collateral. जैसे ही आपके दिमाग में without collateral loan आए, जैसे ही आपके दिमाग में विदाउट कोलेटरल वर्ड आए, विदाउट कोलेटरल में दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है. इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस, इंडिया में जितना भी माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है फॉर बाय द बैंक्स, एनबीएफसीज, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कोलेटरल, नो कोलेटरल, यानी बिना कोलेटरल के माइक्रो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय द बैंक्स, एनबीएफसीज. एंड नाउ वी हैव अ स्पेसिफिक स्कीम, digital loan only and only to the women led MSMEs, and that is basically termed as Asmita. यहां पे मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा. The moment I read word women, I'll also talk about a term that is Stand Up India. I hope you all remember Stand Up India. Manish sir has taken class, I would say yesterday only. हाँ, कल ही उन्होंने Stand Up India पे क्लास ली और उनमें उस क्लास में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया भी होगा कि विमेन, SC एंड ST लेड जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, दे आर एलिजिबल टू बोरो द लोन, और यहां पे जो लोन मिलेगा दैट विल बी इन अ रेंज ऑफ 10 lakhs to 1 crore. So again that is related to women, तो ये पॉइंट भी आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं. So to give women entrepreneurs simple access to low interest financing and all encompassing support to help the grow enterprises, Asmita launch follows a ट्रांस यूनियन. ये लॉन्च क्यों किया गया, उसके पीछे रीजनिंग क्या है? सर अस्मिता को लॉन्च किया गया क्योंकि रिसेंटली ट्रांस यूनियन जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है विच इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन इंडियाज लार्जेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, दैट इज सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो सिबिल के रिसर्च ने बताया, द सिबिल रिसर्च which has been done, the research which has been done by SEBI, it has brought attention to the low number of women who take out business loan. तो business loan जो women's ले रही है, the count of those number of business loans is very low. और उसी रिसर्च को, उसी रिपोर्ट को देखने के बाद, समझने के बाद SBI realized that this is the market which has a potential as well as this is the market which requires the credit for women empowerment, women upliftment. So they came up with Asmita scheme. तो याद रखिएगा सिर्फ 3% of women borrowings were for commercial objective. तो women जितनी भी borrowings करती हैं, out of the total borrowings done by women, only 3% is utilized for the purpose of entrepreneurship or business. So coming back to the news, the question says, on the occasion of International Women's Day, which organization has launched Asmita scheme? So Asmita scheme has been launched by none other than State Bank of India. None other than State Bank of India. Got it, guys? Moving on to the next news. Again, really very important. The next news says, which Indian bank recently launched a specialized saving account exclusively for women NRIs? So the NRI women's, what are NRIs? So NRI basically stands for non-resident Indians. How we define the word non-resident Indians? So non-resident Indian का मतलब है, non-resident Indian का मतलब है the individual who reside outside India for more than 182 days out of 364. यानी एक साल में जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया के बाहर रहे, उस इंडियन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज नॉन रेजिडेंट इंडियन. तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स. इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट फॉर द नॉन रेजिडेंट इंडियंस वी हैव एनआरई अकाउंट,
we have NRO account, सुना आपने इन accounts के बारे में, and even we have foreign currency FCNR account. Even we have FCNR account. Have you heard about these three accounts? अब जब मैंने ये न्यूज देखी तो मेरे दिमाग में दो चीजें आई कि सर इस न्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा. द क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन, दिस हैज अ पोटेंशियल दैट इट विल बी आस्क्ड इन फेज 1. लेकिन अगर न्यूज में एनआरई एनआरओ अकाउंट्स हैं, देन आरबीआई कैन आस्क अ क्वेश्चन इन फेज 2 जो पहले भी पूछा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनआरई एनआरओ एंड एफसीएनआर. तो अगर आपको ये तीनों अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. तो उसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं. आई हैव द एंटायर आंसर फॉर यू ऑन द स्क्रीन. तो क्वेश्चन क्या है, अगर हम एनआरई अकाउंट की बात करें तो व्हाट इज एनआरई अकाउंट. सबसे पहली चीज, सर एनआरई अकाउंट वो अकाउंट है विच वी कॉल इट एज नॉन रेजिडेंट, which we call it as non-resident. E stands for what, guys? This is ordinary. Non-resident rupee ordinary account. This is non-resident rupee external account. Am I correct? Okay. Now in this particular scenario, you need to understand these two accounts very carefully. In NRE account, when an NRI open up this particular account, the deposits are maintained in INR. This account can be opened by an NRI. It can be opened jointly. Yes, sir. It can be opened jointly with both the residents as well as non-resident Indians. What is the types of this account? Can be saving, current as well as term, that is fixed deposit. What is the purpose? This is very important. What is the purpose of NRE, that is external account? So the purpose of external account is कि अगर मैं इंडिया से बाहर रह रहा हूँ and if I am earning outside India and now I want to save my external earnings back in India, that can be done with the help of these accounts, that is NRE account. So NRE accounts are used to hold overseas savings remitted to India and then they are converted into INR. Repatriation, which means can I withdraw, can I take back this amount back to US if I am residing in US, that is allowed. Transfer of funds from one account to another account. So funds can be transferred from one NRE account to another NRE, NRO or resident account, that is allowed. Deposit of rupee funds generated in India. No, you cannot deposit the rupees which you have generated in India. मान लो कि मैं एक NRI हूँ और मेरा एक लैंड है इंडिया में और एक बिल्डिंग है इंडिया में जो कि रेंट पे है. That rent cannot be credited into my NRE account क्योंकि NRE account में I can only and only credit the income which I am earning externally. That means outside India. Externally जो income earn होगी, that income can only be earned. This account is tax free. ना तो principal ना ही interest, किसी पे कोई tax charge नहीं होगा. What is the status of the account when NRI returns to India? जब NRI returns to India, in that particular case, account will be converted into common resident account. And is power of attorney allowed? Yes, sir. You can transfer the power of attorney. Power of attorney का मतलब you transfer the powers to operate this account to someone else. Is it clear? Now, next point is NRO account. That is non-resident ordinary account. This account is again in INR. Who can open such account, sir? NRI can open. Resident before becoming an NRI can also open this account. Can it be opened jointly? Yes, sir. You can open it jointly with NRI or with the resident of India. Saving, current, term involved. NRO account क्यों खोला जाता है? Sir, this account is basically open to hold Indian income. For example, the income which you are earning from rent, the income which you are earning from dividend against your share investment. For that particular purpose, NRO accounts are holded by NRO accounts are holded by whom? So they are holded by the NRIs. Second point is, sir, repatriation. That means can I take this amount back? Yes, sir, you can take this amount back, but there is a limit. The limit is $1 million. The limit is $1 million of principal can be $1 million of principal. $1 million of principal can be repatriated in one financial year, but on the other side, interest is freely repatriable. You can whenever take the interest, but interest will be repatriable after paying the TDS, that is tax deducted on source, which means interest will be charged under tax. So funds can be transferred from NRE to NRO as well as resident account. Deposit, yes, it is allowed.
that means you can deposit the funds in this account from India, that is allowed. It is taxed as per the tax slab. It is converted to resident account if you return back, and yes, power of attorney, it can be issued against this account again. Got it, guys? Last and the final account is foreign currency non-resident account. Foreign currency non-resident account is basically a term deposit account in which you can deposit your foreign currency but in a term deposit format, and only 6 currencies are allowed to be deposited in this account, which include US dollars. Second, we have Australian dollar. Third, we have Canadian dollar. Then we have British pound, as well as we have euro, and we have Japanese yen. So these are the 6 currencies which are allowed, which are accepted under foreign currency non-resident account. These accounts can be opened only and only by NRIs. It offers you only fixed deposit or term deposit facility. Accounts are only in the form of term deposit, and the term deposit maturity is in a range of 1 to 5 years. Rest all the conditions are same, but important is FCNR account is tax free, NRE account is tax free, but NRO account is not tax free, क्योंकि अगर आपने इनकम इंडिया में कमाई है तो उस इनकम पे इंडिया में ही आपको पैसा देना होगा. जो आप बात कर रहे हैं LRS, that is liberalized remittance scheme. Liberalized remittance scheme basically means an individual in India can transmit, can take off, can carry, can transfer $2.5 million. Sorry, it's $250,000. It's not $2.5 million. It is $250,000 या $2.5 लाख भी आप कह सकते हैं. तो $250,000 are allowed which you can transfer, जहां पे individual should not be an adult. अगर individual एक child है then also this limit is allowed. ठीक है? Is it clear? हाँ, that is different. That is absolutely different. That is basically means कि मैं एक Indian resident हूँ. I am residing in India. My younger brother is studying outside India. I can remit $250,000 per year to his account without any prior approval. That is liberalized remittance scheme. But what we are talking about in this case, we are saying that my younger brother, now his studies are complete. He is residing in Australia and he owns a land, he owns a building in India. और उस बिल्डिंग पे the rent which is paid on that particular building, that rent amount is credited into his NRO account, and on that NRO account interest will be charged under taxation. Second is, if my younger brother wants to withdraw this amount back into its Australian account, that is allowed. Interest is freely allowed to be remitted, but the principal is not allowed freely remittable. In that particular case, we have a limit of $1 million per financial year. कहानी में difference है. I hope now it is clear to you. I hope now it is clear to you, कार्तिके LRS है हमारे लिए, और ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, this is for NRI. दोनों में difference है. Is it clear now? NRE purpose to use, please एक्सप्लेन सर. एनआरई का पर्पस क्या है? एनआरई का पर्पस बहुत सिंपल है. पर्पस क्या है कि आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि आई एम अर्निंग इन यूएस एंड और इन एनी यूरोपियन कंट्री where banks, they are not paying interest on my savings. If bank is not paying interest on my savings, it's better to deposit my savings back in India, where I will be earning interest on my deposits first. Second is, if Indian currency is depreciating, that means it is a best time to deposit as much amount as I can. For example, 1 euro is equals to 100 rupees. After a few days, I got a news that 1 euro is equals to 110 rupees. I will transfer my amount into the NRE account. And if I want to transfer the funds to my family, that can be easily done. So for that particular purpose, NRE accounts are basically holded by the NRIs. Is it clear? NRE का मतलब है आप अपनी फॉरेन सेविंग्स इंडिया में, फॉरेन अर्निंग्स इंडिया में सेव कर रहे हैं. एनआरओ का मतलब है यू आर सेविंग योर इंडियन अर्निंग्स इनटू द एनआरओ अकाउंट. एंड फाइनली एफसीएनआर का मतलब है यू आर सेविंग योर फॉरेन income into the foreign currency in India itself in order to avoid exchange rate risk as well. Is it clear now? Is it clear now? Journey of mine. If it is clear, chalo. Now let's read out the news quickly. So what was the news? So the news says Bank of Baroda
Global Women NRE and NRO saving account was introduced by Bank of Baroda. So the goal of this program is basically to meet the special financial requirements of female NRIs as well as their worldwide aspirations. So these are the benefits which you are going to enjoy. Just read it, don't memorize it. No question is going to be asked. Question will be asked on this format only. So your answer is going to be Bank of Baroda, and this question will be asked in your descriptive format. So you need to answer the descriptive question in this form, pointers form, where you will be making the subheadings. If they ask you difference between NRE, NRO and FCNR account, so you will be writing in this manner. So these accounts are holded by the non-resident Indians, and these accounts are basically termed as foreign currency accounts in the Indian banks. So first we have n number of differences between them. The first difference is currency. Second difference is who can open such account. First write currency, explain all three. Then write who can open such account, explain all three. In this manner, you have to write your descriptive answer to score maximum in this particular question. Is it clear, guys? Is it clear? Enjoyed the discussion? Give me yes, sir, so that I can move on to the next question. Give me yes, sir, quickly, so that I can move on to the next question, please. Jaldi reply karo so that I can move ahead. The next question is, recently IIFL Finance rebrand 7 existing branches into all women staffed Shakti branches on Women's Day. In which region are the 7 Shakti branches of IIFL Finance located? So if the question is asked, recently name the organization which has converted its 7 branches into all women staffed branches named as Shakti, then your answer will be IIFL Finance. IIFL has rebranded its 7 existing branches into all women staffed branches known as what? So known as Shakti branches, and these branches are located in which? Let's try to find out. So IIFL has recently rebranded 7 of its branches as Shakti branches, which are staffed entirely by women. Bahut easy hai. Mumbai as well as Delhi NCR are holding these 7 branches. Shakti branches, undoubtedly they honor the social and economic transformation in the society. In addition, it provides financial literacy training for the female entrepreneurs. These branches will serve all the borrowers. So it is going to serve all the borrowers, whether male or female. It will provide financial literacy training to the female entrepreneurs, but the entire staff is going to be women. So the answer to this particular question is, so these 7 branches are converted in region of Delhi NCR as well as Mumbai. So Mumbai and Delhi based IIFL 7 branches have been converted into all women branches, and that is basically termed as what? And so that is basically termed as Shakti branches. Previous question का आंसर था Bank of Baroda. Shaurya Badoni, I have given the answer, और इस question का आंसर है that is Delhi NCR and Mumbai metropolitan region. Moving on to the next news. So recently, the Reserve Bank of India issued a framework on self-regulatory organization for account aggregators. When did the Reserve Bank of India introduce account aggregator framework? If you remember, ये हमने past में question discuss किया था. If you can answer this question, it's very well. Otherwise, I'll move on to my next news, which I hold it in the last class, if you remember. In the last class, we discussed this point that the small and medium enterprises or small and medium private limited companies, they are allowed to issue IPOs, but before they go public, from private limited to a limited company, they need to follow certain norms which are decided by SEBI. And it is not only for small and medium enterprises, it is for all the companies which want to go public. They need to follow the norms of SEBI, then only they will be allowed to issue shares openly to the public so that they can raise funds from the public, which we call it as initial public offering. So what are the changes or what are the new frameworks introduced? SEBI has notified regulatory framework for small and medium enterprises initial public offering. It has introduced that there should be a profitability requirement. So if small and medium enterprises wants to go public, that company should be profitable before it goes public, and
the company will be issuing 20%. Company will be issuing 20% of its total size on offer for sale component. That means only 20% of its only 20% of its capital will be issued under the offer for sale, or total size will be issued under the offer for sale component. Selling shareholders are not allowed to offload more than 50% of their existing holdings. तो ये 3 points हैं which I am going to explain. Sorry, these are the 3 things which I am going to explain one by one in much detail. So please pay attention. First is minimum operating profit. Small and medium enterprises, if they plan to come up, or if they plan to go public, if they want to issue initial public offering, they are required to show a minimum operating profit. Minimum operating profit का मतलब क्या होता है? Sir, operational profit का मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा. For a company, when we make the company's P&L, that is profit and loss statement, we first write down the turnover, that is the total sale. We also use a word revenue. From this, we subtract cost of goods sold. In case of cost of goods sold, we include labor, we include raw material, we include all the expenses related to the manufacturing unit, and this gives me gross profit. So out of my gross profit, what I do is, now I subtract my operating expense. Operating expense means I am subtracting the expense. I am subtracting the expense which I am occurring on my CS, which I am occurring on my marketing guys, which I am occurring on my sales guys. So beside manufacturing, उसके अलावा जो भी बचा, that is my operating expense. After I subtract the operating expense, I receive the term that is known as earning before interest, taxes, earning before interest, taxes, depreciation and amortization. तो अगर आपकी कंपनी का ये पार्ट टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करके जो वैल्यू आएगी, दैट शुड बी एटलीस्ट 1 करोड़ इन लीस्ट 2 ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर. तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में से कम 2 फाइनेंशियल ईयर्स ऐसे हो, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में से कम 2 फाइनेंशियल ईयर ऐसे हो जिसमें आपका EBITDA कितना हो, सो दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 करोड़. सेकेंड पॉइंट इज शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स. जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की ओवर द मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी सब्जेक्ट टू फेज्ड लॉक्ड इन पीरियड. 50% of the excess holding will be released after 1 year, and while the remaining 50% will be released after 2 years. तो यहां पे ये पॉइंट समझ लो बहुत ध्यान से कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं हमारी कंपनी के, उनके ऊपर एक मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का क्लॉज है, दैट इज फेज लॉक इन पीरियड. तो जो आपका 50% ऑफ द एक्सेस होल्डिंग है, जो 50% से ज्यादा की होल्डिंग है, वो रिलीज होगी आफ्टर 1 ईयर, और बाकी की जो रिमेनिंग 50% की होल्डिंग है वो रिलीज होगी आफ्टर 2 इयर्स. तो ये फेज्ड मैनर में यू हैव टू लिक्विडेट योर शेयर्स बीइंग अ प्रमोटर. तीसरी कंडीशन यहां पर क्या है? तीसरी कंडीशन है द न्यू फ्रेमवर्क हैज इंक्रीज्ड डबल द मिनिमम एप्लीकेशन साइज. नाउ यू कैन अप्लाई फॉर 2 lots which was earlier allowed for 1 lot only. तो आप एप्लीकेशन अब 2 lots के लिए डाल सकते हैं. The new framework has mandated small and medium enterprises to publish. What to publish? To publish their draft red herring prospectus. ये क्या होता है ये समझ लो. ये क्या होता है ये समझ लो. जब भी कभी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी wants to go public, it reaches to SEBI, और SEBI को कहती है कि SEBI I want to go public, I have done pretty well in the past. तो SEBI कहती है कोई बात नहीं, you come up with your proposal. तो you come up with your prospect. तो SEBI के पास एक prospect डिपॉजिट किया जाता है. We call that prospectus as red herring. So this red herring prospectus basically include कंपनी का पास्ट, कि कंपनी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या ग्रोथ दिया कंपनी ने पिछले कुछ 5 सालों में या 10 सालों में, और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इस कंपनी का, और क्या फ्यूचर ROI आपको मिल सकता है if you are investing in this company. When this entire proposal is submitted, SEBI will analyze the proposal and then SEBI will finalize that whether you will be allowed to go public or not. तो SEBI ने क्या कहा कि ये जो आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये आपको
पब्लिक कमेंट्स के लिए रखना होगा फॉर 21 डेज. दैट मीन्स यू पब्लिश योर ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर पब्लिक कमेंट फॉर 21 डेज एंड दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन एसएमई एक्सचेंजेस, इशूअर वेब पोर्टल एंड मर्चेंट बैंकर, जहां पर पब्लिक आकर अपने कमेंट्स दे कि व्हाट शुड बी योर प्रोस्पेक्टस, व्हाट शुड बी द चेंजेस यू नीड टू डू इन द प्रोस्पेक्टस. फाइनली सेबी अप्रूवल देगा एंड देन यू कैन इशू द शेयर्स. Then you can issue the shares. Last but not the least is SEBI has recently imposed certain restrictions on how IPO proceeds can be used. The amount allocated for general corporate purposes is now capped at 15% of the total issue size or 10 crore whichever is lower. तो इसका मतलब ये है कि जो आप पैसा रेज करेंगे IPO से, उसमें से 15% या 10 करोड़ जो भी कम होगा वो अमाउंट आप यूज करेंगे फॉर द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. और यहां पे एक और पॉइंट है, आईपीओ जो पैसा रेज करेगा, आईपीओ से जो पैसा रेज किया जाएगा बाय एसएमई, दैट शुड नॉट बी यूज्ड टू रीपे द लोन्स टेकन फ्रॉम प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स और रिलेटेड पार्टीज. तो जो भी आपने लोन लिया है प्रमोटर से, प्रमोटर के ग्रुप से, प्रमोटर की रिलेटेड पार्टी से, अब जो आईपीओ से पैसा रेज करोगे, दैट शुड नॉट बी यूज्ड to repay that loan. That is very important point. So these are certain conditions which has been introduced. Last but not the least is, if the post issue paid up capital after further issue exceeds 25 crore, then in such cases SME listed companies will be allowed to raise additional funds. अगर आपका paid up capital after issue, जब आपने IPOs issue किए and you have a paid up capital of more than 25 crores, then you will be allowed to reissue or you will be allowed to issue the shares again whenever required. ठीक है जी. तो ये कुछ important points है which you need to remember, and remember that the latest changes have been done by SEBI in case of what, sir? In case of small and medium enterprises which are thinking to go public in the near future. Last but not the least is the last question I have for you all is, as per the report, TransUnion, SEBI and FACE partner to launch consumer education initiative. What is the name of the initiative launched under this partnership? So इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूं. SEBI, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, and we have FACE. What is this FACE? It stands for Fintech Association for Consumer Empowerment. Fintech Association for Consumer Empowerment is basically self-regulatory organization which have been approved by RBI, and right now it has more than 165 fintech companies registered, which means more than 75% of the fintech companies are registered on this self-regulatory organization. And this organization is basically trying its level best to interact with most of the fintechs to provide seamless and appropriate services to the public. So this initiative has been named as what? So this initiative has been named as SEBI Jagaran, aims to improve credit education as well as facilitate easy access to credit for customers via fintech solutions. So TransUnion SEBI will provide knowledge and expertise to develop co-branded and customized educational content. FACE is what? So it is Reserve Bank of India's recognized self-regulatory organization in fintech sector, which is currently having 165 plus fintech members, which is promoting financial literacy and credit awareness. So coming back to the news, TransUnion SEBI and FACE partners to launch Consumer Education Initiative. What is the name of this initiative? So the name of this initiative is SEBI Jagaran. The name of this initiative is basically what? So it is SEBI Jagaran. So do you cover RBI, SEBI, IRDAI circular? Aditya Prakash, if you have seen me clearly, IRDAI का पहला सर्कुलर था जो हमने कवर किया 129th मीटिंग, फिर हमने दूसरा सर्कुलर सेबी का कवर किया रिलेटेड टू आईपीओ. तो आपके दो क्वेश्चंस का आंसर मिल गया. सेबी IRDAI को कवर करते हो या नहीं? माय आंसर इज यस, बट द क्वेश्चन इज क्या सर RBI को कवर करते हो या नहीं? तो आंसर इज यस, क्योंकि अगर ये सेशन ही RBI करंट अफेयर्स का है तो ऑब्वियसली RBI सर्कुलर्स आर फॉर श्योर कवर्ड, तो उसके बारे में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन सेबी और IRDAI का प्रूफ आपके सामने. आई हैव जस्ट कवर्ड 2 circulars. One was related to IRDAI and other was related to SEBI. If you haven't liked the session yet, quickly hit the like button. Moving on to the last news. Which program did Reserve Bank Innovation Hub start to encourage financial innovation? So name the program which has been initiated
by Reserve Bank Innovation Hub in order to encourage financial innovation. पहला क्या था? Consumer education, that is financial literacy. वो क्या है? That is Sibyl Jagran. But now we have what? So now we have financial innovation, RBIH. What is the name? So the name is Design Shala. I just explained this particular news. Design Shala, a program supporting financial innovation via human-centric design, was introduced by wholly owned fifth subsidiary of RBI, that is Reserve Bank Innovation Hub, at the Building for Billions. Remember, there was an event. Name of the event is Building for Billions. Event was conducted in Bengaluru, and in that event, Infosys chairman and co-founder Nandan Nilekani has introduced this particular initiative. So creating financial solution, what is the target or main goal of Design Shala? Sir, it will create financial solution based on actual user demand, behavior and experiences is the main goal of Design Shala. These important goals consist of: first, enhance the usability and accessibility of finances, improve knowledge of finance, promote financial inclusivity through digital means. So we all know that RBIH flagship project, it will give stakeholders, financial institutions and fintech entrepreneurs the tool they need to precisely and empathetically create financial solutions. The Design Shala is the new financial innovation program which has been introduced by RBI's fifth wholly owned subsidiary, and the name of this RBI's fifth wholly owned subsidiary is what? Sir, its name is RBIH, that is Reserve Bank Innovation Hub. Got it, guys? Is it clear? Is it clear? Yes, Aditya. Don't worry. I have 5 long years of experience and I have been delivering finance, current affairs, RBI related current affairs in the past, and trust me, many questions are asked from my session itself. So don't worry, 40 questions out of 80 are related to finance current affairs, and we'll try to target most of them. And secondly, in phase 2 finance current affairs also, you are going to find a number of questions from this particular session. Is it clear, guys? Have you enjoyed the discussion till now? Okay, now I guess it's time for quick revision. Are you ready? If you were present in the past session, then I'm pretty sure that you will be ready for the revision part. And if you all are ready for the revision part, just give me yes sir in the comment section. Chalo, I have the first question for you. The first question is, what is the percentage of total FDI into Dubai was contributed by India in 2024? So what percentage of FDI was contributed by India in Dubai in 2024? We know that India is on the first rank in terms of FDI contribution into Dubai, and this contribution has increased many folds in comparison to the previous year data, and India is 21.5% of contributor out of the total FDI which has been received in Dubai. So remember that. If I talk about Dubai, so India is on the first rank in terms of FDI. But on the other side, important data, this is the data related to India and FDI. If you remember, we have discussed this. The largest contributor of FDI in India is Singapore. You need to remember, state on the first rank, that is Maharashtra, and the sector on the first rank is computer software and hardware with respect to 2023-24. Moving on to the next second news. IRDAI released annual data on claims settlement ratio in its latest Handbook on Indian Insurance Statistics 2023-24. Dash company has topped in terms of most number of policies settled in the financial year. So highest number of policies have been settled by which company? If you ask me, the highest percentage of claim settlement ratio has been achieved by Axis Max Life, that is more than 99%. Kotak Mahindra, Aegias and Aviva Life Insurance, they have achieved 100%. They have achieved 100% claim settlement ratio. But if I talk about the number of
if I talk about the highest number of claim settlement, so highest number of claim settlements have been done by none other than highest number, guys, you are missing this, most number of policies settled. So most number of policies have been settled by LIC. So I have the glimpse on this. Please pay attention. The glimpse is Axis Life Insurance Limited with 99.79% in terms of number of policies. LIC topped in terms of most number of policies settled within 30 days. And these are the insurance companies which have recorded 100% CSR, that is 100% claim settlement ratio. Is it clear, everyone? Is it clear? So I hope each and every point which we have discussed today are crystal clear. That will be all from my side. चलिए तो फर्स्ट न्यूज के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? Recently, Reserve Bank of India has issued self-regulatory organization for account aggregators. When did Reserve Bank of India introduce the term that is account aggregator framework? तो सबसे पहली चीज जो आज का हमारा न्यूज है या जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? सर दैट इज रिलेटेड टू अकाउंट एग्रीगेटर। और अगर हम अकाउंट एग्रीगेटर से रिलेटेड बात करें तो अकाउंट एग्रीगेटर से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? सर न्यूज ये है कि अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए आरबीआई ने इनवाइट की है एप्लीकेशंस। दैट मींस इफ यू वांट टू सेट अप अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकाउंट एग्रीगेटर यू कैन send the application to RBI and RBI will finalize that whether the license should be given or not. लेकिन इस सारी न्यूज को समझने से पहले, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपके दिमाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट होगा वो डाउट होगा रिलेटेड टू फ्यू टर्म्स। वो टर्म्स क्या क्या मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ self-regulatory organization? We have studied this term, we have read this term a number of times, but still we are very confused that what is the actual meaning of the same term. Don't worry. If you are confused what is account aggregator, I will be answering that. And even if you are confused that what are the characteristics, what are the objectives, what are the eligibility criterias for a company which wish to set up or open up SRO AA, all those techniques will be discussed in this particular session itself. लेकिन जो गलती या फिर जो इशू है जो आपके साथ प्रिवेल कर रहा है काफी समय से वो ये है कि SRO नहीं पता तो इसके पहले या इसके आगे की न्यूज समझ के आएगी। तो I'll make sure कि वो पॉइंट्स आपके साथ आज क्लियर हो जाए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। So let's begin. So before I come back and solve this question, so news is framework for the recognition of self-regulatory organization for account aggregator ecosystem has been announced. And what all announcements have been made? So first of all, the first point is, so before I discuss the news, before I discuss what actually the framework is, what are the eligibility criteria and what not, I would love to answer a very important question. What is SRO? Sir, SRO stands for self-regulatory organization. Whenever RBI and the other regulatory entities, other regulators, they feel that if a particular space, if a particular industry, if a particular sector is expanding, then there should be some organization which should collect all the operating organizations together so that they operate in an ethical manner. So that is basically termed as self-regulatory organization. So I have the answer. Self-regulatory organization is what? Sir, it is a non-government entity. It is a non-government entity. It is not set up by the government. It is a non-government entity that creates and enforces industry regulations and standards. It creates as well as enforces industry regulations and standard, and often it act in place of or alongside the government regulations to ensure compliance and promote ethical practices. तो असल में है क्या? अगर मैं आपसे बात करना चाहूं समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से, डोंट टेक इट इन अ लिटरल फॉर्म, डोंट टेक इट एज एन एग्जांपल, लेकिन हम जानते हैं कि सर आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। वी ऑल नो दैट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 बार 50,000 बार हमने पढ़ा है कि आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अगर आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, कभी सोचा आईबीए क्या है? दैट इज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन क्या है?
Sir, Indian Banks Association is basically an organization which is formed by the banks. तो banks ने मिलकर एक association बनाई जहां पर banks they come together, they discuss their problems, they discuss their issues. If required, they raise the voice to the RBI, to the government through IBA. तो IBA एक तरह से क्या काम कर रहा है सर? IBA also comes up with certain norms, with certain rules which are ought to be followed by all the members. तो कहीं ना कहीं मैं बोल नहीं रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज, आई एम जस्ट सेइंग कहीं ना कहीं वी कैन कंपेयर दैट यस, IBA is a kind of self-regulatory organization in the banking sector which is working alongside RBI in order to promote ethical practices in the banking sector. Ethical practices in the banking sector. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? ये पॉइंट समझ आया? तो अगली बार अगर हमसे कोई पूछे कि SRO है क्या, सर SRO एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है which is created by the members itself. members का मतलब मान लेते हैं कि अगर हम SRO की बात कर रहे हैं फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, तो इंश्योरेंस कंपनीज मिलकर they will set up an organization, and that organization will be a non-government organization where all, or they will try that all the insurance companies should be the member of that particular organization. और वहां पर they sit together, they come up with rules, they come up with certain regulations which are ought to be followed by the members, and some benefits, services, as well as push is also given to the members by the same authority. We call it as self-regulatory organization. Got it, guys? Remember that it's a non-government organization which is established by the members of a particular industry or sector rather than the government agency. Second point is, sir, SROs, they are industry specific. Even I would say they are industry specific. For example, we can have a SRO for banking sector, we can have a SRO for insurance sector, we can have a SRO for fintech, we even have SRO for fintech, which I will be discussing in few minutes. Even in the same manner, now there is a call to set up SRO for account aggregators. If you are confused what is account aggregator, don't worry, I'll discuss that. Just wait and watch. I think अब इतने दिन हो गए हैं हमें मिलते हुए, इतने दिन हो गए हमारे सेशंस में, तो आई थिंक नाउ यू ट्रस्ट मी कि अगर मैंने बोल दिया SRO और अकाउंट एग्रीगेटर पहले समझाऊंगा फिर डिटेल में जाऊंगा, तो आई होप यू कैन रिलाई ऑन मी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें SRO की, तो SRO एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है. रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, दे हैव द अथॉरिटी, इनके पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर देयर मेंबर्स. ये किसके लिए रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं? अपने मेंबर्स के लिए. जो ऑर्गेनाइजेशन इनका मेंबर नहीं है उनके ऊपर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट नहीं होंगे. सब पर्पस क्या है, क्यों बनाए जाते हैं SROs, क्यों RBI, क्यों गवर्नमेंट, क्यों गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्रमोट करती है SROs को? क्योंकि जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही है, जैसे जैसे न्यू ऑर्गेनाइजेशंस इंट्रोड्यूस हो रही है, जैसे जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है in terms of number of organizations which are operating in the country, there is a need of regulation which is need to be done on their own level. ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी वो इंप्लीमेंट होंगे. गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज आर डूइंग दैट, बट देयर शुड बी समवन among you which will help you to, or which will promote you or push you to work in an ethical manner, जिससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज का जो ऑपरेशन है that will become easy. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, so SRO include recently Financial Industry Regulation Authority. Financial Industry Regulation Authority, it is related to the financial industry. Then we have New York Stock Exchange and Municipal Securities Rulemaking Board. They all are what? So they all are the examples of self-regulatory organizations. Now the question is, so what is the benefit of SROs? See, SRO का जो benefit है वो क्या है? सर SRO का benefit है कि it promotes self-regulation, कि ऐसा नहीं जब हमारे लिए कोई रूल बनाएगा, जब हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस रखी जाएंगी तभी हम उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे. नहीं, we will be coming up with an organization and that organization will make rule for us, and being a member of that organization we will be implementing it, will reduce the regulatory burden on the government, as well as we will foster innovation within an industry. So that is the basic benefit of self-regulatory organization. Last but not the least is the most important point related to SRO, and the most important point related to SRO is Reserve Bank of India has finalized
omnibus framework has finalized omnibus framework for recognizing self-regulatory organization for regulated entities. तो आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा omnibus. तो असल में omnibus है क्या सर? omnibus is basically a framework. ये एक framework है जिसे RBI ने इंट्रोड्यूस किया है, which has been finalized by RBI, और इस framework के तहत what RBI do? Sir, RBI recognize the self-regulatory organizations for the regulated entities. तो RBI जो है वो अपनी जो regulated entities है, फिर चाहे वो बैंक है चाहे NBFCs है, अगर उनके लिए कोई SRO, कोई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आना चाहता है तो उसका अप्रूवल, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? दैट विल बी डन बाय RBI. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ आ गया? अगली बार अगर आपसे कोई पूछे what do you understand by the word SRO, I'm pretty sure that you will be in a position to answer this question. क्या कि सर SRO का मतलब क्या है? सर SRO stands for self regulatory. SRO stands for self regulatory organization, and this is a non-government organization which basically promotes self-regulation within an industry, within a sector, which will reduce the regulatory burden on the government. It will improve the efficiency as well as the ethical practices of a particular sector. Is it clear? Shall I move ahead? Do reply in the comment section, please. Now, triple P का इससे कुछ लेना देना नहीं है. Triple P is, I would say, a बिल्कुल different game. So don't confuse yourself related to triple P. So triple P, that is, but I don't know, that is public private partnership obviously you are talking about. तो उसको यहाँ include मत करो. वो तो ऐसा है कि अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे भी एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आप गवर्नमेंट है मैं प्राइवेट हूं, तो क्यों ना मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें. दैट इज अ पॉइंट. दैट इज नोन एज ट्रिपल पी, जहां पे वी बोथ आर वर्किंग with a motive of earning profit. We both are working to complete a particular project together. That is triple P. But SRO triple P होगा, that is not a case because it is very clearly mentioned ये एक non-government organization होगी. I guess Gaurav that point is clear. अगला point आया कि सर MFIN NBFC एग्जाम्पल ऑफ SRO. MFIN क्या है? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है. तो क्या MFIN इज SRO? डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन. NBFCs के लिए कोई SRO है या नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा. अदरवाइज मैनियक आई विल बी गिविंग द आंसर्स टू योर क्वेश्चन. नाउ आई वुड लव टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड माय नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अकाउंट एग्रीगेटर. तो पहला हमने क्या समझा? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हर एक सेक्टर के लिए बनाई जा सकती है, विच कैन बी आई वुड से द अप्रूवल विल बी गिवन बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे RBI, IRDAI, PFRD एंड व्हाट नॉट. इन अ सिमिलर मैनर द सेकंड पॉइंट ऑफ आवर क्वेश्चन इज अकाउंट एग्रीगेटर. अब मुझसे को पूछे कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या है. सो RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड the regulatory framework for NBFC account aggregator in September 2016. NBFC account aggregator in September 2016. मुझसे कोई पूछे कि account aggregator क्या है तो मेरा आंसर क्या होगा. देखो एक बड़ी सिंपल सा, एक बहुत ही इजी सा आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूं और वो एग्जांपल सुनिएगा. दो तरह से इस एग्जांपल को हम फ्रेम कर सकते हैं. पहला, मान लो मैं एक बैंक के पास गया. लेट्स से द बैंक्स नेम इज SBI. तो जैसे मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से कहा कि सर मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली बैंक विल बी कॉलिंग फॉर n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आई शुड फुलफिल, देन ओनली आई विल बी गेटिंग द लोन. जिसमें बैंक विल आस्क अबाउट माय इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक विल आस्क अबाउट माय प्रीवियस लोन डिटेल्स, बैंक विल आस्क अबाउट माय करंट डिपॉजिट्स, माय करंट सेविंग्स, माय करंट फिक्स्ड डिपॉजिट्स. सारी डिटेल SBI को चाहिए होगी, सो दैट SBI कैन टेक अ गुड डिसीजन दैट वेदर SBI शुड प्रोवाइड मी लोन और नॉट. अब एक तरफ बीइंग एन इंडिविजुअल, इफ आई कीप ऑन कलेक्टिंग द एंटायर इंफॉर्मेशन, और मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूं, और जिसमें FD सर्टिफिकेट्स है, इनकम टैक्स रिटर्न है, मेरे सेविंग अकाउंट की डिटेल्स है, मेरे लोन अकाउंट की डिटेल्स है, और फिर कहीं जाकर मैं SBI को सबमिट करूं एंड देन SBI will provide me the loan, it's going to be bit hectic, it's going to be hectic and it's going to be a tough call, not only for SBI but also for an individual. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI came in the picture. RBI said you have your fixed deposit account with a bank, okay, you have borrowed loan, let's say from NBFC,
you have invested your funds, let's say in mutual fund. तो ये जो सारी की सारी organizations हैं, bank, NBFCs, mutual fund companies, who all are they? So they are the financial institutes. They are the financial institutes. तो ये financial institutes के पास they already have the information. They already have the information of this individual, and SBI is looking forward for the same information. SBI is looking forward for the same information. So क्या करें? There is a solution. The solution says the bank, the NBFC, the mutual fund company who already have the information, they are termed as financial information provider. So financial information provider can directly provide the information to the financial information user. For example, this individual's bank, the bank which is going to provide loan to this individual bank, for example, that is SBI. अब अगर हम कहें कि ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का फ्लो हो जाए तो उसमें क्या होगा सर? उसमें कहीं ना कहीं रिस्क होगा. देयर विल बी एन इशू कि कहीं मेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, मेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिसयूज ना किया जाए. तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस सिचुएशन, आरबीआई सेड दैट वी विल इंट्रोड्यूस an authority in between which will be termed as account aggregator. Account aggregator का काम क्या होगा सर? Account aggregator will receive the financial information from the financial information provider in an encrypted manner, and this encrypted information will be provided to the information user. And the best part is account aggregator is going to be data blind. It's going to be data blind मतलब इसको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन या आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है. अकाउंट एग्रीगेटर विल डोंट नो कि माधव के पास कितने फिक्स डिपॉजिट्स हैं, कितने सेविंग अकाउंट्स हैं, कितनी म्यूचुअल फंड्स हैं, कितनी जगह से माधव ने लोन लिया. दे विल नॉट गेट टू नो एनी इंफॉर्मेशन आउट देयर. तो क्वेश्चन आया कि सर इनकी जरूरत क्या है? सर इनकी जरूरत है, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ इंटरमीडियरी. और ये जो इंटरमीडियरी है, दे विल अलाउ दिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर कस्टमर्स कंसेंट. तो अगर आपके कस्टमर ने कंसेंट दिया, इफ कस्टमर इज रेडी दैट यस you can obtain my financial information from different organizations, from different platforms, and share that information to SBI so that there is no need to share this information on my behalf, I will be okay with it. And once this consent is given to the account aggregator, then only this information is going to flow. And this information which is going to flow, it will be flown through the account aggregator in an encrypted manner, and account aggregator is going to be a data blind. That means he or she, the account aggregator will not be able to know the financial information which is being shared. Is it clear everyone? Credit information companies बिल्कुल अलग है कार्तिक. क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या करती हैं? आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, स्पेसिफिकली आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है. दे ओनली कलेक्ट योर बोरोइंग डेटा, और आपके बोरोइंग डेटा को रिव्यू किया जाता है. हाउ वेल यू हैव रीपेड योर लोन, हाउ वेल यू हैव कंप्लीटेड योर लोन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री दे कम अप विद अ स्कोर. तो उस स्कोर से वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बोरोवर. बट इफ यू वांट टू चेक capability of the borrower, in that case you need ITR, income tax return of the borrower. In that case you need to know the investment details of the borrower, maybe in mutual funds, maybe in form of fixed deposit. For that particular matter, this information is going to help a lot. Is it clear, Kartike? Is it clear? So whenever this question is asked, what is account aggregator? So account aggregator undertakes the business of account aggregation, which means retrieve, collect specified financial information from financial information provider, and then share this information on customer's consent to the financial information user. These account aggregators, so they are under the preview of RBI if the financial information provider is bank, if the financial information user is bank. They are under the preview of SEBI if it is a mutual fund company. If they are under the preview of PFRDA, अगर आपने information ली है from pension fund company, they can under the preview of IRDAI
if you are taking the information from the insurance company, and they can be under the preview of Department of Revenue. Department of Revenue कब होगा सर? जब आप information लेंगे from GSTN, that is Goods and Service Tax Network. So GSTN, Goods and Service Tax Network, is also termed as Financial Information Provider in November 2022 as notified by RBI, and this GSTN is basically the network related to GST, and it hold all the records of your GST payments, and they will be sharing the GST return details. It will be sharing your GST return details if required, so that it will be easy for you to borrow the funds. Is it clear, everyone? Is it clear? So let's go back and let's try to solve the question first. Recently, Reserve Bank of India has issued a framework for self-regulatory organization for account aggregators. When did the Reserve Bank of India introduced account aggregator framework? Sir, account aggregator framework was introduced by RBI. In which year? Sir, it was introduced by RBI in 2016. So the answer to this particular question is going to be 2016. Now, after going through with this, let's now discuss self-regulatory organization account aggregator. That means RBI is inviting the organizations that if you want to set up self-regulatory organization in account aggregator ecosystem, where account aggregators will be the member of SRO, financial information providers will be the members, even the financial information users will be the members of SRO. But if you want to apply, you need to fulfill the eligibility criteria. What are the eligibility criteria? The first is, sir, application should be set up at a not-for-profit company registered under Section 8 of Companies Act 2013. That means the company which is applying for this particular SRO certification or SRO approval, in that particular case, applicant should set up a non-profit or not-for-profit company which should be registered under Section 8 of Companies Act 2013. Second point is, sir, the applicant should have or finalize, or the applicant is sure, applicant is dedicated that it will be achieving a minimum net worth of 2 crores within a period of 1 year after recognition as an self-regulatory organization account aggregator ecosystem by Reserve Bank of India, or before the commencement of operation as an account aggregator SRO. So what does it basically means? It means that applicant should have minimum net owned fund, minimum net worth of 2 crores, and this minimum net owned fund of 2 crores is required at the time of starting the operation as a SRO, and even they are asked to maintain this minimum net worth requirement on ongoing basis. ऐसा नहीं कि सिर्फ starting में हो, but on ongoing basis you are requested to maintain this minimum net worth limit. Second point is, the third point is, it is related to the shareholding. So the shareholding of self-regulatory organization account aggregator ecosystem should be sufficiently diversified, and no entity shall hold 10% or more of its paid up share capital. So what does it mean? It means that self-regulatory organization for account aggregator should have n number of investors, and none of the single investor should hold more than 10% of the company's shareholding. So single investor can hold maximum 10%, can hold maximum, or I would say can hold maximum 9.99, or can hold up to 10%, can hold up to 10% of company's shareholding. I'm talking about the single investor in case of what? Sir, in case of SRO. Now the question is, sir, SROs, they are basically a platform where all the parties which are involved in this particular ecosystem, they will come, they will register themselves, they will become the members, and they will be framing the rules, regulations, norms in order to provide ethical services, in order to
provide ethical services to the public. But the question over here is, what is going to be the benefit of the one who are going to invest in this, or what will be the source of fund on the basis of which this organization is going to run? So I answered that question as well. So the applicant must possess and demonstrate the ability to create necessary infrastructure to enable the discharge responsibility. So that means the next eligibility is these SROs, they are going to act as a mediator. Mediator between whom? So mediator between financial information provider and financial information user. So these account aggregators, they should be capable enough that they should provide the desired and required infrastructure which will help in seamless flow of information. Last is applicant and the key executives, they must have professional competence and have general reputation of fairness and integrity to the satisfaction of Reserve Bank of India. So the members, the professional competency is required within the executives of the applicant, as well as the applicant company should not be under a trial under a law, or it should not be under any case of, it should not be under trial of any case which can impact its operation as a self-regulatory organization for account aggregator. So these are the 5 eligibility criteria which you need to fulfill if you are thinking to apply for this particular license. Moving on to the next point. The next point talks about membership criteria. So the participants of account aggregator ecosystem include account aggregators, financial information providers, financial information users. They are eligible to become the members of self-regulatory organization for account aggregator. Remember one thing, membership for SRO is voluntary. So that means it's your choice. You want, you can become the member. You want, you can become the member, and all the NBFC account aggregators, they are encouraged to join. So it's your call, but on the other side, it is said that RBI is encouraging the NBFC account aggregators that you must join the SRO AA so that you follow the ethical practices which are required for better service providing facilities to the public. Additionally, SRO AA should ensure that its members evenly include. So in the SRO AA, to operate as an effective and efficient organization, it must have the members from all the different types and classes, which include FIPs as its members, FIUs as its members, account aggregators as its members. And if the members are diversified, that means this organization has a capacity to do really very well. But there is a condition to ensure balanced representation. The SRO AA shall have at least 25 unique entities, each from FIP and FIU as its member all time. And if they fail to hold 25 unique members, unique organizations as FIP members and 25 unique members as FIUs, then their license or their eligibility will be cancelled out by RBI to operate as self-regulatory organization for account aggregators. Along with that, sir, the membership fee structure will be developed. That means, as I was saying, that sir, SRO जो है वो पैसा कहाँ से कमाएगा, that how they are going to survive. So they are going to survive on the basis of the membership fees which they are going to charge from the members. So this fees is going to be different for different entities depending upon the size, intent, capability and whatnot. जैसे World Bank, IMF के केस में होता है, the fees is different for different types of economy depending upon their size of economy. In a similar manner, here also the membership fees is going to be different. Membership fees is going to be different for different members depending upon their size, intent and capabilities. But the services, the benefits which are going to be provided by self-regulatory organization for account aggregator, that should be same, that should be uniform for each and every member. There should be no discrimination made at the end of or at the part of SRO. Last, SRO AA should derive necessary powers through the membership agreement. That means if a new member is coming in contact and the new member or a new party wants to be the member of SRO, firstly, a detailed agreement will be signed. And under that detailed agreement, both the parties, they will come under
certain obligations and compliances which they have to fulfill in the near future, because they have to fulfill the conditions which are mentioned under the agreement, which include certain set of rules, code of conduct and whatnot. So two things we have discussed. What is the eligibility criteria if you are thinking of applying for SRO for account aggregator? What will be the format for the membership criteria, that if SRO, when SRO was set up, will be set up, then which all organization will be the members and what are the conditions related to the membership. Last point is SRO characteristics. That means self-regulatory organization, what characteristics they need to hold as an self-regulatory organization. So the first one is true representation of account aggregator ecosystem. True representation of account aggregator ecosystem basically means that the SROs, they will look after and they will try that they should promote themselves, that more and more account aggregators, more and more account aggregator ecosystem parties should come in contact, should become the members, which not only include the account aggregators, it also includes the FIPs, FIUs as well as the other parties. And then SRO will be framing the rules and regulations which will help these companies or these organizations or these entities under the account aggregator ecosystem to perform well. Second point is code of conduct and oversight. As I said, that these account aggregators, when they will be becoming, when a member will be getting the membership of SRO, at that time they will be signing an agreement, and on the basis of that agreement, code of conduct and certain rules and regulations are predefined, and every member of the organization will be responsible to follow those rules and regulations. SRO should look after or look forward for the development of the given ecosystem, that is account aggregator ecosystem. It should be independent from any kind of influence. It should not be influenced by its executives. It should not be influenced by the other account aggregator companies which are operating in the premises, and grievance redressal and dispute resolution should be provided. That means if there is any dispute among the members, among the entities of account aggregators ecosystem, that will be resolved by the self-regulatory organization as well. If you think that this topic is complete, then I'm sorry my dear friends, it's not yet complete. We have three more things to do. One is governance and management of SRO AA, then functions and responsibilities, as well as application process. But I know it's impossible for you to digest the entire part in one go. So what I have done is I will be covering this news in two halves. In the first half, I have explained you in general, what is SRO. Then I explained you what is account aggregator. Then I have explained you three important things related to SRO AA. One is the eligibility criteria. Second one, we discussed the membership criteria. And third one, we discussed the characteristics. If you have any doubt, you may ask, please. Sir, SRO AA will be organization of group. Will be organization of groups. No, SRO AA will be an organization which will have FIPs, FIUs and account aggregators as their members, and these members, they will come together with the help of the executive of SRO AA. The required norms, required rules and regulations will be framed, which are going to be implemented for better function and operation of account aggregator ecosystem. Is it clear now? Is it clear now? If it is clear, just give me yes, sir. Is it clear now? If it is clear, just give me yes, sir. And if you haven't liked the session yet, just quickly give the like button or hit the like button so that we can move ahead. If it is clear till this point, guys, just give me yes, sir, so that I can move ahead. Shall we go ahead? Okay. Now let's move on to the second news of the day. The second news we have is, or the second question we have is, name the organization that awarded RBI with Digital Transformation Award 2025. So recently, RBI as an organization has won Digital Transformation Award 2025 for two groundbreaking digital transformations which are done within the RBI as an organization. And due to those two initiatives taken within RBI,
this award was given, but the question is which organization provide or which organization announced this award? I will be answering this question. Let's quickly check it out. So the point is Digital Transformation Award. What is it? Sir, it recognizes the central bank. So this award recognizes the central banks as well as the financial institutions excellence in digital innovation as well as technology. So remember that. What is this Digital Transformation Award? So this Digital Transformation Award is specifically related to the central banks and financial institutes, and this award is given to those central banks, those financial institutes which have done really very well with respect to digital innovation or digital technology as well as digital technology driven governance. So awarded by which organization is responsible for the award? So this award is awarded by Central Banking, which is based in UK, London, a globally recognized institution which focuses on monetary policy, governance, and financial transformation. So remember that this award is announced by Central Banking, which is London, UK based, which is a globally recognized institution which focuses on three important areas: government, governance, financial transformation, and monetary policy. Open to central banks. So this particular, I would say, award is open to central banks, financial regulators, money या monetary institutions successfully implementing the digital reform. So it is not only for central banks, it includes financial regulators, it includes the monetary institutions as well. Reserve Bank of India has won this award because of two initiatives which have been taken by Reserve Bank of India. One we call it as Sarthi, and other one we call it as Pravah. Sarthi and Pravah. Now the question is, what is these two initiatives? Please pay attention guys. I have given the required data, required information. इतना पढ़ लेना, इससे ज़्यादा ना एग्जाम में पूछा जाएगा, ना ही इसकी ज़रूरत है. सारथी क्या है? सर सारथी एक इंटरनल वर्कफ्लो डिजिटाइजेशन सिस्टम है जो आरबीआई के एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया, जहां पे आरबीआई के एम्प्लॉइज का जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसे डिजिटाइज किया गया, ऑटोमेट किया गया, प्रोसेस को इनेबल किया गया, सिक्योर डिजिटल सबमिशन एंड इंप्रूव डेटा ट्रैकिंग एंड कोलैबोरेशन. तो अब इंटरनली जो एम्प्लॉइज ऑफ आरबीआई, दे आर कनेक्टेड, we can say that they are connected to an internal server, और उस internal server पे, उस internal workflow पे सारी की सारी जो information है, सारे के सारे जो डेटाज है, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, उसे डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया जाता है और एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिशियल तक अब फिजिकल फ्लो ऑफ डेटा की या फिजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब जो डेटा फ्लो होगा दैट विल बी डन ऑटोमेटिकली. सो दिस हैज एलिमिनेटेड मैनुअल पेपर वर्क. It has streamlined task tracking, integrated various RBI departments into a unified system. तो अगर एक डिपार्टमेंट से फाइल को अप्रूवल मिला, अब दूसरे डिपार्टमेंट तक वो फाइल फिजिकल फॉर्म में फ्लो नहीं करेगी, बल्कि डिजिटल फॉर्म में वो दूसरे डिपार्टमेंट पे जाएगी और दूसरे डिपार्टमेंट को बहुत इजीली अब ट्रैक किया जा सकता है कि सर इतनी तारीख को ये फाइल आपके लिए हमने फॉरवर्ड कर दी थी, वाई स्टिल द इनिशिएटिव और वाई स्टिल द अप्रूवल इज नॉट गिवन. तो दिस विल इंक्रीज और दिस विल, आई वुड से, improve the efficiency of none other than Central Bank of the country. The next one we have is Pravah, May 2004 when it was implemented. It's a digital regulatory application platform. It is for the external users who are submitting documents to RBI. So if you are an external user and if you are submitting or you have to submit your documents to RBI, now, rather than submitting the documents in a physical mode, going to the RBI office and somewhat like that, you just open Pravah portal, and on the Pravah portal, you can submit your documents digitally. So, digitize over 70 regulatory applicants. So, if you are applying for any kind of license or something like that, in that particular case, you can upload your document digitally on Pravah portal. It will enhance transparency and improve cyber security in financial documentation. Now, the best part is, सर जो डॉक्यूमेंट प्रवाह की मदद से, प्रवाह पोर्टल की मदद से आरबीआई के सिस्टम में आया, अब उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया किस पर? सारथी पर, ताकि वो डॉक्यूमेंट इन डिजिटल फॉर्म रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट तक, रिक्वायर्ड ऑफिशियल तक पहुंच जाए. फिर वहां से जब अप्रूव होगा, देन इट कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑफिशियल एज वेल under this internal flow which is known as
सारथी. So सारथी और प्रवाह ये दो ऐसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं which have been done by RBI. And the best part is RBI के हम कह सकते हैं कि RBI ने इन दोनों ही पोर्टल्स को डेवलप किया इंटरनली. बाहर से कोई टेंडर, कोई कंपनी को इन्वॉल्व नहीं किया गया. इंटरनली इन दोनों पोर्टल्स को डेवलप किया गया बाय RBI itself, and that is Sarthi and Pravaha, for which RBI has received the recognition, that is Digital Transformation Award, and this award is given by Central Banking, which is based in London, UK. Central Banking, which is based in London, UK. बोलो क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. आई एम प्रीटी श्योर you must have heard about this particular news, but the way I am coming up with this news, the way I am coming up with the content for you related to this particular news, you are going to love it more, or you are going to enjoy it in a better manner. So let's check it out. So what I'm trying to say is, according to Morgan Stanley, India is expected to become world's third largest economy by which year? World's third largest economy by which year? I'll come back to the answer. But before I get the answer for this question, I want to know one thing from you all, guys. What is India's rank in terms of nominal GDP ranking? I'm not talking about purchasing power parity ranking. I'm talking about nominal GDP ranking. India is currently at what rank? Whether it is 4th, 5th, 6th largest economy of the world, what? May I have the reply, please? My question is very simple. I repeat my question. Discuss India's ranking with respect to nominal GDP. So let's find it out. So please pay attention. Sir, according to the latest data, India is the 5th largest economy of the world. In 2024, it was the 5th largest economy. In 2025, again, it is the 5th largest economy of the world. This is on the basis of exact data. This is on the basis of the estimated data. But on the other side, if I talk about the 4th largest economy, it is Japan. 3rd largest economy is Germany. 2nd is China, and the 1st or the largest economy of the world is none other than US. So you need to remember current ranking for top 10 or maybe top 5 economies of the world, where India is the 5th largest. Economy of the world. India has surpassed United Kingdom to become the 5th largest economy of the world. I hope till this point it is clear. But before I move ahead, we always come across with certain terms like GDP growth estimates. Say yes or no. We always come across with certain terms like GDP growth estimates. And on the basis of GDP growth estimates, we always say that India is the fastest growing economy in the world, at least out of the emerging economies, at least out of the major economies. Can I say that? Am I correct? I repeat, we always say India is the fastest growing economy of the world. If you say that not in general, then I can specify this. Indian economy is the fastest growing economy in the world, specifically within the major economies of the world. Major means top 10 economies of the world. That is true. But on the second rank, we have China. But have you ever given a thought that since 2015, how much Indian economy has grown over the period of time? I'll tell you that. Please pay attention. I'll tell you that. So if I talk about the world's top economies and 10 years of growth, in 2015, if I say in 2015, India was not on 5th rank. As you can easily see that UK was on the 5th rank with a value of $3.3 trillion. But the best part, what I want you to understand from here is from 2015 to 2025, in 10 years, Indian economy has witnessed a major growth of 77%. Indian economy has witnessed a major growth of 77%. From 2.4 trillion, it has reached to 4.3 trillion. But on the other side, China
has reached from 11.2 to 19.5 trillion, which has recorded an increase of 74%. So we say China is the second fastest growing economy of the world, at least out of the major economies. So that first and second, they are not much far away in terms of percentage. They grew in last 10 years. But if you talk about the value growth, so China has grown from 11.2 to 19.5, which is around $8.3 trillion. India has grown from 2.4 to 4.3, which is almost $2 trillion. So in terms of percentage, India is above, but in absolute terms, India has grown just $2 trillion in 10 years. But on the other side, Chinese economy or GDP value has grown $8.2 trillion. That means almost 4 times the Indian GDP growth. Almost 4 times the Indian GDP growth. This analysis is really very important. Whenever a question will be asked related to India's GDP growth, this analysis is going to help you a lot. Now, moving to the next point. So according to the latest Morgan Stanley report, some of the data which are important, I'm discussing with you that particular data. So India is projected to become the world's 3rd largest economy by 2028, with economic growth set to hit $5.7 trillion in next 3 years. From $3.5 trillion economies in 2023, India is expected. So India will become 3rd largest economy. India will become 4th largest economy by 2026, and India will become 5th largest economy by 2028. What I'm doing? India will become 4th largest economy by 2026, and India will become 3rd largest. India will become 3rd largest economy by 2028. So in 2026, India will surpass Japan, and in 2028, India will surpass Germany, and India will become the 3rd largest economy of the world after US and China. In 2028, India is going to overtake Germany to become the 3rd largest economy. 2026, 4th largest economy. At this particular moment, Indian GDP value or India's GDP value is going to be $4.7 trillion. And at this particular moment, India's GDP value is going to be $5.7 trillion. So this data which I have mentioned, it is the crux of this particular slide, and this is what you need to learn. Whatever is written on the right hand side, I have just given you the crux of the story on the left. Is that clear, guys? Are you listening to me? Is it clear? Are you listening to me? I'm not getting any comments in the comment section. If it is clear, just give me yes, sir. Now let's move on to the next slide. Now the next slide, I have some historical data for India, and this data can be used while writing the descriptive questions related to GDP and growth of Indian economy. So India was the 12th largest economy. India was the 12th largest economy in 1990. But in 2000, India fell down by 1 rank, and India was the 13th largest economy. By 2020, India reached to a level of 9th largest economy, and finally in 2023, India became the 5th largest economy of the world. India became the 5th largest economy of the world, and now we are projecting that India will become 4th largest economy by 2026. India will become 3rd largest economy by 2028, according to the Morgan Stanley report. And the most important part is India's share of world GDP, which is projected, it is going to increase from 3.5% to 4.5% in 2029. So that means India will contribute 4.9% to the world's 4.5% to the world's GDP, and current contribution is 3.5%. This report has come up scenarios. Certain more scenarios are related to कि ऐसा हो सकता है कि सर नॉर्मल रहे सब, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो इंडिया क्या अचीव करेगा, अगर बुलिश रहा, इंडिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा रही तो इंडिया क्या अचीव करेगा, और अगर थोड़ा बेयरिश रहा, स्लो रहा तो इंडिया क्या अचीव करेगा. So according to this particular data, where the economy expands to $6.6 trillion by 2035, ये है बहुत ही नॉर्मलिश वे में. अगर मैं कहूं कि ये है बहुत ही, आप कहो बेरिश वे में. अगर बेस की बात करें नॉर्मल फॉर्मेट पर $8.8 ट्रिलियन, और अगर मैं बुलिश बात करूं तो इंडिया की इकोनॉमी जो है इट कैन रीच टू $10.3 ट्रिलियन by 2035.
and similarly they have given the data for per capita GDP as well. बस एक बार इसे पढ़ लेना, याद ना तो होगा ना ही याद करने की जरूरत है, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूं इसको पढ़ लेना, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा व्हाट इज द प्रोजेक्शन फॉर इंडियन इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इंडिया इतनी तेजी से ग्रो करने वाला इन द नियर फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले व्हाट आर द रीजंस। So as per Morgan Stanley, India will increase or India will gain its share in global output due to what all factors? So strong basic factors include, first one, robust population growth, especially the demographic dividend. Second is functioning democracy. Third is macro stability influence policy. Macro stability influence policy, tax reforms which have been done, inflation reforms which have been done, these are macro stability influence policies. Better infrastructure and a rising entrepreneurial class and improving the social outcomes. So these are the reasons which are being the, I would say, these are the reasons which are going to be the drivers for Indian economy to become the third largest economy by 2028. अगर हम बात करें current financial year में, in the current financial year, Indian GDP is going to grow at 6.3% according to Morgan Stanley, and in next financial year it will grow at a rate of 6.5%. It will grow at a rate of 6.5%. अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, as per Morgan Stanley, Indian economy will become the third largest economy of the world by which year? Then my answer to this particular question is 2028. I hope it's fine. Moving on to the next question. The next question says, according to NPCI data, which payment app become fifth largest UPI player in India? See, we all know that the largest player in the UPI ecosystem is PhonePe. That means the major market capture is being done by PhonePe. On the second rank in terms of market share, we have Google Pay, and on the third rank we have Paytm. But the question is, name the companies which are on fourth and fifth. Why this news is important? So this news is important because of two reasons. PhonePe is an organization which is, I would say, funded by, or this organization is backed by Walmart, and Walmart is backing Flipkart also, and Flipkart is backing SuperMoney, and SuperMoney has become the fifth largest. SuperMoney has become the fifth largest UPI application of the country. It has slipped, or I would say it has thrown down cred to the sixth rank, which was earlier the fifth largest UPI service provider. Now it has become the sixth largest player. Let's check out the detail. So Flipkart's Super.money recorded approximately 139 million UPI transactions in February, and it has overtaken cred. So what do you need to understand? PhonePe having the maximum market share 47.5, Google Pay 36%. If you add both of them, 46 plus 36 is 83%. That means more than 83% of UPI market share is in the hands of PhonePe and Google Pay. Then Paytm, it is on the third rank. That means कहते हैं ना, nothing is permanent in this world. This is a damn fast world in which we are living. तो अगर हम उसके हिसाब से देखें, पेटीएम था जिसने सबसे पहले पेटीएम वॉलेट लाया, शुरुआत की। गूगल और फोन पे, गूगल पे या फोन पे का तो नाम तक नहीं सुना था उन दिनों में, और आज पेटीएम इज ऑन द थर्ड रैंक, बट ऑन द फर्स्ट वी हैव फोन पे एंड गूगल पे। तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ लो ज़्यादा बेटर है। गेट द गवर्नमेंट जॉब दैट इज गोइंग टू रिमेन परमानेंट फॉर योर लाइफ। तो इसीलिए हम जब फोर्स करते हैं, इसीलिए व्हेन वी से दैट यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू बिकम एन RBI Grade B ऑफिसर और टू जॉइन एनी गवर्नमेंट organization at a very renowned position, that is just to give you the assurity that this is something which is going to remain permanent, unlike the rest of the world which is purely temporary. The best example is Paytm itself. I hope you are able to link what I'm trying to say. ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेटा की, जो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्थ लार्जेस्ट, तो फोर्थ मार्केट शेयर है नवी के पास, विच इज सचिन बंसल backed Fintech, and then the fifth one is we have that is Super.money. तो ये तो हमने बात कर ली। अब इससे रिलेटेड मैं अगर आपको यूपीआई का पूरा कंटेंट दूं, मार्च
1st 2025. It is very important day in the history of UPI because daily UPI transaction has crossed a mark of 1 lakh crore rupees for the very first time, which means the total transaction amounting around 1 lakh 1628 करोड़ रुपीस। इसका मतलब 1 मार्च 2025 को आज तक की सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया, दैट इज मोर देन 1 लाख करोड़ इन वन डे, एंड दैट वाज रिकॉर्डेड ऑन 1st March 2025। उसके अलावा कुछ और डेटा है विच यू मस्ट रिमेंबर। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन February देयर वाज अ 5% मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन। अब आप कहेंगे डिक्लाइन क्यों सर? जनवरी से फरवरी में पहली बात तो 3 दिन कम हो गए, 29, 30 एंड 31st, दैट इज अ रीजन। और दूसरा रीजन ये भी है कि फरवरी में हमारी जो पे आउट्स है वो कम हो जाते हैं बिकॉज वी ट्राई टू मेक ऑल द पे आउट्स इन मार्च बिकॉज ऑफ द लास्ट month of the financial year. Same goes for the transaction value which has a witness a decline of 6.5%. Next जो point आपके लिए important है for your descriptive answer writing, ये data आपको काम आएगा। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर मैं बात करूं तो डिस्पाइट द मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन यूपीआई ट्रांजैक्शन ने 33% का इंक्रीज देखा है और 20% का इंक्रीज देखा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन कंपैरिजन टू फरवरी 2024। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो फरवरी में एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वाज 575 मिलियन रुपीज विच हैज इंक्रीज्ड, लेकिन जनवरी में कितनी थी? 548 मिलियन। 548 मिलियन का मतलब 10 to the power 6। 10 to the power 6 का मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं तो वो हो जाएगा कितना? सो दैट इज गोइंग टू बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 548,000,000। ठीक है, तो ये कितना होगा सर? ये होगा 54 करोड़ 80 लाख ट्रांजैक्शंस, 50 करोड़ 80 लाख ट्रांजैक्शंस। और अगर हम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो एवरेज है लगभग 78,000 करोड़ रुपीस और जनवरी में ये एवरेज थी 75,000। तो इसका मतलब एवरेज इन टर्म्स ऑफ number of transaction, average in terms of value of transaction, it is growing, and even year on year there is a growth, but there was a decline that was purely because of number of days. Yes, obviously परमेश्वर, that is one of the important reason, क्योंकि दिन कम है तो 28th को कोई पेमेंट करेगा नहीं। ऑब्वियसली जो आपको पेमेंट 30th को करनी है, यू आर नॉट गोइंग टू मेक ऑन 28th, ऑटोमेटिकली वो जो डे है दैट विल शिफ्ट इन मार्च, जिसकी वजह से ये पेमेंट्स का जो फ्लो है दैट डिक्रीज, और उस डिक्रीज की वजह से इंपैक्ट देखा जाता है। लास्ट न्यूज आई गेस वी हैव नेम द इंस्टीट्यूशन जिसने 2 गोल्ड अवार्ड जीते हैं एट द स्कॉच अवार्ड्स 2025। तो स्कॉच अवार्ड 2025 में मुथूट माइक्रो फाइनेंस हैज रिसीव्ड 2 gold awards which have been due to the recognition of its customer-centric digital initiatives and inclusive financial solutions। याद कीजिएगा, पहला corporate excellence, best customer application on digital financial inclusion। So best customer application on digital financial inclusion category में corporate excellence में gold award जीता किसने? मुथूट फाइनेंस से, and the name of that digital platform is महिला मित्र। महिला मित्र एक एप्लीकेशन है which provides seamless and secure digital transactions which undoubtedly eliminate the barriers to financial inclusion in remote areas। यानी कि इसकी मदद से बहुत easily remote areas में financial inclusion किया जा सकता है। Second award is BFSI award, that is best insurance scheme। So Griha Raksha insurance scheme which was introduced by microfinance, that is Muthoot Microfinance, it has recorded 2.66 million beneficiaries, and this scheme or this insurance scheme is basically providing insurance services to the women entrepreneurs so that they can run pretty well in the same direction. They can worry about their business rather than worrying about what is going to happen if the business is not going to work properly. For that particular case, this insurance services have been introduced. Okay, so this will be all from my side in this particular session. As you always know, we discuss few questions based on the news which we have covered in the previous session. जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, then I will be leaving you ताकि आप अपना आराम से पढ़ाई कर पाएं. So if I move ahead, the first question is डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज। तो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सी है? LIC, GIC री इंश्योरेंस, और उसके साथ साथ
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? सर द आंसर इज न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दैट इज बी ऑप्शन। आई होप यू ऑल रिमेंबर इट। अगले पे बढ़े। अगली जो हमारी न्यूज है, अगली न्यूज क्या कहती है? सर अगली न्यूज कहती है ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे अस्मिता स्कीम। सर अस्मिता स्कीम क्या है? विमेन को कोलेटरल फ्री डिजिटल लोन प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली to the MSMEs which are led by women. So this has been introduced by none other than State Bank of India. Agla, which Indian bank recently launched specialized saving account? So this is basically related to NRE, NRO account for NRI women's. This has been launched by Bank of Baroda. This has been launched by Bank of Baroda. This was the data which I gave you. यहां से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NRE, NRO and FCNR account. Then you must have this particular slide which will help you to score more than 80% in your descriptive question. Moving on to the next point. So the next is recently IIFL Finance rebrand 7 existing branch. उन्होंने अपनी 7 existing branch को 100% women staff branch बनाया और उसका नाम रखा शक्ति ब्रांच। और ये शक्ति ब्रांच कौन से एरियाज में है? दिल्ली NCR में और मुंबई मेट्रोपॉलिटन में। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया गाइडलाइन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2016। As per the report, TransUnion, SIBIL and FACE partner to launch Consumer Education Initiative. Consumer Education Initiative के लिए TransUnion, SIBIL, FACE आपको याद है क्या है? अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, FACE is Special Regulatory Self Regulatory Organization in the field of or in the sector of Fintech, अगर आपको याद आ रहा हो। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? सर दैट इज SIBIL, जागरण, जागते रहो, जागरण से याद रखिएगा, जागते रहो, जागने से इनिशिएटिव फॉर कंज्यूमर एजुकेशन, ताकि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, और जागो ग्राहक, जागो से जागरण याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम डिड द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब स्टार्ट टू एनकरेज फाइनेंशियल इनोवेशन? तो फाइनेंशियल इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है दैट इज डिजाइन शाला, दैट इज डिजाइन शाला। आई होप ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। The first question says, Reserve Bank of India issued the framework for self-regulatory organization for account aggregators. When did the Reserve Bank of India introduced account aggregator framework? So NBFC account aggregator framework was introduced in which year? What will be your answer? And what is account aggregator? Sir, account aggregator is basically a mediator which is capable to receive the information from the financial information provider, and once the information is received, the same information will be transferred to the financial information user only after the approval given from the customer. Only after the approval given from the customer. And these account aggregators were in news, or RBI has introduced the account aggregator framework back in 2016. I have a very important question for you guys. Name the company which has recently surrendered its account aggregator license to RBI. Surrendered its license means the company is no more willing to operate as an account aggregator, and recently the company has surrendered its account aggregator license to RBI. And if I give you a hint, I'm talking about a company which is a major player in the field of UPI. Which is a major player in the field of UPI. I'm talking about the company which is holding, or which has captured the maximum market, of UPI. So the answer to this particular question is absolutely correct. That is PhonePe. Perfect guys, perfect. चलो आगे बढ़े। RBI बहुत बढ़िया काम कर रहा है. We all know that. Since after 25th governor of RBI, that is Shaktikanta Das ji, RBI has done really well, and recently RBI has been awarded with the Digital Transformation Award 2025. But the question over here is, this award was given to RBI by which organization? And RBI has received this award for 2 in-house digital developments. Name those digital developments due to which RBI has received this particular award. May I have the answer, please? PhonePe captures around 47% of the UPI market. That is absolutely correct.
That is absolutely correct. So this award has been given by Central Banking in London, which is based in UK, and this award has been given for two in-house developments. One is Sarthi. The first development is Sarthi, and the second development is Prava. I hope both the points are clear to everyone. Just give me yes, sir, so that we can move ahead. Moving on to the next point. Sir, according to Morgan Stanley, India is expected to become world's third largest economy by which year? May I have the answers for this question, please? So India has witnessed from 2015 to 2024-25, India has witnessed a growth of 77%. That means India's GDP has grown 77%, and India is the fastest growing economy among the major economies of the world. So India will become third largest economy by 2028, and India will take over Germany in 2028, and it is expected that India will take over Japan in 2026. Give me the answer. In 2028, when India will take over Germany to become the third largest economy of the world, at that particular moment, what is going to be the GDP of the nation? What is going to be the GDP of India? May I have the answer, please? What is going to be the GDP of the country? May I have the answer, please, in the comment section? May I have the answer, please, in the comment section? So quickly give me the answer, guys, so that I can move ahead. Quickly give me the answer, guys, so that I can move ahead. Quickly. Okay, that is absolutely correct, sir. Indian economy will be of value $5.7 trillion. Who has given the answer? Sakshi has given the correct answer. That is absolutely correct. Now, there is one more option I'm getting. Sir, this is $6.7 billion, trillion dollars. Now, there is a conflict. Both the Sakshis, they are saying two different figures. So, guys, you choose which one is correct and reply in the comment section quickly. Guys, you all choose which one is correct. $5.7 trillion or $6.7 trillion. If you have revised the PDF which I have provided you in the previous session, then only you will be in a position to answer this question. Otherwise, it is a difficult question to be answered. Otherwise, it is going to be a difficult question to be answered. So quickly give me the answer, guys, for this particular question so that we can move ahead. Do reply in the comment section, please. Chalo, let's wait and watch who is going to give the correct answer. By the time I'll move ahead. According to the NPCI data, which payment app became the fifth largest UPI player in India? So we all know that PhonePe is the first. Second is we have Google Pay. On the third rank, we have Paytm. On the fourth rank, in terms of UPI transaction, we have Navi. And if I talk about the fifth player, that is Super.Money. Fifth player is Super.Money. That is absolutely the correct answer. Moving on to the next question. Name the institution that has won 2 gold awards at Scotch Awards 2025, and these awards have been given. One is related to the insurance service and the other one is related to an application. Insurance service and application, both of them are basically related to women empowerment, women entrepreneurs and whatnot. So in that particular case, the correct answer, which has won 2 gold awards, the answer to that particular question is Muthoot Finance or Muthoot Microfinance. Got it, guys? Clear? Chalo, here we go with the first news of the day. The first news which we are going to start today is changing dynamics of India's remittances, 6th round of India's remittances survey. Any idea, guys? Changing dynamics of India's remittances, 6th round of India's remittances survey. So this is basically a paper which has been published by RBI,
And in this particular paper, they have presented the result. What they have done, they have presented the result of sixth round of India's remittances survey. Now I don't know how many of you know this term very well, that what is remittance. See, whenever we talk about remittance, remittance is basically, whenever this question is asked to you, and if someone asks you how you define a word remittance, then your answer should be, sir, remittance is basically the fund transfer which has been done without liability. What I'm trying to say? I'm trying to say my younger brother, he's staying in US, he's studying in US rather, and I'm staying in India. So he's studying in US and I'm sending him the fees so that he can pay his fees, he can pay his hostel bills. That means what I'm doing, I'm not giving a loan, it's not a kind of liability. I'm transferring the funds to my family itself for their use. That is known as remittance. With respect to India, we'll call it as what? So with respect to India, we will call it as outward remittance. With respect to India, we will call it as what? So we will call it as outward remittance. On the other side, in the near future, when my younger brother, he will complete his degree, he'll start working in US, then he will be out of his salary, he will be sending some funds to the family so that family can use those funds for investment, for growth, for survival and whatnot. That again will be termed as remittance. So this one is known as inward remittance and this one is known as outward remittance. So remittance is a source of foreign currency for a nation like India, where we have huge demand on the foreign currency due to our huge volume and bills related to imports of goods and services. We always look forward for inward flow of foreign currency, and inward remittance is an important source of foreign currency for the Indian economy. And if I tell you, India is on the first rank in terms of inward remittance. That means the highest inward remittance is received by India and the highest outward remittance is done from US. Are you getting my point? So highest outward remittance US, highest inward remittance in the world, that is India. Remember that whenever a non-resident Indian send funds back to his family or his or her family, that will be termed as inward remittance. And being in India, we witness outward as well as inward remittance, but India's inward remittance has grown drastically in the past years. Now you must be wondering कि sir India का remittance सबसे ज़्यादा क्यों है, inward remittance सबसे ज़्यादा क्यों है? Quite obvious कि अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा population जो migrated means the one who has come from the other parts of the world. So if I say the highest number of immigrants in the world is from India. So if we are the source of highest number of immigrants, then obviously we should be receiving the highest value of inward remittance as well. समझ आई ये बात? Clear हो गई story? If the story is clear, the concept is clear, give me yes sir. Now we'll discuss this news. So the news says recently RBI was in news and RBI has come up, or RBI has published a paper. The title of the paper is Changing Dynamics of India's Remittance, Insight from the 6th Round of India's Remittance Survey. So if I talk about this survey, so this survey has involved data from 30 authorized dealers. I hope we all know that whenever we talk about forex market is regulated by RBI according to Foreign Exchange and Management Act. We all know that RBI is the regulator and RBI is responsible to provide license to authorized dealer category 1, category 2, category 3 and as well as full-fledged currency exchanges. But if I talk about authorized dealers category 1, so authorized dealer category 1 license or registration is allowed only to the banks. So here 30 authorized dealers, that is banks, they have been surveyed
And why they have been surveyed? Because they cover 99% of the total inward remittance which India is receiving. Along with this, we include two major money transfer operators. What are money transfer operators? थोड़ी देर wait करो, I'll explain you. And finally, we have two cross-border fintech. We have involved two cross-border fintech companies as well in order to collect the data regarding the remittances. Last point is, this particular paper is authored by officials from the Department of Economic and Policy Research, DPR, RBI. If you remember, when RBI comes up with the grade B officer recruitment, it allows the recruitment not only for the generalist position, but it also allows for DPR and DSIM. So DPR is Department of Economic and Policy Research. Please check and comment in the comment section, क्या ये वही DPR है, क्या ये वही डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट के लिए RBI separately grade B लेवल पर रिक्रूटमेंट करता है? If yes, do reply in the comment section after this video. आगे बढ़ते हैं. इस पर्टिकुलर सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे गए और वो सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें पुराने दिनों की, तो अर्लियर इंडिया वॉज रिसीविंग हाइएस्ट वैल्यू ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम GCC. GCC stands for Gulf Corporation Council. तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से हमें पहले सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस मिलता था. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि सर ये जो GCC है, in this GCC how many countries are included, or name the members of GCC? Any idea, guys? Any idea? Can you name the members of GCC? If you ask me, sir, GCC stands for Global Corporation Council, जो कि एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है. किसकी? 6 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की. एंड इफ आई टॉक अबाउट दीज Middle Eastern countries, which all countries are included in this particular category? Sir, it includes, please pay attention, this is going to be really very important. Sir, it includes Bahrain. सबसे पहली कंट्री है जो कि इंक्लूडेड है इस लिस्ट में, दैट इज Bahrain. आफ्टर Bahrain we have Kuwait. कुवैत के बाद अगली जो कंट्री है दैट इज ओमान. ओमान के बाद जो अगली कंट्री है दैट इज कतर. कतर के बाद जो अगली कंट्री है दैट इज सऊदी अरेबिया. एंड द लास्ट कंट्री वी हैव इज यूएई. तो पहले इंडिया में जो सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस था वो जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्री से आता था, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आज भी जो हमारी मेजॉरिटी लेबर है, मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स हैं, और वो भी स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट लेबर which is involved in blue collar समझते हैं ना? White collar is for services, blue collar is for manufacturing. So they are involved in blue collar jobs and they are highest value or number is in UAE. तो UAE आज भी पहले रैंक पे ही है, लेकिन over the period of time हमने ये विटनेस किया है कि जो ग्लोबल जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है उनसे जो हमें इनवर्ड रेमिटेंस मिलता था उसकी वैल्यू कम हुई है. क्यों कम हुई है? क्योंकि सर एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूएस, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दे टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडियाज इनवर्ड रेमिटेंस इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. क्योंकि पहले वीवर और आई वुड से इंडियंस दे वर माइग्रेटिंग फॉर टेकिंग अप द ब्लू कॉलर एंड इवन रेड कॉलर जॉब्स, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नाउ Indian labor possess the skills and India has become I would say the third largest nation is in the count of doctors, engineers, and this great mind of the country is trading out, due to which the inward remittance from the advanced economies is increasing, due to which the income, or I would say the inward remittance from the advanced economies is increasing. I'll just remove my image, you read out the same for me, and then I will be moving to the next point. After this, the next point we have is the survey has revealed some of the important facts. The survey has revealed that India's inward remittance has increased and it has become double.
it has become double. Guys, just read it once. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दैट सेज, अगर हम सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें 2010-11 में, 2010-11 में इंडिया में जो इनवर्ड रेमिटेंस की वैल्यू थी दैट वाज 55.6 बिलियन डॉलर्स, जो कि इंक्रीज होकर 2023-24 में डबल हो चुकी है एंड द वैल्यू वाज 111 the value was 118.7 बिलियन डॉलर्स. तो 118 बिलियन डॉलर का इनवर्ड रेमिटेंस इंडिया ने रिकॉर्ड किया है एंड इट हैज इंक्रीज्ड विद एन एवरेज रेट ऑफ 14.3% पोस्ट कोविड-19. कोविड-19 के बाद हमने रिकॉर्ड किया कि ये जो इनवर्ड रेमिटेंस है इट्स ग्रोइंग एंड इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट. 14.3% के रेट के साथ ये ग्रो कर रहा है सिंस कोविड-19 और एंड इट हैज बीन डबल्ड in a decade almost. एक 10 साल के गैप में it has increased to the twice value. दूसरा पॉइंट आता है कि सर इंडिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस कौन सा है? सर द हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंस इन इंडिया कम्स फ्रॉम यूएस, जो कि शोकेस करता है इंडिया का स्किल, इंडिया की स्किल्ड लेबर, आईटी सेक्टर लेबर विच इज residing in US, which is traveling or I would say migrating to US to earn good living style, good living standards, and they are remitting highest amount back to India. So it has emerged the largest source of remittance, जो कि 27.7% total remittance का 27.7% remittance कहाँ से आ रहा है? यूएस से. और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में it was 23.4. ये आपके रेफरेंस के लिए है. Don't memorize this. You need to memorize this data. This is important and ये तो है ही important. क्वेश्चन अगर एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो इस पर आएगा, लेकिन जब आप एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना चाहेंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू विल बी यूजिंग द डेटा व्हिच आई हैव जस्ट मार्क्ड अ स्टार. अगला पॉइंट आता है यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब इमिरेट्स रिटेन्ड इट्स सेकंड पोजीशन. तो इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस है दैट इज व्हाट? दैट इज यूएई. और उसका जो ओवरऑल रेमिटेंस में कंट्रीब्यूशन है या परसेंटेज है दैट इज 19.2%. एंड आफ्टर दैट वी हैव यूके, देन आफ्टर यूके वी हैव सिंगापुर, वी हैव कनाडा, वी हैव ऑस्ट्रेलिया. तो यहां पर अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज लिख दूं आपके लिए, देन आई वुड से इनवर्ड रेमिटेंस टॉप 5 कंट्रीज यूएस, यूएई, यूके, देन वी हैव सिंगापुर, देन वी हैव कनाडा एंड आफ्टर कनाडा वी हैव ऑस्ट्रेलिया. लेकिन अगर हमसे कोई पूछे यहां पर सर इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन सी कंट्री से आती है, सो सबसे ज्यादा एफडीआई जो रिकॉर्ड की गई है पिछले कुछ सालों में वो हाईएस्ट कौन सी कंट्री से है? दैट इज सिंगापुर. बट इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस यूएस इज ऑन द फर्स्ट रैंक, यूएई इज ऑन द सेकंड एंड सिंगापुर इज ऑन द फोर्थ, कनाडा. ठीक है, यहां तक नहीं भी याद करना देन ऑल्सो इट्स फाइन. सिंगापुर का रेफरेंस बस मैंने इसीलिए दिया ताकि एफडीआई का रेफरेंस दे सकूं, बट इफ यू कैन रिमेंबर टॉप 3 दैट इज मोर देन सफिशिएंट. If you can remember top 3, that is more than sufficient. Moving on to the next point. What does the next point says? So the combined share of Gulf countries such as UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain stood at 38%, जो कि पहले होता था 47%, क्योंकि अब 50% का ये जो रेमिटेंस में शेयर है that has been transferred to the advanced economies which include US, which include UK, Canada, Singapore as well as Australia. ठीक है जी, तो ये पार्ट याद रखिएगा. रिमेंबर दिस डेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम कहें सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में कौन सी स्टेट में रिसीव होती है? द आंसर इज महाराष्ट्र. सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे द हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंस is received in which state of India, then also my answer will be Maharashtra. तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र, सब महाराष्ट्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंस
हैज बीन रिकॉर्डेड इन महाराष्ट्र, सेकंड इन केरला, थर्ड इन तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना है और उसके बाद है हमारे पास कर्नाटक। ठीक है जी, तो ये 5 टॉप स्टेट्स, अगेन 3 याद कर लो, बाकी 2 छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया की शेयर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की, तो वो ट्रिपल हो गया, 3 टाइम्स, 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। पहले 6.6 मिलियन, यानी कि लगभग मैं कहूं तो इसको इंटू 10 करें तो दैट विल बी 10 to the power 6, तो दिस इज 66 lakhs, इट वॉज 66 lakhs, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर कितना हो गया सर, 1.85 करोड़। तो इंडिया के जो माइग्रेंट्स का, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की नंबर है, दैट हैज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द शेयर अर्लियर, टोटल माइग्रेंट्स में इंडिया का शेयर था 4.3%, नाउ दिस शेयर हैज इंक्रीज्ड टू 6%, नाउ दिस शेयर हैज इंक्रीज्ड टू 6%। ये जो डेटा है ना गाइस, this data is important, this data is important and it can be asked, I would say it can be used by you all, इसको आप यूज कर सकते हैं for sure, इसको आप यूज कर सकते हैं for sure while answering or while writing a good descriptive answer। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। GCC nations account for around 50% of the total Indian migrants worldwide। तो अगर हमसे आज भी कोई पूछे कि इंडिया का जो माइग्रेशन है वो सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ नंबर कौन सी कंट्रीज में है, देन माय आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 50% is holded in GCC। UAE is the highest hub for Indian migrants which are engaged in blue collar jobs as we already discussed। तो ये आपके रेफरेंस के लिए 2 पॉइंट्स मैंने दे दिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर दिस पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर डिजिटल बैंकिंग डेटा। जब आप डिजिटल पेमेंट्स पे या डिजिटल पेमेंट रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे होंगे, देन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस, अगर हम बात करें इनवर्ड रेमिटेंस जो इंडिया को रिसीव हो रहा है, जो इनवर्ड रेमिटेंस इंडिया को रिसीव हो रहा है, उसमें जो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है, एवरेज value of transaction है, that is over 5 lakh rupees and it has the highest share of nearly 29%। यानी टोटल जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होती है उसमें 29% जो ट्रांजेक्शंस हैं उसकी वैल्यू 5 लाख या उससे ज्यादा, उसकी वैल्यू 5 लाख या उससे ज्यादा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा विच यू नीड टू रिमेंबर। अब वी आर कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस न्यूज, और लास्ट सेगमेंट क्या है ध्यान से देखना। An average of 73.5% of total remittances received by MTOs were through digital mode during financial year 2024। तो ये डेटा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए MTO है क्या, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स। अब मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई एम रिजाइडिंग इन यूएस, मैं यूएस में रिजाइड कर रहा हूं and I want to transfer the funds from my bank account to my parents bank account। अब उसमें क्या होगा कि मेरे पास जो मेरा बैंक अकाउंट है, उस अकाउंट में पहले मुझे अप्रूवल्स लेने होंगे so that I can make the international transactions। rather than doing all this, what I can do is मैं सीधा सीधा जाऊंगा मनी ट्रांसफर एजेंट के पास, मनी ट्रांसफर एजेंट, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर के पास, और उसे कहूंगा कि सर मेरे इस बैंक अकाउंट से इतना पैसा आप प्लीज ट्रांसफर कर दीजिए मेरे फादर के बैंक अकाउंट में, एंड उनका जो बैंक अकाउंट है दैट इज इन यूएस, सॉरी उनका जो बैंक अकाउंट है दैट इज इन इंडिया। तो जो आपने अमाउंट बताई, जिस सोर्स से आपने बताया, उसी सोर्स से ये पैसा क्या होगा, उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी मोड में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड द सर्विस प्रोवाइडर which helps you to do this or which helps you to complete the service, that is basically known as MTO। अब क्वेश्चन ये है कि सर हाउ दे ऑपरेट। अगर आप हाउ दे ऑपरेट के फॉर्मेट पर जाएंगे तो आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू विच इज मोर देन इनफ फॉर यू। उससे ज्यादा ना तो जरूरत है ना ही आपको दिमाग चलाना है। देखो ये समझो कि जो इंडिविजुअल यूएस में रह रहा है उसने अपने अकाउंट से, यूएस के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया एमटीओ के यूएस के अकाउंट में, या उसने कैश दिया एमटीओ को, या फिर उसने डिमांड ड्राफ्ट दिया एमटीओ को, जो भी है वो एमटीओ को पैसा मिल गया यूएस में। अब इसी एमटीओ का या तो ब्रांच होगी इंडिया में या फिर उसका टाई अप होगा किसी के साथ,
तो जो ब्रांच उसकी एमटीओ की इंडिया में है, वहां उस इंडिया की ब्रांच से वो अमाउंट या तो आपके फादर के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी या फिर आपके फादर को ओवर द काउंटर जाकर कैश भी अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज हाउ द ट्रांसफर इज डन। अगर आप एक्चुअली देखें तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, कंपनी ने अपने एक ऑफिस में फंड्स रिसीव किए, दूसरे ऑफिस से फंड्स ट्रांसफर कर दिए एंड दे अवॉइडेड, दे वेरी आई वुड से appropriately avoided the exchange rate risk on them। अपने ऊपर उन्होंने exchange rate risk को avoid कर दिया, लेकिन कस्टमर के ऊपर exchange rate risk लगाया। कैसे? जब कस्टमर आए, उन्होंने कहा $100 ट्रांसफर करने हैं, तो उन्होंने वो $100 को पहले इंडियन रुपीज में ट्रांसफर किया। लेट्स से बनते हैं 90 के हिसाब से 9,000, और उस 9,000 रुपीज पे उन्होंने अपनी फीस चार्ज की, और फीस चार्ज करने के बाद दे आस्क्ड देम टू पे $105 की $5 की फीस है और 9,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। और जैसे ही ये 9,000 रुपए ट्रांसफर हुए, जैसे ये 9,000 रुपए ट्रांसफर हुए, एट द टाइम ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट का जो रिस्क था विच हैज बीन ऑलरेडी इफेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है जी, समझ आ गई बात। लेकिन ये टाइम पीरियड इतना कम है, दैट मीन्स इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स टू कंप्लीट, इट टेक्स 10 to 15 minutes to complete the entire transaction, which is more than enough, and it generally avoid the multiple exchange rate risk on the customer as well as on the recipient। So पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मनी ट्रांसफर ऑपरेटर एक कंपनी है जो ऑफर करती है मनी ट्रांसफर की सर्विस। कस्टमर्स दे कैन यूज एमटीओज टू सेंड एंड रिसीव मनी अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग बैंक ट्रांसफर्स, कैश पिकअप्स, मोबाइल वॉलेट ट्रांसफर्स। कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द रेसिपिएंट। फॉर एग्जांपल माय फादर, आई विल टेल माय फादर्स नेम, उनका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोन नंबर, अमाउंट विच आई वांट टू ट्रांसफर, currency in which I want to send my funds. For example, if I'm sending to India, I want to send my funds in Indian rupees, and preferred payment method ki I want to transfer in cash or account, that will be discussed. After giving all these details, MTO will convert the money from the client into the desired currency and send it to the recipient through the chosen payment method। तो जैसे ये फंड ट्रांसफर हुए from one corner of the world to the another, funds can be easily transferred within a span of minutes। Benefits क्या है? So पहला benefit है MTOs, they have a broad network, जिसकी वजह से it is possible to use the MTO service almost in all the parts, in all the corners of the world। Sending and receiving money is very simple। Quick transfer of money is witnessed, and competitive exchange rates and fees make it more I would say promising for the customer point of view। So अगली बार अगर कोई पूछे MTO क्या है, आप बता पाओगे। इनवर्ड रेमिटेंसेस क्या है, आप बता पाओगे। इनवर्ड रेमिटेंसेस में इंडिया का क्या स्टेटस है, आप बता पाओगे। एंड दिस इज द एंटायर डिस्कशन of the paper which has been published by RBI। It was mentioned in the March bulletin। तो अगली बार अगर कोई कहे क्या माधव सर RBI बुलेटिन कवर करते हैं, तो आंसर इज यस, आई कवर द RBI बुलेटिन एज वेल। लेकिन हर एक न्यूज नहीं, जो न्यूज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे मैं जरूर डिस्कस करूंगा, सो दैट if any question is asked you will be in a position to answer it। If you like it, just give me a thumbs up so that I can move on to the next question। And here we go to the next news। Before I start the discussion on the next news, which bank was penalized? Which bank was penalized मतलब किस बैंक के ऊपर पेनल्टी चार्ज की गई by RBI for what? So for contravention of directions related to reporting of transactions under the liberalized remittance scheme। देखो वैसे तो 99.9% RBI is not going to ask questions on penalty values, but हाँ अगर penalty liberalized remittance scheme जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, then there is a probability it can be asked। तो अगर हमसे कोई पूछे what is liberalized remittance scheme, so liberalized remittance scheme is basically a scheme introduced by RBI under which RBI allows the Indian citizen or Indian resident to transfer $250,000 per year विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो इसका मतलब कि आप बिना प्रायर अप्रूवल के एज एन इंडियन रेजिडेंट यू कैन ट्रांसफर $250,000 टू द इंडिविजुअल्स, टू द कंपनी, जैसा भी आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, यू कैन डू दैट। अब रिसेंटली कोई एक बैंक था
कोई एक बैंक था या ऑर्गेनाइजेशन थी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर नहीं किया अपना डेटा, दैट मीन्स इट हैज नॉट completed the directions related to the reporting of transactions done under liberalized remittance scheme, and the penalty value charged is 36.28 लाख. एक्चुअली में ये बड़ी कंफ्यूजिंग फिगर है क्योंकि रिसेंटली दो पेनल्टीज चार्ज की गई है. सेंट्रल बैंक ने एक तो पेनल्टी चार्ज की 36 लाख की, किस पर? आईडीबीआई पर, क्योंकि आईडीबीआई फेल हो गया था, imposed for failing to undertake due diligence while processing inward remittance from foreign currency account. तो ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट से जो इनवर्ड रेमिटेंस प्रोसेस किए गए उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स थी दैट वाज नॉट फुलफिल्ड. एंड ऑन द अदर साइड 36.28 लाख वैल्यू का 36.28 लाख वैल्यू का जो पेनल्टी है दैट हैज बीन चार्ज ऑन सिटी बैंक फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द डायरेक्शन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर द एलआरएस. तो जैसे हमने अभी अभी पढ़ा वो पेपर, उस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने पेपर में रेमिटेंस के बारे में बात की तो ये दोनों की दोनों जो न्यूज है दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप नाउ यू नो व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी सर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो आंसर होगा सिटी बैंक. लेकिन अगर यही लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की जगह पॉइंट होता इनवर्ड रेमिटेंस का और पेनल्टी वैल्यू होती 36 लाख, तो उसमें हमारा आंसर क्या बन जाता सर? उसमें हमारा आंसर बन जाता आईटीबीआई. In that particular case, the answer of this particular question would have been ITPI. Got it, guys? Clear? Moving on to the next nation. So the next nation, not the question, the next nation is the country ranked first globally in terms of all-time funding for women-led startups. We know that India is the third largest. India is the third largest ecosystem, startup ecosystem overall. बट टुडे अब हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे. आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विमेन लेड स्टार्टअप्स की. और सबसे ज्यादा फंडिंग कौन सी कंट्री के विमेन लेड स्टार्टअप्स को दिया गया है अब तक? व्हाट विल बी योर आंसर? डू यू लाइक द क्वेश्चन गाइस? अच्छा लगा क्वेश्चन? जब ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो अक्सर काफी लोगों को ये लगता है यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया. तो डोंट वरी, in our upcoming sessions I will be covering all these kind of questions so that you will be in a position to answer them in the examination. लेकिन अभी तक अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया, do hit the like button so that I can get to know कि हाँ आपको जो questions हैं, जो level of questions हैं, उनका जो मैं कह सकता हूँ कि फॉर्मेट है वो आपको पसंद आ रहा है. इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. चलो तो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं. सो द कंट्री रैंक्ड फर्स्ट globally in terms, then the answer is US. So the country on the second rank, then the answer is India. Let us check it out and then we'll come back. So global funding for women led startup, overall अगर हम global funding की बात करें, तो overall जो global funding है women led startups को वो 29.6 बिलियन पर आकर रुक गई है. It has dropped by 11% क्योंकि last year it was 33.1 बिलियन डॉलर्स. और इसमें अगर हम डिक्लाइन की बात करें 2022 से, सर 2022 में ये जो फंडिंग थी दैट वाज 37.5 बिलियन डॉलर्स. दैट मींस ईयर ऑन ईयर बेसिस में, दैट मींस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपकी जो विमेन लेड स्टार्टअप्स को फंडिंग है दैट इज बीइंग डिक्रीजिंग. सो डिस्पाइट ऑफ दिस डाउनटर्न, इंडिया रैंक्ड सेकंड ग्लोबली. India is on the second rank globally in terms of all-time funding for the women-led startups, and the first rank has been backed by US. और ये जो data है, this data or this report was given by Trax. So Trax has given this particular report और उस report के according India is on the second rank, US is on the first rank. तो अगर आपको ये list दिखा दूं तो 2024 में women-led startups में जो investment हुआ that was 29.6 billion dollars. In 2023, this funding was 33.1, and in 2022, this was 37.5 billion dollars. Women-led startups, they accounted for 11.7% of the global funding. तो अगर हम बात करें total funding जो मिली women-led startups को, that is 29.6 billion dollars, and this 29.6 billion dollars is 11.7%
of total funding. तो ग्लोबल टोटल फंडिंग का 11.7% is 29.6 and 29.6 billion dollars is the funding done to the women led startup. इसका मतलब ये हुआ कि women led startups को पूरे वर्ल्ड में जो फंडिंग मिली है that is 11.7% with respect to the total funding. अब इंडिया की पोजीशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस हैं. सर इंडिया इज ऑन द सेकंड रैंक इन टर्म्स ऑफ ऑल टाइम फंडिंग फॉर women led टेक स्टार्टअप्स. विमेन, तो ये जो सारी बातें हो रही है दिस इज रिलेटेड टू दी विमेन लेड टेक स्टार्टअप्स. और इंडिया ने आज तक, इंडिया के जो विमेन लेड टेक स्टार्टअप्स हैं, इंडिया के जो आज तक विमेन लेड टेक स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने कितनी फंडिंग ली है? दैट इज 26.4 बिलियन डॉलर्स. हाईएस्ट फंडिंग मिली थी ऑब्वियसली क्योंकि ये वो ईयर है जिसमें ओवरऑल एफडीआई भी इंडिया में हाईएस्ट था एंड दैट वाज 6.3 बिलियन डॉलर्स. इंडिया की अगर हम बात करें ग्लोबल शेयर 2022 में it was 15.18% and India has been ranked third in 2024 in annual funding after US and UK contributing 3.96% of the global women led startups. तो अगर हम बात करें all time funding, so all time funding में India is on the second rank. If I talk about India ranked third in 2024 in annual funding, तो annual funding में India is on the third rank. In all time funding में India is on the second rank. India is behind US and over here India is behind US as well as UK. India is behind US as well as UK. Moving on to the next point. The next point we have is, sir इंडिया में सिटी वाइज क्या ट्रेंड है? अगर हम सिटी वाइज ट्रेंड की बात करें तो बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर. तो याद रखिएगा हाईएस्ट women led startups they have received the funding in Bengaluru, second Mumbai, third is Delhi NCR. No new unicorn in 2023-24. जो लास्ट इंक्रीज आया था यूनिकॉर्न्स का रिलेटेड टू women led startups that was 2021. women led startups जो कि पब्लिक हुए, one is Mobivic, then we have Usha, then we have Tanwal, Interior and More and Law Seco. These are the startups which have went public, that means which have issued IPOs, initial public offerings. They have issued their shares to the public and raised the funds from the public itself. ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? I guess all these points are clear. Done? If it is clear, just give me yes sir. तो all time funding में इंडिया का क्या रैंक है? सेकंड. ओवरऑल अगर हम एनुअल फंडिंग की बात करें फॉर 2024 दैट इज थर्ड. ठीक है जी, तो ये न्यूज जरूर देखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. आदित्य प्रकाश, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस बट लेट मी कंप्लीट द एंटायर डिस्कशन. सो इन द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन फॉर श्योर. सर SEBI was in news recently because SEBI has recently cut the timeline for the completion of right issues to 23 days. I hope आप सबको पता होगा that whenever the company it issues shares to the public with the motive of earning, with the motive of raising capital, we call it as share issue. And the share issues include issuing of equity shares. It also include the issuing of preference shares. It also include the issuing of right issues. What is right issue? So right issue basically means when company issues the shares with a right to purchase. I come again. When company issue the shares with a right to purchase, इसका मतलब हर कोई उस शेयर को परचेज नहीं कर सकता. There are certain rights attached to those shares and only specific individual can purchase that particular share. For example, a company is issuing the shares for its employees. That means this share will be taken up. This share can be taken up. This share can be purchased only and only by the employees of the company. That comes under the category of right issue. तो पहले ये जो right issue का process था, it was very lengthy. It was very lengthy. It ranged from 126 days to 317 days in the past. लेकिन अब सेबी ने कहा नहीं सर, in order to increase the capacity of the company to raise the funds, at least through right issue, जहां पे पता है कि you are targeting the specific segment और वो स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, दैट शुड बी डन इन अ वेरी रश्ड मैनर. और उसके लिए जो अब टाई अप है या फिर जो टाइमलाइंस है, दैट इज 23 डेज. तो क्या क्या चीजें हैं सर? राइट इश्यूज विल बी कंप्लीटेड विद इन 23 वर्किंग डेज फ्रॉम the date of board of directors of the issuer approving the issue. So once the board of directors they have approved the issue,
as per the as per the SEBI circular, then within 23 working days you can complete your issue as per SEBI. तो मुझे बताइएगा, होमवर्क है ये, this is homework, that before this कितने दिनों में, before this 23 days वाला clause, what were the count of the days in which a company was capable to issue and raise the funds through right issue. ये जो mechanism है, this is even faster than the preferential shares. That means अगर आप preferential allotment में जाते हैं, then also it takes around 40 working days. लेकिन now in right issue you can issue the shares within 23 days, which means you can raise the funds within 23 days. तो ये जो right issue है, it will be kept open for subscription. That means you will announce that I am issuing the right issue. If you are interested, you can subscribe for it, and you will open up this subscription for minimum 7 days and maximum 30 days. So in the span of minimum 7 to maximum 30 days, if you are willing, you can apply for the share. And if the subscription capital is less than the offered capital, समझ आ रही है ये बात है? इसका मतलब क्या होता है कि जब कंपनी ने कहा कि हम 100 करोड़ के शेयर बेचना चाहते हैं राइट इशू पर और डिमांड आई 1000 करोड़ की, तो हम क्या कहेंगे? सब्सक्रिप्शन कैपिटल बड़ा है किससे? इशू कैपिटल से। तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में रैंडम अलॉटमेंट की जाएगी। बट अगर सब्सक्राइब कैपिटल आता 50 करोड़, मतलब डिमांड आई कि मैं 50 करोड़ के शेयर खरीद सकते हैं हम लोग, लेकिन कंपनी इशू करना चाहती थी 100 करोड़ के, तो जितनों ने जितनी डिमांड की उन सबको वो शेयर्स क्या किए जाएंगे? दैट विल बी अलॉटेड। ठीक है। राइट इशू जो है, इट विल बी केप्ट ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 30 days. दैट शुड बी क्लियर टू यू। सेबी हैज मैंडेटेड कि यू हैव टू अपॉइंट, सेबी ने कहा कि कंपनी को अपॉइंट करना होगा। व्हाट? सेबी हैज आस्क्ड द कंपनीज टू अपॉइंट मॉनिटरिंग एजेंसी to supervise the use of proceeds from all types of right issues of the equity shares. Currently, अगर आप securities offer करेंगे for more than 50 crores, if you are issuing the right issue shares of value more than 50 crores, then you need monitoring agency. Otherwise, there is no need of monitoring agency if you are issuing for value less than 50 crores. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया सर? ये 50 करोड़ वाला क्लॉज इंपॉर्टेंट हो गया, ये मॉनिटरिंग एजेंसी इज इंपॉर्टेंट, सेकेंड दिस 23 वर्किंग डेज इज इंपॉर्टेंट, दिस 40 वर्किंग डेज इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस विंडो 7 days to 30 days इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। So I guess each and every point which I have discussed today is crystal clear. So today we are going to discuss the recent update related to RBI, जिसमें RBI ने priority sector lending को क्या किया है? रिवाइज किया। I don't know whether you are aware of this or not. I'll try to make you understand what actually the meaning or what actually this term priority sector lending mean. So please pay attention. Let me start this discussion with you all. So please pay attention. जब भी कभी हम बात करते हैं बैंक की, whenever we talk about a bank, we know that bank will provide loan, और बैंक को ये जो lending service है, बैंक perform this lending service with the sole motive of what? So with the sole motive of earning profit. लेकिन जब ये profit term बीच में आती है, then RBI comes in the way and RBI says कि bank before lending you must analyze one thing, that your lending should be done in this manner, that your lending should be categorized into 2 categories. एक आपकी lending होनी चाहिए that is priority sector, जहां पे आपका एम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, बल्कि आपका एम होगा कि बैंकिंग सर्विसेज को मास ओरिएंटेड सर्विसेज बनाना, जिसकी वजह से ये प्रायोरिटी सेक्टर टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था बैक इन 1972, जिसका एम फाइनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हैं या फिर बैंकिंग सर्विस को मास ओरिएंटेड सर्विस बनाने का टारगेट रखा गया। और बाकी का जो अमाउंट है दैट विल बी गिवन ऑन लोन बाय द बैंक, विच विल बी टर्म्ड एज कमर्शियल सेक्टर, which will be termed as commercial sector, obviously जहां पर बैंक will target to earn profit, जहां पर बैंक will target to earn profit, और यहां पर एक वैल्यू परसेंटेज फिक्स की जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ आई से X% of adjusted net bank credit, X% of adjusted net bank credit will be given to the priority sector and rest of the amount will be given to the commercial sector. तो आज का जो हमारा एम है, I'll not talk on A and B C क्योंकि it's all around a very important and a very lengthy concept, तो A and B C पे तो आज बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में A and B C पे जरूर बात करेंगे।
अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है इसको इस थॉट के साथ बनाया गया कि जिन सेक्टर्स को बैंक इग्नोर कर रहा है, जिन सेक्टर्स को हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री इग्नोर कर रही थी बैक इन 1960s 1970s, उसको ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप एक बात सोच समझ कर बताएं कि अगर आप एक बैंक की ब्रांच में मैनेजर हैं एंड यू आर सिटिंग इन द बैंक ब्रांच और आपके ब्रांच के दरवाजे खुलते हैं और सामने से दो लोग आ रहे हैं, एक है लेबर क्लास इंडिविजुअल हु इज अ रिक्शा पुलर एंड द अदर वन इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, and they both are approaching to you to request or to I would say demand for a loan. If you are a branch manager, you will obviously give your priority to the industrialist, you will obviously give your priority to that individual who is wearing suit boot, who is carrying the suitcase, because you know you will be earning a lot from it. But on the other side, government wants that the rickshaw puller should also be given equal, I would say should also be given equal importance by the banking sector so that they can involve into the I would say so that they can involve into the organized financial sector operations rather than borrowing from the local money lenders and witnessing the exploitation which they were doing in the past. So इस चीज को देखते हुए finally it was decided that every bank will be liable to provide loan to the priority sector, and under this priority sector we have 8 subsectors. So under priority sector, how many subsectors we have? So if I talk about the subsectors, we include agriculture. Along with agriculture, we have MSMEs. Along with MSMEs, we have export credit. Then we have education loan. Then we have education lending. Along with that, we have home loan. We have renewable energy or renewable energy infrastructure development loan, social infrastructure development loan, and other category जिसमें हम include करते हैं weaker section को. Why I'm mentioning these categories over here? मैं आपको यहाँ पे एक important पॉइंट समझाना चाहता हूं which is not clear with you, तो आपके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कभी टर्म क्लियर होगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे बात करें होम लोन की, सी जो होम लोन है दैट इज बीइंग डिमांडेड बाय ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे फिर वो मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, वीकर सेक्शन है, या फिर वो हाई क्लास आदमी है, एवरीवन वांट्स होम लोन। तो यहां पर आरबीआई क्या कहता है कि प्रायोरिटी सेक्टर lending basically means a type of lending where the subsector is fixed, where the subsectors are fixed, that these lending are going to be done to which all sectors, and there is a limit, there is a prefixed limit, जितनी लिमिट तक लोन दिया जाएगा अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कार लोन, तो कार लोन कौन सी कैटेगरी का पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ कमर्शियल सेक्टर। अगर मैं कहूं पर्सनल लोन, ये कौन सी कैटेगरी का पार्ट है? ऑब्वियसली कमर्शियल सेक्टर। अगर मैं कहूं हैवी इंडस्ट्री को लोन चाहिए, तो हैवी इंडस्ट्री को जो लोन चाहिए दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ व्हाट? सो दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ कमर्शियल सेक्टर। लेकिन अगर होम लोन की, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर होम लोन की लिमिट है, अगर होम लोन की लिमिट है 50 लाख, यानी कि अगर आपको होम लोन 50 लाख या उससे कम वैल्यू का चाहिए, देन यू विल गेट इन द प्रायोरिटी सेक्टर। And if you want home loan above 50 lakhs, then it will automatically be included under the category of commercial sector. तो मैं यहां से बोलना क्या चाह रहा हूं? What I'm trying to say, I'm just trying to say that the sectors which are defined under priority, they will be included under priority up to a particular limit. And if the borrower demands above the limit which is prescribed or discussed or mentioned under priority sector, then these subsectors can even included under the category of commercial sector. They can even be included under the category of commercial sector. And also there is an overall limit, and if the bank has exhausted its overall limit in the priority sector, then also you can borrow the loan under the commercial sector in these conditions. ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे what is priority sector, you know this very well. Why priority sector was introduced, अब आपको वो भी पता है। And now the question is, what are the changes which have been done? Actually, RBI has revised the entire priority sector lending guidelines, and what I have done is I have highlighted those guidelines which have been revised,
वैसे तो मैं पूरी गाइडलाइन लेके आया हूं आपके पास, और आई विल बी डिस्कसिंग the overall guideline with you, but I will be specifically focusing on the changes, on the updates which have been done by RBI. So let's get started. Before I start the discussion, I have these key highlights which I will be discussing in the end. क्योंकि अभी डिस्कस किया तो आपको लगेगा बस highlights पढ़ लेते हैं, that will be more than sufficient, but that's not the case. So let's discuss this particular news in much detail. तो सबसे पहला point, what is priority sector lending? That is clear to us, and this priority sector lending is basically the loan provided by the commercial banks, on the guidelines which are issued by RBI, and RBI has the power to issue these guidelines as per section 21, section 35, section 56 of Banking Regulation Act 1949. So if this question is asked that RBI can control the credit disbursement of the banks, is it true? Yes sir, RBI can easily control the credit disbursements of the bank. And how is it possible? Sir, it is possible because RBI possesses the power under section 21, 35 and 56 of Banking Regulation Act 1949. Now the next question is, sir, जिन directions की आप बात कर रहे हो, these directions are going to be effective from which date? Sir, these directions are going to be effective from 1st of April 2025. Now, most of you must be wondering कि सर ये जो guidelines थी, what is the need of revising these guidelines? कि सर इन guidelines को क्यों revise किया गया? उसके पीछे logical reasons हैं. See, over the period of time in an economy, we have witnessed inflation, and due to this regular inflation, undoubtedly the price has shoot up. Price has increased. So if I am a borrower and I want to borrow the loan in order to complete a particular task or requirement, then in that particular case, if my requirement is fulfilled, then only the priority sector lending will be beneficial for me. Otherwise, it is just a kind of, I would say, service which is given by the government, but it is not beneficial for me, or given by RBI, but it is not beneficial for me. So keeping that in mind, in order to, I would say, match the current inflation scenarios, RBI has recently revised the priority sector lending guidelines, and these guidelines are going to be implemented from 1st of April 2025. Who all, or I would say these guidelines are going to be applicable on which all banks? So these guidelines are going to be applicable on all the commercial banks, which include undoubtedly RRBs. It includes small finance banks, local area banks. Along with that, it includes public sector banks, private banks, as well as foreign banks. And even these guidelines, they are going to be implemented and they are going to be applicable on urban cooperative banks, except one. And what is the salary earners bank? So salary earners bank, these are salary earners urban cooperative bank. Basically, these are the urban cooperative banks which are set up by the salary earners. They come together, they frame a bank, and with the help of this bank, they try to provide benefits to the members only. So these kind of banks, they are not included under the category of priority sector lending, or I would say the priority sector lending limits are not applicable on salary earners bank. Is it clear, guys? So next time if someone asks you what is salary earner urban cooperative bank, I hope this is the very first time in your life that you have got to know there are some banks which are known as salary earners urban cooperative bank. These are those banks which are set up by the salary earners, and these are the urban cooperative banks. On them, priority sector lending limits are not applicable. Is it clear till this point? Shruti, Radhika, Neha, Dora, and many others who all are live. Is this point clear? If it is clear, just give me yes sir quickly so that I can move ahead. Just give me yes sir if it is clear so that I can move ahead quickly. I need... Okay, thank you so much. Thank you so much, Ritik, Shruti, Mukund. Fine. Now let's move on to the next point. What does the next point say? So the next point after applicability is purpose. Purpose means, so why this priority sector lending
was introduced back in 1972 and why currently its revision has been done. What are the reasons? See, priority sector lending, as I have already discussed, it's a framework which basically ensures adequate flow of credit from the banking system to the sectors of the economy which are generally ignored by the banking sector, or which are generally ignored by the institutional financial, or I would say the regulated financial institutes. So in order to bring the focus of these regulated financial institutes on these neglected sectors, priority sector lending was introduced back in 1972, and today its values have been revised with the same guidelines, with the same thought process. Fifth point is definition. So in this current, please pay attention, in this current revision of priority sector lending, there have been introduction of new definitions, or I would say certain terms have been redefined, and those new definitions are really very important. They are capable to be asked in the form of phase 1 examination. So first definition they have given us for allied activities. If you remember, we always say agriculture plus allied activities. If someone asks me, what is this allied activities? Sir, in case of agriculture, now we have direct agriculture activity, which is related to cultivation. Then we have indirect agriculture activities such as storage and all. And then we have allied activities. Allied activities basically means when you are related to the activities related to rural area, for example, dairy farms, then we have fishery farms, then we have poultry farms, then we have animal husbandry, pashu palan, they all are included in the category of allied activities. Allied activities, or I would say the entire agriculture sector, as I discussed, it's a part of priority sector lending, and under that particular inclusion, there have been a definition, or there have been a discussion related to the term allied activities. So allied activities are those activities. Please read this definition word by word. It is very important. So allied activities, that is the activities allied to agriculture, means directly, indirectly related to agriculture, which include what all activities are included now? So dairy, fishery, animal husbandry, poultry, beekeeping, sericulture and similar activities will be included under the category of allied activities. This is the first revision of the definition which have been done. Second definition which have been highlighted under this discussion is very, very, very important. That is non-corporate farmers. Trust me guys, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, फिर चाहे वो फेज 1 में आए, चाहे वो फेज 2 में आए, लेकिन अगर जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे इस साल, यू विल श्योरली विटनेस कि नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा गया है. सो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स क्या है? सर, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स का मतलब है वो फार्मर्स जिसमें हम इंक्लूड करेंगे इंडिविजुअल फार्मर्स को. इंडिविजुअल फार्मर्स का मतलब हम इसमें इंक्लूड करेंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. मुझसे कोई कहे what do you understand by the word sir marginal farmer? Can you give me the answer in the comment section? मार्जिनल फार्मर हम किसे कहते हैं सर? हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं उस फार्मर को जिसके पास लैंड होल्डिंग कितनी है, अप टू 1 हेक्टेयर. और फिर हम स्मॉल फार्मर कहते हैं उस फार्मर को जिस फार्मर के पास लैंड होल्डिंग कितनी है सर, 1 to 2 हेक्टेयर. जिस फार्मर के पास लैंड होल्डिंग कितनी है, 1 to 2 हेक्टेयर. तो इसका मतलब इंडिविजुअल farmers such as small farmers and marginal farmers, they are included under the category of non-corporate farmers. Second is proprietorship firms of farmers. Proprietorship firms यानी कि farmers ने मिलकर अगर कोई firm बनाई है जो कि डायरेक्टली एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में या फिर डायरेक्टली एंगेज्ड है एलाइड एक्टिविटीज में, दे आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स. इवन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स as well as the joint liability groups, they are included under the category of non-corporate farmers. तो ये point, ये term बहुत important है. Please keep in mind. So if someone asks you what is non-corporate farmers, and it includes the individual farmers, which include small and marginal farmers,
proprietorship firms of farmers directly engaged in agriculture and allied activities, self-help groups, as well as joint liability groups of individual farmers will be the part of, they will be termed as non-corporate farmers. Got it? Third definition which has been revised under this guideline is that is on lending. Again, I would say ये भी एक important aspect है. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस फेज 2 में ज्यादा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस फेज 2 में ज्यादा बिकॉज इट इज मोर टेक्निकल. बट हाँ, दिस कैन बी आस्क्ड ईदर इन फेज 1 और फेज 2. लेकिन ये दोनों के दोनों स्लाइड्स, सॉरी, ये दोनों की दोनों जो टर्म्स आपकी स्क्रीन पर है, दोनों आपको एग्जामिनेशन में इस बार देखने को जरूर मिलेंगे. आप सोच रहे होंगे कि बस इतना, नहीं 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 नहीं, इन दोनों टर्म्स से रिलेटेड बहुत डेटा देने वाला हूं इस क्लास में. आई विल बी शेयरिंग much more data on these two terms, and that is the reason I am saying that these two terms are really very important, and in the examination or in the upcoming exam the question will be asked. Is it clear? Okay, so on lending means loan sanctioned by banks to eligible intermediaries for onward lendings. इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning? देखो, इसको समझा देता हूं. The meaning of this particular point is whenever a bank, एक बैंक है, अगर बैंक लोन दे एक इंटरमीडियरी को, बैंक अगर लोन दे एक इंटरमीडियरी को, लेट्स से एनबीएफसी को या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को, और ये जो लोन दिया गया बैंक द्वारा इंटरमीडियरी को, और इंटरमीडियरी से ये लोन दिया गया फाइनली पब्लिक को, ये लोन दिया गया फाइनली पब्लिक को, दिस इज व्हाट सर, दिस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑन लेंडिंग. अगली बार अगर आपसे कोई पूछे what is on lending, sir, on lending basically means when bank provide loan to an intermediary and that intermediary provide loan to the final beneficiary, that intermediary provide loan to the final beneficiary, उस process को what we call, so we call that process as on lending. We will call that process as what? So we will call that process as on lending. देखो जरा पढ़ते हैं. On lending basically means loan sanctioned by banks to eligible intermediaries for onward lending. Such loans extend for creation of priority sector assets and which remain deployed, and such assets will be eligible for the classification under priority sector lending. तो अगर ये लोन एनबीएफसी से या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से चलकर पब्लिक तक पहुंचा, और अगर ये लोन दिया गया उसी कैटेगरी में, या अगर लोन दिया गया उसी फॉर्मेट पे जो फॉर्मेट ऑलरेडी बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए फॉलो कर रहा है, देन दिस ऑन लेंडिंग विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ, दिस ऑन लेंडिंग विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ, this on lending will also be the part of what? So this on lending will also be the part of priority sector lending. तो ये जो on lending है इसको भी हम इंक्लूड करेंगे क्या सर? इसको भी हम नाम देंगे किसका? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का. तो ये जो रीफाइनेंस टर्म हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, रीफाइनेंस इज अ जनरल टर्म व्हिच मींस फाइनेंसिंग द फाइनेंसर, व्हिच मींस फाइनेंसिंग द फाइनेंसर. बट हियर द वर्ड ऑन लेंडिंग इज बेसिकली यूज्ड while declaring that loan under the category of priority sector lending. मतलब मैं अगर बैंक हूं, आई एम दिस बैंक, और अगर मैं बैंक हूं और अगर मैं अपनी बात करूं तो बैंक एज अ बैंक आई एम प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, लेकिन मैंने अब डायरेक्टली बेनिफिशियरी को लोन ना देकर, इफ आई हैव गिवन अ लोन टू द इंटरमीडियरी एंड दैट इंटरमीडियरी हैज गिवन द लोन टू द पब्लिक व्हिच इज एलिजिबल अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन, देन दिस लेंडिंग डन बाय मी will again be covered under the category of priority sector lending, and that is termed as on lending, and that is termed as on lending. बोलो समझ आया? बोलो समझ आया? कार्तिकेय, रीफाइनेंस और ऑन लेंडिंग में क्या डिफरेंस है? How the two are different? I hope it is clear to you. If it is clear, just give me yes sir. If it is clear, just give me yes sir, so that I can move ahead. चलो, I guess it's clear. Chaliye, let's move on to the next point. Now, the next point says, sir, if I talk about the priority sector lending, in case of priority sector lending, the updates have been done in the past, और ये पहली बार नहीं हुआ कि priority sector lending have been updated. It was earlier updated in 2020, then it was again updated in 2024, and now it has been reviewed in 2025. But जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन्स ऑन गोइंग है,
all the loans which are ongoing, they will remain in the category of priority sector. They will remain in the category of priority sector regardless of the new guidelines introduced. मान लो आपने जो last time loan दिया as a bank, now that loan is no more eligible. Now that loan is no more eligible under the category of priority sector. Still, that already lended amount, that already lended loan will be included or will remain under the category of priority sector only. But from 1st April 2025, agar as per the new guidelines, you will be providing loan according to the new guidelines only. जो previous guidelines थी उनको you cannot as a bank cannot continue. ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ आ गया, फाइन. चलो अगला पॉइंट क्या है? The next point talks about the categories under priority sector. तो जैसा कि मैंने इनिशियली बताया, what all categories are included? Sir, agriculture sector, then we have micro, small, medium enterprises, export credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy infrastructure and others. और others में जो सबसे important segment है, that is your weaker section. That is your weaker section. ठीक है, अब एक एक करके सारे के सारे सब सेक्टर्स को देखेंगे और इन सब सेक्टर्स में क्या क्या टारगेट्स सेट किए गए थे वो चेक करेंगे और कौन कौन से टारगेट्स को रिवाइज किया गया वो चेक करेंगे और उसके साथ साथ कौन कौन से सेक्टर की लिमिट्स को रिवाइज किया. इफ आई जस्ट मार्क इट फॉर यू ताकि आपको पता चले इंपॉर्टेंस, तो सर एजुकेशन के लिए लिमिट रिवाइज, एक्सपोर्ट के लिए लिमिट रिवाइज, हाउसिंग के लिए लिमिट रिवाइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइज, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइज, वीकर सेक्शन रिवाइज्ड, एग्रीकल्चर के लिए कंडीशंस रिवाइज्ड, एमएसएमई के लिए कंडीशंस रिवाइज्ड. इसका मतलब पूरे का पूरा जो प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस है उन्हें पूरे का पूरा अपसाइड डाउन चेंज किया है. दैट इज द रीजन आई सेड दैट दिस सेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. चलिए नाउ लेट्स डिस्कस each and every sector one by one. सबसे पहले we talk about the first point. We'll talk about the limits. सबसे पहले we'll talk about the limits. I just remove the, yes, I think now the entire screen is visible to you. तो अगर हम बात करते हैं, I hope this is visible, domestic commercial banks. Domestic commercial bank means I'm talking about SBI, I'm talking about ICICI, I'm talking about PNB, I'm talking about IDFC, private banks, foreign banks, private banks and public sector banks और उसके साथ साथ foreign banks. सबके लिए जो लिमिट है वो लिमिट कितनी है प्रायोरिटी सेक्टर की? सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की लिमिट है 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और COBSE whichever is more. ठीक है जी, ये 40% है. यानी कि अगर आपके बैंक का ANBC 100 है, so out of 100 40 rupees will be given to the priority sector or 40 rupees will be lended to the priority sector. In case of foreign bank with branches, less than 20, again the limit is 40% only. The limit is 40% only, but there is a point out of which up to 32% can be in the form of export credit and not less than 8% can be in the other priority sector. So इसका मतलब ये है कि जो आपका फॉरेन बैंक है जिसकी ब्रांचेस 20 से कम है वो अपने 40% में से अप टू 32% का जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है वो एक ही कैटेगरी में एक ही सेक्टर में दे सकता है, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट. लेकिन अगर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक्स की, तो सर रीजनल रूरल बैंक्स के लिए दिस लिमिट इज 75%. रीजनल रूरल बैंक्स के लिए दिस लिमिट इज 75% एंड सेम इज द लिमिट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक. सेम इज द लिमिट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक. रिमेंबर दिस. द नेक्स्ट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज, जो आपको यहां पर याद रखना होगा, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट. आई जस्ट चेक क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है. हाँ, इट्स विजिबल, इट्स फाइन, ठीक है. तो अगर हम बात करें 40% की, तो 40% को आगे भी डिवाइड किया गया, जो मैं आपको बता देता हूं. ध्यान से सुनिएगा, यहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है काफी स्टूडेंट्स को. तो जैसा कि मैंने कहा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और उसके साथ साथ मैंने कहा प्राइवेट बैंक्स, और उसके साथ साथ मैंने कहा फॉरेन बैंक्स विद ब्रांचेस ग्रेटर देन 20. इनकी प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट कितना है? So the priority sector limit is 40%.
प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट इज 40%। इस 40% में 18% कहां जाएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा। ध्यान से देखो 18% कहां जाएगा सर? 18% विल गो इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद जो बचा दैट इज 7.5%। सर 7.5% जाएगा कहां? एमएसएमई में, फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और उसके बाद बचा दैट इज 12%, वो जाएगा कहां सर? दैट इज फॉर द वीकर सेक्शन, दैट इज फॉर द वीकर सेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें एक्चुअली में ये जो मैंने लिखा इसको ज्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, उन्हें ये नहीं पता चलता कि 18% 17% किसका है। तो याद रखना जरा, अब इसको अगली बार जब भी कभी पढ़ो पूरे लाइफ लॉन्ग हमेशा ऐसे पढ़ना। ये जो 40% है, इस 40% को ऐसे डिवाइड किया मैंने। 40% में लिखा 18%, 18% के साथ मैंने लिखा 12%, 18% के साथ मैंने लिखा 12%, और 12% के साथ मैं लिखूंगा 7.5%, 7.5%। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना हुआ? 18 प्लस 12 इज 30, 30 प्लस 7.5 इज 37.5 एंड द लेफ्ट आउट इज 2.5%। अब ये जाएगा कहां सर? ये जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये जाएगा वीकर सेक्शन में, ये जाएगा एमएसएमई में, और बाकी जो बचा है दैट इज इन दी अदर लेफ्ट आउट सेक्टर्स। जो भी सेक्टर्स बचे, एजुकेशन, होम लोन, वो सब इसमें चलेगा। ठीक है, अब इतना ही नहीं, ये जो 18% है एग्रीकल्चर वाला, इसको भी ध्यान से देख लो। ये जो 18% है एग्रीकल्चर वाला, इसके लिए भी ध्यान से देख लेना। ये जो 18% है एग्रीकल्चर का, इसमें भी एक कंडीशन रख दी गई जो पहले नहीं थी। अब मैं कुछ चीज नई इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो पहले नहीं थी, वो है 14%। 14% किसमें जाएगा? नॉन कमर्शियल। अगर आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा था दैट इज नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, दैट इज नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स। तो जो हमारे नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं, उन नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को जाएगा 14%, और बाकी का बचा कितना? 4%। वो बाकी के फार्मर्स को, या आप ये कह लो कि वो कॉर्पोरेट फार्मर्स को जा सकता है। अब ये कह लो कि वो बाकी का कहां जा सकता है? कॉर्पोरेट फार्मर्स को जा सकता है। ये कंडीशन नहीं है, इट इज नॉट अ कंडीशन, इट इज नॉट अ कंडीशन, इट्स जस्ट अनुमान। एक तरह से आप ये समझो कि आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं कॉर्पोरेट फार्मर्स, लेकिन यहां लिखना जरूरी नहीं है। देयर इज नो कंडीशन एज सच। ठीक है जी, मैं हटा देता हूं ताकि कुछ गलत मैसेज ना जाए, कल को आप कहो कमेंट सेक्शन में गलत पढ़ा दिया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अगला पॉइंट और ध्यान से सुनो, वो और इंपॉर्टेंट है, जो फिर से आप मिस कर जाते हैं। वो क्या? ये जो आपने लिखा ना सर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, ये नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स पे जो आपकी लिमिट है वो कितनी है सर? 14% है। अब इस 14% में भी 10% प्लस 4%, ये जो 10% है ये किसको दे जाएगा सर? ये जाएगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो 18 जो था वो था 14 प्लस 4 इज 18, तो 40% किसका? ए एंड बी सी का। 18% किसका? ए एंड बी सी का। 12% किसका? ए एंड बी सी का। 7.5% ए एंड बी सी का। 2.5% ए एंड बी सी का। ये जो 18% है, इस 18 में से 14 प्लस 4 किया, 14% किसके लिए गया? नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, जो कि पहले कंडीशन नहीं थी। दिस इज समथिंग न्यू। ये वो कंडीशन है जो कुछ नई है, कुछ न्यू कंडीशन है। तो इस कंडीशन को आप जरूर याद रखिएगा। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर कि सर जो नया टर्म आया दैट इज नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, जिसकी डेफिनेशन दी गई, उसके ऊपर जो लिमिट है वो कितनी है सर? दैट इज 14%। अब वो जो 14% है नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स में कौन कौन है सर? नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स में हमारे इंडिविजुअल फार्मर्स है, उसके साथ साथ इंडिविजुअल फार्मर्स के साथ साथ अगर आपको याद हो डेफिनेशन, तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, जिसमें हमारे पास कौन कौन है सर? इंडिविजुअल फार्मर्स है, इंडिविजुअल फार्मर्स के साथ साथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उसके साथ साथ हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स है, और ये जो स्मॉल इंडिविजुअल फार्मर है, यहां पे मैं लिख देता हूं फर्म्स। इंडिविजुअल फार्मर की जो फर्म्स है दैट इज ऑल्सो दी पार्ट। तो यही 3 कैटेगरीज थी, 1, 2, 3।
तो ये जो 1 2 3 कैटेगरी है उसको टोटल कितना मिलना है 14, लेकिन उस 14 में से 10% सिर्फ किसको मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग अलोन टू व्हाट, सो दैट इज गोइंग अलोन टू SMF, दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आई गेस इससे ज्यादा क्लियरली ना कोई समझा सकता है ना, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आई कैन से आपको समझ आएगा भी नहीं, आई कैन जस्ट से कि अब आपको समझ आएगा भी नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहां पर ये न्यू एडिशन है, 14% इज प्रिस्क्राइब फॉर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, यहां पर भी 14% है और यहां पर भी 14% है। द लिमिट्स आर ऑल्सो सेम। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की लिमिट्स की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो लिमिट है दैट इज 18% for these banks, it is 18%, for RRBs it is 18%, for small finance banks। ठीक है जी, उसके बाद 7.5% is same, 7.5% is same, और आखिरी में अगर हम बात करें वीकर सेक्शन की तो यहां वीकर सेक्शन पर लिमिट है 12%, लेकिन आरआरबीज के लिए यहां पर एक डिफरेंस आया। आरआरबी के लिए क्या डिफरेंस है, वीकर सेक्शन के लिए जो लिमिट है वो 15% है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में इट इज अगेन 12%, इट इज अगेन 12%। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये कहानी है, पहले जो टारगेट्स ओवर द पीरियड रिवाइज हुए 2023-24 तक 10% हो गया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर और 12% हो गया फॉर द वीकर सेक्शन। ठीक है, फिर बात आई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर लिमिट रखी गई कि सर 2019-20 में आपके ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट होगी 40%, फिर उसे रिवाइज किया गया 45, फिर 50, फिर 60 और फिर 2023-24 में कितना किया गया 60। इतने में आरबीआई की एक नॉर्म आई, उसमें यह भी कहा गया कि 7.5% होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए और 12% होगा किसके लिए, आपके वीकर सेक्शन के लिए। लेकिन ध्यान से देखना ये ओल्ड है, दिस इज ओल्ड विच हैज बीन रिमूव्ड नाउ। तो इसमें क्या रिवीजन आया था या इसमें क्या आरबीआई ने टारगेट दिया था कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं they will be providing 60% of ANBC by 31st March 2024 under priority sector। फिर 2025 में ये हो जाएगा 65 और 2026 में ये बढ़कर कितना हो जाएगा 75%। ये टारगेट आरबीआई ने ही सेट किया था, these targets were given by RBI only। लेकिन इस बार इन टारगेट्स को कैंसल आउट कर दिया। तो आप समझ लो, मैं यहां लिख देता हूं रिमूव्ड, These targets have been removed, और इनको रिमूव करके जो नए टारगेट्स दिए गए हैं, जो अपडेटेड टारगेट दिए गए हैं किसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, वो क्या कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे विल बी प्रोवाइडिंग टोटल लोन कितना 60% ऑफ एएनबीसी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, ना कि 75%। और वो लिमिट वो ऑलरेडी 2023-24 में अचीव कर चुके हैं। ये देखो वो लिमिट वो ऑलरेडी बैंक्स 23-24 में अचीव कर चुके हैं। और वीकर सेक्शन के लिए द लिमिट इज गोइंग टू बी 12%, सेम एज दैट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, सेम एज दैट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। लेकिन आरआरबी के केस में यहां पर ये कितना है लिमिट फॉर वीकर सेक्शन, दैट इज 15%। यहां पे लिख देता हूं दिस इज फॉर आरआरबीज। ये जानबूझ के साथ में बता रहा हूं ताकि चीजें आप याद रख पाए, चीजों को आप फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सके। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? समझ आया यहां तक? कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो। याद रखना इस पर्टिकुलर सेशन से फॉर श्योर 2 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 2 या 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और अगर मैं कहूं ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इसमें पोटेंशियल है कि यहां से क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी पूछे जाए, यहां से क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो सेशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू एंजॉयिंग गाइस? शैल आई मूव अहेड? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। शैल आई मूव अहेड? जस्ट गिव मी यस सर, जस्ट गिव मी यस सर इफ यू वांट मी टू मूव अहेड। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो क्या, सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है। उसमें वो टर्म्स क्या है सर? एक टर्म का नाम दिया गया क्या, दैट इज नोन एज एक टर्म का नाम दिया गया दैट इज
वी कॉल इट एज हाई। अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्ट्रिक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। रीजनल डिस्पैरिटीज थी इन द फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उसके बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट को रैंक किया गया, और पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो जो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है उसके बेसिस पर इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स को डिसाइड किया गया। तो यहां पर क्या किया गया, 2024-25 के लिए हायर वेट यानी 125% के वेट्स को सेट किया गया, असाइन टू द इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द क्रेडिट फ्लो इज कंपैरेटिवली लो। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लो है, और वो टारगेट क्या है सर, इफ द प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर इंडिविजुअल या पर कैपिटा, प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कैपिटा इज बिलो, प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कैपिटा इज बिलो 9,000, तो उसे हम कहेंगे लोअर कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट। और अगर प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कैपिटा इज आई वुड से above, it is above or it is around, or I would say it is greater than 42,000, it is greater than 42,000, it will be termed as what sir, it will be termed as higher priority sector lending district। तो यहां पर लोअर, जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर कैपिटा लो है वहां पे वेटेज कितनी कर दी 125%, और जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर कैपिटा हाई है तो वहां पर जो वेटेज है उसको कितना कर दिया 90%। तो ये 90%, 125%, ये दोनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इन दोनों टर्म से पूछा जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे बढ़े। अब एक एक करके हम सेक्टर वाइज जो भी चेंजेस हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कहा जाता है, द लेंडिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्लूड फार्म क्रेडिट। इसमें विल इंक्लूड फार्म क्रेडिट जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। तो अगर मैं फार्म क्रेडिट की बात करूं, ये वो कैटेगरी है जिसमें वी इंक्लूड व्हाट सो, वी इंक्लूड लोन टू द इंडिविजुअल फार्मर्स, जिसमें वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वी हैव जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, we have group of individual farmers as well as proprietorship firms of farmers directly engaged in the agriculture sector। अब इसमें जो लोन है वो दिया जाएगा किसके लिए, क्रॉप लोन इंक्लूडिंग लोन फॉर ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज। उसके साथ साथ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, लोन फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, स्टोरेज के लिए लोन दिया जाएगा। टू द डिस्ट्रेस फार्मर लोन दिया जाएगा उस फार्मर को जो कि डिस्ट्रेस में है। इन टू दी नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स लोन दिए जाएंगे अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। अब यहां पर जो चेंज हुआ वो समझ लो। यहां पर चेंज क्या हुआ, जैसे ही कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के बाद यू हार्वेस्ट योर क्रॉप एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप यू सेल द क्रॉप, है ना, बेचोगे क्रॉप को। अब हो सकता है कि फार्मर इज नॉट इन अ पोजीशन टू सेल द क्रॉप राइट अवे, बट फार्मर इज इन द नीड ऑफ फंड्स राइट अवे। तो उस केस में व्हाट विल फार्मर डू, सो फार्मर विल सेव और स्टोर इट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विद द वेयरहाउसेस, एंड against that stored agriculture produce farmer is allowed to borrow the loan under the priority sector category। अब यहां पर दो तरह के वेयर हाउसेज होते हैं। द फर्स्ट वेयर हाउस वी कॉल इट एज रजिस्टर्ड वेयर हाउस, वी कॉल इट एज रजिस्टर्ड वेयर हाउस। एंड इन केस ऑफ रजिस्टर्ड वेयर हाउस, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड वेयर हाउस यू गेट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, यानी कि आपने अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो आपने वेयर हाउस में स्टोर किया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ्स, और जैसे आपने वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउस में रखा, जैसे आपने वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउस में रखा, तो वेयर हाउस जो है, जो रजिस्टर्ड वेयर हाउस है, उसके बदले में इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू नेगोशिएटेड, इट विल गिव यू नेगोशिएटेबल, इट विल गिव यू नेगोशिएटेबल वेयर हाउस रिसीट। ये जो नेगोशिएटेबल वेयर हाउस रिसीट है, ये जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, इस नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट, इस नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट नाउ यू कैन बोरो अ लोन अप टू 90 lakhs, यू कैन बोरो अ लोन अप टू 90 lakhs। और अगर आपने किसी ऐसे वेयर हाउस में रखा है जो कि नॉन रजिस्टर्ड है,
जो आपको नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट नहीं दे सकता, बस उसने आपको सिर्फ वेयरहाउस रिसीट दी है, तो उस वेयरहाउस रिसीट के बदले में जो लोन है वो आप कितने का ले सकते हैं, 60 लाख का। इसका मतलब आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, इट इज इटसेल्फ व्हाट, सो इट इज इटसेल्फ एन एसेट which can be used as a collateral to borrow the loan. A bank is not in a position to store the agriculture produce on the behalf of the farmers. So what bank do? So bank asks the farmers that you just drop your or store your agriculture produce with the warehouse, ask them to give you the warehouse receipts, and against those warehouse receipt will give you the loan, and even this loan will be provided in the priority sector lending. Earlier the limit was 75 lakh rupees against registered warehouse receipt, which has now increased to 90 lakhs, and under the unregistered warehouse receipt it was earlier 50 lakhs. Now the limit of loan has been increased to 60 lakhs. तो ये चेंज हुआ है, प्लीज मार्केट। अब अगली बार अगर आपसे कोई पूछेगा नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स क्या होते हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दीज क्वेश्चन टू द एग्जामिनर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट आता है, दैट इज फार्म क्रेडिट, लेकिन किसके लिए, कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए। तो अगर आपको याद हो तो आई जस्ट गिवन यू द आंसर फॉर इंडिविजुअल फार्मर्स वी कॉल इट एज नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, द लिमिट इज 14%, or the target is 14%, and now rest will be obviously given to corporate farmers या farmer producer organizations या companies of individual farmers या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म्स। वहां पे प्रॉपर्टायरशिप फर्म्स थी, यहां है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स या कॉपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स जो कि एंगेज हैं इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। सो लोन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज, अगर आपको क्रॉप लोन चाहिए, मीडियम या लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन चाहिए, या लोन आपको चाहिए फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज एज अ कॉर्पोरेट फार्मर, अर्लियर द लिमिट वाज 2 करोड़। अर्लियर जो लिमिट थी वो कितनी थी, 2 करोड़, लेकिन अब लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी, 4 करोड़, लेकिन अब लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी, दैट इज 4 करोड़। तो 2 करोड़ से लिमिट को बढ़ाकर पर एंटिटी के लिए कितना कर दिया, 4 करोड़ कर दिया। और इन 3 कंडीशन के तहत पहले कॉर्पोरेट फार्मर्स दे वर eligible to borrow a loan of 2 CR, but now they are eligible to borrow a loan of 4 CR. Clear guys? Is it clear? So I hope what is the meaning or what all areas we are discussing, it is crystal clear. Moving to the next point. The next point is, sir, in case of corporate farmers. Now, if we have a corporate farmer, एक corporate farmer है या एक farmer की company है या फिर farmer producer organization है, अब भैया ये लोग भी क्या कर रहे हैं, they are also cultivating, they are also producing agriculture produce. तो अपने agriculture produce को harvest करने के बाद, after harvesting, they can also store their agriculture produce with the warehouse. They can also store their agriculture produce with the warehouse, and against the storage, against this agriculture produce storage, warehouse will issue negotiable warehouse receipt. Earlier जो लोन वैल्यू थी, earlier जो लोन लिमिट थी फॉर कॉर्पोरेट फार्मर्स वो सेम थी एज दैट ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स। तो जितनी लिमिट इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए थी, कितनी, 75 लाख, उतनी ही लिमिट किसके लिए थी, कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए। लेकिन ये तो टेक्निकली गलत है। अब अगर ये टेक्निकली गलत है तो आरबीआई ने अपनी गलती को चेंज किया, या आप जो भी कहें कि जो भी इशू था उसे रिजॉल्व किया, और अब इसे 75 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, सो दिस हैज बीन इंक्रीज टू 4 CR। और अगर हम कहें अनरजिस्टर्ड वेयरहाउस है जहां पे लिमिट 50 लाख थी इंडिविजुअल फार्मर के लिए, कॉर्पोरेट फार्मर के लिए, लेकिन अब इंडिविजुअल फार्मर के लिए बढ़ाकर 60 लाख कर दिया और कॉर्पोरेट फार्मर के लिए बढ़ाकर कितना कर दिया, 2.5 करोड़। कॉर्पोरेट फार्मर के लिए इसी लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया, 2.5 करोड़। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है कि सर लोन अप टू 10 CR पर बोरोइंग एंटिटी टू FPOs and FPCs undertaking farming with assured marketing of their produce। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है assured, ध्यान से देखना, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है दैट इज assured marketing of their produce। assured marketing of their produce का मतलब क्या, मान लो मेरे पास आई एम अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर आई एम अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी,
एंड आई हैव अ लैंड, उस लैंड पे आई एम हार्वेस्टिंग टोमेटो, आई एम गोइंग टू कल्टीवेट टोमेटो, और इस टोमेटो को मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी डन द डील विद लेट्स से मैगी, आई हैव ऑलरेडी डन द डील विद मैगी, एंड मैगी हैज finalize that the price as well as the quantity they are going to purchase for their मैगी केचप। तो मैगी को केचप बनानी है, मतलब नेस्ले को केचप बनानी है, तो उन्होंने मेरे साथ ऑलरेडी डील कर ली है, प्राइस हमारा ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, और ये भी डिसाइड हो चुका है कि आई विल बी सेलिंग माई एंटायर प्रोड्यूस टू देम। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस, कि आपके प्रोड्यूस का पहले से मार्केटिंग हो चुका है, उसका प्राइस पहले से प्री डिटरमाइंड है, तो उस केस में यू आर एलिजिबल टू बोरो लोन अप टू 10 करोड़, जिसकी पहले लिमिट कितनी थी, 5 करोड़। अर्लियर द लिमिट वाज 5 करोड़, नाउ द सेम लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 10 करोड़। समझ आया? उसके बाद ये एक नया पॉइंट ऐड किया गया, दिस इज न्यू एडिशन आई वुड से। So this is the new edition. What does it say? So loan up to 10 crores for the purchase of produce of members directly engaged in agriculture and allied activities. तो अगर हम बात करें लोन्स की, तो आपको अब लोन मिलेगा अप टू 10 करोड़ का। कब? अगर आप परचेज करते हैं क्या, फॉर द परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या अलाइड एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं, अगर आप उनके प्रोड्यूस को खरीदना चाहते हैं, फॉर परचेजिंग दैट प्रोड्यूस यू कैन बोरो अ लोन फ्रॉम द बैंक अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसकी लिमिट 10 करोड़ कर दी, जिसकी पहले लिमिट कितनी थी, दैट इज 5 CR। और पहले ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो था, इट वाज इंक्लूडेड अंडर एंसिलरी एक्टिविटीज। डोंट वरी, आई विल डिस्कस द एंसिलरी एक्टिविटीज एज वेल। अगला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लिमिट है दैट इज अप टू 100 करोड़ पर बोरोवर, कुछ चेंज नहीं हुआ। मैंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशंस भी दे दी हैं, जरूर पीडीएफ में से पढ़िएगा। मैं आगे बढ़ूंगा। एंसिलरी एक्टिविटीज की बात करें तो लोन सेटिंग अप फॉर एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनेस centers, loan to custom service units managed by individuals, institutions, whatnot, loans to primary agriculture credit societies, loan sanctioned by banks to MFIs, they all are the part of ancillary services। तो ancillary services में दो चीजें ऐड की गई हैं। पहला पॉइंट क्या ऐड किया गया है सर, एक्सपोर्ट क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड। तो इसका मतलब अगर आपने लोन दिया किसको, मान लो एक फार्मर है, द फार्मर इज प्रोड्यूसिंग द एग्रीकल्चर गुड्स एंड द प्रोड्यूस एग्रीकल्चर गुड इज एक्सपोर्टेड टू यूएस। सो इफ द फार्मर इज इन अ नीड ऑफ लोन बिफोर export or after export, then also you can borrow the loan under the category of priority sector lending। but वो loan आपको कौन से कैटेगरी में मिलेगा, under which sub category? sir it will be given under sub category of agriculture only, it won't be included under the sub category of export credit। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट में नहीं आएगा, ये एग्रीकल्चर क्रेडिट में ही गिना जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि अगर बैंक अपनी लिमिट्स को फुलफिल नहीं कर पाता, व्हाट इज द लिमिट? सो द लिमिट इज 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, या फिर 18% ऑफ ANBC टू एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर बैंक ने 18% का टारगेट फुलफिल नहीं किया, इन दैट पर्टिकुलर केस जो शॉर्टफॉल है, जितना पैसा शॉर्टफॉल हुआ है, वो शॉर्टफॉल क्या होगा, बैंक से ले लिया जाएगा। बैंक से RBI वो पैसा लेगा, या बैंक खुद उस पैसे को डिपॉजिट करेगा, कहां, नाबार्ड में। और नाबार्ड में कहां से, नाबार्ड का एक अकाउंट है दैट इज नोन एज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। तो यहां पे बहुत क्लियरली अब मेंशन कर दिया कि भैया अगर आपने एग्रीकल्चर की लिमिट को फुलफिल नहीं किया, तो जो आपका शॉर्टफॉल अमाउंट है, यानी 18% आपके टारगेट था, आपने सिर्फ 16% लोन दिया, जो बचा हुआ 2% है, द लेफ्ट आउट 2%, दैट 2% ऑफ shortfall in the sense that it was supposed to be given on loan under the priority sector, but if you fail to do that, then this 2% will be credited into RIDF, that is Rural Infrastructure Development Fund, which is maintained by NABARD। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट। सो दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के बाद अगला जो पॉइंट आया रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज मार्जिनल फार्मर, व्हाट इज स्मॉल फार्मर, सारी बातें कर चुके हैं। अब वो देख लेते हैं जो चेंज हुआ है।
तो यहां पर चेंज क्या हुआ, लोन अप टू 2.5 लाख जिसकी पहले लिमिट 2 लाख थी, टू इंडिविजुअल सोनली एंगेज इन एलाइड एक्टिविटीज विदाउट एनी अकम्पनिंग लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया। तो अगर कोई फार्मर जिसके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं है और अगर वो एलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो पहले एलाइड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बैंक वाज giving loan of 2 lakh rupees under priority sector, but now the loan value has increased from 2 lakhs to 2.5 lakhs for the landless farmers. For what purpose? So for the purpose of allied activities, the limit has been increased from 2 lakhs to 2.5 lakhs. डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहां से, तो मैं उन्हीं चीजों को ऑलरेडी हाईलाइट करके लाया हूं ताकि आप इजीली रिवाइज कर पाए। अब उसके बाद बैंक प्रोवाइड लोन टू एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो रिक्वायर्ड चेंज है विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें आप पहली बात तो ये समझो, ऑल द लेंडिंग डन बाय बैंक to the micro, small and medium enterprises without any limit, without any criteria will be included under the category of priority sector lending. इसमें कोई लिमिट, कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल। अब इसमें यह भी है कि अगर बैंक डायरेक्टली लोन दे रहा है, if bank is given direct loan to the MSMEs, that will be under the category of priority sector lending. Even अगर बैंक ये लोन MSMEs तक पहुंचा रहा है with the help of NBFCs, with the help of microfinance institutes, then also this lending will be termed as what? So then also this lending will be termed as priority sector lending, or it will be included under the category of priority sector lending for the bank. So loan to the registered NBFCs other than MFIs, सिर्फ और सिर्फ जो registered NBFCs हैं, MFIs नहीं है, for on lending to micro and small enterprises up to 20 lakh borrowers will be included under the category of priority sector lending. तो इसका मतलब as a bank, if you are giving loan to the NBFCs and that to up to 20 lakh per borrower, but you are not giving loan directly, you are giving loan through NBFC, that will also be calculated, that will also be added under the category of bank's priority sector lending. आपने बहुत बार न्यूज सुनी होगी, you must have read कि फलाने बैंक ने फलाने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया in order to increase its credit facility, in order to increase its credit services. You might have doubted that time कि इतने बड़े बैंक को NBFC की आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई to distribute the credit. The reason is not distributing credit, the reason is distributing specific credit so that bank can reach its limits specifically related to priority sector lending. उसके बाद if I talk about export credit, in case of export credit there is a change, and the change is for domestic banks, incremental export credit over corresponding date of the preceding year up to 2% of ANBC. So what is the limit? So up to 2% of ANBC should be given for export credit, but there is an upper limit. Upper limit was earlier 40 crores, but now this upper limit of 40 crores has been increased to 50 crores. यानी कि अगर आप एक export credit provide कर रहे हैं as a bank, your limit is 2% of NDTL, sorry 2% of ANBC, 2% of ANBC or 50 crore, 2% of ANBC or 50 crore, whichever is high. तो इसका मतलब अगर whichever is low, तो अगर आपका 50 करोड़ हो गया, ये 2% of ANBC is 100 crores, then in that particular case you are allowed to give only 50 crores. लेकिन ये जो 50 करोड़ वाला लिमिट है ना, ये पहले कितना था? It was earlier 40 crores, so it has been increased. So remember this has been the change witnessed in the case of export credit. Now moving on to the very important part, education and housing. यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर हम बात करें एजुकेशन की, so if you want to borrow loan under priority sector for education, the limit is 20 lakhs. But now the limit has been increased to 25 lakhs. तो पहले ये जो लिमिट थी, सर ये पहले लिमिट कितनी थी? सर ये पहले लिमिट थी 25 लाख, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया? 20 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 लाख. दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर एजुकेशन. अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात करें,
तो हाउसिंग सेक्टर के केस में क्या था और अब क्या हो गया है, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं, ध्यान से देखना। अगर आप हाउसिंग सेक्टर की बात करें ना, तो हाउसिंग सेक्टर में जो लोन वैल्यू थी वो डिपेंड करती थी आपके लोकेशन पे, वो डिपेंड करती थी लोकेशन पर। पहले क्या था, अगर आपकी लोकेशन मेट्रो सिटी है यानी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख है, अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख है, दूसरा कंडीशन था पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, पॉपुलेशन बिलो 10 लाख, ठीक है, ये क्राइटेरिया था। अब उस क्राइटेरिया में भी जो आपका होम लोन का लिमिट था, वो होम लोन का लिमिट कितना था सर, यहां पर लिमिट था 35 लाख, और यहां पर जो होम लोन की लिमिट थी सर दैट वाज 25 लाख। कंडीशन ये थी कि जो आपकी टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट है, कंडीशन ये थी कि जो आपकी टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए सर, यहां टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट होनी चाहिए थी 45 लाख, यहां टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट होनी चाहिए थी 30 लाख। अब आया ट्विस्ट, अब आरबीआई ने कर दिया भैया इसको चेंज। अब आरबीआई क्या कहता है, सर ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब इतने में क्या आएगा। दिल्ली में अगर आप पॉपुलेशन में अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं, 45 लाख का घर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उस केस में अब इसको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया। अब वो दो कैटेगरीज में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया, सब पॉपुलेशन अगर 50 लाख से ज्यादा है तो एक लोकेशन, पॉपुलेशन अगर 50 लाख से ज्यादा है एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन है पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख है, और दूसरा है जो आपकी पॉपुलेशन कितनी है अप टू 10 लाख, पॉपुलेशन कितनी है अप टू 10 लाख। और यहां पर अब किए गए चेंजेस, यहां पर अब किए गए चेंजेस अगर आप ध्यान से देखें तो ये चेंजेस क्या कर दिए सर, ये कर दिया 35 लाख, प्रॉपर्टी कॉस्ट कितना कर दिया 44 लाख। आगे अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे तो सर इसे बढ़ाकर कर दिया 45 और इसे बढ़ाकर कर दिया 50, और अगर मैं प्रॉपर्टी कॉस्ट की बात करूं तो प्रॉपर्टी कॉस्ट कितना है सर, इसे कर दिया 63 लाख और इसे कर दिया 57 लाख। तो ये प्रॉपर्टी कॉस्ट, ये लोन, ये प्रॉपर्टी कॉस्ट, ये लोन। बोलो समझ आया, अरे समझ आया। तो ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, यू हैव टू रिमेंबर दीज फिगर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दीज फिगर्स इटसेल्फ, डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दीज फिगर्स इटसेल्फ। ठीक है जी, आई गेस क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए अब इतना ही नहीं, हाउसिंग लोन में एक और रिवीजन किया गया दैट इज रिलेटेड टू रिपेयर। पहले रिपेयर के लिए सिंपल फंडा था, रिपेयर के लिए फंडा क्या था, अगर मैं रिपेयर वाला भी यहां लिखूं, मान लो यहां लिख देता हूं, अगर मैं रिपेयर वाला भी यहीं एडजस्ट कर दूं, तो पहले रिपेयर के लिए क्या था कि सर आपको अप टू 10 लाख का लोन मिलेगा रिपेयर के लिए, और यहां लोन मिलेगा 6 लाख का, यहां लोन मिलेगा 6 लाख का। लेकिन अब कहानी यहां भी बदल दी, रिपेयर की कहानी भी चेंज हो गई। अब अगर आप रिपेयर की कहानी को चेंज करेंगे तो रिपेयर की कहानी कैसी हुई है, तो ध्यान से देखना सर। अगर आप बात करते हैं अदर सेंटर्स की जहां पे पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है, जहां पे पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है, तो वहां पर रिपेयर के लिए 10 लाख अलाउ कर दिया, 10 लाख का अलाउ कर दिया। यहां 12 लाख अलाउड है और यहां 15 लाख अलाउड है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसा कहीं लिखा मिलेगा नहीं, और यहीं से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जामिनेशन में आएगा। डू टेक द स्क्रीनशॉट फॉर रिलेटेड टू योर हाउसिंग लोन। तो ये आपकी लिमिट्स चेंज हुई है फॉर व्हाट पर्पस, और फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर एज वेल। उसके बाद आया हमारा हाउसिंग। हाउसिंग में बस एक चीज है, ये पॉइंट को रिमूव कर दिया। अर्लियर दिस वाज अ पॉइंट व्हिच हैज बीन रिमूव्ड। बैंक लोन्स टू एचएफसीज फॉर ऑन लेंडिंग, तो इसके लिए अलग से ऑन लेंडिंग का क्लॉज बना दिया। सो इट इज सेपरेट नाउ, ऑन लेंडिंग क्लॉज सेम है बट रिमूव कर दिया यहां से, लेकिन सेपरेट क्लॉज बना दिया। इट्स नाउ अंडर अ सेपरेट क्लॉज। तो आप ये कहो कि है, रिमूव नहीं किया, बस आप ये समझो कि यहां से हटाकर दूसरी जगह पे रख दिया। ठीक है, अब आती है बात सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में कहानी कैसे होगी। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जब आप लोन लेते हैं बैंक से फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, पब्लिक टॉयलेट्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड व्हाट नॉट, तो उसके लिए जो आपकी लिमिट है that was 5 crores, but this limit has been now enhanced from 5 crores to 8 crores. इसे 5 से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया। लेकिन अगर आपको लोन चाहिए फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर सर्विसेज,
तो इफ यू आर बिल्डिंग एन हॉस्पिटल, तो इन दैट पर्टिकुलर केस प्रायर लिमिट वाज 10 करोड़। पहले जो लिमिट थी वो कितनी थी? 10 करोड़। अब इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया सर? 12 करोड़ कर दिया। अब इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया? 12। तो 5 से 8, 10 से 12, ये चेंज हुआ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, रिन्यूएबल एनर्जी के केस में जो पर कंपनी बोरोइंग लिमिट है वो 35 करोड़ कर दी, जो कि पहले कितनी थी? 30 करोड़। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डेफिनेशन है वो भी चेंज की गई है। पहले डेफिनेशन क्या कहती थी? सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स। अब क्या आ गया? फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज। अब आया ये नया, ये दिस इज द न्यू डेफिनेशन। ये है आपकी न्यू डेफिनेशन और ये है आपकी ओल्ड डेफिनेशन। ये आपकी ओल्ड डेफिनेशन। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? बैंक लोन्स अप टू 30 करोड़ फॉर सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स। तो इन सबको हिलाकर चेंज कर ये इन्होंने एक स्पेसिफिक बड़ी, एक कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डेफिनेशन दे दी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में 3 चीजें चेंज हुई है। पहली जो चीज हुई है वो क्या? ट्रांसजेंडर कैटेगरी को इंक्लूड कर लिया अंडर वीकर सेक्शन। मींस अ ट्रांसजेंडर इज एलिजिबल टू बोरो लोन अंडर द वीकर सेक्शन कैटेगरी। आर्टिजियन, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री इंडिविजुअल्स को पहले लोन दिया जाता था 1 लाख का, अब उस लोन की लिमिट को डबल कर दिया, 2 लाख कर दिया। इंडिविजुअल विमेन बेनिफिशरीज को अब अलाउ कर दिया दैट दे कैन बोरो अ लोन ऑफ 2 लाख रुपीस पर बोरोवर, जिसकी पहले लिमिट कितनी थी? द अर्लियर लिमिट वाज 1 लाख, लेकिन ये लिमिट आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 चेंजेस किए गए अंडर द कैटेगरी ऑफ वीकर सेक्शन। यू नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल। यू नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल। ठीक है जी। अब आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? सर हमने आज तक ये पढ़ा, जब भी कभी बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट्स को अचीव नहीं कर पाता, पूरा नहीं कर पाता, उस केस में क्या होगा? सर इफ बैंक इज नॉट इन अ पोजीशन टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट्स, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा? जो आपका शॉर्टफॉल है, जो आपकी शॉर्टफॉल अमाउंट है, उस शॉर्टफॉल अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे या तो नाबार्ड को, और ये डिपॉजिट होगा नाबार्ड के आरआईडीएफ में, ये डिपॉजिट होगा नाबार्ड के आरआईडीएफ में, या फिर इसे ट्रांसफर करेंगे टू सिडबी से या मुद्रा, अगर आपका जो शॉर्टफॉल है दैट इज रिलेटेड टू एमएसएमई। तो अगर एग्रीकल्चर शॉर्टफॉल है तो यहां आ जाएगा, एमएसएमई शॉर्टफॉल है तो यहां आ जाएगा। अब जो बैंक का पैसा, जो बैंक का शॉर्टफॉल अमाउंट थी, दैट हैज बीन डिपॉजिटेड विद NABARD or SEBI. In that case, NABARD or SEBI was responsible to pay rate of interest on that shortfall deposit. लेकिन हमेशा सेंटेंस क्या लिखा जाता था? हमेशा ये लिखा जाता था, इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RIDF or any other funds, tenure of deposit etc. shall be fixed by RBI time to time. कि भैया इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो RBI टाइम टू टाइम फिक्स करेगा। लेकिन इस बार रिवाइज कर दिया, इसे भी चेंज कर दिया। अब इसे चेंज करके क्या कर दिया? प्री डिसाइड कर दिया इंटरेस्ट रेट। वो प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट क्या है? वो ये है, प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट ये है, ध्यान से देखना। तो इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज प्री डिसाइडेड। कितना? अगर आपका शॉर्टफॉल 5% या उससे कम है, अगर आपका शॉर्टफॉल 5% या उससे कम है, फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर जो टारगेट है वो 40% का है और आपने जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अचीव किया दैट इज 36%, 36% यानी कि लेस देन 5%, 40 से 4% कम, उस केस में जो आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा? सर वो होगा बैंक रेट -2%। आजकल बैंक रेट कितना चल रहा है? कैन यू प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द बैंक रेट गोइंग ऑन? सो दैट विल बी बैंक रेट -2%। अब अगर ये 5 से ज्यादा 10 से कम यानी कि 32% है, 8% का शॉर्टफॉल है, तो उस केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कम मिलेगा। ऑब्वियसली क्यों कम मिलेगा? क्योंकि आपने शॉर्टफॉल ज्यादा की है, तो बैंक रेट -3%। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 29% अचीव किया आउट ऑफ 40, टारगेट कितना था? 40%, तो उस केस में जो आपके ऊपर चार्जेस होंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस केस में जो आपके ऊपर
इंटरेस्ट मिलेगा शॉर्टफॉल पे वो कितना मिलेगा, दैट विल बी बैंक रेट -4%। आई वाज आस्किंग यू व्हाट इज करंट बैंक रेट, कोई बता पाएगा? अरे भाई बैंक रेट कितना चल रहा है ये तो बता दो, पता होगा आपको। 6.5, 6.75, 6.25 कितना है बता दो जरा। आई श्योर 6.75 है या 6.5 है? परमेश्वर फरवरी 2025, सुदीप फरवरी 2025 रिवीजन की गई, वो रिवीजन शायद आप लोगों ने देखी नहीं, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहां पे बैंक रेट की वैल्यू पुट करके अपने इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर लेना। सो आई होप दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीचे लिखा है, शायद वो आप लोग मिस कर देंगे, तो मैं एक बार उसे भी बता देता हूं। वो पॉइंट क्या कहता है, वो पॉइंट भी देख लीजिए। वो पॉइंट कहता है कि सर ये तो है आपके सेक्टर, मतलब ओवरऑल, ये तो है आपकी ओवरऑल शॉर्टफॉल में। मान लो आपकी ओवरऑल शॉर्टफॉल नहीं है, 40% है, लेकिन आपने क्या किया, एग्रीकल्चर में दिया 16%, एग्रीकल्चर में दिया 16% और 14% दे दिया एमएसएमई में। 16 + 14 अगेन 30 तो है, वो 18 + 12 होना चाहिए था, लेकिन आपने 2% एग्रीकल्चर का कम करके किस में बढ़ा दिया, एमएसएमई में बढ़ा दिया। उस केस में क्या होगा सर, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ओवर पीएसएल टारगेट, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन द ओवरऑल टारगेट बट शॉर्टफॉल इन एनी सब टारगेट, अगर कोई सब टारगेट में शॉर्टफॉल होगा तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा सर, तो इंटरेस्ट रेट होगा बैंक रेट -2%। तो अगर आपकी सब टारगेट में शॉर्टफॉल होगी तो उस केस में जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल बी बैंक रेट -2%। अब इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार जरूर देखिएगा, और इसका जो एंटायर पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखिएगा, तब जाकर यू विल बी इन अ पोजीशन टू रिमेंबर द डेटा, और अगर ये डेटा याद रहा देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। बड़ा इजी क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस रिवाइज्ड रिसेंटली बाय आरबीआई। 600 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर 600 वर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये क्वेश्चन 600 वर्ड्स में आ गया तो क्या होगा? तो उस केस में सर इतना बड़ा जो आपने समझाया वो तो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो सर उसका कोई सॉल्यूशन दे दो। बिल्कुल, उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी लेकर आया हूं आपके लिए, और वो सॉल्यूशन ये है कि अगर इस पे आपके पास डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया जिसमें आरबीआई ये चेक करना चाह रहा है कि हाउ वेल यू आर विद योर क्रैमिंग पार्ट एंड लर्निंग पार्ट, तो उस केस में ये रही की हाइलाइट्स, पूरी की पूरी की हाइलाइट्स है। देखो, एजुकेशन 25%, याद है, सॉरी, एजुकेशन 25 लाख कर दिया 20 लाख से, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 5 करोड़ से 8 करोड़ कर दिया। अगर मैं बात करूं उसके अलावा रिन्यूएबल सेक्टर में 30 करोड़ से 35 करोड़ कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो टारगेट 75% था उसे 60% कर दिया। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज को अब लोन मिलेगा अप टू 2 लाख का, जिसकी पहले लिमिट 1 लाख थी। तो ये कुछ हाइलाइट्स मैंने दे दिए जिनको आप एक बार रेफर जरूर कर सकते हैं इन हाइलाइट्स को, जिससे आपको ओवरव्यू ऑफ दिस पूरे का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसका एक डिस्क्रिप्टिव आंसर आप बनाइएगा, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू वन इंपॉर्टेंट, और आई वुड से आई विल ऑल्सो गिव यू अ सैंपल आंसर ऑन द सेम क्वेश्चन। आई एम प्रीटी श्योर कि यहां से अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया देन वी शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। और इतनी डिटेल्ड पीडीएफ के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू विल बी आंसरिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। So the first point from where I'm going to start my discussion is a new circular has been presented by RBI related to RRBs, and this circular is specifically related to the term that is CAR, which we call it as capital adequacy ratio, or we call it as capital to risk weighted asset ratio. So before we move ahead, before we discuss the circular, we need to know that what is CAR or what is CRAR. First I'll give you a quick overview of this particular term, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे कि एक्चुअली क्या चेंजेस है जो आरआरबी के लिए आरबीआई ने अनाउंस किए, एंड हाउ दे आर गोइंग टू चेंज द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ आरआरबी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है जी, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर सबसे पहले पॉइंट पे मैं बढ़ूं
तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब होता है कैपिटल ऑफ द बैंक डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट ऑफ द बैंक। कैपिटल ऑफ द बैंक मींस जो पैसा बैंक यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज बैंक्स कैपिटल। एंड आरडब्ल्यूए इज व्हाट सर, इट इज बेसिकली सम ऑफ, ये क्या है आरडब्ल्यूए का मतलब सर, इसका मतलब है सम ऑफ रिस्क ऑन एवरी एसेट, sum of risk on every asset. Don't worry, I'll explain this term again the moment we will be moving ahead and we will be discussing the content. So don't worry, I've just set the stage so that you can understand that today we are talking about CAR. First of all, sir, ये जो norm दी गई है regarding RRB capital adequacy ratio, sir, it is given under section 35 of Banking Regulation Act 1949. अब मेरा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दोगे। माय क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज गाइस, हु इज द रेगुलेटर ऑफ आरआरबीज? आरआरबीज आर रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई और नाबार्ड? एनी आइडिया? एनी आइडिया? इफ इट्स आरबीआई, of course it's RBI because this master direction has been presented by RBI. और अगर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन प्रेजेंट कर रहा है तो इससे क्वाइट ऑब्वियस पॉइंट है कि अगर आरआरबी के रेगुलेशन की बात करें दैट इज डन बाय आरबीआई। तो सर फिर आरआरबीज के केस में व्हाट इज द लिंक ऑफ नाबार्ड, हाउ नाबार्ड इज लिंक्ड इन केस ऑफ रेगुलेशन ऑफ आरआरबीज? देन माय आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी सर, आरआरबीज का जो रेगुलेशन दैट इज डन बाय आरबीआई, लेकिन अगर हम बात करें सुपरविजन की, who is responsible for the supervision of RRBs, तो मेरा आंसर मेरा आंसर क्या होगा? then my answer to this particular question would be what कि सर supervision is done by NABARD। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर supervision is done by NABARD, but on the other side if I talk about the regulation, that is the authority responsible for framing rules and regulations, is RBI। moving on to the next point, सर ये जो नॉर्म्स है ऑन विच डेट दे विल बी इंप्लीमेंटेड और फ्रॉम विच डेट दे विल बी इंप्लीमेंटेड, सर दीज नॉर्म्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 2025। अगर आपको याद हो तो जो हमने लास्ट क्लास में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की नॉर्म्स पढ़ी थी, दे वर आल्सो ऑट टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st April 2025। दे वर आल्सो ऑट टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन 1st April 2025। और ये जो करंट नॉर्म्स है दे आर एप्लीकेबल ऑन ऑल द आरआरबीज, मींस किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना ये जो नॉर्म्स है दे आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन ऑल द आरआरबीज व्हिच आर इन्वॉल्वड, ऑन ऑल द आरआरबीज व्हिच आर इन्वॉल्वड और व्हिच आर ऑपरेटिंग इन द कंट्री। तो एक होमवर्क दे रहा हूं आप सबको, प्लीज गिव मी द आंसर, हाउ मेनी आरआरबीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया? फर्स्ट। सेकंड, गिव मी द नेम्स ऑफ 2 states where we don't have RRBs. So this is your homework. Please check it out and give me the answer in the comment section after this particular session, after this particular live video. Chalo. Moving on to the next point. So there are certain definitions जो कि दी गई है इस circular में. So the first definition which is given is that is known as credit risk. If someone asks me, so what do you understand by the word credit risk? तो मैं क्या आंसर दूं? Credit risk से पहले अगर मुझसे कोई पूछे what is risk, तो मैं उसका आंसर क्या दूं? रिस्क का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। रिस्क का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इन वेरी जनरल टर्म्स। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज रिस्क, बट अलोंग विद दैट इफ आवर एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन द एस्टिमेटेड रिटर्न, उसे भी हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट रिस्क। मतलब क्या सर? एक रिस्क तो वो है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, नुकसान होगा, दैट इज रिस्क। ये तो समझ आ रहा है, इट्स वेरी आई वुड से प्लेन आंसर है ना। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न मिलेगा 12% का, लेकिन एक्चुअली में जब थोड़ा टाइम हुआ तो मुझे समझ आया 12% मिलना मुश्किल है, शायद 9 या 8% का रिटर्न मिले। तो जो मेरा एक्चुअल रिटर्न है वो मेरे एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम हो गया। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिस्क। जहां पे कोई लॉस नहीं हुआ, जहां पे कोई लॉस नहीं हुआ, बस जो आपका पहला estimate of profit tha, that has been reduced, but it will also be termed as risk in case of your finance, in case of your financial transactions, in case of your financial understanding। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो अगला पॉइंट, क्रेडिट रिस्क क्या है सर? अब
रिस्क के बाद आया क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू गिव समवन लोन, तो जो पैसा आपने लोन पर दिया, अगर वो पैसा फ्यूचर में आपको वापस नहीं मिला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। सो व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? सो क्रेडिट रिस्क बेसिकली मींस पोटेंशियल दैट अ बैंक्स बोरोवर, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि जो बैंक का बोरोवर है या बैंक ने जिसको लोन दिया है मे फेल टू मीट या फिर डिक्रीज हो जाएगी इन द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बोरोवर और काउंटर पार्टीज। या तो आपने मीट ही नहीं की ऑब्लिगेशंस, दैट मींस यू हैव नॉट रीपेड बैक द लोन, या फिर द क्रेडिट कैपेसिटी, द रीपेइंग कैपेसिटी, द क्रेडिट क्वालिटी क्या हो, समय के साथ डिक्रीज हो जाए, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज क्रेडिट रिस्क। अब आप सोच रहे होंगे समय के साथ डिक्रीज हो जाए, कहना क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लोन दिया, आई एम अ बैंक, 10 साल का लोन दिया, 5 साल के बाद योर लोन इज अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड एज एनपीए। अब बीइंग अ बैंक आई अप्रोच्ड टू यू कि भैया क्या सीन है, आप लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हो, आपकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही है, 2 इंस्टॉलमेंट्स मिस हो चुकी है, अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी तो आपका लोन एनपीए में चला जाएगा। तो आगे से आपने मुझे कहा कि सर बिजनेस सही चल नहीं रहा, जिस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन लिया था, जहां से सोचा था रीपेमेंट करेंगे, लेकिन बिजनेस सही चल नहीं रहा तो रीपेमेंट करें कैसे? मैंने कहा डोंट वरी, वी हैव अ प्रोविजन, आई कैन रीस्ट्रक्चर योर लोन। मैं क्या करूंगा, आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर दूंगा, जिससे आपके लोन के टाइम पीरियड को मैंने बढ़ा दिया, हो सकता है मैं लेंडिंग रेट को भी कम कर दूं ताकि आपकी ईएमआई कम हो जाए एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू रीपे द लोन। इट्स वेरी सिंपल। सो दैट केस where your expected returns against credit you have given as decreased, that will also come under the category of credit risk, where there is a decrease in the credit quality of borrower or counterparties. Moving on to the second point. ये पॉइंट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पे आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज अगर ये पॉइंट अभी मिस हुआ देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन। क्या चल रहा है भाई? नाबार्ड ठीक है, बात करेंगे शशांक। चंडीगढ़ दिल्ली है क्या है वो मैंने आपको दे दिया होमवर्क, आप चेक कीजिएगा आराम से, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए बाद में आकर, और आपका जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, मैं इन बिटवीन द सेशन आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है? चलो आगे सुनना, अगले पॉइंट पे मैं बढ़ रहा हूं। अगला मेरा जो पॉइंट है दैट इज डेफर्ड टैक्स असेट्स या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अब मुझसे कोई पूछे इसका मतलब क्या, देखो अगर मैं कहूं तो ये डेफर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर। अगर मैं बड़ा सिंपल से पॉइंट में बहुत ही सरल भाषा में कहूं तो फ्यूचर। अगर मुझे कोई कहे व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट का मतलब वो पेमेंट जो मुझे फ्यूचर में करनी है, सिंपल, ठीक है ना, जो मुझे फ्यूचर में पे करना है या फ्यूचर में वो चीज मेरे सामने आएगी या फ्यूचर में मैं उसे हैंडल करूंगा, दैट इज डेफर्ड। और दूसरा क्या? असेट। असेट का मतलब क्या सर? मेरी संपत्ति। लायबिलिटी का मतलब क्या सर? मेरे ऊपर देनदारी, मेरे ऊपर देयता, मेरे ऊपर लायबिलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का मतलब क्या है? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कहना क्या चाहता हूं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। गाइस लेट्स सपोज आई एम रनिंग अ कंपनी, आई एम रनिंग अ कंपनी, और मैं जो कंपनी रन कर रहा हूं इन दैट पर्टिकुलर कंपनी आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पे रेगुलर टैक्स। ऐसा तो है नहीं कि आई विल बी पेइंग द टैक्स आफ्टर 1 ईयर। इवन अ कंपनी, इवन एन इंडिविजुअल, अगर मैं अपने इंडिविजुअल की बात करूं, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं, तो मेरे केस में अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय भी हूं तो मेरी जो सैलरी है उसका कुछ परसेंट मेरा जो एम्प्लॉयर है दैट इज डिडक्टिंग फ्रॉम माई सैलरी, वी कॉल इट एज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और फिर वो पैसा गवर्नमेंट को क्रेडिट किया जाता है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सर एक तरफ आपने कैलकुलेशन की, यू हैव अकाउंटेड योर टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है ना, कि आपको कितना टैक्स पे करना है। You have calculated your tax liabilities on the basis of your profit. I'm talking about company. But on the other side, this tax liability is accounted by tax department also. It is accounted by tax department also.
and at the time of income tax return, at the time of income tax return, your tax liability will be given by your tax department also. मतलब ये कि सर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में आपने क्या किया, आपने अपनी सैलरी का कुछ परसेंट, आपने अपनी सैलरी का कुछ परसेंट हर महीने क्या पे कर दिया, टीडीएस पे कर दिया, हर महीने क्या पे कर दिया, टीडीएस पे कर दिया। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, एक फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने पर यू विल बी विजिटिंग द इनकम टैक्स वेबसाइट, और उस इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर आप अपनी सारी डिटेल सबमिट करेंगे रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर अर्निंग्स, वो सारी की सारी डिटेल आपने सबमिट की, एंड उसके बाद योर टैक्स लायबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब हो सकता है कि जो टीडीएस आपने पे किया, जो टीडीएस आपने पे किया वो आपके टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है, या आप ये कहो कि आपके एक्चुअल टैक्स बर्डन से ज्यादा है, मतलब आप ऑलरेडी ज्यादा पे कर चुके हो, मतलब आप ऑलरेडी ज्यादा पे कर चुके हो। तो अगर आप ऑलरेडी ज्यादा पे कर चुके हो, दिस विल बी योर असेट बिकॉज यू विल बी गेटिंग इट बैक, दिस विल बी योर असेट बिकॉज यू विल बी रिसीविंग इट बैक ऑन द अदर साइड। अगर आपने जो टीडीएस पे किया that is less in comparison to the actual tax liability according to the tax department, according to the calculation, so in that particular case you have a liability कि भैया ये पैसा अभी आपको फ्यूचर में वापस करना, और उसी के बेसिस पर we calculate the term deferred tax asset and deferred tax liability. I'll explain you what I'm trying to say. It says that जो tax value calculation है ना, it is different as per your book, which we call it as book value taxation, and second we call it as tax department calculation. उन दोनों में डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस की वजह से या तो लायबिलिटी क्रिएट होती है या फिर असेट। इफ यू हैव ऑलरेडी पेड मोर टैक्स देन यू वर लायबल टू, तो पैसा आपको वापस मिलेगा, और जो आपको वापस मिलना दैट इज योर असेट। एंड इफ यू हैव पेड लेस टैक्स इन कंपैरिजन टू व्हाट you have to pay or what you were supposed to pay, then in near future जब financial year complete होगा, then in near future after completion of financial year you will be liable to pay the extra amount, so that will be liability. So how I explain it? I explain it in this manner that sir, this is the profit status. Book profit is higher than the taxable profit. Your book profit is higher than the taxable profit, which means you have paid less tax at present. अब ऐसा क्या हुआ सर, जो आपका बुक प्रॉफिट था दैट वाज हायर देन द टैक्सेबल प्रॉफिट, जो आपका बुक प्रॉफिट था दैट वाज हायर देन द टैक्सेबल प्रॉफिट। तो अगर आपका बुक प्रॉफिट ज्यादा था टैक्सेबल प्रॉफिट से, तो आज आपको क्या करना है, यू हैव टू पे लेस टैक्स, बट ऑलरेडी अगर हम बात करें फ्यूचर आउटकम में क्या होगा, यू विल बी पेइंग मोर टैक्स इन फ्यूचर। तो इसका मतलब आज आपने जो टैक्स पे किया वो कम है, क्योंकि आपका जो बुक प्रॉफिट है वो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा है। तो अगर आपका बुक प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, यू आर सपोज टू पे हायर टैक्स एंड यू हैव पेड अ लोअर टैक्स टुडे, सो यू विल बी लायबल टू पे द रेस्ट आउट अमाउंट इन द नियर फ्यूचर। उसे हम क्या कहेंगे, टैक्स लायबिलिटी। और अगर आपका बुक प्रॉफिट था ही कम, आपने ऑलरेडी आज ज्यादा टैक्स दे दिया, अब फ्यूचर में आपको कम टैक्स देना, या फिर फ्यूचर में आपको टैक्स देना नहीं बल्कि जो आपने पे किया वो आपको वापस मिलेगा, दैट इज नोन एज योर डिफर्ड टैक्स असेट। समझ आई ये बात? अगर नहीं समझ आई तो ये रहा फॉर्मूला, ध्यान से देखो। डिफर्ड टैक्स असेट क्या होगी, योर रिपोर्टेड इनकम टैक्स, कि भैया ये आपका रिपोर्ट किया गया इनकम टैक्स है, और ये आपका पेबल टैक्स है। ये आपका रिपोर्ट किया गया इनकम टैक्स है जो कि ज्यादा है, और वो आपका पेबल इनकम टैक्स है जो कि कम है। तो आपने ऑलरेडी जो पे कर दिया, विच यू हैव ऑलरेडी पेड, it is more than what you were actually liable to pay, so this is going to be your asset. और liability में कहें तो जो आपने पे करना था आपने उससे कम पे किया, so you will be paying more in the near future. That is basically termed as deferred tax assets and liability. तो क्वेश्चन ये है कि सर डेफिनेशन में बताया गया deferred tax asset and deferred tax liability पे बात की गई, तो अगर अगली बार आपसे कोई पूछे deferred tax asset कब होगा, deferred tax liability कब होगा, सर उसका आंसर क्या है, सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें, जब आपका रिपोर्टेड इनकम टैक्स ज्यादा होगा किससे, आपके इनकम टैक्स पेबल से, दैट विल बी असेट। एंड व्हेन जब आपका इनकम टैक्स पेबल ज्यादा होगा रिपोर्टेड इनकम टैक्स से, तो उस केस में क्या होगी, लायबिलिटी। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर?
पे ज्यादा करना है, रिपोर्ट कम किया, तो अब ज्यादा पे करोगे तो फ्यूचर में लायबिलिटी आ गई। सर पे कम करना था लेकिन रिपोर्ट ज्यादा कर लिया, रिपोर्ट ज्यादा करने का मतलब ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे ज्यादा टैक्स दे चुके हैं, तो फ्यूचर में जो ज्यादा टैक्स दिया है वो क्या होगा, वापस आएगा। समझ आई ये बात? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? हाँ, ये ज्यादा सिंपल है ऑब्वियसली, ये वाला जो स्लाइड है दिस इज मोर सिंपल इन कंपैरिजन टू दिस वन, बट ठीक है, मैंने दोनों को आपके लिए एक बेस बना के समझाने की कोशिश की है। अगला पॉइंट आता है जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व्स। जनरल प्रोविजन या लॉस रिजर्व्स का मतलब क्या? सर जब आप एज अ बैंक, एज अ कंपनी कुछ पैसा रिजर्व करते हैं फॉर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब ये पैसा रिजर्व किया गया है कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए नहीं, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए नहीं। यू हैव द रिजर्व्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर व्हाटएवर मैटर इट इज रिक्वायर्ड, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? It is termed as general provision or loss reserves, which include provisions of general nature appearing in the books of the bank that are not attributed to any identified potential loss or any decrease in value of the asset will be termed as what? Sir, will be termed as general provision. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेटेड? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ही अपने आप में क्या है? डू यू हैव द एडिक्वेट कैपिटल? डू यू हैव द एडिक्वेट कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्क, विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्क, सो दैट यू कैन सर्वाइव द टफ टाइम। हम कहते हैं कि बैंक को सीएआर मेंटेन करना 9% का, एनबीएफसीज को या कैपिटल, या फिर अगर मैं बात करूं हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एनबीएफसीज के लिए 15% भी है, या अगर मैं एआरसी की बात करूं अगेन इट इज 15%। मतलब कि इसका मतलब यह है कि बैंक का जो कैपिटल है, बैंक का जो कैपिटल है, अगर उसको डिवाइड किया जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क वेटेड असेट के साथ, तो इनका जो रेशियो है वो कितना हो? सो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक के केस में बात करूं इट इज 9%, फिर चाहे वो कोई भी बैंक हो, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए दैट इज प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, फॉर दैट मैटर आरआरबीज, सबके लिए ये जो वैल्यू है दैट इज व्हाट? सर दैट इज 9%। सबके लिए जो वैल्यू है वो क्या है? दैट इज 9%। अब किसी को अगर ये पॉइंट अभी भी समझ में नहीं आया, किसी को अगर ये पॉइंट अभी भी समझ में नहीं आया, तो जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर मैनर, सो प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहली चीज कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? सर कैपिटल मींस वो पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, द फंड्स व्हिच यू इन्वेस्ट टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी. For example, I am starting a new company, and if I am starting a new company in that particular scenario, what I will be doing? Sir, if I am starting a new company in that particular scenario, what will happen? अगर मैं एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूं तो उस केस में आई विल बी इन्वेस्टिंग द फंड्स. तो मैंने क्या किया? आई इन्वेस्टेड माई सेविंग्स. तो मैं कौन हूं? सर आई एम द ओनर. I am the owner of the company. If I am the owner of the company, I have made the investment. I have made the investment, and against this investment, what will I get? Sir, I will get the shareholding. That means I will become the shareholder of that particular company. Near future, I added my friend. He also became the shareholder of the company. Then in near future, I have borrowed loan. In near future, I have borrowed loan from the bank, and all this amount which I have received either from the owners, either from the banks in the form of loan or whatever, that will be termed as what? So that will be termed as capital. तो ये तो हो गई आपकी कैपिटल. ठीक है, इसमें आपका अपना फंड भी है, दिस इज शेयर होल्डर्स फंड. You have the loan also which can be termed as liability. That is all included under this category. एक तरफ आपने कैलकुलेट किया कैपिटल, दूसरी तरफ आप कहते हैं व्हाट? सो दूसरी तरफ यू टॉक अबाउट अ टर्म that is known as RWA. That is known as what? That is known as RWA, जैसा कि risk weighted asset. अब मुझसे कोई पूछे कि सर इसका मतलब क्या, तो how I'll explain it? I'll explain it in a very simple manner. सर सिंपल सी बात है, मान लेते हैं we assume that बैंक के ऊपर सिर्फ एक ही रिस्क है और वो है क्रेडिट रिस्क. आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि बैंक के ऊपर एक ही रिस्क है, दैट इज क्रेडिट रिस्क. अब बैंक ने लेट्स सपोज 200 रुपए लोन पे दिए, 200 रुपए लोन पे दिए, जिसमें से बैंक ने 50 रुपए
जिसमें से बैंक ने 50 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, बाकी के जो 50 रुपीज है वो बैंक ने होम लोन पे दिए, और बाकी का जो 100 है दैट इज पर्सनल लोन, बाकी का जो 100 है दैट इज पर्सनल लोन। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं रिस्क कि सर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, what is the probability that government will not pay back my deposit, my fund? So the probability is 0. If the probability is 0 that government will default your loan, so risk value कितनी हो गई? So risk value is 0. अगर मैं होम लोन की बात करूं, let's say सर होम लोन के केस में risk is 50%. Let's say in case of personal loan risk is 100%. So in that particular case, what is going to be RWA? As I explained, so that is sum of risk on every asset. Sum of risk on every asset. सर आप तो asset की बात कर रहे थे और यहां पे आपने क्या कर दिया? सर यहां पे आपने ले लिया बैंक का लोन. So try to understand, my dear friends, that loan given by the bank is basically bank's financial asset. It is what, sir? It is basically bank's financial asset because bank is earning return on it. Bank is earning it return in the form of interest, and even in the near future, bank will be receiving the principal back. तो जो बैंक ने लोन दिया दैट इज बैंक्स असेट, और जो बैंक के पास डिपॉजिट आया दैट इज टर्म्ड एज बैंक्स लायबिलिटी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. मूविंग बैक टू द पॉइंट. So in that particular scenario, sum of risk on every asset. So I have considered only one type of risk, that is credit risk. So what is the risk on government security? That is 0. What is the risk on home loan? That is 50%, yani ki 25 rupees. What is the risk on personal loan? So that is 100. So I'll write it like this: 0 plus 25 plus 100. So the risk weighted asset is going to be what? So that is 125 rupees. Against which, let's suppose I have a capital. Let's suppose I have a capital of 50 rupees. Let's suppose I have a capital of 50 rupees. So what will be capital adequacy? So it is going to be 50 divided by 125. Let's calculate the percentage. तो percentage calculate करने के लिए I have multiplied it with 100. तो अगर मैं इसको 25 से करूं, 25 2s are 50, 25 5s are 125, 5 into 20 is 100. तो मेरे पास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कितनी आ गई? दैट इज 40%. सो दिस इज हाउ योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैलकुलेटेड. इज इट क्लियर एवरीवन? दोज हु आर फ्रॉम द पेड क्लास और फ्रॉम द पेड कोर्स, उन्हें तो ये पूरी ड्राइंग पहले भी देखी है. दे मस्ट हैव एंजॉयड दिस अगेन. बट दोज हु आर only connecting with me on YouTube, for them I think this is something new which you have never witnessed in the past. तो अगली बार जब भी कभी हमसे पूछा जाएगा what do you understand by the word risk weighted asset, so I would say risk weighted asset means sum of risk on every asset of the bank. Sum of risk on every asset of the bank. Now in this case I don't only include credit risk, I include all the risk: credit risk, operational risk, मार्केट रिस्क, व्हाट नॉट. तो सारे के सारे रिस्क के बेसिस पर पहले आपने रिस्क वैल्यू कैलकुलेट की, फिर सभी एसेट्स की रिस्क वैल्यू को ऐड किया, एंड देन यू ऑब्टेन अ वैल्यू व्हिच इज नोन एज RWA. एंड ऑन द अदर साइड इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल, सर इन केस ऑफ कैपिटल वी इंक्लूड इक्विटी. That means the capital which you have raised as a company by issuing these shares, as well as I include the debt, the capital which you have raised by issuing debentures or other debt instruments. They are the part of capital. But in case of this calculation, we talk about eligible capital funds. Eligible capital funds basically means in case of banks, we include tier 1 as well as tier 2 capital to achieve the targets. Tier 1 as well as tier 2 capital to achieve the targets. Let's check out what all are the components of tier 1 and tier 2 capital. In tier 1 we include core. Tier 1 is also known as core capital. It is also termed as core capital because it includes the paid up capital. Paid up capital means the capital invested by the shareholders of the company, that is the equity holders of the company. It includes share premium. For example, as a company, I have issued shares on premium. So the amount which I have earned
by issuing the shares on premium. That extra amount is known as my share premium. That is also the part of tier 1 capital. Share capital deposit, statutory and other free reserves, capital reserves representing surplus which have arisen out of sale proceeds of assets. For example, as a bank, आपने अपनी एक पूरी पूरी ब्रांच थी जिस लैंड पर, वो लैंड भी बेच दिया और वो ब्रांच भी बेच दी बिकॉज इट बिलोंग टू द बैंक. सो द मोमेंट यू हैव सोल्ड दैट असेट, उसके बदले में जो आपको पैसा मिला, that will be termed as your capital reserve, because this is not your day-to-day operation. You are not a real estate company. You sell assets, very rare, and those rare assets sold amount will be included under the category of capital reserves. Then we have revaluation reserves. What is revaluation reserves? So revaluation reserves basically means, for example, you have maintained a reserve against an asset. एक asset थी, आपने उसके अगेंस्ट एक रिजर्व मेंटेन किया. लेट्स सपोज 10 लाख की वैल्यू थी. अब इन नियर फ्यूचर आपकी जो असेट थी उसकी वैल्यू चेंज हो गई. फॉर एग्जांपल लैंड था यार, लैंड की वैल्यू 10 से 15 लाख हो गई. अब अगर लैंड की वैल्यू 10 से 15 लाख हो गई, सो देयर हैज बीन इंक्रीज और चेंज इन द असेट वैल्यू. दैट मींस व्हेन यू कैलकुलेट or you maintain the reserves against revaluation, when you revaluate your assets and then you maintain the reserves, that is known as revaluation reserves. But remember, out of the total revaluation only 45% is included. Means अगर आपका 10 से बढ़कर 15 लाख हुआ तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का? 5 लाख का. तो ये जो 5 लाख का रिवैल्यूएशन हुआ उसका सिर्फ कितना परसेंट आपको मेंटेन करना है? 45% मेंटेन करना. और इसकी कुछ कंडीशंस हैं. अंडर दीज कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तब जाकर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व्स मेंटेन करेंगे. पढ़ लेना, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जितना बेसिक रिक्वायर्ड था फॉर बीइंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर वो मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, अगला आता है पॉइंट, दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस. सो इफ यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट or the loss which you have witnessed in the financial year, that will also reflect in the tier 1 capital. And the आखिरी point, ये important है. This is important, that is perpetual debt instruments. Any idea guys, if someone asks you what is the meaning of perpetual debt instruments, then what will be your answer? Perpetual debt instruments का मतलब debt instrument यानी उधारी का कागज. मतलब with the help of this instrument, bank is borrowing funds from the public. Bank is borrowing funds from the market, from the public. For example, we have debentures, we have bonds, they all are the examples of debt instruments. Bills for that matter also are the examples of debt instruments. What are perpetual debt instruments? So perpetual debt instruments are those debt instruments which are non-redeemable. Which are non-redeemable. मतलब क्या हुआ? मैंने आपसे कहा, let's say मैंने आकाश से कहा, मैंने कहा आकाश यार आई वॉन्ट 10,000 रुपीज. आकाश ने कहा ठीक है सर दे दूंगा. आकाश ने अगला क्वेश्चन पूछा, सर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? आई सेड नॉट अवेलेबल. आकाश सेड रेट ऑफ इंटरेस्ट? आई सेड 10%. आई सेड 10%. दिस मीन्स कि सर मैंने ये कंफाइन नहीं किया, मैंने ये डिफाइन नहीं किया दैट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आई एम गोइंग टू pay you 10,000 rupees, which means this is something, or this is a debt instrument which is not going to mature, which means I have borrowed a loan and I'm not going to repay the principal. That type of instrument is known as perpetual debt instrument. Now you must be wondering, sir क्यों खरीदूंगा मैं किसी को लोन क्यों दूं जब मुझे पता है मेरा प्रिंसिपल वापस ही नहीं आएगा? Why I should give loan to anyone if I know that my principal is not going to come back? The reason is they promise you long-term interest rates, or I would say they promise you long-term high interest rate which is supposed to be paid every year, which will convince you कि ठीक है यार 10,000 रुपए देने हैं, अगले 50-100 साल तक हर साल 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा. It's good to go. It's good to go. Let's purchase it. So that is what we call it as perpetual debt instruments. Moving on to the next point. There are certain limits in case of tier 1 capital, the same limit which we have studied for the banking sector. We know that according to BCBS, that is Basel Committee Banking Supervision, as per Basel 1, as per Basel 2, as per Basel 3, capital adequacy ratio should be greater than or equal to 8%. That means it should be at least 8%.
फिर आरबीआई आया, आरबीआई कहता नहीं नहीं सर, हमारी कंट्री में विजय माल्या भी है, वी हैव नीरव मोदी एज वेल, सो इन इंडिया वी नीड मोर एडिक्वेट कैपिटल which we call it as an adequate capital. We need more capital to be called as adequate. So in that case, in India, we have 9%. अब banks के लिए क्या कहा जाता है? If I talk about bank, in that particular case, bank means in general. So in general, we have tier 1 capital. So in case of tier 1 capital, we maintain 7% of RWA. यानी कि जो tier 1 capital है, उसका रेशो आरडब्ल्यूए से कितना होना चाहिए? मिनिमम 7%. दिस शुड बी मिनिमम 7%. उसमें भी आगे है कि अगर मैं टीयर 1 कैपिटल में एक तरफ लिख दूं अदर्स, टीयर 1 कैपिटल में बाकी जो कुछ मर्जी है दैट इज अदर्स, दैट शुड बी 5.5% और मिनिमम 5.5%. और जो आपका परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है दैट शुड बी मैक्सिमम 1.5%. यानी कि ये जो 7% है, it should be divided in this manner that PDI should have only 1.5% and rest 5.5% should come from the other mentioned areas like paid up capital, share premium, capital reserve and what not. समझ आ गई बात? क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब इसमें एक पॉइंट और सुन लो, which is very important. It says that, so we know that capital adequacy ratio is equals to 9% as per RBI. ठीक है, और इसमें भी 7% आपको मेंटेन करना है कहां से? टीयर 1 कैपिटल से, एंड यू हैव टू मेंटेन 2% फ्रॉम द टीयर 2 कैपिटल. आई विल टेल यू व्हाट इज टीयर 2 कैपिटल. अब इसमें ये जो टीयर 1 कैपिटल का 7% है ना, इसमें एक कंडीशन है. वो कंडीशन ये है कि सर पीडीआई आप जितना चाहो, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट आप जितना चाहो उतना रेज कर लो. यू कैन रेज एज मच कैपिटल एज यू वांट अगेंस्ट परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, बट while calculating the capital available against RWA, PDI से जो कैपिटल आएगी that will be only 1.5%. मैक्स इंक्लूडेड. आई एम नॉट सेइंग मैक्स रेज्ड. समझ रहे हो मेरी बात? मेरा ये पॉइंट समझ रहे हो? और उसके बाद जो अदर्स है दैट इज 5.5%. दैट इज 5.5%. इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, जस्ट गिव मी यस सर. अदरवाइज आई विल टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट एज वेल. अगर नहीं समझ आया, आई कैन टेक एन एग्जांपल. प्लीज पे अटेंशन. एग्जांपल ले ही लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. देखना जरा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो, बैंक की कैपिटल अपॉन आरडब्ल्यूए. ठीक है, तो इस केस में आरडब्ल्यूए है लेट्स से 100. आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर आरडब्ल्यूए 100 है, सो आई नीड कैपिटल 9. मुझे कितनी कैपिटल चाहिए? मुझे कैपिटल चाहिए 9. अब इस 9 में से भी 7 मुझे चाहिए किस फॉर्म में? टीयर 1 के फॉर्म में, और मुझे 2 चाहिए कहां से? टीयर 2 कैपिटल में से. ठीक है ना? ये बात भी ठीक होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप इसको और इजी करना चाह रहे हैं तो एक एग्जांपल ऐसे ले लो, 18 डिवाइडेड बाय 200. तो अगर आप 18 डिवाइड बाय 200 में एक एग्जांपल और ले लूंगा इसके बाद. ठीक है, तो ये जो 7 है उसमें 5.5 रुपीज तो अदर से आएंगे और 1.5 कहां से आएंगे? आपके पीडीआई से. अब एक्चुअली क्या हुआ? दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड. ये क्या है सर? दिस इज रिक्वायर्ड है. ठीक है, और जो एक्चुअल हमारे पास कैपिटल है एज अ बैंक, वो एक्चुअल कैपिटल कितनी है सर? एक्चुअल कैपिटल एज अ बैंक हमारे पास है 10 है टीयर 1 कैपिटल हमारे पास. उस 10 टीयर 1 कैपिटल में ध्यान से देखना, 10 टीयर 1 कैपिटल में ध्यान से देखना, वी हैव 4 इन द फॉर्म ऑफ पीडीआई और 6 रुपीज इज रेज्ड अंडर द अदर्स कैटेगरी. तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो पीडीआई से आपने कितनी कैपिटल रेज की है? 4. लेकिन कैलकुलेशन में जब हम आरडब्ल्यूए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें हम कंसीडर कितनी करेंगे? एट मैक्स 1.5. तो आप रेज कर सकते हैं, यू कैन रेज मोर देन 1.5%, बट व्हाइल चेकिंग आउट द CAR मेंटेनेंस, इन दैट केस ये कितना इंक्लूड होगा? इट विल बी इंक्लूडेड 1.5 ओनली.
it will be included 1.5 only. किस किस को समझ आया ये पॉइंट? किस किस को ये पॉइंट समझ आया? जस्ट गिव मी यस सर. किस किस को ये पॉइंट अब समझ में आ गया? जस्ट गिव मी यस सर so that I can move ahead quickly guys. If it is clear to you, just give me yes sir so that I can move ahead. Done? चल. अब अगर ये 18 भी होता, अगर ये 18 भी होता, अब लिखा है तो इसका एग्जांपल भी बता ही देता हूं. 18 होता तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि सर 18 टोटल है, 14 मुझे टीयर 1 से चाहिए, 4 मुझे टीयर 2 से चाहिए. अब मेरी जो एक्चुअल अवेलेबल है, एक्चुअल मेरी जो कैपिटल है वो 20 है. उस 20 में से अगर मैं ध्यान से देखूं, उस 20 में से मेरी 6 पीडीआई के फॉर्म में है और 14 मेरी अदर्स के फॉर्म में है. 14 मेरे अदर्स के फॉर्म में, और मुझे चाहिए मेंटेन कितना करना? सर मुझे मेंटेन करना 14. उस 14 में से इसका हिस्सा फिक्स है और इसका हिस्सा भी क्या है? फिक्स है. आप रेज जितनी मर्जी करो बट इट शुड बी मैक्सिमम 1.5%. आई गेस अब क्लियर होगा, इससे ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. The next point says after the limit, the next point says regulatory adjustment, and as per the regulatory adjustments you have to deduct some areas, some I would say components from the capital. Goodwill and intangible assets, they are not included in tier 1 capital. Losses in the current year and those brought forward from the previous years not included. Pension fund liabilities not included, deficit in NPA provisions not included, and income wrongly recognized on NPAs, they are not included in the category of tier 1 capital. तो tier 1 capital में से we will be deducting all of them. अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है, यहां पे मैंने deferred tax assets का definition डिटेल डाल दी है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से. अगला पॉइंट आता है tier 2. tier 2 capital में दो फॉर्म्स है. एक है आपका general provisions and loss reserves. So general provisions and loss reserves will be admitted as tier 2 capital up to maximum 1.5%. तो जो आपका general provision and loss reserve है, that is going to be maximum 1.25 RW, and rest at least 0.75%. At least 0.75% of RWA will come from investment fluctuation reserve. So investment fluctuation reserves का मतलब है जो बैंक इंक्लूड करता है अपने इंटायर अमाउंट ऑफ बैलेंस में एज अ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की, कल को वो ऊपर नीचे अगर इन्वेस्टमेंट हो गई तो उस केस में आई कैन डू दिस फॉर श्योर. इज इट क्लियर एवरीवन? नहीं, ये गलत हो गया, यहां पे कुछ गलत हो रहा है आकाश. ये कैपिटल है, दिस इज नॉट द बैंक्स लायबिलिटी. पूरा इंक्लूड कर सकते हैं भाई, पूरा इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते? मैंने ये कहा कि दिस इज द अवेलेबल कैपिटल. मैंने वहां अपने एग्जांपल में कहा था कि अवेलेबल कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है. अवेलेबल कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, दैट इज नो इश्यू इन दैट. लेकिन जो आप पैसा लोन पे देंगे दैट इज गोइंग टू कम इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. तो पहले जो पैसा डिपॉजिट में आएगा पहले वो लोन पे देंगे, उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होगा देन यू विल बी यूजिंग योर पेड अप कैपिटल एंड ऑल फॉर द लेंडिंग पर्पस, जो कि एक सेकेंडरी फंक्शन है. इज इट क्लियर आकाश, परमेश्वर? समझ आई ये बात? 7.5 इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं, 7 इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं परमेश्वर क्योंकि रिक्वायरमेंट 7 की है ना यार. आप समझो मेरी कैपिटल आज 100 है, ठीक है, और मेरा RWA भी 100 है, तो यहां से मेरा परसेंटेज कितना आ गया? 100%. It's okay, I'm happy with it. But what I want is, I want at least वो कितना हो? At least वो हो 9/100. At least वो कितना हो? 9/100. और at least जो 9/100 है उसमें से 7 और 2 हो, और ये जो 7 है उसमें at least 5.5 हो और maximum 1.5. ये कहना चाह रहा. These are the benchmarks which I'm setting it for you. It can be more than that. It's okay. If capital is more, that means bank is strong. अगर आपने चेक किया हो रिसेंटली जितने भी आरबीआई की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें हर बार ये देखा जाता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ इंडियन बैंक्स इज एन एवरेज 16.7%. तो वो ज्यादा क्यों है? ज्यादा इसलिए है क्योंकि बैंक के पास कैपिटल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आरडब्ल्यू. इट्स गुड, इट शुड नॉट बी बिलो दैट. इफ इट इज अबव दैट इट्स ओके, इट्स फाइन. गॉट इट? समझ आया? चलो अगला पॉइंट.
अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि सर जो आपकी टीयर 2 कैपिटल है दैट शुड नॉट बी मोर देन 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। मतलब अगर टीयर 1 कैपिटल आपकी 100 है टोटल, तो टीयर 2 कैपिटल 100 हो सकती है या उससे कम, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, दैट इज द कंडीशन। अब हम आरडब्ल्यूए कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई गेस देयर इज नो नीड टू डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट आरडब्ल्यूए। सो दैट इज बेसिकली सम ऑफ रिस्क ऑन एवरी एसेट। क्या करो, हर एसेट पे जो रिस्क है उस रिस्क को इंक्लूड कर लो, हर एसेट का रिस्क कैलकुलेट कर लो, देन ऐड risk on every asset in order to find out the overall risk on the organization, that is RWA. Got it? Moving on to the next point. Agla point is very important. Bank shall furnish the annual return to the respective NABARD regional office. Yani ki now comes the reporting. So RRBs, they are responsible that they should be furnishing, they should be providing annual return to the respective NABARD. Q NABARD? Supervision. Who is supervisory authority? NABARD. So NABARD regional office indicating capital funds and RWA ratio. तो annual basis पे RRBs they will be coming up with the reports और उस report में अपनी capital funds और अपने RWA के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि हमने ratios को maintain किया। The return shall be signed by 2 officials who are authorized to do that and the statement shall be furnished as soon as annual account. जैसे ही आपके annual accounts finalize हो जाए, you have to furnish this particular statement to NABARD. अब very important aspect, ये aspect भी आपके circular में given है, वो क्या? Conditions, कि under which conditions we will include PDI. Conditions under which, please pay attention, conditions under which PDI will be included, PDI will be included under tier 1 capital. तो यहां पे कुछ conditions हैं, अगर पीडीआई यानी कि परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तभी दे विल बी इंक्लूडेड इन टीयर 1 कैपिटल, अदरवाइज दे वोंट बी इंक्लूडेड इन द टीयर 1 कैपिटल। अब वो कंडीशंस क्या है? प्लीज पे अटेंशन। पहली कंडीशन सर, टर्म ऑफ इशू ऑफ पीडीआई। तो पहली कंडीशन है पीडीआई शुड बी इशूड इन इंडियन करेंसी ओनली। अगर फॉरेन करेंसी में परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आरआरबी ने इशू किए हैं, दे वोंट बी इंक्लूडेड अंडर टीयर 1 कैपिटल। अगला पॉइंट, paid in status, the instrument should be issued by banks, means this instrument should be issued by banks only, they should not be issued by any special purpose vehicle which is set up by the bank, then only it will be included under tier 1 capital. Then we talk about limit. Sir, limit is within tier 1, within minimum tier 1 of 7%, जो आपका मिनिमम होना चाहिए tier 1 कितना? सर आपका जो tier 1 है वो मिनिमम, मैं बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं लास्ट बार, जो आपका टीयर 1 है दैट शुड बी मिनिमम 7% ऑफ आरडब्ल्यूए, दैट शुड बी मिनिमम 7% ऑफ आरडब्ल्यूए। 7% ऑफ आरडब्ल्यूए में मैक्सिमम 1.5% ऑफ आरडब्ल्यूए शुड कम फ्रॉम पीडीआई, दैट शुड कम फ्रॉम पीडीआई। ये कहना चाह रहा हूं। आप रेज जितना मर्जी कर लो, आई डोंट केयर, आप रेज जितना मर्जी कर लो, आई डोंट केयर, बट ये जो 7% है उसमें मैक्सिमम 1.5% आरडब्ल्यूए पीडीए से होगा और मिनिमम 5.5% ऑफ आरडब्ल्यूए किससे होगा? अदर से होगा, पीडीआई के अलावा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, दोबारा फिर लिख दिया। अगला आता है मैच्योरिटी पीरियड। क्या मजाक कर रहे हो सर? मजाक क्यों? क्योंकि perpetual instrument, in case of perpetual instrument there is no maturity, so instrument shall be perpetual, that is there is no maturity date and there are no step ups or other incentives to redeem. भैया redeem होगा ही नहीं तो कोई incentives भी नहीं होंगे and there is no maturity defined. अगला पॉइंट आता है rate of interest. Rate of interest can be fixed as per bank or it can be fluctuating as per the market scenarios. ये जो instruments है they cannot have क्रेडिट सेंसिटिव कूपन फीचर। क्यों क्रेडिट सेंसिटिव कूपन फीचर नहीं है? बिकॉज ऑफ देयर रिडीमेबल नेचर एंड दे आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट है ऑप्शंस, याद है डेरिवेटिव्स। सो इन केस ऑफ पीडीआई यू कैनॉट गिव द ऑप्शन दैट इज पुट ऑप्शन। व्हाट इज पुट ऑप्शन? सो दैट इज राइट टू सेल। इफ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट is an instrument without maturity, so you cannot give right to sell that instrument to the buyer. मतलब अगर बैंक ने इशू किया perpetual debt instrument, मैंने खरीदा, bank cannot give me the right to sell because it is not redeemable. I cannot sell it back to bank, so that should not be given. But yes, call option आप दे सकते हैं, but the call option will be exercised only after the instrument has run for maximum 5 years.
कॉल ऑप्शन शेल बी एक्सरसाइज ओनली विद इन द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का अप्रूवल चाहिए और मिनिमम 5 साल के बाद आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब कुछ आए लॉक इन क्लॉज। सो लॉक इन क्लॉज की अगर मैं बात करूं, पीडीआई शुड बी सब्जेक्ट टू लॉक इन क्लॉज इन टर्म्स ऑफ विच इशूइंग बैंक शैल नॉट बी लायबल टू पे इंटरेस्ट। अ बैंक विल नॉट बी लायबल टू पे इंटरेस्ट। कब? प्लीज पे अटेंशन। मैंने कहा पीडीआई इशू कर रहा है बैंक, पीडीआई इशू कर रहा है बैंक, और अगर पीडीआई इशू कर रहा है बैंक, उस केस में पीडीआई अगर इशू कर रहा है बैंक, उस केस में क्या होगा सर? उस केस में बैंक को क्या पे करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी, बैंक इज नॉट लायबल टू पे दी इंटरेस्ट। पहली कंडीशन जहां पे बैंक लायबल नहीं है, इफ बैंक CRAR इज बिलो द मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर आरबीआई का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो is not greater than or equal to 9%, no interest will be paid on PDI. Second, if bank is paying the interest, if bank is paying the interest and after the payment of interest, bank CAR values will be unmaintained, then also no interest will be paid. कि भैया अगर बैंक ने अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे करने पे बैंक की टीयर 1 कैपिटल कम हो गई, टीयर 1 कैपिटल कम होने पे सीएआर की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो उस केस में आपको वो प्रॉफिट नहीं देना, रख लो अपने पास। फर्स्ट कंडीशन है यू शुड मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सेकंड इज आरआरबी, दे मे पे इंटरेस्ट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई व्हेन इंपैक्ट ऑफ सच पेमेंट मे रिजल्ट इन नेट लॉस और इंक्रीज इन नेट लॉस। तो अगर आपके बैंक को नेट लॉस हो रहा है, अगर आपके बैंक को इंटरेस्ट पे करके नेट लॉस हो रहा है, इन दैट केस you have to pay the interest. You are not asked to deny the interest payment. आप सिर्फ और सिर्फ तब इंटरेस्ट नहीं देंगे when payment of interest will result in unmaintenance of the CAR value. For this purpose, net loss would mean the accumulated loss at the end of previous financial year या फिर the loss incurred during the current financial year. फिर चाहे वो पिछले साल का लॉस हो, चाहे वो इस बार का लॉस हो, I don't care. इंटरेस्ट शैल नॉट बी क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या कि सर आज मान लो बैंक ने पीडीआई इशू किया 10% पर, और इस साल फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बैंक ने 10% इंटरेस्ट पे कर दिया, सेकंड फाइनेंशियल ईयर में बैंक ने इंटरेस्ट दिया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर में यू विल से 10% फॉर दिस ईयर, 10% फॉर द प्रीवियस ईयर। This is not possible. If this is possible, that is cumulative. But PDI in this case, they are non-cumulative. This is not allowed the way I have explained it on the screen. The way I have explained it on the screen. Is it clear everyone? मजा आ रहा है? चीजें समझ आ रही हैं? Okay. Moving on to the next point. The next point is all instances. ठीक है, जो भी इससे related instances है वो आप पढ़ लेना. Seniority of claim, this is important. सीनियोरिटी ऑफ क्लेम का मतलब क्या? सीनियोरिटी ऑफ क्लेम का मतलब है सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को। डेट इंस्ट्रूमेंट में वी हैव बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, उसके बाद प्रेफरेंस दी जाएगी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, फिर प्रेफरेंस दी जाएगी टू दी इक्विटी होल्डर्स। समझ आ गई बात है? तो चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, दे आर बिलो। अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं, सो दिस विल कम इन दिस मैनर. Here we have preference shareholder and then we have equity shareholder. So this is the decreasing format of preference at the time of repayment. So जब repayment की बारी आएगी, claim देने की बारी आएगी, first claim will be given to whom? So first claim will be given to the debt instrument holder. Second, it will be PDI. Then third, it will be preference shareholder, and fourth will be the equity shareholder. I hope this is clear till this particular point. Moving to the next. उसके अलावा कुछ और conditions. हाँ, एक condition है कि सर आपने लोन लिया, you have raised the funds through PDI. तो PDI से आपने क्या किया? लोन लिया. उसी तरह बैंक क्या करता है? तो बैंक ने मेरा FD अकाउंट ओपन किया. If bank has opened an FD account, that means in that case also bank has borrowed loan from Madhav. Yes or no? Because I have given my loan, I have given my fund to the bank. So in case of deposit, bank maintains what? So bank maintains CRR as well as SLR. But in case of this PDI, जो PDI से बैंक को पैसा मिल रहा है, जो PDI से बैंक को पैसा मिल रहा है, in that fund no SLR, no CRR is maintained.
Again, like deposit, it is a liability on the bank, but out of PDI, no CRR, no SLR is maintained as per the given conditions. As per the given conditions. Last is investment in PDI. RRBs shall not invest in PDI issued by other banks. आप भैया इशू कर दो, लेकिन किसी और बैंक का PDI खरीदना मत. RRB shall not issue PDI to retail investors. तो एक तो RRBs किसी और बैंक के PDI को खरीद नहीं सकते. They cannot purchase, they cannot invest in the other banks issued PDIs, and RRB shall not issue the PDI to the retail investors or foreign portfolio investors or NRIs. That is not allowed. I guess done. That is all we need to remember out of here. Rest is done. Rest is done. Is it clear? So just download the PDF. एक बार पढ़ लेना. सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में समझा दी है. The moment you'll go through with this PDF, each and every point will be clear to you. Deferred tax वाला important है. There could be a question, write or discuss the latest revision done by RBI related to RRBs on capital adequacy ratio. 10 marker question. तो आपके पास 10 marker question के लिए ample of data है. आराम से you can frame an answer out of the same. Sir, please आप annotated PDF send कर दीजिएगा. Okay, okay, ठीक है. Sure शशांक, I'll send that. कोई बात नहीं, वही भेज दूंगा. चलो, लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लास में एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज रिलेटेड टू SRO. इफ यू रिमेंबर, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अकाउंट एग्रीगेटर्स. तो उसमें 3 टॉपिक्स बचे थे. वो 3 टॉपिक्स भी मैंने इंक्लूड कर लिए. वो 3 टॉपिक्स क्या थे? एक तो था आपका गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, सेकंड वाज द फंक्शन, थर्ड इज एप्लीकेशन. आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई विल जस्ट डिस्कस दिस न्यूज इन 5 minutes. सो इन केस ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज governance and management. In case of governance and management, they have said that all the professionals who are going to manage SRO AA, they should be technically sound, and board of directors should be capable enough to take the decisions, should be capable enough to overcome the conflicts and many other things. ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं. डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटीज गिवन है, क्या होने चाहिए, कैसे काम करेंगे. कुछ काउंट्स गिवन है, जैसे कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर्स इन द बोर्ड including chairperson should be independent and without any active association with any of the parties related to account aggregator ecosystem. Not more than 1/4 of the members in the board shall be nominated by NBFC account aggregator. So ये 2 conditions हैं जो आपको याद रखनी है. Rest is not required. Rest you just have to read it once. ये भी सिर्फ रीड करने के लिए, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है. तो ये सारा का सारा पार्ट आई हैव इंक्लूडेड इट फॉर यू, विच कैन बी आई वुड से आस्क्ड. यहां से क्वेश्चन पता कैसे आ सकता है? इसे RBI फेज 2 के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एज अ कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं ना पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ के बेस पर 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दैट कैन बी डन फॉर अकाउंट एग्रीगेटर, एंड इफ यू हैव द एंटायर नॉलेज ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, देन यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लास्ट में इट हैज बीन सेड दैट RBI इज इनवाइटिंग self regulatory organization account aggregator framework applications, and these applications will be invited up to 15th of June 2025, and these applications will be invited through Pravaha portal. याद है Pravaha portal, सारथी portal, जिसकी वजह से RBI has won the Digital Transformation Award, and this award was given by which bank? Tell me in the comment section. ये award किस बैंक ने दिया था? London UK. I'm giving you a hint. उस बैंक का नाम comment section में जरूर बताइएगा. So that is all guys for the new news which I have come up in today's session. लेकिन if you want, if you allow me, if you are ready, एक बार जल्दी से priority sector lending को revise कर लें. You want to revise priority sector lending guys? Do you want to revise priority sector lending revision guidelines जो revise की गई थी recently? जल्दी से. Central Bank, that is correct. ठीक है जी. If you want, then I can do that. If you want, I can do that. ठीक है जी. जल्दी से अगले 5 मिनट में let's give a quick revision. Let's give a quick revision to priority sector lending. ठीक है. I'll just step here
and now the PDF will be keep on rolling and I'll discuss each and every point. देखते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स में रिवीजन किया गया। तो उस रिवीजन में सबसे पहला जो चेंज आया जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था, सर दैट इज फर्स्ट चेंज वाज रिलेटेड टू द डेफिनेशन। एक तो ऑन लेंडिंग की डेफिनेशन को चेंज किया गया। ऑन लेंडिंग की डेफिनेशन को चेंज करने के बाद दे हैव रेक्टिफाइड द एलाइड एक्टिविटीज डेफिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट दे हैव गिवन द नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स डेफिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स की डेफिनेशन दी गई। अब उसके बाद लिमिट्स की बात करें तो ये जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं इनके ऊपर लिमिट सेट कर दी। 18% एग्रीकल्चर है, 18 इज इक्वल टू 14 प्लस समथिंग, 14 प्लस 4, तो 14% किसको जाएगा, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को जाएगा, और 10% किसको जाएगा, दैट विल बी टू दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक, स्मॉल एंड मार्जिनल पहले भी था, 18% एग्रीकल्चर को पहले भी था, लेकिन 14% इज द न्यू एंट्री व्हिच हैज बीन डन इन द लेटेस्ट रिवीजन। दिस यू नीड टू रिमेंबर एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बैंक्स, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, दे आर फॉरेन बैंक्स, दे आर आरआरबीज, दे आर स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई डोंट केयर, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। नेक्स्ट रिवीजन जो की गई है दैट इज रिलेटेड टू दी cooperative banks. So in case of cooperative banks, earlier the target was 75% of A and BC to be done under priority. That is same as that of RRBs and small finance banks, but now this target has been revised. There is no need to achieve 75% of A and BC under priority sector lending for urban cooperative bank. This target has been fixed to 60%, and out of that 60%, 7.5% to MSMEs and 12% to the weaker section. But in case of RRB, this 12% is going to be 15% for weaker section, as we have already discussed. उसके बाद we talked about the priority sector lending sectors. In those sectors we have first one, that is agriculture. Agriculture में जो पहला change किया गया, that is as a farmer, if you have done the cultivation of your agriculture produce and now you have stored your agriculture produce in the warehouse. So against that warehouse stored, जिस warehouse में आपने store किया, so against the receipt which you have received from the warehouse against your storage, that can be used as a collateral to borrow loan. If it is a registered warehouse, then you can borrow loan up to what value? So you can borrow loan up to 90 lakhs, which was earlier 75 lakhs. And if it is unregistered warehouse, you can borrow loan up to 60 lakhs, जो कि पहले value कितनी थी, that is 50 lakhs. In case of corporate farmers, they are allowed to borrow a loan of 4 crores, which was earlier 2 crore for these operations. Secondly, in case of, I would say, negotiable warehouse receipt, 75 lakh limit for corporate farmer has been enhanced to 4 crores, but for individual farmer it is 90 lakhs. And for unregistered warehouse, this limit has enhanced from 50 to 2.5 crores for corporate farmers, but for individual it is 60 lakhs. Loan up to 10 crores, which was earlier 5 crore. Loan की limit अब 10 crore कर दी, which was earlier 5 crore per borrowing entity will be done against the assured marketing of their produce. If you remember, I have taken an example of Maggi ketchup कि Maggi ketchup ने मेरे tomatoes पहले ही खरीद लिए, प्राइस सेट हो चुका है, कहानी बिल्कुल सेट है, बस प्रोड्यूस करना और उनको बेच देना है, बेचना भी क्या, उनको बेच देना है, पैसा आ जाएगा, दैट इज नोन एज assured marketing। ठीक है, उसके बाद ये एक नया एडिशन था, देन वी हैव एन एडिशन जो आगे आएगा, this is important, loan up to 2.5 lakhs will be given to the individual who is involved in allied activities without any land holding. Earlier limit was 2 lakh rupees. Next addition in case of MSME, that is loans to the registered NBFCs for all lending to MSMEs up to 20 lakh per borrower will be eligible under what? Will be eligible under priority sector lending. Export के केस में 2% of ANBC should be provided as a credit for export development. Earlier above limit was, or I would say earlier the limit was 40 crores, अब उस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया, 50 crores. 2% अभी भी सेम है, 2% is still same, but yes, the upper limit has been revised. Next basic change has been done in case of educational loan, 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया. होम लोन के केस में बड़े चेंजेस हैं. पहले तो एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी,
पहले सिर्फ 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, 10 लाख से कम पॉपुलेशन, अब 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन। अब अगर 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां लोन होगा 50 लाख और टोटल हाउस प्राइस वैल्यू कितनी हो सकती है? 63 लाख। इफ population is 10 to 50 lakhs, 40 lakh, 45 lakh is the loan value, and total cost of the house can be 57 lakh. Earlier limit was 35 and 45. और अगर population 10 लाख से कम है, then in that case 35 lakh loan can be given, 44 lakh is the house value. और अगर मैं बात करूं पहले जो लिमिट थी वो कितनी थी? 25 लाख और 30 लाख। अब अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं, फॉर रिपेयर द लिमिट वाज 6 and 10 व्हिच हैज बीन इंक्रीज टू 10, 12 and 15। ये लेटेस्ट रिवीजंस किए गए हैं रिलेटेड टू होम लोन। अगर मैं बात करता हूं फॉर योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 5 to 8 CR, in case of health related infrastructure 10 to 12 CR has been done. Definition of renewable energy has been revised as well as the limit has been increased। तो लिमिट कर दी 35 करोड़ 30 करोड़ से, और डेफिनेशन को भी रिवाइज किया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। वीकर सेक्शन के केस में आर्टिजियंस को लोन दिया जाएगा अप टू 2 लाख व्हिच वाज अर्लियर 1 लाख, इंडिविजुअल वुमेन को लोन दिया जाएगा अप टू 2 लाख व्हिच वाज अर्लियर 1 लाख, और ट्रांसजेंडर हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ वीकर सेक्शन। ये बिल्कुल नया एडिशन है कि अगर आप शॉर्टफॉल्स में रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि सर अगर bank is not in a position to achieve its priority sector lending targets, then bank can purchase the priority sector lending certificates. Yes, but if bank fail to do that, in that particular case, RBI will ask the bank to deposit those shortfalls with NABARD or SEBI, and against those shortfalls, rate of interest will be paid, which will depend on the value of shortfall. If shortfall is less than 5%, then rate of interest will be bank rate minus 2%. If the shortfall is 5 to 10%, bank rate minus 3% is the interest. If shortfall is above 10%, bank rate minus 4% is going to be the interest. और अगर सब कैटेगरी या आपके जो सब टारगेट्स, if you are not able to fulfill the sub targets, then in that particular case, rate of interest will be bank rate minus 2%. Rate of interest will be bank rate minus 2%. So what is the role of payment bank in India? And it is also followed P. Shashank, पेमेंट बैंक्स लोन देते हैं क्या? पेमेंट बैंक्स लोन देते हैं क्या? नहीं। अगर पेमेंट बैंक्स लोन नहीं देते तो डू यू थिंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उनके ऊपर वैलिड होगी? नहीं। Payment banks were set up with the sole motive of financial inclusion, and they were set up in a format that they should target the small businessman, salaried employees, as well as the weaker section of the society. इसीलिए there was a limit per account, only 1 lakh can be deposited, जिसको अब enhance करके 2 lakh किया है, but when it was introduced, it was 1 lakh limit per deposit account for an individual, which is very likely in the sense कि we have to promote the financial inclusion and provide the institutional financial services to the weaker section of the society who possess low deposit capacity. The first news which I have for you all is, this is the screenshot which I have taken from the RBI notification, and the screenshot says RBI has come up with a new update, and the update is related to WMA. WMA stands for Ways and Means Advances. So Ways and Means Advances for Government of India from April to September 2025 has been decided. Now, before we go through with the news, before we understand the nitty-gritties of this particular circular or notification, we need to understand a very important term, and that is WMA. Trust me guys, this is a concept which has a great potential that it can be asked in the descriptive format, and keeping that in mind, I will be challenging it, I will be discussing it, and I will be decoding it for you in a very detailed manner so that you can write a very good answer for the upcoming examination if it is asked related to WMA. I hope you all must have heard about WMA, but many of you might not be clear with its concept. But today, or I would say after this particular session, you will be pretty confident regarding what actually Ways and Means Advances is. So first, I start my discussion regarding the term Ways and Means Advances. Ways and Means Advances is always said that it was launched back in 1997, and then I would say this is specifically related to Government of India. Before this, Ways and Means Advances was alone available for the state government, but
since 1997, state government as well as center government, they can avail the service of ways and means advances. But the question over here is, so what actually is the meaning of the term ways and means advances, how it is used, what is the benefit of this particular term with respect to the government? See, whenever we talk about government, we know this point very well. We know this point very well that whenever the government's budget is framed, in the case of government budget framing, we talk about two important things. One, we call it as total receipts of the government, and other one, we call it as total expenditure of the government. The moment government frame its budget, it comes up with a term that is known as deficit. But the question over here is, so what is the actual meaning of deficit? So deficit basically means whenever total expenditure of the government is greater than total receipt, that leads to deficit, that leads to a mismatch. और अगर government चाहती है अपने निर्धारित, अपने pre-decided expenditures को करना, then government should have the same receipts. What I'm trying to say, ये वो बात है कि सर मैं खर्च तो करना चाहता हूं 105 रुपए, but I have only 5 rupees or I have only 100 rupees in my pocket. Will it be possible to do this expenditure? Obviously not. So if you want to run, if you want to implement this particular budget, then what you need is, sir, you need this extra 5 rupees. How it can be obtained? So there are two options. Either government decrease its expenditure, which will result in decrease in the development rate, growth rate of the economy, and second is government can try to increase its income. But again, if government is trying to increase its income, obviously with the help of tax and all, it will increase the burden on the economy. It will increase or I would say it will increase burden on the consumers, and that will lead to decrease in consumption capacity of the public of the nation, and that consumption capacity decrease will impact the GDP growth rate, which has been witnessed in the past. So ना तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर सकती है और ना ही गवर्नमेंट अब्रप्टली अपनी इनकम को बढ़ा सकती है. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस मिसमैच, व्हाट विल गवर्नमेंट डू? सर गवर्नमेंट विल बोरो द फंड्स. What will government do? So government will borrow the funds. Now the first question is, according to government, it has been very clearly mentioned by the parliament, by the lawmaking authorities, that government should borrow the funds from the market. Government should try to borrow majority funds from the market with the help of government securities. So in that particular case, government will overcome this borrowing with the help of, or government will overcome this mismatch with the help of borrowings, and this borrowing is going to be done with the help of government securities. We know that we have short-term securities, even we have long-term securities, whatever it is required. But is it possible कि government जितनी चाहे उतनी government securities issue कर सकती है? Is it possible for the government to issue as much security as it can? No, sir. According to FRBM Act 2003, it has been very clearly mentioned that government should try to restrict its borrowing up to 3% of GDP. Same goes for state, and in that particular case I talk about the state gross domestic product or gross state domestic product. So in that particular scenario, this 3% is the limit which was fixed under FRBM Act. फिर उसके बाद कोविड आया और कोविड के आने के बाद ये लिमिट्स को ब्रीच करना पड़ा in order to overcome the scenarios which were prevailing in the economy. ठीक, अब जब हम बजट बनाते हैं, whenever the budget is framed by the government, obviously government borrow the funds in order to do what? Sir, in order to balance the budget. अब गवर्नमेंट ने अपने बजट को तो बैलेंस कर लिया. Government has balanced its budget. How come the balancing has been done? So balancing has been done with the help of borrowing. अब गवर्नमेंट ने ये जो पैसा बोरो किया, इसकी मदद से गवर्नमेंट इज going to manage this mismatch, and government is in a capacity to run the budget. Government is in the capacity to implement the budget. लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि सर जब हम गवर्नमेंट की रिसीट्स की बात करते हैं, इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स, majority receipts come from tax, for example GST. Majority receipts come from corporate tax. Majority receipts come from income tax. For that matter, if I take only and only GST, you tell me in the comment section, GST का collection क्या यूनिफॉर्म है? Do we have a uniform GST collection कि हर मंथ जो GST collection होगा by the government, it is equal?
Is that a case? नहीं sir, we always witness कि अप्रैल में जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज्यादा होगा, then during the festive season near October, November, December वहां जाकर हमारा परचेज बढ़ेगा. You all will be purchasing new clothes, new bike, new car. That will result in increase in GDP. But जो मिड मंथ्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट जुलाई, अगस्त, ये वो मंथ्स हैं जहां पर जीएसटी कलेक्शन फॉल करेगा. और जब जीएसटी कलेक्शन फॉल करेगा, दैट मींस उस मंथ का गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया. उस मंथ के लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया. अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो कम हो गया, बट ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो फिक्स है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरीज. अब गवर्नमेंट ने जो सैलरी पे करनी है वो तो हर मंथ इट्स गोइंग टू बी इक्वल. If the salary is going to be equal every month, which states that there is or there will be situations where government will witness a mismatch. और जब ये mismatch होगा, mismatch in what? Mismatch in revenue and expenditure. This month we have a revenue of this much, but we have to make the expenditure which is more than the revenue. In that particular scenario, government is allowed to borrow the funds from RBI, but that borrowing is done for short term, and that short term borrowing which is done by government from RBI in order to fulfill or in order to fight against this mismatch scenario is basically termed as ways and means advances. Is it clear everyone? ये point clear होना बहुत ज्यादा important है. Why ये point clear होना बहुत ज्यादा important है? Because whenever this topic comes in my mind कि WMA है, गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई, क्वेश्चन ये है कि सर इसकी जरूरत कब पड़ी या क्यों पड़ी? बजट जब बनाया था तब तो मैंने बजट को बैलेंस किया था, और जब मैंने बजट को बैलेंस किया तो फिर ये मिसमैच क्यों? तो मिसमैच क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इर्रेगुलर रेवेन्यू. रेवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट फॉर एंटायर ईयर. रेवेन्यू विल वेरी मंथ टू मंथ, और जब आपका रेवेन्यू वेरी करेगा मंथ टू मंथ एंड इवन योर एक्सपेंडिचर में वेरी मंथ टू मंथ, देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ मिसमैच. एंड इन ऑर्डर टू कोप अप with the situation of mismatch, there is an opportunity in the hands of RBI, there is an opportunity in the hands of government that is known as WMA, ways and means advances. Have you ever given a thought कि सर आपने कहा कि ये जो ways and means advances है, इसे 1997 में लॉन्च किया गया. अगर इसे 1997 में लॉन्च किया गया तो उससे पहले क्या होता था? उससे पहले there was a term that is known as deficit financing. डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या? सर डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है जब गवर्नमेंट के पास मिसमैच होगा और देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंसी व्हेन गवर्नमेंट हैज टू मेक मोर एक्सपेंडिचर इन कंपैरिजन टू इट्स रेवेन्यू और इट्स रिसीट्स. इन दैट पर्टिकुलर केस RBI used to print extra currency in order to finance this deficit, but that extra printing of currency will lead to unexpected inflation, will lead to unexpected money supply, because of which that was stopped and there was an option given which is known as WMA. यहां तक समझ आया? Is it clear everyone? Let's read it out. So what is WMA? So WMA was launched with the purpose to meet the mismatches in the receipts and payments of the government. Now government can avail immediate cash from RBI, which means government can borrow funds from RBI if required, but this borrowing can be done for a maximum time of 90 days. This borrowing can be done for a maximum time of 90 days, और इस 90 days की borrowing के against जो rate of interest charge होगा, that is going to be what? Sir, that is going to be repo rate. That is going to be what? Repo rate. एक बार मुझे comment section में बताइएगा, what is the current repo rate going on? Is it 6.25, 6.5 or 6.75? Section 175 of RBI Act 1934 authorize the central government. तो ये जो section है, section 17, ये authorize करता है whom? Authorize the central bank, that is the RBI, to lend loan to the state government as well as to the central government in order to overcome the situation of mismatch, and these borrowings, these lendings will be done for a maximum period of 90 days. लेकिन जैसे आप WMO के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, then you will come across with these three terms. One we call it as normal WMA, one we call it as special WMA, और एक term दी जाती है that is known as overdraft. ये जो special WMA है ना, special WMA is also known as special drawing facility. It is also known as special drawing facility.
अब ये स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी क्या है, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं जो आपको याद रखना है लाइफ लॉन्ग, वो ये कि सर ये जो फैसिलिटी है दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ये जो फैसिलिटी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं दैट इज स्पेशल WMA और स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट अलाउड फॉर द सेंटर गवर्नमेंट। अब ये है क्या? अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यार ये SDF टर्म तो पहले भी सुनी है, SDF के बारे में तो पहले भी सुना है, और अगर आप इस टर्म में कंफ्यूज हो रहे हैं देन आई विल मेक दैट पॉइंट क्लियर। देयर इज वन टर्म व्हिच इज नोन एज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। याद आ रहा है? आई होप यू मस्ट बी वरिड अबाउट दिस कि ये क्या था, क्या ये सेम है या अलग है? नो बेटा, इट्स डिफरेंट। सो व्हाट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का मतलब क्या? जब भी कभी बैंक के पास सरप्लस फंड है, इफ यू रिमेंबर मैंने पेड क्लासेस में बताया था कि बैंक विल ट्राई टू मेंटेन इट्स ओवरनाइट बैलेंसेस टू जीरो, एंड इफ बैंक इज हैविंग सरप्लस फंड्स, बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद RBI, against which RBI will pay rate of interest. One rate of interest is known as reverse repo rate, which is around 3.35%. But this reverse repo rate comes up with a government security, which means RBI आपको government security देगा, बैंक को government security देगा, collateral कि भैया अगर future में I'm not in a position to pay back, then you can utilize these government securities to recover your funds. But RBI ने एक option दी, RBI ने कहा I'm ready to give you loan, I'm ready to accept your surplus funds, against which I will be paying you SDF. SDF is standing deposit facility, which is going to be obviously more than reverse repo rate. क्यों? क्योंकि this is without collateral. इसके against RBI कोई भी collateral यानी कि government security नहीं देगा बैंक को, but in case of reverse repo rate it comes with collateral, and what is the collateral in this case? That is the government securities. तो ये था आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो इसके साथ उसे रिलेट मत करना, रिमेंबर दिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज एक और टर्म आती है, आई डोंट नो वेदर यू आर कंफ्यूज इन दैट विद दैट पर्टिकुलर टर्म और नॉट, दैट इज नोन एज स्पेशल ड्रॉइंग राइट। याद है आपको ये टर्म? तो मैंने स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी से स्पेशल डिपॉजिट फैसिलिटी आपको समझा दिया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी समझा दिया, और उसके साथ साथ एक और टर्म है दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है इट इज रिलेटेड टू IMF। इट इज व्हाट सर? ये एक हम कह सकते हैं कि इट्स अ करेंसी, आई नॉट यूज अ वर्ड real currency, it's a virtual currency which is created by IMF in order to make the transactions, in order to complete the flow of funds within the IMF member with the help of this, that is known as special drawing right. तो special drawing right अलग हो गया, standing deposit facility अलग हो गया. What I am talking about is that is special drawing facility. If someone asks me, so what is this special drawing facility, then my answer to this particular question is let's talk about state government, क्योंकि ये सिर्फ state government के लिए है. अब स्टेट गवर्नमेंट इन द पास्ट, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की थी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की थी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया था स्टेट गवर्नमेंट ने. और आज अगर स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट कैन अप्रोच टू RBI एंड कैन बोरो द लोन अगेंस्ट दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलैटरल. सो व्हेन स्टेट गवर्नमेंट बोरो short-term loan from RBI, from RBI which is valid up to 90 days against central government securities, that is basically termed as what? So that is basically termed as special drawing facility. और ये जो स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी है इट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अगेंस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज लेस देन रैपो रेट, दैट इज नॉट इक्वल टू रैपो रेट. क्यों? उसका रीजन है. व्हाट इज द रीजन? सर अगर मैं आपसे लोन लूं अगेंस्ट कोलैटरल, ऑब्वियसली यू विल चार्ज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेस लेंडिंग रेट इफ आई एम बोरोइंग विदाउट कोलैटरल. तो यहां पर नॉर्मल WMA क्या है? सर नॉर्मल WMA का मतलब है चाहे तो सेंटर गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, if they are in need of funds, if they want to manage the temporary mismatch,
they can reach to RBI. They can reach to RBI in order to borrow the funds. They can reach to RBI in order to borrow the funds, and this borrowing is done for 90 days without collateral, and the rate of interest which is going to be charged or which is going to be paid by central or state government is going to be repo rate. तो नॉर्मल WMA क्या हुआ, क्लियर हो गया. What is special WMA? That is clear. Normal WMA is available for both center as well as state government, but special WMA is available only and only for the state government. अगला point, third point is very important. What is overdraft? अब मुझे कोई पूछे कि सर what do you understand by the term overdraft? How I'm going to reply? देखो, जब भी कभी हम WMA की बात करते हैं, WMA is a loan which is without security. And if normal WMA is a loan which is without security, तो कितना लोन लिया जाएगा? Those limits, they are pre-decided. These limits, the limits of WMA are pre-decided by RBI as well as Government of India. तो ये म्यूचुअली बैठकर मिलकर आराम से बात करते हैं and then decide the limits of WMA. अब आपने limits of WMA के अकॉर्डिंग लोन लिया and you are paying repo rate, बट उसके बाद भी यू हैव नॉट रीपेड द WMA. आप WMA अपना पूरा यूटिलाइज कर चुके हैं, यू हैव यूटिलाइज द एंटायर लिमिट. देन अगेन इफ यू आर इन नीड ऑफ फंड्स, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन बोरो विद द हेल्प ऑफ अ न्यू टर्म व्हिच इज नोन एज ओवरड्राफ्ट. और जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ओवरड्राफ्ट, ऑब्वियसली इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम RBI, बट दिस बोरोइंग इज अबव WMA. It's this borrowing is above word would be wrong here. I would use a word, this borrowing is after WMA. Once the WMA is exhausted, उसके बाद जो borrowing government करेगा after WMA, that will be termed as overdraft, और उसके against जो rate of interest charge होगा that is going to be greater than repo rate. ये भी obvious है. I hope तीनों points clear है. यहां लोन लिया with security, rate of interest less than repo rate. Loan लिया without security, rate of interest repo rate. Loan is taken beyond the pre-decided limit. Once the pre-decided limit is utilized, अब उसके ज्यादा जाकर भी आप लोन ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी हालत खराब है, you are not doing well, and the risk against this loan is increasing, and whenever the risk increases, lending rate increases, and इसीलिए यहां पे जो repo rate होगा that is going to be rate of interest will be more than repo rate. पढ़ लेते हैं, then I'll discuss the rate of interest with you. Please pay attention. Special WMA या special drawing facility is provided against collateral of government securities, जो कि किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है. After the state has exhausted the limit of SDF, तो पहले तो स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करेगा कि लोन ले SDF पे. Why? Because of low rate of interest. अरे भैया, मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, I have the government securities. If I have the government securities, I will utilize them to borrow the loan, and that too at a lower rate of interest, which is profitable for me. So first, as a state government, I'll try to exhaust my government securities. Once my government securities are exhausted, then I will be using the normal WMA, where I will be borrowing the loan without collateral with a limit of up to 90 days. Ab, if WMA exceeds 90 days, अगर WMA एक्सीड हो जाता है 90 डेज से और उसके बाद आपको और फंड्स की जरूरत है, दैट कैन आल्सो बी डन, एंड दैट बोरोइंग इज डन अंडर द टर्म दैट इज ओवरड्राफ्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लिमिट है फॉर WMA, दे आर डिसाइडेड, लिमिट्स आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज RBI म्यूचुअली. तो इन लिमिट्स को म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है और इन लिमिट्स को रिवाइज भी किया जाता है पीरियोडिकली. ड्यूरिंग कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19 काफी बार इन लिमिट्स को रिवाइज किया गया, रिव्यू किया गया, बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस व्हिच वर बम्बार्डिंग ऑन द गवर्नमेंट. उसकी वजह से इसे रिवाइज किया गया इन द पास्ट. तो इसे periodically अनाउंस किया जाता है, बट आफ्टर द अनाउंसमेंट इफ एनी रिवीजन इज रिक्वायर्ड दैट कैन ऑल्सो बी डन. अब क्वेश्चन आता है कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर आप लोन ले रहे हैं SDF पे? दैट मीन्स यू आर बोरोइंग द लोन अगेंस्ट government securities as collateral, which is available or which is applicable only for state government. In that case, the rate of interest which state government is supposed to pay to the RBI is repo rate minus 1%. अगर हम WMA की बात करें तो WMA में अगर आप लोन लेते हैं for 90 days, rate of interest is going to be repo rate. और अगर आप overdraft की बात करें तो overdraft के केस में
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेपो रेट प्लस 2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेपो रेट प्लस 5%। इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं। आपका जो WMA है उसकी वैल्यू कितनी है सर? आपके WMA की वैल्यू है 1,50,000, 1,50,000 करोड़। ये अभी हमने देखा था ना, ये देखो ये लिखा RBI ने अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो WMA की लिमिट है म्यूचुअली बैठ के डिसाइड किया, दैट इज 1,50,000 करोड़। अब ये जो 1,50,000 करोड़ है उतना आपने WMA लिया। अब WMA के बाद you need more funds, and if you need more funds you will go for overdraft. Now if you are going for overdraft, और अगर आपकी overdraft value up to WMA limit है, means up to WMA है, that is 1.5 लाख करोड़ या उससे कम है, उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा रेपो रेट प्लस 2%। सर ये इससे ज्यादा क्यों है? इससे ज्यादा ऑब्वियस है क्योंकि भैया आपको हमने एक लिमिट डिसाइड की थी और वो लिमिट म्यूचुअली डिसाइड हुई थी। आगे पीछे ऊपर नीचे सब चीजें डिसाइड करने के बाद वी केम टू अ कंक्लूजन कि इतने WMA से काम चल जाएगा। अगर उतने WMA से आपका काम नहीं चल रहा, दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी कुकिंग आउट देयर। तो उस केस में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज बिकॉज द रिस्क हैज इंक्रीज्ड। अब अगर आपने ओवरड्राफ्ट किया, मतलब WMA एग्जॉस्ट करने के बाद नाउ यू वेंट टू ओवरड्राफ्ट, और वो जो ओवरड्राफ्ट है दैट इज ग्रेटर देन WMA लिमिट, यानी कि वो 1,50,000 करोड़ आज के हिसाब से। याद रखना दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये हर साल नया आता है, हर साल रिवाइज किया जाता है, ये फिक्स नहीं है। आज जो लिमिट है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आज अगर लिमिट 1.5 लाख करोड़ की है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, उन दिनों में, उन महीनों में अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरो किया, ओवरड्राफ्ट किया मोर देन WMA से, यानी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, तो उस केस में जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी रेपो रेट प्लस 5%। अब सर आपने WMA पे लोन लिया लेकिन 90 दिन तक आपने पैसा वापस नहीं किया। अगर 90 दिन तक आपने पैसा वापस नहीं किया तो अगर आपकी आउटस्टैंडिंग 3 महीने से ज्यादा हो जाती है, उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट विल बी रेपो रेट प्लस 1%। कंक्लूड कर देता हूं, ध्यान देना। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर रिसीट और एक्सपेंडिचर मिसमैच है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम RBI on pre-decided limit which is known as WMA without security, without collateral for 90 days, और ये जो borrowing होगी that will be against repo rate. After exhausting the WMA, beyond WMA, अगर आप beyond WMA से जाकर लोन लेना चाहते हैं that will be termed as overdraft, और overdraft का रेट क्या होगा सर? ये होगा रेपो रेट प्लस 2%। अगर आपकी ओवरड्राफ्ट वैल्यू अप टू WMA लिमिट है, वॉट एवर इज द करंट लिमिट, और अगर आपकी ओवरड्राफ्ट वैल्यू मोर देन WMA है, मोर देन WMA लिमिट है, तो उस केस में दैट विल बी व्हाट सर? दैट विल बी रेपो रेट प्लस 5%। अब अगर यहां पे मैं बात करूं सर, ऑल दीज कंडीशंस आर एप्लीकेबल ऑन स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। ये स्टेट गवर्नमेंट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट, ये एप्लीकेबल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास इन दोनों के अलावा एक और सॉल्यूशन है, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी। स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी में बोरोइंग होगी अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये जो बोरोइंग होगी दैट विल बी अगेंस्ट रेपो रेट माइनस 1%। समझ आया? माइनस 1% रेपो रेट प्लस 2%, रेपो रेट प्लस 5%। इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर। If it is clear, just give me yes sir, so that I can move ahead. इतनी डिटेल में चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, because when there will be a need to write a descriptive answer, until and unless you are crystal clear with the concept, it will be difficult for you to frame the answer. It will be very difficult for you to frame the answer. ठीक है जी, समझ आ गया? चलो कंक्लूड करते हैं फिर इस डिस्कशन को। WMA can be alternative to raising longer tenure funds from the market issuing government securities. ठीक है, तो WMA is much cheaper than borrowing from market. तो अगर आप मार्केट से बोरो करते हैं उससे बेटर है। SDF काफी इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि SDF की मदद से आप बोरोइंग भी कर रहे हैं, एंड दैट टू एट अ लोअर रेट, which is helpful for the state government receipt and expenditure mismatch management. अब मैं आ गया हूं वापस जो RBI की नोटिफिकेशन थी, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन दिखाई थी ना, ये वाली,
जस्ट गिव अ लुक. नाउ आई एम ओपनिंग अप. यही जो लाइनें यहां पे लिखी हैं नोटिफिकेशन है, बस वही मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और उनको वर्ड बाय वर्ड समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. सो रिसेंटली एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, it has been decided in consultation with Government of India that the limit of ways and means advances for not entire financial year, for H1. H1 का मतलब क्या होता है? First half of the financial year, that is 25-26, और वो लिमिट कितनी है? That is 1,50,000 करोड़. तो आपको आज लिमिट अनाउंस कर दी. 1.5 लाख करोड़ की लिमिट है. अगले 6 महीने तक आप 1.5 लाख करोड़ का जब चाहे लोन ले सकते हैं अंडर WMA, जिसका रिटर्न डेडलाइन क्या होगा? दैट इज 90 डेज. अगर आप रिटर्न नहीं करते इवन आफ्टर 90 डेज, देन यू हैव टू पे 1% एक्स्ट्रा ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज रेपो रेट प्लस 1%. दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन. दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखना ध्यान से. देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट गवर्नमेंट frames the budget, और जब गवर्नमेंट ने बजट फ्रेम किया, at that particular moment गवर्नमेंट estimates its expenditure, government estimates its receipts, and if there is a mismatch between expenditure and receipt, this mismatch, this gap is filled with the help of government securities which are pre-decided at the time of presentation of the budget. और जैसे ही we step into the new financial year, government start issuing the government securities in order to fulfill that mismatch or in order to fulfill that gap. अब प्रॉब्लम क्या है? यहां पर एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या कि सर, अगर गवर्नमेंट ने अपने WMA को यूटिलाइज किया, इफ गवर्नमेंट हैज यूटिलाइज्ड 75% of its WMA, that means situation is pretty serious. In that particular case, RBI recommend government to issue more government securities in order to raise funds from the market. In order to raise funds from the market, please read this point very carefully. Reserve Bank of India may trigger fresh flotation of market loans, that is government securities, when Government of India utilizes 75% of the WMA limit. तो जब आप WMA limit को 75% लिमिट को यूटिलाइज कर लेते हैं, उस समय इफ RBI विल श्योरली कम विद द सजेशन कि सर, आपके WMA की लिमिट 75% तक एग्जॉस्ट हो चुकी है, आई डोंट वांट दैट यू गो इन ओवरड्राफ्ट, आई डोंट वांट कि आपका WMA रीपेमेंट डिले हो, आई रिक्वेस्ट यू, लेट्स इशू मोर मार्केट सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. क्लियर? सो ये 75% वाला क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आस्क्ड इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, और पैराग्राफ फॉर्मेट में 2 मार्कर में इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस है, मार्क कर लेना. नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटेन्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिवाइज द लिमिट. तो ये जो लिमिट है दैट इज 1,50,000 करोड़. सो दिस लिमिट कैन बी रिवाइज्ड विद इन नेक्स्ट 6 months whenever required. There is a provision that government and RBI they will sit together again, और वो कहेंगे नहीं यार, बात बन नहीं रही, चलो इन्हें रिवाइज करते हैं. दैट इज ऑल्सो अनाउट. अब इसमें अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो आई होप नाउ इट इज क्लियर. WMA मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल WMA. ओवरड्राफ्ट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बोरोइंग्स बियॉन्ड WMA limits, borrowing after exhausting the WMA limits. Is it clear? So I hope the notification is clear. The entire term WMA is clear. Different types of WMAs are clear. So all these terms are clear. If it is clear, just give me a thumbs up so that I can move ahead. And do not forget to like the session. Do not forget to like the session if you haven't liked it yet, and do share the session with your friends. Done guys? चलो, moving on to the next question. अगला क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे विद अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डैश विल रिसीव हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस from IMF's extended fund facility under the new agreement. Now you must be wondering कि सर, आपको नहीं लग रहा ये न्यूज थोड़ी बैंकिंग न्यूज है? इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS or SBI. I agree to that. The figures, the name of the country, that is more relevant to the IBPS and SBI PO exams, but this term, explanation of this term, understanding this term, it is more relevant to your RBI examination. So read the question, give me the answer. So WMA limit is overall disbursement limit for the state and central government, or it is the maximum limit separately? So see, we have a separate limit for central government, we have a separate limit for states. तो states के लिए पहले एक पूरी limit decide की जाती है, and that limit is
further divided into the states. ठीक है, तो which limit we are talking about? This limit is basically related to the central government. Is it clear, Girish? Is it clear? So the answer to this particular question, let's find the answer. Go through with the news now. Pakistan and IMF, they have successfully concluded a negotiation leading to a staff level agreement. इस agreement के तहत now Pakistan has access to up to $1 billion under the extended fund facility and introduces a new 28-month resilience and sustainability facility granting an additional $1.3 billion of loan, which is equivalent to special drawing rights 1 billion, which is a virtual currency of IMF. Got it? Now, if I come back to the question can be answered from one slide itself. So question kya hoga? So the answer is Pakistan will receive how much funds? So Pakistan will receive $1 billion assistance from IMF under extended fund facility as per the new agreement which is signed. So IMF delegations were sent to Karachi, Islamabad, फिर वहां negotiation हुई और negotiation के बाद ये final decision लिया गया. So pending approval by IMF Executive Board, Pakistan is set to receive $1 billion under EEF, bringing the total disbursement under this program. So ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को लोन दिया गया under extended fund facility. This is not the first time. Pakistan has already received $1 billion under EEF. Now Pakistan will be receiving one more, or I would say $1 plus $1 billion under the same. अब हमारे लिए जो important है, again, which has a potential, it can be asked in a 2-marker format in your paper, in your phase 2, paper 3, that is EEF. So let's understand, let's decode what is EEF. I'll read it one by one and I'll explain it simultaneously. Extended fund facility. Extended fund facility was basically a facility which was instituted by IMF in order to support the nations which are in a serious scenario. So established to assist countries which are experiencing serious payment imbalances. And why they are experiencing these serious imbalances? That is because of structural issues or slow growth and any other position, that is weak balance of payment. If I talk about Pakistan, so Pakistan is witnessing slow growth. Pakistan is also witnessing an issue related to the balance of payment, which has made Pakistan eligible for this particular fund. Otherwise, it is not allowed or it is not available for every nation. It is only available if you are in this situation. So it supports the comprehensive program, include policies needed to correct structural imbalances. So in order to overcome the structural imbalances in the economy, this kind of fund has been created. What is the purpose of this fund? Please pay attention. It supports countries' economic programs which are aimed at moving towards a stable and sustainable macroeconomic position with strong and durable poverty reduction and growth. तो अगर मैं मोटी-मोटी बात कहूं तो मोटी-मोटी बात बस इतनी सी है कि ये जो EEF है, this EEF is basically an extended fund, as the name suggests, extra fund as the name suggests, which is announced by IMF, under which IMF help the nations which are witnessing serious payment issues. That means they are not in a position to pay their foreign bills, they are not in a position to pay their past borrowings. In that particular case, they can approach to IMF. If they are eligible, they will be getting extra loan, they will be getting extra funds under the same. Eligibility, as I said, it is available to all poverty reduction and growth trust eligible member countries that face a balance of payment problem. So अगर कोई country है which is the part of poverty reduction and growth trust is eligible under this. And what is the duration? Sir, assistance under the EEF agreement is provided for an initial duration of 3 to up to 5 years. ये अगला question आपके लिए बनेगा. EEF is available. Extended fund facility is available for what time? Sir, it is available for 3 to 5 years with an overall maximum duration of 5 years. So minimum क्या होगा? Sir, you can borrow the funds for 3 years, but what is the upper limit? So the upper limit is 5 years, which is offered by IMF. Following the expiration, cancellation or termination of this agreement,
additional agreement may be approved. अगर आपका ये agreement complete हो जाता है and Pakistan is still not in the position to pay back the funds, then it can be a new agreement can be or an additional agreement can be approved so that you can continue with the same fund. You can utilize the same fund for some more time. Is it clear everyone? So अगली बार अगर हमसे कोई पूछे what is extended fund facility? Extended fund facility is the facility provided by IMF to the countries which are not doing well, and if the country is eligible, they can borrow the loan for 3 to 5 years under this particular facility, and this will help them to manage their balance of payment issues, to manage their slow growth, as well as to manage the structural imbalances which are prevailing in the country. Got it? Sure. Moving on to the third news of the day. The third news talks about RBI increased the aggregate limit available to SPDs under standing liquidity facility. Under standing liquidity facility. Let's decode the news over here itself. RBI ने कोई limit increase की है किस पर? SPDs. What are these SPDs? So they are known as special primary dealers. Yes or no? What are SPDs, guys? What are SPDs? Anyone can give me the full form. Is it special primary dealers? Is it special primary dealers? No, sir. It is stand-alone. It is what, sir? It is stand-alone primary dealers. So stand-alone primary dealers, there is an increase in value under the standing liquidity facility. Before I discuss this particular news, I think we have to discuss in much detail regarding the term not only stand-alone primary dealers, but let's discuss the term what are primary dealers. Please pay attention, guys. This is going to be really very important. अभी हमने बात की that whenever government is in need of funds, let's say center government, whenever center government is in need of funds or center government has framed its budget, once the central government has framed the budget, then central government will raise the funds from the market. That means government will issue the government securities in order to borrow the funds from the market. So central government जब ये securities को issue करेगा market को, तो who will be the buyers? Sir, obviously the buyers are going to be banks plus other institutes. Buyers are going to be banks, financial institutes, insurance companies, all of them. But मैंने यहाँ पे बैंक को highlight क्यों किया? I have highlighted bank because of the one reason. What is that reason? So that is SLR. Bank has a condition that bank needs to maintain certain percentage of their NDTL in the form of statutory liquidity ratio, which means your reserves should be in the form of either cash, gold or government securities. Obviously, cash is not a good move to keep the reserves because its value will decrease over the period of time due to inflation. Gold, obviously it's increasing from past few years, but it is again a speculative asset. You may witness a loss, the values may decrease, but the short reserve form where you're going to earn return, that is known as government security. So banks, they want to buy the government securities, or I would say they are even indirectly forced by RBI to buy these government securities. But just think, if all the banks, they are reaching to the RBI to purchase the government securities, it's going to be a great chaos on RBI. So in order to simplify this, RBI comes up with a term that is primary dealers. So RBI said primary dealers are going to be those financial institutes which will be responsible to purchase the government securities issued by government through RBI and then sell those government securities to the banks, other financial institutes as per their requirement. To the banks and other financial institutes as per their requirement, those are known as primary dealers. Now these primary dealers, they are classified into two categories. One, we call them as bank primary dealers. As the name suggests, when bank is acting as a primary dealer, it is bank PD. And when an NBFC or a company which is registered as NBFC, and you must register yourself as an NBFC at least 1 year before, and after completing 1 year as an NBFC, then only you can apply for the primary dealer license authorization, which will be given by RBI. And those primary dealers, they are termed as
stand-alone primary dealers. Is it clear? They are termed as what? So they are termed as stand-alone primary dealers. Is it clear? Okay. So stand-alone primary dealers are what? So standalone primary dealers are the entities like subsidiaries of scheduled commercial banks or NBFCs that act as market makers. Market makers means they are the buyers of government security and they are the sellers of government security. So what is a market? Market is a place where buying and selling of goods can be done, services can be done, financial instruments can be done. And in this case, primary dealer is buying the government securities on one side and selling it from the other side. So it's a market maker which buy and sell the securities in order to ensure liquidity. So what do you mean by the term liquidity here? Liquidity means if there is a market, and in a market, your instrument can be easily converted into cash, which means your instrument has high liquidity or your instrument is liquid in nature. For example, I say gold, it's highly liquid, you can sell it and get the funds. Government securities, they're highly liquid, you can sell them even in the stock exchanges to raise the funds. Similarly, government securities are liquid because of these primary dealers, because they provide a platform, they provide a market where buying and selling of the government securities can be done. In terms of guidelines for primary dealers in government securities market, which was dated back in 1995, the guidelines were presented, and these guidelines were presented for what? So for the primary dealers. Special primary dealers, these are the entities that are authorized by RBI. Remember this, as I said, authorized by RBI to act as a primary dealer in government security market. They are known as standalone primary dealers. Types include subsidiaries of scheduled commercial banks, Indian subsidiaries of entities incorporated abroad. These are the foreign companies that have a subsidiary in India, and further their subsidiaries, they have a license of primary dealer. And finally, we have the company which is set up under the Companies Act. It has been registered as an NBFC for at least 1 year, and after that get a license or get the authority to operate as a primary dealer will be termed as standalone primary dealers. Moving to the next point. So what is the role of standalone primary dealers in the market? So as I said, standalone primary dealers, they play a very important role, especially related to the government securities market, by underwriting and market making. So they underwrite. Underwrite means they are responsible to purchase it so that government is okay. If government is issuing the government securities, government is very well aware that these government securities will be purchased with the help of primary dealers only. And once they purchase it, then they come in the market and sell it so that the liquidity responding to government security can be created. And remember that these securities, government securities, they are purchased through auction. And we have two types of auction which is available over here. One we call it as fixed price auction. And the other one is flexible price auction. What does it mean? For example, government ने announce किया कि सर हम 10,000 करोड़ की government securities issue करना चाहते हैं. The moment government has come up with this announcement, they say every government security is going to be of face value 10,000. It will be issued at 9,800 rupees. और ये जो security है, let's say it is for 6 months. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप आज परचेज करेंगे, you will be purchasing at 9,800 and you will be getting an interest of 200, and on maturity after 6 months it will be discounted on face value. तो 10,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे. तो जब हमारा फिक्स्ड प्राइस ऑक्शन होगा, तो फिक्स्ड प्राइस ऑक्शन में प्राइस इज नॉट अ गेम. What is the game over here is कितना ज्यादा आप डिमांड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, for these 10,000 crore securities, we have PD1 demanded for, let's say, 3,000 crore security. PD2 demanded for, let's say, 2,500 crore securities. PD3 demanded for 3,500. I'll take it 3,000, or let's say 4,000 only.
let's say 4,000 crore security. So 4 और 3 7 and we have 25. Now let's say 1,000 crore security. तो ये 4 primary dealers थे, and these 4 primary dealers they have get into the or they have submitted the auction. 3,000 करोड़, 2,500 करोड़, 4,000 करोड़ और 1,000 करोड़. So सबसे पहले इशू होगा 4,000 करोड़ को. First the issuing will be done to the highest bidder. Highest bidder in not in terms of price, in terms of amount. Second will be to 3,000 crore. Third will be to PD2 who has submitted the auction for 2,500 crores. Total check करना 4 और 3 7, 7 और 25 कितना हुआ 9,500 crores. The fourth primary dealer will get only 500 crore worth of securities क्योंकि इससे ज्यादा available है ही नहीं. इससे ज्यादा available है ही नहीं. Now the question is how these primary dealers are going to make money. So the primary dealer is having a government security जिसका face value है 10,000 और it was discounted at 9,800 for 6 months. अब I am a primary dealer, I have purchased this government security. कल मेरे पास PNB से कॉल आया. PNB ने कहा, बैंक ने कहा सर मेरा SLR मिसमैच हो रहा है, मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए. मैंने कहा ले जाओ. कहते कितने की? मैंने कहा सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी अवेलेबल है. इफ यू आर रेडी आई एम रेडी टू सेल इट एट 9,820. अब भैया मुझे भी तो अपना घर चलाना है. I have to pay to my employees. I have to run my organization. So I will be charging above this. I will be charging above this. And PNB is ready. क्यों PNB ready है? क्योंकि PNB इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहा. क्यों नहीं कर पा रहा? PNB को गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए 10,000 रुपए की. ऑक्शन हो रही है हजारों करोड़ों की. PNB उसमें इन्वॉल्व हुआ नहीं. बट PNB कैन नाउ परचेज एज पर its requirement. We call it as tailored government security requirements are fulfilled with the help of primary dealers, but they charge certain commission. They charge certain commission in order to earn profit. Is it clear? Is it clear? They are interchangeable. Abhinav, they are interchangeable. There's no issue with that. Is it clear? Just give me yes sir. आगे बढ़ूं. Is it clear? ठीक है. So they facilitate open market operation. Open market operation means when RBI issue the government securities in order to issue or purchase the government securities in order to manage the liquidity in the market. So obviously RBI का first point of contact क्या होगा? That will be primary dealers, which will help RBI to manage the money supply in the market with the help of government security. That is the second benefit of these primary dealers. अब key functions क्या है primary dealers के? Sir, borrowing and lending in money market. So special primary dealers, they can participate in money market activities. So they can participate in money market activities like in call money market, collateralized borrowing and lending obligations and whatnot. Membership of electronic dealing, trading and settlement systems. So they are eligible for the membership of platforms like negotiated dealing system, Infinet, that is Indian Financial Network, real-time gross settlement and credit card industry settlements. Then these are the two important points. What are the restrictions? So standalone primary dealers, they are not allowed. Very important. They are not allowed to undertake broking in equity, trading, broking in commodities, gold and foreign exchange. हमने सुना ना stock brokers. So these primary dealers, they are not allowed to act as a stock broker. RBI का क्या रोल है सर? RBI का वही रोल है जो हर बार होता है. RBI is the regulator. RBI is responsible to provide the license and RBI will look after the day-to-day operations of the primary dealers. Is it clear everyone? तो क्या है primary dealers? ये clear हो गया. तो अगर ये point clear है, if this point is clear, just give me yes sir. Now I will jump to the news. अभी तक मैंने news तो पढ़ा ही नहीं. अभी तक तो हमने बस ये डिस्कस किया कि प्राइमरी डीलर्स है क्या. और अगर आपने देखा हो तो मैंने नोट्स इस फॉर्मेट पर आपको दिए हैं. आई प्रोवाइडेड द पीडीएफ इन सच अ फॉर्मेट देन यू कैन यूज दीज notes, these PDFs as your reference point. If a question is asked, write a short note on special stand-alone primary dealers. Write a short note on WMA. So today from this session, you have two potential descriptive questions. One is write a short note on WMA. Second is write a short note on stand-alone primary dealers. Now let's discuss the news. So the news says, Reserve Bank of India has announced to increase the aggregate limit available to stand-alone primary dealers under standing liquidity facility. What is this?
Standing liquidity facility. So standing liquidity facility basically means if primary dealer is in need of funds. अरे भाई कभी ऐसा हो सकता है ना कि प्राइमरी डीलर के पास कैश क्रंच है, लिक्विडिटी इश्यूज है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस प्राइमरी डीलर कैन अप्रोच टू आरबीआई and primary dealer can primary dealer can borrow loan from RBI against repo rate, So at existing repo rate, standalone primary dealers, they can borrow loan from RBI under the standing liquidity facility. Its limit has been increased from 10,000 aggregate limit. Aggregate limit means overall limit for all the standalone primary dealers, for all the primary dealers in the country, or I would say the standalone primary dealers in the country. Earlier limit was 10,000 crores. Now it has been increased to 15,000 crore, which will be effective from tomorrow, that is 2nd of April 2025. अब obvious सी बात है कि ये aggregate limit है, तो individual जो हमारे standalone primary dealers हैं, they will be having different limits, and those different limits are being announced or are being shared by RBI to the respective primary dealers. वो आपके और मेरे काम की नहीं है. That is not going to be asked in our examination. अब primary dealers, they are really very important because they were not in news recently. They were in news from past few months. पहला point, earlier इसी महीने में in March 2025, RBI has allowed the standalone primary dealers to participate in all repo operations, irrespective of tenure conducted by central bank. तो central bank जो repo operation conduct करता है, repo rate, reverse repo rate, then we have MSF, we have bank rate, उन सब के लिए now stand alone primary dealer is eligible. पहले क्या था, ये जो हमारे standalone primary dealers थे, they were not eligible for MSF, but now they are eligible for MSF as well, as per the latest update which has been done by RBI. तो ये important point है, इसे भी note down कर लेना. Second point, standalone primary dealers, they were also allowed to participate in other operations as long-term variable repo rate. So long-term variable repo rate means where RBI comes up with lending to the banks for 56 days and even for 90 days under variable repo rate. Earlier only banks were allowed, but now in the last I would say couple of months ago this announcement has been made for standalone primary dealers as well. तीसरा point क्या है, तो देख लो जरा. सबसे पहली चीज, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए जो अग्रीगेट लिमिट है वो 10,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी, 15,000 करोड़. ये याद रखिएगा. दूसरा पॉइंट, नाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑल द रेपो ऑपरेशंस, इवन दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट फॉर एमएसएफ, एंड दीज स्टैंड अलोन primary dealers, they can participate for variable repo rate, which are even for long term, that is 56 days, 90 days, and even for short term, that is for daily वेरिएबल रेपो रेट के लिए भी अब आपका स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर इज अलाउड, इज एलिजिबल. समझ आ गई बात. अब आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच हैज अ पोटेंशियल दैट इट कैन बी आस्क्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट एज वेल. तो आपके पास मैच द 2 मार्कर क्वेश्चन में तो आने के चांसेस हैं ही. दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो. और वो जो 2 मार्कर में कोई पैराग्राफ फॉर्मेट पे आएगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द आउट ऑफ एनी वन ऑफ द 3 न्यूज. पहली कौन सी, जो हमने आज पढ़ी, दूसरी कौन सी, एमएसएफ वाली, और तीसरी न्यूज कौन सी, दैट इज रिलेटेड टू वेरिएबल रेपो रेट. अब इसके बेसिस पे अगर पैराग्राफ नहीं आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स. ठीक, क्लियर है जी. तो प्लीज गो थ्रू विद इट. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एंड द फर्स्ट न्यूज ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन. द क्वेश्चन सेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड figures indicating an increase in India's external debt. An increase in India's external debt. What is the reported total amount of India's external debt? So recently Reserve Bank of India has released the figures related to the India's external debt. So according to that, what is the value of external debt on India? So before I start the discussion, before I find out the answer to this particular question, I would start my discussion in this manner. That's a first question which we need to answer over here is,
कि सर ये जो क्वेश्चन में लिखा है एक्सटर्नल डेट, इसका मतलब क्या है? व्हेनेवर वी यूज दिस वर्ड एक्सटर्नल डेट, तो एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या? एक्सटर्नल डेट का मतलब है कि जब हम पैसा उधार लें, व्हेन यू बोरो द फंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, व्हेन यू आर बोरोइंग द फंड्स outside your nation, that amount which you are borrowing outside the nation is known as debt. कौन सा debt? External debt. अब the question over here is, sir, who all are the borrowers? The borrower can be directly government. Even borrower can be government departments, government organizations. Not only this, borrowers can be the private players as well, or the private organization as well. Even the individuals. So remember that external debt का मतलब जो पैसा इंडिया ने उधार लिया इंडिया के बाहर से, उसे हम क्या नाम देंगे सर? वी विल कॉल इट एज एक्सटर्नल डेट. और ये जो एक्सटर्नल डेट है, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जाएगा सर? एक्सटर्नल डेट मींस एक्सटर्नल डेट वेदर इट इज बोरोड बाय गवर्नमेंट, whether it is borrowed by government department, government organization, private organization as well as the individual. अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने है क्या, कि सर जब भी कभी हम एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल डेट कैसे बोरो करती है, तो आज की इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग इन मच डिटेल about the borrowings which are done by government, especially related to the external debt. So let's read out all about this. So external debt refers to the amount that country owes to the foreign creditors. तो जो भी पैसा इंडिया ने ओ किया, जो इंडिया को पैसा इंडिया ने बोरो किया है from the external creditors, from the foreign creditors, that is known as external debt. It includes both public debt as well as प्राइवेट डेट. तो इसमें पब्लिक डेट भी इंक्लूडेड है और प्राइवेट डेट भी इंक्लूडेड है, which means it include the borrowings done by government organizations, government departments, as well as the borrowings done by companies, firms, as well as individuals. अब ये जो पैसा आपने लोन पे लिया, वो हो सकता है डायरेक्ट लोन हो, या फिर the funds have been raised against the bonds. Against the bonds means government has issued sovereign bonds, and those sovereign bonds are purchased by the investors from all around the globe, and those investments which are done all around the globe, they will be termed as what? They will be termed as external debt on the government, and that debt has been raised with the help of the bonds. Moving on to the next point. The next point talks about the current discussion. The current discussion talks about, so there has been total increase in the external debt value. If you see the total external debt on India as of December 2024 कितना था? So that was $707.9 billion. तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि आज what is the current value of external debt? So the current value of external debt on India is $717.9 billion. अगर मैं annual increase की बात करूं, if I compare that same with December 2023, तो December 2023 के comparison में ये जो external debt है, it has increased by almost 10.7%, या फिर मैं मोटा कहूं तो it has increased by almost $70 billion. अगर मैं मोटा कहूं, it has increased around 65 to 66 billion dollars. अगर हम क्वार्टर बेसिस पे बात करें, सो ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये जो इंक्रीज है, इट इज जस्ट 0.7%. इट इज जस्ट 0.7%. तो अगर हमसे कोई पूछेगा what was the external debt of India in September 2024, so it was $712.7 billion. $712.7 billion. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो एक्सटर्नल डेट है, अगर हम इसका ट्रेंड चेक करें, तो हाउ इज द ट्रेंड ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट? इफ यू check out the trend of India's external debt in 2010, this external debt was $290 billion. Then it increased drastically
in a decade, or I would say in 9 to 10 years, to $561 billion. फिर 2020 में 564, 2021 में ये increase हुआ obviously because of COVID-19. Then in 2022 it was 615, and if I say in 2023 it is $646 billion. लेकिन अब $646 billion से भी बढ़कर ये वैल्यू कितनी हो गई है? So the value is $717.9 billion. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंक्रीज इन एक्सटर्नल डेट, कि भैया एक्सटर्नल डेट इंक्रीज क्यों होता है? सर ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इलॉजिकल सा क्वेश्चन है? क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है एक्सटर्नल डेट कब इंक्रीज होगी? सर जब आप बोरो ज्यादा करेंगे. ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन यू विल बोरो मोर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी बोरोइंग्स कब इंक्रीज होगी? Your borrowings will increase because of two major reasons. The first major reason is obviously when the borrowing not only of the government but borrowing of the non-government entities increase. तो इंडिया में इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये देखा गया है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स इंक्रीज नहीं हुई सर. एक्सटर्नल डेट में वी इंक्लूड ऑल द बोरोइंग्स, एंड एक्सटर्नल डेट में अगर हम देखें तो मेजर जो इंक्रीज हुआ है that is in the non-government borrowings, which has led to the overall increase in the external debt. Second point is, sir, currency exchange rate movement. Sir, ये currency exchange rate movement का मतलब क्या? Currency exchange rate movement का मतलब है, we all know that dollar, अगर हम बात करें US dollars की, तो US dollar has witnessed a great strength in the past. US dollar को काफी ज्यादा strength मिली in the past, especially I would say US dollar has appreciated a lot with respect to Indian currency. Not only Indian currency, US dollar has appreciated with respect to the other foreign currencies as well. For example, ध्यान से देखना, इंडिया ने 100 यूरो का लोन लिया from European Union. India has borrowed a loan from European Union of value 100 euros. And when this borrowing was done, at that particular moment, 1 euro was equals to 1 US dollar. 1 euro was equals to 1 US dollar. अब over the period of time, the same dollar has appreciated with respect to euro. और जैसे वो appreciate हुआ, it is now equals to 1.5 euros. तो अगर इस context में मैं देखूं, पहले इंडिया का जो borrowing था in terms of dollar was $100. Now the same value, the same amount of borrowing has changed. The same amount of borrowing has changed because of the depreciation or appreciation of dollars. तो जब भी कभी आपका exchange rate change होगा, due to the change in exchange rate, your debt value will also change. और अगर हम इस बार बात करें the valuation effect, जो इस बार का वैल्यूएशन इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? दैट इज $12.7 बिलियन. यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो 648 बिलियन डॉलर से आपका जो लोन या एक्सटर्नल डेट वैल्यू इंक्रीज होकर 717 हुआ है, इसमें 12 point something, what was that rate? $12.7 billion is just because of the valuation. It is just because of the valuation वाला पार्ट, यानी कि यूएस डॉलर के मुकाबले बाकी करेंसीज की वैल्यू चेंज हुई, जिसकी वजह से ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ लोन है और द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल डेट ऑन इंडिया हैज चेंज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. द नेक्स्ट एस्पेक्ट टॉक्स अबाउट कि गवर्नमेंट का कितना शेयर है आउट ऑफ द टोटल external debt. If I talk about the total external debt, government share is 22.1%. Government share is 22.1%. And if I talk about deposit taking corporations, that means financial institutes, especially banks which borrow, which accept deposits, it's 27.8. Non-financial corporations 36.5 and other financial corporations it is 8.7%. तो अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो deposit taking and other financial corporations, what is the total value? That is 27.8 plus 8.7. If I add it 27 में 8 जोड़ूं तो कितना होगा? 35 में 1.5 जोड़ूं तो 36.5%. यानी ओवरऑल जो आपकी एक्सटर्नल डेट है, उस एक्सटर्नल डेट का
36.5% जो loan है that has been borrowed by which organization or which sector, then the answer to this particular question is financial sector. Then the answer to this particular question is the external sector. No, Shivani, there is no threshold as such which is predefined on international level, but yes, recently when we discuss about FRBM, which was introduced in 2003, then after COVID, the norms under FRBM was revised, and as per the latest update, there has been a projection, and the projection has been set that government's total debt, that talks about government total debt. So government's total debt to GDP ratio or total debt to GDP should be less than or equals to 60%. I'm talking about the total debt on central government as well as state government. तो ये टारगेट तो है कि आपकी जो टोटल डेट है कोशिश करो 60% से कम हो फॉर द एंटायर कंट्री, सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. बट इफ यू से एक्सटर्नल डेट का कोई एक पर्टिकुलर लिमिट है, दैट इज नॉट डिफाइंड. देयर इज नो एज सच लिमिट व्हिच इज डिफाइंड. इज इट क्लियर शिवानी? ओके परमेश्वर, आई थिंक आपने कुछ पूछा था. आई कैन नॉट सी योर डाउट नाउ. चलिए, Abhinav is saying, sir, as it is debt-based economy, so can we say that external debt will keep on increasing in the long run? Yes, undoubtedly, external debt is keep on increasing over the long period, but it's fine. अगर long period में आपका external debt increase हो रहा है, that is nothing to worry. Why there is nothing to worry? I'll show you the data. Please give a look on this data. If I say India is one of the emerging economies, and on the other side, if I talk about China is going to be the world's largest economy very soon. So in that context, China का जो current total external debt है, that is $2.5 trillion. जहां पे अगर मैं उस समय में, जिस समय में ये चार्ट था, उस समय में इंडिया का एक्सटर्नल डेट वाज $646 बिलियन. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक्सटर्नल डेट ज्यादा है, दैट मींस योर इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल. दैट इज नॉट द केस. द पॉइंट इज, इफ यू आर in a position to service this data appropriately, then it's fine. Otherwise it's a question. I would say it's a point to be discussed. It's a point to be, you should be worried of. ठीक है जी. तो ये आप याद रखना. Financial institutions, external debt, highest share 36.5%. Moving to the next point. The next point says, so what is the source of external debt? If I talk about the highest source, so the highest source is 51%. So India is borrowing 51% from the private investors. Now these private investors, they are investing against bonds. So they are the bond holders. They are purchasing the bonds issued by government as well as the corporates. So with the help of these bonds, they have lended loan to the Indian entities, as well as we have the other commercials. But the question is, after private, which is on the second rank? So on the second rank, we have multilateral organization. Give me the example of multilateral organizations. And I'm talking about World Bank. In the examples, obviously, I'm talking about World Bank. I'm talking about Asian Development Bank and whatnot. So the share of private lenders is 51%, and the multilateral organization, their share in India's total external debt, is how much? So that is 33%. तो आपको 51% भी याद रखना है. You need to remember 33% as well. And secondly, you remember bilateral. In case of bilateral, we have Japan, that is 11%. Bilateral में जो highest borrowing है, that is Japan, that is 11%, thanks to bullet train. Bullet train की वजह से we are borrowing a lot from Japan, and that amount is being utilized in order to develop the bullet train project in India. But yes, this made Japan the largest lender to India out of the bilateral agreements which have been done with different nations. Is it clear to this point? Moving on to the next point. So the next point says, if I talk about the external debt,
In case of external debt, what is the currency distribution? What is the currency distribution in which the borrowing has been done? So as always, that is absolutely true. Highest borrowing, that means out of the total external debt, we have a external debt of 54.8% in the form of US dollars. Second is in the form of Indian rupees. Sir, ये क्या मजाक है? So what you are talking about? You are discussing external debt, and in case of external debt, you are saying Indian rupees. Indian rupees means Indian currency. If I'm borrowing in Indian currency, that means it should be termed as internal debt. That should be the borrowing done within the India. No, sir, that is not the case. What I'm trying to say, for example, if you remember, India and Japan, they sign the bilateral swap agreements, currency swap agreements. In those swap agreements, Japan holds INR as well. So India has borrowed INR. From the foreign nations. Which have been reached to these foreign nations under the currency swap agreements. Then the next one we have 6.1% Japanese yen. Then this is special drawing rights, the virtual currency of IMF, that is 4.7%, and in euro we have 3%. And that was the reason जब मैंने कहा था कि yes, you know, US dollar is appreciating, and US dollar is appreciating with respect to euro, with respect to yen, even with respect to Indian rupees. And if US dollar is appreciating with respect to Indian rupees, then it's quite obvious the overall external debt value will be affected due to the change in foreign currency exchange. अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? So let's suppose इंडिया की जो टोटल borrowing है, let's say it is $100 over here, and this is let's say 80 rupees. Obviously ये 80 rupees में borrowing तो है, but we'll not write 80, we will write it as $1 because $1 is equals to 80 rupees. So end of the day, whatsoever borrowing you have done and whatsoever currency you have done, you will be converting it into dollar in order to obtain the overall debt value. And the same context I'm talking over here. Earlier 80 rupees was equals to $1. But now the currency appreciate, the foreign currency exchange rate changes, which has led to the change in overall value, of the external debt, and $12.7 billion out of almost $66 billion external debt increase is just because of currency exchange rates. Is it clear, everyone? If it is clear, just give me yes, sir, so that I can move ahead. Moving on to the next point. Now the next point is, so whenever we talk about this external debt, the way I answered a question that threshold limit is not as such defined, but yes, as per the latest FRBM committee, it has been decided that it should be 60%. But 60% is total for center as well as state government. Now, if you ask me, the GDP, that means external debt to GDP ratio, is 19.1% in December 2024, which was 19% in September 2024. If you check this very closely, then I would say this was $712.7 billion और $700.7 billion से ये increase होके कितना हो गया? $717.9 billion. So there has been an increase of almost $5 billion, but in terms of percentage, there has been an increase of just 0.1%. Is it clear? समझ आया? आगे देखना. अगला point क्या कहता? The next point says debt service ratio. What is this debt service ratio? Any idea, guys? What is this debt service ratio? Any idea? Debt service ratio basically means debt service stands for interest rate. Debt service stands for
the interest which you need to pay as well as the principal which you are supposed to pay in a given year, So now debt service ratio basically means interest payment which India is liable to pay in the current financial year plus principal which India is liable to repay in the current financial year divided by India's foreign earnings into 100. So this is basically known as debt service ratio. And as you can see, debt service ratio is what? Sir, debt service ratio is 6.6%, which means debt service ratio is 6.6%, which means that in order to pay the interest as well as principal value, we are utilizing our 6.6% of foreign earnings. Which was earlier 6.7%. Is it clear, everyone? Is it clear? If it is clear till this point, just give me yes, sir. If it is clear till this point, just give me yes, sir. If it is clear, just give me yes, sir, so that I can move ahead. So this measures how much foreign income is used to repay debt. So 6.6% foreign income is used to repay the debt, or 6.6% of current receipts. So our debt service ratio is 6.6% of current receipt. Is it clear? Okay. Chalo, moving on to the next point. The next point is again really very important. So what is the interest flow? If you are borrowing a lot, then you are liable to pay interest a lot. So in 2010, India was paying an interest of around $4.6 billion. In 2023, India has paid an interest of $22.5 billion. And this is the interest payment which has been done against the external debt alone. This is the interest payment which has been done against the external debt alone. And this is the list of few countries, I would say those countries which generally remain in news along with India. So I have taken them in the list, especially Brazil, India, China, South Africa. So I was focusing on the BRICS nation. I left Russia, but I have included other all. And just to make you understand that China has an external debt of $2.7 trillion. India has it of around $646 billion when the comparison was done. And if I talk about the interest payment, India's interest payment is $22.5 billion and so on. If it is clear, just give me yes, sir, so that we can move on to the next news. Chalo, let's check out your doubts. Sir, the change of 12.7 will be calculated by the change in all these respective, yes, all these respective currencies, not just dollar. DSR would have lower effect on the exchange rate change due to the interest rate swap that the firms must have done. That the firms, if they have done. If they have done, then it's fine. If they haven't done, then obviously it will have a great impact. Chalo, now let's read out the question. Reserve Bank of India has released figures indicating an increase in India's external debt. What is the reported total amount of India's external debt? So India's external debt as of December 2024 is $7.7 billion. As of September 2024, it was $712.7 billion. And if I talk about December 2023, the same data for December 2023 was $648 billion. So remember these three datas, they are important. At least these two are really very important, where you have an year-on-year comparison. Is it clear, guys? Ready? Shall I move on to the next news? Are you ready? Shall I move on to the next news? Next news is again really very interesting. And if you are ready to go, just give me yes, sir. If you haven't liked the session yet, I would request you quickly hit the like button so that we can move on to the next news. Let's move on to the next news, guys. The next news is now on your screen. First, we'll discuss the question, then we'll discuss the news, and then we'll come back and answer the question again. So this is something which is in news and you all are very much aware of this particular news. So the question says, Reserve Bank of India has announced a revision
to the changes associated with ATM withdrawals impacting the customers nationwide. This entire RBI norm will be implemented from 1st of May 2025. A new fee structure will be implemented for transaction exceeding the established monthly free withdrawal limits. Consider this change. What will be the cost incurred by customer for each withdrawal that surpasses their allotted free transaction? What will be the answer? Chalo, before you give me the answer, I would like to move ahead and I would like to discuss this particular notification. So this is the notification which has been presented. Let's decode this one by one. So from 1st of May 2025, customers will have to pay 23 rupees per transaction at ATM beyond the mandatory free transactions provided by the bank. अब सर ये पूरी की पूरी न्यूज़ है क्या? So please pay attention. Please pay attention. I'm pretty sure that you are going to enjoy the discussion. If I talk about a bank customer, let's say there is a bank named SBI and there is a customer, Madhav. He is holding a savings account in SBI. He is holding a savings account in SBI. If he is holding a savings account in SBI, that means he must be given with a debit card. He must be given with a debit card in order to withdraw the funds, in order to make the payments. Now, if Madhav wants to withdraw the funds, Madhav will approach to the ATM. Madhav will approach to the ATM. We have different types of ATM: blue label, brown label, white label ATM. Let's say this is a blue label ATM which is owned and set up by SBI. The moment Madhav reached over here, he used his debit card either to withdraw cash. If I'm withdrawing a cash, or maybe I am depositing a cash, this is known as financial transaction. This is known as financial transaction. And if I'm just checking out my account balance, or I'm checking out the mini statement, or I'm changing my PIN or anything like that, that will be termed as non-financial. That will be termed as non-financial transaction. That will be termed as non-financial transaction. Fine, guys. Secondly, in a similar manner, I can approach to an ATM which is again a blue label ATM, but this ATM has been set up by ICICI. That means this ATM is owned by ICICI. Have you ever given a thought? कि आपका अकाउंट तो SBI में है, लेकिन you are capable to withdraw the funds from the ATM which has been installed by ICICI. How is it possible? That means ICICI Bank can access your account. That means your account is not safe. Is that a case? No, sir, that is not the case. The case is ATMs, they are connected to a point which we call it as NFS. We call it as National Financial Switch. All the ATMs of all the banks, even the white label ATMs which are set up by the private companies which are not a bank, their ATMs are also connected to NFS. Once your ATM is connected to NFS, and if Madhav will approach to this ATM with an SBI debit card, and the moment I'll insert my debit card in this ATM, the information will flow. The information will flow to NFS. NFS has access to the SBI server. NFS will connect to the SBI server, check out my account balance. If there is account balance, then NFS will ask SBI to make the debit, and once the debit is done, acknowledgement will be sent. The moment acknowledgement reaches to ICICI ATM, cash withdrawal will be done. Cash withdrawal will be done. Got it? Is it clear? So this is the role of NFS in the ATM transaction. Now here you need to understand one point. This transaction which I have done in yellow color, this is intra-bank. This is intra-bank ATM transaction. This is intra-bank ATM transaction, and this is interbank. This is interbank ATM transaction. If I talk about the past, in the past there was a situation when intra-bank transactions were allowed. N number of intra-bank transactions were allowed, and that too free of cost. But now the things have changed. Now, in general, I would use a word in general, which can be different for your bank. Then don't
question me, don't challenge me. In general, intra-bank transaction, which is a financial transaction, and interbank transaction, which is financial as well as non-financial transactions, they are free of cost. 5 transactions per month non-metro cities and 3 transactions per month metro cities. 3 transactions per month metro city. Is it fine? Now, once you have utilized your transactions, your free transactions have been utilized, in that particular case, it is possible in case of intra-bank, and it is for sure going to be witnessed in case of intra-bank transaction, that if you have went beyond this limit, if you have crossed this limit, then ATM service transaction charge will be charged, and this ATM transaction charge will be charged not only on interbank, it can also be applicable, or it is also applicable on intra-bank transaction as well. So what is going to be the charge which you have to pay? So per transaction now is going to be up to 23 rupees. So this is up to, your banks will decide independently, plus taxes. So basic charge is up to 23 rupees plus taxes, which was earlier 21. Now the question is why this change has been done, why this revision has been done. So this revision has been done in order to promote cashless economy, digital payments. So banks, they don't want the customers to utilize cash, or they don't want that customers should run behind cash. That is the reason due to which they have increased this charge value. Even there is one more reason. The one more reason is Indian economy is going cashless, and if you are going cashless, just talk to yourself, when did you visited the ATM last? I don't remember when I visited the ATM last. Earlier I used to visit ATM at least thrice or 4 times in a month, but now I don't even remember when I approached to ATM last. So in that particular case, number of transaction on ATM has decreased. If the number of transaction on ATM has decreased, but the cost, rent, the salary of the security guard, the bill of AC which is running, they all are same. So number of transaction has decreased, but the cost is still the same. So it's quite obvious, per transaction cost will increase. अरे भाई, अगर एक महीने का कॉस्ट था पहले 1000 रुपए, ट्रांजेक्शन थी 100, तो पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी हो गई? 10. अब 1000 रुपए तो एज इट इज है, वो तो चेंज हुआ नहीं, बट जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, दे हैव ड्रॉप डाउन टू 50, तो पर ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट है, इट इज नाउ इंक्रीज्ड, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड वैल्यू, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट दैट these transaction values are need to be increased. I hope समझ आया होगा. Take the screenshot. No one is going to explain this again. This is the first and the last time you are understanding the role of NFS in the play of ATMs. चलो, moving on to the next point. Now let's discuss this news. अब मुझे उम्मीद है word by word समझ आ जाएगा. So from 1st May, customer will pay 23 rupees transaction at ATM beyond the mandatory free transactions provided by their bank. Now the question is, so free transaction provided by the bank means that if you are going to, let's say again Madhav has an account with SBI, and Madhav can go to SBI ATM as well as can go to ICICI ATM. So if I have approached to this ICICI ATM or SBI ATM up to 5 times in a month, if I'm not living in a metro city, so in that particular case, no charge will be charged. But there is a problem. What is the problem? The problem is ICICI is giving me the service, and against the service which is provided to me by ICICI is going to face expenditure of what? Sir, expenditure of rent, expenditure of salary, expenditure of electricity bill, expenditure of loading and deloading the ATM machine. So that expenditure which ICICI is bearing to run this ATM will not be bared for a customer who is not belonging to ICICI Bank. In that particular case, ICICI Bank will ask SBI to pay the charges, and these type of charges
These type of charges are known as what? These type of charges are basically known as what? They are termed as what? So these type of charges are known as ATM interchange fees. This is known as what? So this is known as ATM interchange fees. Now let me explain you. So currently banks, they charge up to 21 rupees per transaction since 1st January 2022 for exceeding the free limit, but from 1st of May 2025 they are allowed to charge up to 23 rupees plus GST. Customers are eligible for free transaction inclusive of financial transactions as well as non-financial transaction from their own bank ATM as well as from the other bank ATMs. But what is the count? So this is 5 free transactions. This is 5 free transaction in general. I'm using a word in general, and please contact your bank in order to understand whether it is 5 free transaction per month, which include only financial, and non-financial are allowed unlimited in case of SBI, in case of HDFC. So contact your bank. 3 transactions per month at ATM of other banks in Metro City, and 5 free transactions per month at ATM of other bank in known metro areas. But अगर आप अपने ही बैंक के पास जा रहे हैं तो जनरली जो मैंने पढ़ा, जो मैंने रिसर्च किया, उसमें मुझे ये समझ आया कि जनरली जो आपके अपने बैंक का एटीएम है, वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस काउंट की जाती है, दैट इज 5 के बाद चार्ज होगा, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस, पिन चेंज, वो काउंट नहीं होता, एग्जांपल एसबीआई, एचडीएफसी। लेकिन हो सकता है आपका बैंक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी काउंट करे, इसलिए आई हैव मेंशन दिस पॉइंट वेरी क्लियरली, कॉन्टैक्ट योर बैंक इन दिस केस। मूविंग टू द नेक्स्ट, once the customer exceeds, they will be paying the limit. As of February 2025, there are 258,000 ATMs, that means 2,58,000 ATMs in the country, and cash recycler. What is this cash recycler? Sir, ऐसी मशीन जो आपको डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी भी दे और कैश विड्रॉल की भी. So these charges which I am talking about, it is same for cash deposit as well as cash withdrawal machines, चाहे फिर वो ATM मशीन है सिर्फ या वो कैश रिसाइकलर मशीन है, it is allowed. इससे पहले अगर हम मार्च में बात करें तो मार्च में जो इंटरचेंज फीस है, ये देखो ये वाली, ये जो इंटरचेंज फीस है, दिस वाज अर्लियर 17 रुपीज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसे भी इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया 19, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर कितना कर दिया 6 से 7 रुपए, मतलब जो बैंक टू बैंक चार्जेस चार्ज हो रहे हैं, जो बैंक टू बैंक फीस चार्ज हो रही है, उसे भी इंक्रीज किया गया फ्रॉम 17 टू 19 एंड फ्रॉम 6 टू 7 रुपीज. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सुनना जरा. आरबीआई हैज कम्युनिकेटेड कि जो ये एटीएम इंटरचेंज फीस है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एटीएम नेटवर्क. आरबीआई ने कह दिया कि भैया ये जो आपकी एटीएम इंटरचेंज फीस है ना, आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इट, ATM network will decide it, and ATM network is based on National Financial Switch, and National Financial Switch is product, it is managed by NPCI. So basically NPCI has revised the interchange fees charged in NFS network for Pan India by 2 rupees, जिसे 17 से बढ़ाकर 19 कर दिया और 6 से बढ़ाकर कितना कर दिया 7 रुपए. This is important. This is also going to be applicable from 1st of May 2025. लेकिन ये जो रिवाइज्ड इंटरचेंज फीस है ना, ये जो रिवाइज्ड फीस है, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन माइक्रो एटीएम, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन इंटर ऑपरेटेबल कैश डिपॉजिट एंड इंटरनेशनल एटीएम ट्रांजैक्शंस. तो याद रखना, इन सारे केसेस में दिस इंक्रीज वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल. चलो, नाउ लेट्स गो बैक एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर द क्वेश्चन. Reserve Bank of India has announced a revision to the charges associated with ATM withdrawal. So now it has been increased to 23. Earlier it was 21. Interchange charges were earlier 17. Now they have increased to 19 for financial transaction, and for non-financial transaction they have increased it from 6 to 7. समझ आ गई बात. इंटरचेंज क्या होता है, इंटर बैंक एटीएम ट्रांजैक्शंस क्या है, इंट्रा बैंक एटीएम ट्रांजैक्शंस क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएफएस. आई गेस ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर to all. If it is clear, just give me yes sir so that I can move ahead. Moving on to the next news. The next news is again important. As per the
latest data which was published by RBI on 28th of March 2025 on India's international investment position for the quarter ending December 2024. Which of the following statement is correct? तो इस statement को पढ़ेंगे, इन statements को judge करेंगे. Let's first read out the news. So what is the news all about? So recently RBI ने बताया है क्या? Sir, RBI has released the international investment position. What is this international investment position? देखो सर, international investment position का मतलब क्या है? International investment position का मतलब है when we talk about India, we know this very well that Indians, they are investing outside the country. So if India is investing outside the country, that will be what? So that will be foreign asset. This is the investment done by Indian. This is known as foreign asset owned by Indian. Say yes or no. Foreign asset owned by Indian. Similarly, if a foreigner is investing in India, then I would say Indian asset owned by a foreigner. Then I would say what? I would say Indian asset owned by foreigner. So in this context, we explain the term that is international investment position. So assets, they are divided into investment done. So if foreigner has invested in India and purchased a land in India, that will be Indian asset owned by foreigner. Similarly, Infosys has purchased an office in Germany. So that land belongs to Infosys. So that is foreign asset owned by Indian. Secondly, portfolio investment, that is the foreigner investing in Indian share market, Indian investing in foreign share market, and other investments as well as reserve assets. They are known as what? So they are known as nations assets. तो assets में क्या आएगा? Asset का मतलब आपकी संपत्ति में क्या आया? Direct investment, portfolio investment, reserve assets as well as reserve assets में जो आपके पास forex reserves है, foreign currency है, gold है, as well as the rights you have with IMF that you can take the loan, you can withdraw the funds whenever required, that is special drawing rights, it's also your asset. A point आया liabilities. सर liabilities में जो investment, liability क्या होगी सर? जो investment foreigner ने इंडिया में की, जो portfolio investment which has been done by foreigner in India, direct investment done by foreigner in India, and other investments done by foreigner in India, they all are the liabilities. So ये जो Indian asset which is owned by foreigner is our liability. The foreign asset which is owned by Indian, this is our asset. अब आता point net international investment position. अगर net international investment position की बात करें, that is net value or net investment and India, or I would say the Indians are holding outside the world. Net means पहले आप asset में से क्या हटा दो? अपनी liabilities को हटा दो. तो देखना जरा, as per international investment position, net claim, ध्यान से देखो, net claim of non-resident in India increased by $11 billion to $364.5 billion during the third quarter of financial year 2024-25. इसका मतलब ये हुआ, Indian asset owned by foreigner is greater than foreign asset owned by Indian. और अगर मैं निकालूं, so what is this difference? So this is $364.5 billion. ये जो difference है, this difference is $364.5 billion. और अगर मैं कहूं latest October, November, December of financial year what? Which financial year I'm talking about? So 2024-25. तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो ये क्वार्टर था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें ये जो डिफरेंस है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय $11 billion. ये है नेट वैल्यू. नेट वैल्यू समझ आ रही है? नेट वैल्यू का मतलब क्या? जितना
इंडियन एसेट्स है, इंडियन एसेट ओन्ड बाय फॉरेनर्स, इंडियन एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेनर्स, यानी कि वो संपत्ति जो इंडिया में है, यानी कि वो बिलोंगिंग्स, लैंड, शेयर होल्डर, शेयर्स, इक्विटी, वॉट एवर इट इज, इंडियन एसेट ओन्ड बाय फॉरेनर्स, दैट इज मोर देन फॉरेन एसेट ओन्ड बाय इंडियंस, और ये ज्यादा है। अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये है 364.5 बिलियन डॉलर्स का नेट क्लेम है। व्हाट इज नेट क्लेम? सर नेट क्लेम का मतलब है इफ आई सब्ट्रैक्ट, नेट क्लेम का मतलब क्या हुआ सर? इफ आई सब्ट्रैक्ट the assets and liabilities, or I would say the assets owned by Indians, foreign assets owned by Indians and Indian assets owned by foreigners, इन दोनों का जो डिफरेंस है that is 364.5 बिलियन डॉलर्स, which means कि जो फॉरेनर्स हैं उनके पास इंडिया की एसेट इंडियंस की फॉरेन एसेट से 364.5 बिलियन डॉलर्स वैल्यू ज्यादा है, एंड दिस वैल्यू हैज इंक्रीज्ड by 11 billion dollars in the latest quarter. This value has increased by 11 billion dollars in the recent quarter, in the latest quarter, that is October, November, December. So the foreign asset of Indian residents, so the foreign asset of Indian resident has decreased by 40 billion dollars, and the claim of non-resident in India decreased by 29.1 billion dollars. तो इंडिया की जो foreign asset है that has decreased by 40 billion dollars, and foreigners की जो Indian asset है that has decreased by 29 billion dollars, but still इंडिया की एसेट ज्यादा कम हुई in comparison to foreigners की एसेट in India, and this difference is around exactly 11 billion dollars. तो ये जो डेटा है it shows the reserve accounts, जो हमारा reserves है, that is the forex reserves and all. So the reserve accounts represent 59% of total international financial asset in December 2024. तो इंडिया की जो total international financial asset है उसमें 59% is the reserves, which is with RBI, government, we call it as forex reserves. So the ratio of India's international asset, इंडिया की international asset, या मैं कहूं India's foreign asset divided by foreigners Indian asset, divided by foreigners Indian asset, इसका जो वैल्यू है that was 73.1%. now it has increased to 74.7%, which means आपका जो इंडियन एसेट्स है या इंडिया की फॉरेन एसेट्स है with respect to foreign की इंडियन एसेट्स, ये जो परसेंटेज है it has increased 74.7, which was earlier 73.1%. last but not the least is share of debt liabilities in total external liabilities increased. तो अगर हम बात करें जो आपकी total liabilities हैं उसमें से आपने जो पैसा उधार लिया है वो है 53.6%. जो पैसा आपने उधार लिया that is 53.6%. और इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है that has also increased, which accounts to around 1.1% of country's GDP. ये वाला डेटा बस आपको रेफरेंस के लिए दे दिया, डोंट रिमेंबर इट, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हम पढ़ेंगे जब पूरे फाइनेंशियल ईयर का आएगा, एंड दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बस ये रेफरेंस के लिए दिया है. अब आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं. जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईच एंड एवरी डेटा जो हमने डिस्कस किया दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. India's net foreign liability decreased by $11 billion, reaching $353.5 billion. Is it correct? पहली स्टेटमेंट देखो, इंडिया का जो नेट फॉरेन क्लेम है या लाइबिलिटीज है या जो क्लेम है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? देखो $11 billion इज द करेक्ट फिगर. $11 billion जो है वो करेक्ट फिगर है. ध्यान से देखो, $11 billion जो है दैट इज करेक्ट फिगर. बट पहली चीज जो नेट क्लेम है दे आर नॉट डिक्रीज्ड, दे हैव इंक्रीज्ड. दे हैव नॉट डिक्रीज्ड, दे हैव इंक्रीज्ड, ये गलत है. दूसरा, यहां पे जो टोटल नेट क्लेम है दैट इज $364.5 billion, आई गेस. जो टोटल क्लेम है दैट इज $364.5 billion. तो ये भी गलत हो गया. इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट. समझ आ रही है बातें? अरे भाई समझ आ रहा व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़े। लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? इंडियाज फॉरेन असेट डिक्लाइंड बाय $40.1 billion, ट्रू, while foreign liabilities decreased by $29.1 billion. ठीक है, अगली स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल असेट टू लाइबिलिटी डिक्रीज्ड। नहीं सर, पहली बात तो ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, ये इंडिया की इंक्रीज हुई है और ये इंक्रीज होकर कितनी हुई है? सो दैट इज 74.1%। अगर आपको याद हो तो आई जस्ट टोल्ड यू 74.7%. It has increased to 74.7%, which was earlier 73.1%. Reserve assets accounted for 50%. Reserve assets accounted for 50%. नहीं सर, reserve assets accounted for 59%. देखना जरा, reserve assets accounted for 59%. तो अगर reserve assets accounted for 59% तो ये भी गलत हो गया. India's net foreign liability increased by $15 billion. नहीं सर, ये मैं आंसर दे चुका हूं. It is $11 billion और ये वैल्यू कितनी है? That is $364.5 billion. तो इन सब में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है that is B ऑप्शन की India's foreign asset has decreased by $40 billion and foreign's Indian assets have decreased by $29 billion. So according to that, the correct statement for this particular question is correct. That is B option. Clear हो गया जी? चलो, let's move on to the last news, but will not talk much on this. Name the chairperson of Indian Bank Association for the upcoming financial year. For Indian Bank Association, जो appointment है chairman की plus 3 deputy chairmans की, it is done for a financial year. मतलब हर एक financial year के लिए appointment की जाती है. Recently, who has been appointed? I'll give you a hint. Sir, SBI के chairman को, SBI's chairman is appointed as the chairman of Indian Banks Association. यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, why this news is important. I just wanted to discuss with you briefly what is Indian Bank Association. So Indian Bank Association is basically a representative body of the management of banking in India, or you can say it is basically the association of Indian banking sector, or I would say it's a platform where the banks, they come together, they come together, not only government owned bank, even the private banks and the other banks, cooperative banks and foreign banks, they come together along with asset reconstruction companies, even the credit rating companies, even the credit guarantee funds, and all they come together in order to discuss the issues which are prevailing in the sector, as well as if they want collectively to raise their voice in front of RBI or government in form of request or something like that, that can also be done with the help of this. So याद रखिएगा, its major objectives is basically to assist and provide common services to the banking industry, developing and implementing new ideas and innovation. It covers broad range of services in the banking industry. It also makes various recommendations to the government and RBI over various banking related matters which are need to be addressed. ठीक है जी? उसके अलावा it conducts, this is very important, it conducts wage negotiation with workers and officers union. IBA was formed basically to develop, coordinate and strengthen Indian banking and assist the member banks in various ways. ठीक है जी? तो एक बार आप पढ़ लेना, मैंने बस आपको पॉइंटर्स बता दिए जो इंपॉर्टेंट है. लास्ट में जो पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज this organization was formed on 26th of September 1946 with an initial membership of 22 banks representing IBA in 1946. और Indian Bank Association जो है, it is managed by the managing committee. The current managing committee consists of one chairman. Current managing committee consists of one chairman, 3 deputy chairman and one honorary secretary with 26 members. तो अगर मैं चेक करूं तो conclusion of the news ये है. This is the entire conclusion of the news. Why it was in news? Sir, it was in news because SBI के चीफ CS शेट्टी को अपॉइंट किया गया as the chairperson of IBA. IBA के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए? CS शेट्टी. आउटगोइंग कौन है? MV राव, who is the CEO of Central Bank of India. डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो सर 3 नाम है. One is माधव नैयर, then Savroop Kumar Saha, and the last one is A. Mani Mekhalia.
If I talk about the honorary secretary, B Ramesh Babu is the honorary secretary. तो ये कुछ नाम्स है, याद कर लेना. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है. फेज 1 में हो सकता है पूछ लिया जाए, वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो IBA का मैंने डेटा दिया या IBA से रिलेटेड जो डिस्कशन दी है मैंने इन फॉर्म ऑफ PDF, वो आप एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा. ठीक है, चलो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट विल बी द आंसर? सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज CS SETI. The answer to this particular question is CS SETI. So I hope each and every news which we have discussed today is crystal clear, guys. If it is crystal clear, just give me yes, sir. If you have any doubt, you may ask, please. Yes, Subrajyoti Nayak, you can download the PDF. The PDF is available on my Telegram channel. My handle is Madhav Arora. What is the primary reasoning for taking external debt? It is because of low interest rate, balance of payment, lack of capital in India. अभिनव सिंपल है ना यार, अगर हमारे इंपोर्ट बिल्स हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा है, सो इन ऑर्डर टू पे दोज इंपोर्ट बिल्स वी नीड फॉरेन करेंसी. वी कैन नॉट बोरो फ्रॉम इंडिया टू पे इन फॉरेन करेंसी. तो शुरुआत तो वहीं से हुई. ये जो बोरोइंग है इसकी स्टार्टिंग तो वहीं से हुई ना कि आपके इंपोर्ट बिल ज्यादा थे in comparison to your exports. So in order to service your imports, all the nations, they started borrowing. Then over the period of time, if we want the foreign technology to flow in India, again we need the borrowing so that the foreign company can be invited to set up its unit in India. So if we have to pay to the foreign country, we will be paying in foreign currency. So due to the need of foreign currency, this foreign और एक्सटर्नल डेट केम इनटू द पिक्चर. अगर इंडिया डॉलर प्रिंट कर सकता तो एक्सटर्नल डेट का कोई पॉइंट ही नहीं था. आई होप इट्स क्लियर. Okay, so that will be all from my side, guys. Quick revision. Those who were not present in the previous session, I'll quickly show you what we have done in the previous session and what level of PDF you always get in this particular session. Still, I would request you, if you have any doubt, any feedback regarding this particular session, I would request you do share your suggestions, feedback in the comment section itself. So in the previous session, we discussed about WMA. As I said, this news has a potential that WMA can be asked in the descriptive format. So we discussed WMA in that manner itself. Then after that, we talked about Pakistan access to extended fund facility. So we discussed what is extended fund facility. Then we talked about SPDs, that is standalone primary dealers. So from the previous session PDF, we can expect two descriptive questions. One is on primary dealers and the other one is on WMA. So don't forget to go through with this PDF at least twice or thrice before going for the examination. It's going to help you a lot. Is it fine, guys? Is it fine? So that will be all from my side in this particular session. We'll catch you all in the upcoming sessions to go. Thank you so much. Good luck. God bless you. Bye-bye. Take care.